the series. 9. He's got an ace rune, so he may not be able to outrun that rocket, but he can get some serious distance. They're going to try and chase. Oh, what an interception! What a play from Ron, and now in turn they're going to save each other with the Sylvan Soccer with a beautiful avalanche. Hello, Black Hole. Goodbye, Secret. Divine Reaper starts going to work, but you can see they're actually decently tanky. Chrysalis got to get back to it, but he's just going to get blacked out immediately. Divine Rapier picked up, Divine Rapier dropped, and that is it. Tundra are going to the grand finals. We watched 2 series of Dota 2, of incredible Dota 2 yesterday, both very much finals weekend series to the bone, and we are with that left with 3 teams as we said goodbye to Aster. I must say, Jenkins, yesterday's games were crazy. Yeah, yesterday was nuts. I mean, it's you dream of this. You're watching TI. You don't want the upper bracket final to be some 2-0. Like, all of these teams could potentially win. Yeah. And in TI history, I think the stat is the upper bracket finals only repeat 30% of the time. I have another stat that you brought up that you haven't mentioned yet. You said earlier this week that traditionally, never before has a second-placed group team won TI. Yeah. Both Liquid and Secret. Well, Liquid was second place. I think Secret was like third or Right. something. But you know, there's a little bit there as well. But we should talk a little bit about the teams that are still left in, because something special is when a first time to TI takes the throne, and that hasn't happened very frequently, Lacoste. Yeah, I mean, throughout the TI history, it did happen a couple of times so far. In this TI, we still have a couple of them left. It's Crystalis, Skeeter, and Nine, so they are still able to lift the ages for the first time, you know, and also their first time showing up, so that's a pretty strong momentum. We did have Team Spirit previous year, except for Miposhka, because he did play at TI, but if you look at the stats, it's just not a lot of people that so it means that veterans, you need to have a veteran in your team pretty much that has experience, and who better to have than Puppy? Yeah, very true. I mean, Royal Roaders here, Effie, there's only been 2 teams, TI1, there's 5 players, but other than that, it's Wings, the only time that 5 new people did it. I think the Wings TI6 run is still probably the most legendary run of any Dota team. They were incredibly dominant from the start to the finish. They came up a little bit out of nowhere for most people. There had been whispers about that team just being so good a little bit before that TI happened, but when it did start, 5 new 2 TI players just took it. And the closest we got to repeating that kind of magic was last year with Team Spirit's TI10 run. And like Lacoste mentioned, Miposhka was a veteran compared to the others, but 4 new players winning TI, that's also very impressive all of these years later. Yeah, very much so. And we're not mentioning coaches because we only started counting coaches pretty late onwards. But I think we still need to, nowadays, coaches are a very big part, of course, of the team. And Blitz has not actually played / coached at a TI yet. He's only been talented, Cenk. Yeah, it feels like he has. Yeah, it did. Yeah, I think he's been boys with some of the Liquid guys for some time, and that doesn't really count as officially coaching. And Heen could also, this could be a second win as a coach. Yep. And then Jerax could also win for a second time, but this time as a coach. Aoi could win for a second time as a coach. So there's a lot of firsts that can happen with coaches in particular. Yeah, it is. It's pretty crazy. We still have, of course, these in, but overall, every team has something. Yeah, they do have a lot of experience, something to back them up, because you need this. It's very rare, as Mira said, you know, that you're going to have just 5 new players coming in and taking the whole thing. Dota, a lot of Dota ideas go back in time, some of the counters and stuff you see, even from Dota 1 days. Dota is just very complicated game, and you need to have a good grasp on it. You need to know the history. Yep, very, very complicated game indeed. Yeah, just off of that info that showed up, I really do want to highlight AUI, who, of course, everybody knows and loves because they did work
TI 10 last year after failing to qualify with Arkosh Gaming. And he was But kicked for that, just for the record. It's actually his first year coaching, and he hasn't been doing it from the start of the competitive year. I believe he joined them halfway through on Tundra, and he has just done an incredible job. I mean, as far as coaching debuts go, I do think AUI has the best results probably ever. So just pat him on the back for that. I really do think he is one of the best minds that we currently have in Dota. Yeah, it fits very well in the lineup of Tundra as well. We always say, like, they're the innovators, they're the... Shiver! Welcome, my friends. I know you're in the middle of some deep analysis, but I wanted to give a moment of levity. Gentlemen, ladies, I would like to start Singapore's favorite game show. Hit the music, hit the logo. It's time for Forced 50%. You know the rules by now. Pencils down, laptops closed. I got it. And I have one extra layer introduced this time. Please look underneath your desks and you will find a 1 and a 2. These will represent which of the two heroes you will be selecting. Right now you see a Grimstroke and you see a Wyvern, but why are they on this screen? Well, it's because I want you to answer some questions. You at home can participate. I want you to tell me, which of these heroes were picked more? I'm talking group stage, I'm talking playoffs, I'm talking all of it. Jenkins, let's start with you. I'm gonna go one, Tsunami. You're going 1, you're going winner Wyvern. I'm gonna go winner Wyvern, Tsunami. Okay. Effie? Are we counting LCQ? We are not counting LCQ. Good question. I'm gonna do 2. I didn't get that information, Tsunami. No. You absolutely did. You should have paid attention. No. I Lacoste? have all the information, and I'm going to go with one, whether I had or didn't have that information, because I feel Grimstroke is in a really bad spot right now. Oh, but better spot than Wyvern? Who knows? Shiver, I don't even have to ask you. You're one step ahead. She was paying attention. Computer, please reveal who has been picked more at TI 11. Computer. Oh my god, the anticipation is killing me. Yeah. Wyvern! All right. 3 games versus 2 games. Don't worry though, there will be more questions. That's tight. That's tight. It was a tight window. It was a tight window. That's why I like to keep it though. Let's see what the second question is. I want to know about these spirit heroes. You know, you hear a lot about Storm, but I want to know about the bad ones. Void Spirit, Ember Spirit. I'll give you a bit of a hint. Both of their win rates are garbage. They're in the 20% range, but which one has a slightly higher 20%? Shiver, let's take it off with you. I think Void Spirit got picked less times, and therefore has a chance of a higher win rate. Okay, I like the logic. Lacoste. 12 is not an answer. I don't feel like I've seen a single game where Ember Spirit has won a game, so I'm just going to go with Void instead. Okay. Ember Spirit has won Dota games. Liquid won a Dota game versus Brood. However, Void Spirit is picked less, which gives him statistically a better chance. Okay. Same level. And Jenkins. I'm gonna go ahead and say that Shiver pretends to be a host, but in reality she's a better analyst than all of us. So I'm gonna go 1, just copying her answer. Here's the thing though, you're not a better analyst than Twitch chat. And I hear Twitch chat is saying 2. Computer, please reveal which of these 2 Spirit brothers has the higher win rate. No, It's Ember Spirit. I'm so sorry. Great job, you all got We trust you. exposed. We trust you, sorry. Shiver. I'm bunch never of- trusting you again. It's okay. A bunch of frauds on this panel, and I think I saw someone hiding over there. You want to go on a journey? Let me take you on a journey of healing. I want to know which of these 2 heroes has a higher average heals per minute. Dawnbreaker or Undying? Heals per minute. Oh, that's a per trick minute. question. I have a question. Self-healing counts, doesn't it? Self-healing counts, doesn't it? Anything that involves either Solar Guardian or Soul Rip counts. Does healing a tombstone? What about Wraith Pact? No, it does not. Only Tombstone would be heroes. like 7 HP. But Wraith Pact Aura counts. We have a new term, HPM. You're getting a little bit too in the weeds, my friends. Okay, I'm gonna go 1. I'm going following 1? the I vote cost 1. 'cause I think he's smart. Well, I want to make sure all your answers are documented Well, for hang on. posterity. You got a 1 for Jenkins? does I wouldn't go with self-healing 1 count? last Like time. the passive? Yeah. Does her passive count? Yes, it counts. 1, 1, 2, Sorry, 2. I'm changing You my stole my mind. I didn't know passive counts. All right, let's see what it is. Chat's saying Undying. Computer, reveal the correct answer. Oh, it's Dawnbreaker. What a shame. He's You tricking hate to us. see it. You hate to. It's Wraith Pact. It's Wraith Pact. It's Wraith Pact. That's mean. Why Listen, did you do that? Undying should be better at healing if you wanted to stay on the screen. All right, Undying Dawn, go? we'll see you later. I've had a pleasure joining all of you for this little journey. She's mean. She's mean. She's mean. Let's see how mean she's going to be in these next 2 series, though, because I won't take any more of your time. I hope you all enjoyed another episode of Forced 50. Say it. Forced 50%. Woo!
54%. It doesn't feel. I mean, I'm 0. Well, because it's 3 questions, I feel like it's forced 33%, more But than forced 50%. that would still imply that These are edible. They do smell nice. It's really stupid. It's disgusting. You know what is not very stupid? History. History is actually very, very good and very interesting, especially when taught by our historian, Pierre Flax. Welcome back to the Dota archives. Since your last visit, I've been extremely busy digging yet deeper into the background of our beloved game, and have stumbled upon a category which previously nobody had thought to make content about: Dota 2 heroes. Heroes they may be, but sometimes even the best of us can fall short. Let us burrow into the archives and find out which have failed and which succeeded. To get us started, let's first review the latecomers to our game. No failures here, of course. New heroes are universally beloved, and certainly above reproach. Every new hero that comes just ruins the game. 我觉得一推出就特别厉害的英雄。Ну, я тебе так скажу, абсолютно любой герой на релизе — это просто сумасшествие. Honestly, a lot of the new heroes are really... No, it's Primal Beast. Primal Beast was the most broken hero. Primal Beast, который всех выносил, это просто жесть была. Primal Beast, you just see boom, 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 coming around the corner, you know? Every single game you play versus a good Primal Beast, he has 20-0 at like minute 15. 就是受这个英雄他打破平衡，就是在于他那个刚出的时候伤害实在是太高了，然后他那个3维就是初始的力量包括血量都特别的赢把，然后就每把都会有这个英雄，如果没有被顶掉的话。As soon as I saw Primal, I don't even know what to pick. I can't hit him in lane. I can't out CS him. He has 20 more damage than me level 1 for some reason. And he kills me from full HP. Primal Beast and Marcy, both those heroes were like abominable on release. You literally, like, when they're on your screen, you're dead already. Like, it's too late if you see them. You have to not see them to be alive. Interesting defensive stratagem. Merely avoid noticing the enemy. I've certainly had a lot of luck staying alive in Dota by simply not having any idea what's happening, and I'm sure our young professional there understands that better than most. Perhaps my good friend Sun Wukong, the Monkey King, introduced way back in 2016, will be better received by our professionals, И макака, которая на первом уровне там 500 урона имела. Like, only Doom had 150 range compared to melee heroes 128, but Monkey King had like 800. So he just smack you across the map. His jingles would never run out. It did like 1 billion damage, he had lifesteal to full. I mean, the whole like no noise when you jump thing was really great. This just silent assassin just comes out of the trees, you can hi-ya, and then he stuns you, and then you're dead. Yeah, I mean, no comment on that. Like, that was probably the most easiest hero to play when it came out. Get hit 4 times and I'm dead, like, okay. Insane mobility, you cannot man fight, he just kills everything. There was still this time where like Basher worked on his ultimate. It's like, this is unplayable. Unplayable. That sounds like another member of our elite cadre, Kowlin, the Earth Spirit. Not new by any stretch of the imagination. This geological aberration has been with us since 2013. But when he first rolled into the game, well, personally, I think it was fine. And before them, Earth Spirit had similar vibes to that. It's like he saw you and you were dead. He rolls on you, he kicks you 6 miles backwards, you're in the tower, you're insta-silent stunned. He has some reverse geomagnetic force staff thing going on. That here was something else. I think the pull stun, so you do like pull into roll and to kick into your tower. You just play for some like Jerax or Weeha and they would just kill you off cooldown mid. You wouldn't even know what's happening. 当时好像他每个技能都特别厉害，然后输出也比较高，而且可以打中单或者拿很多绝活哥拿他上分。Earth Spirit, it required some finesse. You know, you needed like some Jerax or crit out there. Like, you know, like I know the hero was really dumb when it came out, but I also like measure ease of like, you know, execution. And if it was purely ease of execution, you know, die. Mixed feelings, certainly. But what about our next hero? Will they be afforded the benefit of the doubt? Can a group of 3 pyrotechnically gifted maniacs really be so bad? Their names are Squeeze, Spleen, and Spoon. May he rest in peace. So after all, how bad can it really be?
playing as all techies was like a nightmare. Every time I decided to play Dota like 3 a.m. Someone in the enemy team decided to pick techies, and I already wanted to be abandoned. A lot of Dota is about inflicting some pain upon your opponents and like sucking all the fun to yourself. But I feel like techies did that to both your team and the enemy team. There's like 10 people and only one person gets to have fun. Being able to insta-kill someone from across the map while dead has no business being in Dota. Now the game is going to get prolonged 20 minutes. I wanted to go have lunch, but my day has been hijacked by this guy who sabotages everyone else's fun and siphons it into his own freaking gullet. That's the best change in Dota, honestly. That stupid hero got changed. You don't want to be one of those guys that plays techies, you know? And every idiot that played that hero, that liked the old techies, you know? Like, sorry to you, but... I have nothing good to say about Techie Slacks, I'm sorry. I'm super glad the hero's gone. May he never return. I'm sorry, Slacks. I know that hurts you and cuts you deeply. Find a new game. Find a new game. Oh dear. Damning indictments all around there. But ask yourselves this. If every hero was perfectly balanced, would the game be better for it, You do think that? Ah, well... As I always like to say, a journey bereft of drama is a journey forgotten, but one stuffed with action, intrigue, even disaster will live long in the memory. And isn't that what Dota is all about? I'll leave you to ponder that for yourselves. Good night. A great lesson. Thank you very much, Pyrian, indeed. Techies, I think the pros were all in unison, happy that techies got changed. Effie, the cost? Not just pros. I think every Dota player out there hated the hero, the way he functioned. I think two best changes in Dota throughout the 10, 11 years was changing techies and also changing that you cannot pause the game at the start. That was that's just, thank you so much. The thing about techies is not just us as pub players were traumatized, even professional players are traumatized by that hero. It just speaks volumes. Actually, the fastest GG in Dota that I can remember of recent memory is last year, LGD versus Aster in some OGA tournament. 13-minute GG called versus Xingqiu techies. They just didn't even want to try. They just died a couple of times and said, F this. This hero sucks. Yeah. They did it out. I'll never forget that. The greatest proponent of the anti-techies movement is actually a gentleman, Aoi 6000, who did win the international with techies. Yeah. And when you are a millionaire from playing a particular character and still want it to be removed, there's a pretty good reason. Yeah, pretty good reason to delete it. I'm happy to change for sure. I know someone who is not, and someone who is outside catching some fresh air right now. It's Direction Slacks. Hello, thank you. Yeah, not everybody is happy about the new techies change. Any old techies lovers out here? Yeah, we're in C, oh, baby. Only the sickest freaks are playing out here today. Speaking of which, we're at the secret shop. The show is already open, but I thought I'd talk to some fans very casually. Hello, sir. Why aren't you in the arena? The show has already started. I'm a broke uni student. I don't have tickets, so I'm just have to. You're just here for the shop. And, yeah. Oh my goodness. Well, here you go. Here's a little of that. That's a very enjoy. Why are you not inside right now? Collecting my ticket. Do you have a ticket? Yes. And you're ditching the games for your own secret shop stuff? What do you have to say to Puppy, who is watching right now, who worked all year, 11 TIs for your entertainment, and you're out here buying a T-shirt? All the best. All the best to you. All right. I'm going to give you this shirt. Here you go. Thank you very much. Sir? Yes. One word for everyone in there in their comfortable air conditioning, standing out here in the heat. I'm so jealous of you guys. I have to queue up for my plushie. Oh, well, don't worry. Here's a free plushie right here. And where were those techies fans in the back? Oh, yeah. And one more. Anybody want? There you go. Oh, that's a surprise one. It went behind. Yeah, that's good. All right, now I do have one challenge here. I have one cookie. Would anybody like to do the Snapfire jump for the cookie, please? We're in. Come on, jump the line. Go under. No, don't jump over that. You'll die. All right, I'll throw you the cookie, and then you have to hop like the Snapfire character. Are you ready? Yes. This way. Don't hit the shot. All right? Here we go. Yeehaw! Yeah, there we go, ladies and gentlemen. The crowd is hyped. The heat is right. Let us trade sweat, sir. Yes, sir. Yes. It feels good. Back to you. I don't know if that feels
Good. I feel a little sorry for him. I feel like with Slacks, you can always tell when he regrets that he had said something right after he says it. Please don't fire me. It's like every moment could be his last. I mean, that's a unique way to do things. All right, so we have 2 series of Dota 2 today. And our first one is going to be between Team Liquid and Team Secret. 2 teams from Western Europe, 2 teams who didn't qualify, 2 teams who have not had the best year, Effie. Yeah, I mean, I think both teams, they obviously had to come through the last chance qualifiers, so we know that they didn't qualify through the DPC system, but Liquid, they were always one best of 3 away from qualifying at a major. They always felt so close, whereas Secret ended the year with 78 DPC points. I mean, that is an abysmal year. The transformation in the last few months was insane. It's awesome. Let's bring on the players. It's Team Liquid first. Choose wisely and crush those responsible. Team Liquid. What a road this team has made it here to the final day. They did not qualify first time round. They did not qualify on points, and then last chance qualifier. They did not qualify first, they qualified second, and here they are on the final day. They're your top 3. It is Team Liquid, and they're getting ready to take the booth to play against the other team that came through the last chance qualifier. It's Team Secret. Team Secret. They had the upper bracket route this time around, but still did not secure their place in the grand finals yesterday. They are looking to do so today, though. They have one opponent to go through before having potentially a rematch with Tundra. We'll see if Team Secret can make it all the way here today. They definitely have looked on fire and leveled up through this tournament. Same can be said for Team Liquid. Now, we obviously love talking about both of these squads. We really, really do. But we also really love listening to them talk about each other. Here is Team Liquid on Team Secret. I think Team Secret during this event, they really figured out the meta, and I feel like the way they draft and the way they approach the game, it sets themselves up for a lot of success. First of all, I think Nisha is probably the best player alive. I think he's incredible, and I think he deserves all the success that's coming to him. And I think the same can be said for Puppy. They have good players. I mean, I think they have like the best coach I've ever played with, seen. So after a rocky year and a few switch ups, I think they found like a group of players that actually click very well. They seem to understand their team very well and how to best utilize the players and how to get everything out of all of their players, really. having Nisha in their team, that I think is like the best modern Dota 2 player in the world. Like it's like, I don't know how can you, with this recipe and having Puppy with all this experience, how can you fail with this much like recipe for success already? Like I don't see any point in, like I don't see any way, you know, like for me it's just expected. I was really happy that we didn't have to play them in the last year's qualifiers, so we both could end up qualifying. And now if we do have to end up playing them, I hope for it to be in the grand finals. That way I think we'll get a finals that I would be, like no matter the results, like I would be kind of okay with. A lot of love, a lot of respect between these two teams, and how else can it be? Zai has played 3 internationals with Team Secret. And of course, Zai and Matu last year, they were at this very point in the tournament. They came 3rd with Team Secret. Now they're on the other side, and only one team can advance. Jenkins, that is heartbreaking. That's right, Shiver. This is a grudge match
between these teams. Love and respect. Gratitude. Yeah, lots of respect, lots of love, but in brotherhood, there's also you want to be better than your older brother. You see your older brother playing video games, you want to beat his ass at the video game. Yeah, playing this unplugged controller as player 2. Exactly. Puppy said in an interview that my ultimate best option was that we all played together until the end, regarding Zai and Matu leaving. And Puppy and Zai are the only remaining players who have now finished top 4 and at least 5 TIs. Yeah, that's pretty insane. It's crazy. And I want to say, if I can see a pattern, it was Puppy who placed 5th at TI 8, placed 4th at TI 9, and at TI 10 he got the 3rd place. So I think he's getting at least a 2nd place here. I mean, the pattern has to continue, but I feel that this match is a little personal for Puppy, maybe more personal than for current Liquid, because like Jenkins just mentioned, in that interview, he wanted to stay and play with these players, but they left him. Yeah. So surely he's got a little bit of a chip on his shoulder in the sense that it's going to be like, okay, I'll show you. Yeah, and they have, they have done very well. I don't think it's a garage carrying them through, but making it here to the lower bracket finals, it is very poetic that they meet again here today and only one can make it through. So I'm very happy to see this matchup. When we heard both Matu and Zai talk about Team Secret, they both narrowed in on Nisha, best player in the world. Yeah, because he's been so consistent throughout ever since he's pretty much started playing professional Dota back in the Kingwin days, even a team before that. Puppy is the one who recognizes talent so quickly, and Nisha has been so stable. I don't think I can recall a game where Nisha had a really bad game. It's just how good he is. It's pretty insane. And speaking of that, I remember in an interview last year after TI 10, Nothing to Say was asked about the mid laners that he faced at TI, and he said that overwhelmingly and by far the most difficult player to go up against in the mid lane mechanically is Nisha. That it was just a tier above everybody else, and most players are kind of scared of going up against Something that about guy. this player, he does some cool play and then you see his face on camera and it's just a big smile, he acknowledged it, yeah, I did that. He loves Dota. Yeah, And he has a good smile as well to do that with, for sure. Yeah. And he's going up against a guy on your screen right now, Mickey, there on your left. I must say, Mickey last year, he wasn't even a mid player. He played carry. This guy has leveled up tremendously. Yeah, both Boxy and Mickey, honestly, there was a lot of criticism of these two, or I guess people were not sure of how it was going to go. Swapping these players' roles in order to make way for the new players that were joining Team Liquid, and they're carrying so tremendously hard in this tournament. I feel like obviously we're at the top 3 right now, so every single player has shown up in some series in some way. But with Mickey and Boxy, it really feels like a bit of a redemption arc, because it felt like a lot of people didn't believe in them, but their teammates believed in them enough to play with them. Even Taiga saying I stepped out so that way because I did still believe in them as players and that they could do it. And man, they've shown up. I agree completely. And I also think that fluidity of when you recently switch roles, when you were a carry from Liquid. There you go. Nice. But when you recently switch roles, when you go from a recent carry player to a now mid player, I feel like those players have a much better understanding of when and how to pressure the enemy carry. They understand that timing's just a little bit more than anybody else, just because of the recency that is fresh in their own mind. And I think that has really shown with Mickey's performance this TI. It felt like he has stepped up in every possible way, but he's always hitting his timings. He's rotating to the correct side lanes, and he knows when the enemy carry's timing is and plays around it. So, hats off to him. It's not the easiest transition to make, but he has done it seamlessly. Throughout the year, some people had questions, but I think that all of those questions are answered now. It lets them swap roles as well. This team is one of the teams that they don't play roles, they play heroes, and it's because of these role swaps that they did previously. Yeah, and let's see how they do on this first match of the day. Let's head over for the draft. Team Secret versus Team Liquid. Team Secret's Game 1.
And here we are, you wonderful crowd, you beautiful people out there. We're taking a look at the first game of the day. I'm joined with a couple of very accomplished players as well as Trent. Trent, how's it going over there? We've got a wonderful Taiga and Amar. ATF, how you doing, man? I'm doing good. Excited for the game? You excited for the series? I hear you guys might be a bit biased. Yeah, I'm super excited for the series. I know Liquid is gonna win, so I'm looking forward to it. And, you know, of course, ATF, you're also here watching one of your former teammates on the old Creepwave squad. How are you feeling about Secret? I feel like Secret not gonna win. I think Secret should win. Oh my God! Like I said, must, you know? Must. All right. That's good. Trent, we already have the beginning of the draft here, as we see the Marcy band out as well as the Lesh and the Dawnbreaker. Tell me how you feeling about these two drafts. Well, I mean, we're coming off a break, right? Everyone had all this time to prepare for their last matchup, and now we're back into the more standard format of the bracket of like, they just had their games yesterday, found out who your opponent is right now. Like last night, you had your little chance to prepare, and so you're coming in with some fresh ideas of where you want to start with. And Liquid, they look to be targeting at least, like many teams have discussed, this idea of the offlane and how they want to play from there, particularly with how good Secret are with this Dawnbreaker global combos. So guys, Enigma, how good is this hero? Talk to me about what you guys are seeing in this draft already. Is there anything that's sticking out to you? I mean, I think this first pick from Liquid has been pretty classic. Enigma as a hero right now is absolutely imber. We started it in Stockholm Major and we realized how the strongest hero actually is, even after the nerfs. Especially Liquid, they're so good with Enigma because they can play it in different positions. Insania, back in the days when he played Heroes of Nova, for example, he played Enigma non-stop. And he also played Enigma this TI, so I think this pick is amazing. Silencer answer. Insta. Just go AFK and fountain and you can press global. How easy can your answer be? Dude, this is I like this. Because everybody always says, like, Silencer, just pick it into Enigma and it's going to be the answer. But you think it deals with it kind of well? I mean, it deals with the BKB Black Hole, but it does not deal with the Wraith Pact summon thing. That's the current meta. Oh, and they opt for another sort of the magic base, I guess, of Enigma, like those ideas of the big spells, but once again, nothing really there for those Eidolons. But we've seen a lot of teams go for like the safe lane carry matchup to try and reduce the impact. Do you think that's something that Secret might want to commit to in the next phase, or are they just like maybe worried about Insania flexing on this Enigma? I can talk about that. I think that the thing with Enigma right now is it's very hard to counter. Even if you pick like Silencer next into first pick Enigma, you're gonna get counter pick on 8. So this Tusk destroys the first 2 picks right now. Like if he gets a game, if he gets a snowball, I think Silencer will have a rough lane into Tusk. And I also think Enigma as a hero right now doesn't rely on Black Hole as much. I think people are like thinking too much about the Black Hole, but in reality, this Raid Pack item, when it got released, Enigma just got 10 times better. So you have a stun, you have a Midnight Pulse with 80 lands from long range, and what is Silencer gonna do compared to that? You know, he has one spell, that is global, and he's useless. That sounds scary. I mean, yeah, when you talk about it, we've seen Boxy play this Tusk so many times, and he just absolutely takes over the game. I feel like I've been seeing some of the best Dota of his career so far. They are going to ban out now the Pudge. We take the Kunkka out of the pool, as well as the Monkey King. Is there anything that you feel like either team is kind of susceptible to right now? You already mentioned some of the laning woes that they might have. What about Team Liquid? Is there anything that they have that could potentially be exploited here? I mean, now Secret have to show something on 15. Like they have to either show that this Silencer is a core, or they wanna like pick 15 carry with Silencer into Enigma. But Enigma also could be flexed, but maybe they just think that this Tusk made it to just go Enigma Tusk lane. So, but not sure what he would want to play on the 15. The Monkey is already banned. We'll see. Try and punish some of those Eidolons in the lane, as you're saying, right? A lot of those options still in there. I mean, they're getting rid of some of these heroes that can kind of deal with like the mass physical damage, right? The Monkey King, the Kunkka, trying to reduce that impact, plus just solid heroes. As likely, the offlane hero is probably still going to be picked here from Team Secret, unless it is like a Rezo Silencer. You know, Rezo, I think, has been looked to as someone who's really been leading this team. And in terms of like how well his lane goes, it tends to really dictate how much pressure they have across the entire map for Team Secret. Is there anything here that you guys would say like you should be really worried about that Rezo could pick up in this phase? Or do you think like they'll probably wait a little bit longer to get some more info for Rezo with how important he is? I mean, there is like no, like it's according to their plans. Like I don't see like they have to show one of them. Like they have no choice. So
they have to like maybe get something solid that no matter what he will just not like suffer in his lane. If you're the offlane right now, Amara, you're like, just let me wait. You guys pick. Like, give me more time. You know, are you greedy in the draft? I mean, not really. Like if I can get my heroes, because I play like 5 heroes, so I will just take them before they're out. All right, Taiga, we'll ask you the same question. Is Amar greedy in the draft? He was actually greedy, but nowadays, you know, people just ban 3 heroes install, and Amar is like, oh, okay, I have 1 hero left. Let's just pick it. You know. Well, which draft would you guys each feel a little bit more comfortable playing at this point in time in the game as we get going into this next phase of the picks here? I will say I like Team Liquid draft more. I feel like if they can keep the flex with Enigma and wait, you know, I think Secret has second pick, right? So they will see where Enigma is going before they pick their carry. So I think in this sense, Secret should have the advantage because they got second pick. But we'll see. I still like the first 2 heroes of Liquid more. I think they won the first phase. I mean, Liquid for sure. Like it made the Secret 15 hard. Like they don't know what to pick on 15 because they have to show, and Enigma will just dodge the right counter pick unless they just decide to like all in like you mentioned how like second pick feels really good right now, right? This idea of like the end of the draft, you have this opportunity for the double counter pick a lot of teams will refer to, where you get to see something, respond, see something, respond. And the fact that they're actually struggling at this point in the draft is generally a pretty good sign for Liquid, right? Ooh, the little dwarf man sniper plinking away. That's a good hero for the lane against Enigma. If you think it's an Enigma offlane, laning into sniper is not the easiest because Shrapnels on his auto attack actually kill Idlons. Like Enigma right now, Idlons are 1 and 3, like they die to magic damage. Yeah. So I think it's good. Does also present himself as an immediate target to go on, and with 2 heroes that are already there to sort of go for a hard commit, whether it's a Blinken and a Walrus Punch or a Blinken and a Black Hole, they're going to have to make sure that they protect that sniper pretty well. I mean, they have the tools. They have Nyx to scout. He will just go in like he's invisible. Most strongest thing, you know? You just go invisible. Like you have to address him. Like, and also like they should like complement the sniper with 2 more heroes that like at least like 1 initiator, like some tank who will just eat the damage and not die. Yeah, I feel like Liquid should look at Night Stalker. I feel like a type Night Stalker hero will be very good for the draft right now against the 3 heroes in Secret. I think like Sniper, Nyx, Silencer, if they get on top of like, let's say Anna's ulti, and get on top of them, they draft full support. Ooh. Okay, and now a nice little player to run on in there with the Infest, and afterwards, the immediate Lich. So we've seen Frost Armor be really difficult for some teams to deal with. What do you think about these 2 picks here? I mean, the Lich concept was like to counter the SF, because SF is just like right click, and it's the same thing for Sniper. Like Sniper just right clicks, and there is like, it's not like there is some Slark who steals your stats, or Ursa who has fewer swipes. Like, so like he will just protect whoever. A lot of damage, and well, now moving in, we get ourselves a Beastmaster, so not necessarily a hero that's been doing too well lately. I feel like he's kind of fallen down that totem pole in terms of like the summons, where it's, you know, he tends to dominate a lot of the Dota meta because of his ability to have the summons, and he has this magic community piercing stun that you're always able to rely on. But it is more vision, and would you consider this pretty good in terms of like a little bit of like a tank to go in? Feels like it's a bit more finesse based because you have to rely more on your vision as opposed to just like a big body, right? I mean, it's still Beastmaster, like you strongest hero in Dota. You just have this big creep, 2k HP, you send, you press Primal Roar, you see everyone, nobody can move. Like these heroes also are like very bad into Beast, like they cannot like just run into him. Like they snowball, they press spells, they feel like they're just running to their death. He brings a big beefy guy next to him, you know, with the helm of the Dominator. Lots of tank, lots of bodies in there, and no Night Stalker, I guess, at this point. Pretty hard to fit in, so that's also going to make Beastmaster happy, is that Night Stalker's not just going to eat your creep, which we've seen as a little bit of a soft counter. Yeah, it's actually the power of second pick too, because if Liquid didn't have to like first pick, they will put the Enigma position 5 against the Beastmaster, which is a very good lane, my personal experience. But the thing is, they already picked this post 5 Lich, so the second pick that Secret have actually benefits them so well because they get an 18 pick Beast, they know that Enigma is not in the lane.
So the power of second pick. So not a mid lich is what you're telling me. That's not happening. The flex is not worth. Okay. Yep. Okay, good. Thanks. Fair enough. Interesting stuff. So you said after that first phase that you felt like Liquid was a little bit ahead. In terms of the way that it's changed with these next four, what are you seeing in this draft? Is there one team that you're favoring a little bit more? Is there anything you're really concerned about? I think I feel like both teams, like, they have like a concept in them. Like for example, Liquid, they run with the old classic the Enigma Tusk lane. Like Lich is like pretty balanced lane, I will say. And I think Secret is more like around team fight, you know, like protect my sniper with Primal Roar, buff him with Aura, Nick scout for me, Global Silence. If they black hole me, you know, they're all reliant on the sniper to actually be able to hit. But I think that with this Lich being picked, I'm not exactly sure who's gonna, you know, who's gonna come out victors. I mean, like Liquid drafts are like more about like if I had to already choose, like Liquid drafts are about lanes. If their lanes are good, like they might just like Secret draft, like even though Secret heroes look better against Liquid, but just because of the laning advantage, they will not be able to get their timings on Secret. So Liquid will have faster timings. The counter picks doesn't matter anymore. Interesting. Very interesting. The timings, that's what we're going to be playing for here. Well, one last round of picks coming out now, as Liquid down to 25 reserve seconds. And they're going to go for a Primal Beast. They get it in the last phase of the draft. I mean, that's pretty interesting. I don't think I've seen much of Mick Primal Beast, so I'm not sure if it's his comfort hero. So it's going to be nice to see it. Certainly someone getting to the back lines, right? That's especially a Primal Beast. He gets in there, he creates a little bit of chaos. I see that with the Chain Frost. We got some infest plays, snowballs. It's gonna be hard to keep your formation as Team Secret right now. I mean, I still feel like their heroes are good into Primal Beast. Like Beast is good, Nyx can count like Carapace, and Silencer can global in his BKB ulti. So it's not really it's just about their timings. Like they just think about their timings. Okay. And of course, if they can find that silencer, one of the big things for the key components in these drafts. Secret down to the wire here as well, as we're still looking for their hero. I think Liquid really needs to watch out for the early game timings, because I think they need to deal with this beast, and they also like can't rely on the black hole for the late game. So the mid game is like the most important timing thing. The last pick, Morphling. This has consistently been a huge hero for this entire tournament. Is it enough? Right now, what do you guys think? Team Secret or Team Liquid? Which one are you two favoring? I will always go with Secret, even if their draft looks worse. Even though their draft looks good, but I will always go with Secret. I want the one who I want to win. I will always cheer. I will always go for Liquid, of course, but I feel like this this draft they have is very comfort, but it's make a Primal Beast I haven't seen before, and it's on Secret draft is very scary to play into if he gets to the late game. Wow. We do have ourselves now another round here as we are getting into this lower bracket finals. We've heard from the pros, now we got to hear from the coach as we're going to head on over to Sir Action Slacks with the interview. Ladies and gentlemen, put your hands together for Blitz from Team Liquid. Blitz, another game with them picking Sniper against you. I know you guys lost to Sniper a few times, but everyone seems to think this is your weakness here. Have you guys fixed this? I mean, you did survive Aster after all. No, it's pretty broken against us. We just kind of hope our best, you know, don't pick it, but, you know, I hope Tundra also just keeps first phasing it. It'd be pretty fun. Last pick Primal Beast, the crowd was gasping out there. Very unexpected to come that late in the draft. Any particular reason why you guys did it so late? Yeah, I mean, it takes a little bit to recognize the situations where the hero's going to be good. Somebody suggested it. It sounded pretty nice. And yeah, I mean, Mickey seemed like he really wanted to play it. It's a fun main stage hero, too. You know, we're also here to entertain and stuff like that. Rezel told me before, let's just have good games. All right. Exciting. Absolutely. And any words out there to silencer counterpickers for first pick Enigma out there watching right now? Do you feel like that's a dirty tactic, or is that completely fine? I think we're like 6-0 against Silencer with Enigma in this tournament. No, that's not trash talk. Oh man!
It's just math. It's just math. Well, you know, math can never be toxic, and I'm 100% sure that this will be one heck of a game. So let's shoot it over to our casters. Oh my goodness. Sir Action Slacks always there to let us know that math is not toxic, but what is toxic is his pub play. As Trent, we get ready to go into this lower bracket finals, Liquid versus Secret. We're here, it was last chance qualifier teams, and they made it the whole freaking day. How's it going? Another last chance qualifier. It's the same thing, right? It's all the lower bracket final really is. It's your last chance to get there, to the grands, to fight them once again. It's true, definitely. As we already paused in this game, we talked to the pros. You know, we had the wonderful Taiga ATF on. They seemed, even though they weren't willing to fully say it, even though they were incredibly biased for the teams they wanted to win. Exactly. Of course, is the sort of background there. Chrysalis, the former teammate of ATF, and then all of Liquid, pretty much, the former teammates of Taiga. But they are going to be having to watch on from the sidelines here as we get into this game. Matumba Man playing on the lifesteal. Alrighty, ladies and gentlemen, we are back. Grand finals are here. Well, at least lower bracket finals aa chuke hain. This is Super Johnny once again, joined by Krat, Nasir, and Fixes. Pehla lower bracket final, Team Secret versus Team Liquid. Krat, you first. क्या आप ये ग्रैंड फाइनल्स में देखना चाहते थे बाकी की दुनिया की तरह या आप खुश हैं अभी? ये लोअर ब्रैकेट फाइनल ठीक लग रहा है, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद द टुंद्रा विन जो कल हुआ है। टुंद्रा ने जो किया है सीक्रेट के साथ, तो सीक्रेट को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा है। बट यस, हमारे साथ इंडियन जेनकिंस भी हैं, वो बताएंगे गेम के बारे में आगे। देखिए, मुझे मिड लेन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि होगा क्या, क्योंकि मिड लेन पे आई एम एंटिसिपेटिंग द प्राइमल अगेंस्ट अ स्नाइपर। तो किस तरीके से आएंगे, ठीक है, या फिर मैं अपना 3500 में मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। बट क्रिस्टलिस ने डिसाइड किया नहीं, मैं बॉट जाऊंगा, तो शायद ये मॉर्फ वाला मिड होगा, ठीक है। क्रिस्टलिस डिसाइड करेंगे मैं बॉट जाऊंगा, इसका मतलब वो सेफ लेन कर रहे हैं, और वो हमेशा सेफ लेन ही करते हैं। मिड कौन करता है? निशा। तो निशा ने कौन सा खेल लिया? मॉर्फ, और उनका होगा लेन। लीजिए आप ये देखिए, थैंक यू। तो अब ये लेन कैसा चलेगा देखना चाहता हूँ, क्योंकि मिके बहुत कम लेन्स आ रहे हैं अपने। आज लिया है प्राइमल, और प्राइमल पे हमने बहुत कम सक्सेसफुल मिड प्लेयर्स देखे। कल हमने देखा था बहुत ही बेहतरीन खेला था 9 ने, बट आज देखना पड़ेगा कि मिके कैसे खेलते हैं। प्राइमल 9 अपनी प्राइमल वाली गेम हार गए जी, बट फिर भी अच्छा है तो खेला था। स्टार्टिंग भाई काम तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं देखिए, दर्शकों से मैं पहले ही आज क्षमा चाहूंगा, हम थोड़ा सा लेट आए। हाथापाई शुरू हो गई थी नासिर और फिक्सेस के बीच में थोड़ी सी। हाँ। नासिर कौन जीता? पता नहीं है। नासिर जैसे वेलकम टू द पैनल। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। आपके लिए क्या मंगाया आज? चिकन बटर मसाला, रोटी वोटी तोड़े? ये तो आपकी कमजोरी पे हाथ मारा सीधा। फिक्सेस को यहाँ से बढ़ा दो, ठीक है। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने पूरे 5-6 दिन निकाले हमारे साथ। इंडियन जेनकिंस को ऐसे नहीं कर सकते। पर्सनालिटी होनी चाहिए, स्वैगर होना चाहिए। आपकी भी सेम लगती है मुझे। आपको थोड़ा ना ऐसे, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, आपको थाईलैंड वाइलैंड लेके चलते हैं, वहीं पे है सब कुछ वहीं पे है। But yes, the game is fine. Tusk versus Puppy. Just because Puppy के पास है Wisdom of Glaive, so it's better not to fight, because every time Wisdom of Glaive connect होगा, एक attribute आपका int का चला जाएगा. Although permanently नहीं, temporary. Zack is playing next, जो कि famous है. Insania is playing Lish. And Chinese region, they're out. Yes. Chinese का तो अभी कोई tweet, Johnny was telling me some tweet कि, you know, you played so many teams to play teams against US. तंद्रा ने ये कल ट्वीट किया था कि इतनी मेहनत करके ग्रैंड फाइनल तक पहुंचे TI के जस्ट टू प्ले अगेंस्ट US टीम्स। बेसिकली उनको तो वो हराते ही रहते हैं, तो दे डोंट वरी अबाउट इट टू अपैरेंटली। बट तंद्रा ने ज्यादा BO5 नहीं खेले हैं, और इन दोनों टीम्स ने अच्छे खासे खेले हैं। ये दोनों टीम्स जीत चुके हैं, मतलब दोनों टीम। आई डोंट नो कि फिक्सेस की बातों में कितना लॉजिक होता है, बट फिक्सेस की किस्मत कुछ तो गेम स्ट्रांग है। यू नो, ही गोज आउटसाइड द बॉक्स। मैं करता हूं डीप
एनालिसिस, समझ रहे हो? जहाँ पे आप अपने सीमाएं तक पहुँच जाते हो, वर्ड डालना था मैं वो आप करते हो। उत्तरांचल तक पहुँच जाता हूँ, समझ रहे हो? आप ब्रह्मांड तक पहुँच जाते हो। रणबीर कपूर आप ब्रह्मांड पे आग से खेलते हो आप। फिक्सेस आपका बटन क्या है? आपका बटन तोड़ दूंगा मैं किसी दिन। बट वो देखिए यहाँ पे आई थिंक पॉपी के ऊपर या बस हरास कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक नहीं सो क्लोज। बट पपी ने अपना पूरा माना बर्न कर लिया ग्लेव्स मार के। द गुड पार्ट इज कि मेरे ख्याल से किसी ने तो रिको बेसिलिस ले रखी है जिसकी वजह से माना रीजन धीरे-धीरे होगा बट हो जाएगा। आई थिंक इट्स एनिग्मा लिक्विड के जाए है बट दिस इज अ परफेक्ट टाइम। अब साइलेंसर को शायद थोड़ा पैसे होने की जरूरत है एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स द रूट टू कलेक्ट दैट बाउंटी रूट। अब ये स्नाइपर कैसे खेलेगा? हाई स्टार्टिंग है। It's over for this Crystallis. I'm sorry, brother. You have to. You know, he will bring a lot of damage because even Alons भी बहुत ज़्यादा damage दे रहे हैं। अरे फेरी बचा दिया। Fairy fire pop करके आए हैं और Puppy will be coming from the jungle to give cover. Alrighty, Krat, आपने अपना ओपिनियन दे दिया ड्राफ्ट के ऊपर। मैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है। नासिर, what do you feel? Liquid और सीक्रेट ही बोलेंगे। सीक्रेट देखो क्या यहाँ पे दो ऐसे हीरोज हैं, साइलेंसर और निक्स असैसिन, जिस पे सीक्रेट का विन रेट 100% है रहा है टीआई में। और कल उन्होंने सेकेंड गेम टंड्रा के अगेंस्ट जो खेला था जायक ने, खासकर निक्स असैसिन से, इट वाज टू गॉड लाइक, सो आई एम गोइंग विद दैट। फिक्सेस, योर ओपिनियन? देखिए अभी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आई रियली वांट टू सी पपी का साइलेंसर कैसे चलता है। बट फिलहाल के लिए फर्स्ट ब्लड यस, इसी की तो दरकार थी यहाँ पे मिके को। एंड ये जो प्रेशर प्राइमल रोड से हमें हमेशा, प्राइमल बीच से हमेशा चाहिए जी। अगर ये बरकरार रख पाते हैं तो अच्छी बात है। बट फिलहाल के लिए दे वांट अ लिटिल बिट मोर मे बी। बट हाउ डू वी सी दिस? यहाँ हमें हमारे नासिर जी से पूछना पड़ेगा, ये मीशा का मॉर्फलिंग, हाउ डू यू सी हिम ले प्रोग्रेसिंग थ्रू मिड गेम? डिपेंड्स, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो स्टार्टिंग में अच्छे टीम फाइट्स वगैरह निकाल लेते हैं देन आई गेस ही विल बी जस्ट गोइंग ग्लास कैनन बिल्ड। यार डोंट थिंक ये लैनम बिल्ड है, लैनम ड्राफ्ट है, ग्रीडी है थोड़ा सा। हाँ ग्रीडी है, यू हैव टू फोर्स चाहिए, मॉर्फ को चाहिए, बट अगर आ गए तो फिर तो मतलब मेरे हिसाब से लिक्विड का लिक्विड अलग, सब अलग ही हो जाएगा। हाँ जी हाँ, गैस कर। एंड दे हैव वेरी गुड काउंटर्स फॉर ब्लैक होल आल्सो। यू हैव साइलेंस and you have Nyx Assassin, Spike Carapace. वो अगर जैक को ब्लैक होल में लिया जाए और टाइमली स्पाइक कैरेपेस भी ऑन हो जाए then why not? बट जो बीस्ट मास्टर है उनका रोल भी काफी है, बट यहाँ पे मिकी चार्ज करने की कोशिश करेंगे। वो देखिए स्पाइक कैरेपेस मारकर आगे जाना चाहते थे, मे बी सो दैट स्टन हो जाते, चेज करने की कोशिश। डबल डैमेज रूम है मिकी इस वक्त। जो निशा है अगर कोई भी आया देन उसका खत्म हो जाएगा बिकॉज वेव फॉर्म 3 लेवल का है। 3 लेवल का वेव फॉर्म कम से कम 200 से ज्यादा डैमेज देगा अगर फिजिकल अटैक की बात करें। एंड आई गेस प्राइमल इज डेड। ओह माय गॉड, नाइस जो आइस बॉल की गेम है ना, नाइस सेव। आइस बॉल के अंदर टाइमली उनको इंक्लूड करा और वो वेव फॉर्म से बच गए। बट इसका तो ये तो कंफर्म हो गया कि निशा का दबदबा है मिड पर। मिकी को उन्होंने थोड़ा सा आउटलेन कर रखा है एंड आइडियली भी क्राट ये लेन ऐसी प्ले आउट होती है। बट एक पॉइंट है, आई थिंक जो बात होती है मिड गेम पे, मुझे लिक्विड का ड्राफ्ट बहुत स्ट्रांग लग रहा है बिकॉज मार्टू भी अपने कंफर्ट लाइफ स्टीलर पे हैं। एंड आप देखिए ना कितने वो जो मिनी कॉम्बो होता है कि टस्क के साथ आप इन्फेस्ट करके चले जाओ, उनको स्नोबॉल में किसी और को ले लेंगे, प्राइमल बीस्ट वहाँ पे आप अपना यू नो ट्रैम्पल पुलवराइज यूज कर रहे हैं तो दे कैन इजीली स्नाइप आउट प्लेयर्स। बट अभी के लिए ही इज गॉन इन, थोड़ा डाइव किया है डीप, बट जैक यहाँ पे बचाने की कोशिश। पपी का भी सपोर्ट आ चुका है यहाँ पे और उनके मुंह के सामने टीपी करने का प्रयास और रिपेल का इस्तेमाल। और जी हाँ, टीपी तो एटलीस्ट कैंसिल कर दिया बट ही स्टिल नो डैमेज। एडेप्टिव स्ट्राइक नॉर्मल वाला डैमेज देती है, स्ट्रेंथ वाला स्टन करती है। स्ट्रेंथ वाला स्टन करती है, नॉर्मल वाला नहीं करती स्टन। जो एजिलिटी पे करते हैं वो नहीं होता। बट यहाँ पे मिके का मतलब बॉक्सी का 1 मिनट वेस्ट होगा, उनकी टीपी कैंसिल हुई है, उनको बेस पैदल जाके रिफ्रेश होना पड़ेगा, फिर वापस चलते हुए ही आना पड़ेगा। ये देखिए जाई ने कितना परेशानियां खड़ी कर रखी है जाई। एंड आई गेस जाई शुड बी डेड। ये ओवर एक्सटेंशन थी।
हाँ। मतलब एवरीथिंग वाज नाइस अंटिल अनलेस जैक का टीपी नहीं आता। जैक का टीपी आने की वजह से चीजें पूरी पलट गई। एक के बदले जब दो आप पे लड़ेंगे 1v2 की सिचुएशन जहाँ पे दो लोगों को एडवांटेज है। लाइफ स्टीलर वर्सेस नाइट यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है जो बीस मास्टर खेल रहे हैं अच्छा कॉम्बैट। अब हम जस्ट एक्साइटेड कि जब ये रोर आएगा ना ब्लिंक रोर, आई थिंक इट शुड बी ऑन आइदर प्राइमल और एनिग्मा को लड़ा दो। एनिग्मा मोस्ट प्रोबब्ली एनिग्मा को करेंगे बिकॉज़ वो इजी टू एलिमिनेट है एंड अगर चांस मिला देन आई गेस ही विल इवन गो फॉर लाइफ स्टीलर। ये देखिए पप्पी को फ्री एंड he was using shard to be on that high on ground the high ground हाँ but it was a nice try प्ले करने का सोचा बट हुआ नहीं। आई थिंक आई लाइक दिस फ्रॉम टीम सीक्रेट की जहाँ पे यू नो देयर ड्राफ्ट थोड़ा फ्लरिश करती है लेट गेम के तरफ, वो मौका नहीं दे रहे हैं। अर्ली गेम पे ही जितना यहाँ पे शट डाउन कर सकते हैं टीम लिक्विड के प्लेयर्स को कर रहे हैं, बिकॉज आपको ही पता है जब तक हम लोग वो 15-20 मिनट का मार्कर हिट करेंगे टस्क विल बी ऑल ओवर द प्लेस, प्राइमल बीस्ट भी हर जगह बैठ के गैम्प करेंगे। एंड हमने देखा है मार्टू को भी अर्ली ऑन पार्टिसिपेट करते हुए गैंग्स के अंदर, तो वो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे छीनने की कोशिश करी जा रही है टीम सीक्रेट के द्वारा। एंड अब बेचारे इंसेनिया मौजूद तो हैं मिड लेन पे, डिनाई करने का कोशिश बट नहीं हो पाया। मातू के पास जैसा एक बार ऑमलेट आएगा आई गेस वो रोम करना शुरू कर देंगे, या तो वो प्राइमल में इन्वेस्ट करेंगे या तो टस्कर में, एंड इट विल बी वेरी इजी किल्स फॉर देम। प्राइमल के साथ तो श्योर किल रहेगा, पल्वराइज के साथ आई गेस एक बार अगर नाइक्स को मिल गया पल्वराइज में हिट करने का चांस वो तो एक हीरो को खत्म ही कर देंगे। आई थिंक हम सब यही सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये होंगे स्नाइपर विल बी द हॉट शॉट बट यस निशा को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गैंग। क्रिस्टलेसिस मुश्किल में आ चुके हैं, ट्राइंग टू रन अवे। टीम की तरफ से टीपी आ रहा है बट क्या क्रिस्टलेसिस ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? पपी इज हियर बट यू बेटर हैव फेयर। एक और पिक यहाँ पे मिलता हुआ टीम लिक्विड को, ट्रेड इवन हो चुका है। क्राट कल से हम एक चीज देख रहे हैं, हाँ जी, टीम्स की नेटवर्थ का जो एडवांटेज रहता है वो एक ही बंदा लेके घूम रहा होता है। उससे पहले जितने हमने मेन स्टेज के बाकी के सारे मैचेस कवर करे थे, देयर वर 2-3 की प्लेयर्स पोजीशन 1 पोजीशन 2 जो रहते थे आपके, वो अच्छी फार्मिंग कर रहे होते थे, 2 से 3 प्लेयर होते थे एडवांटेज में, तब जाके टीम के पास मतलब थोड़ा अच्छा खासा एडवांटेज रहता है। दे वो टीम रोल इन द टीम फाइट्स। यहाँ पे एक प्लेयर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इज दैट जस्ट सिचुएशनल या फिर कुछ अलग चल रहा है इस बार? ये दोनों आइडेंटिकल चीजें कर रहे हैं बट नासिर लाइक नोटिस द मिनी मैप रेजोल्यूशन प्लेइंग टियर 2, वहाँ पर वो पुश कर रहे हैं। उनके जस्ट नीचे एक प्लेयर है जो जंगल में, और उनके जस्ट नीचे मिड पे एक प्लेयर है। उन्होंने लिटरली एक लाइन बना रखी है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुई फटाक से एक दूसरे को सपोर्ट देने आएंगे। बट रेज के अंदर उन्होंने रोर कनेक्ट करा एंड एवरीबॉडी इज ऑन इट फॉर उसके साथ स्टन। आई थिंक मार्टू का बचना यहाँ पे नॉट पॉसिबल बट ये लास्ट मोमेंट इन्फेस्ट, दैट लास्ट मोमेंट इन्फेस्ट सेव सम टाइम। क्या यहाँ पर अभी भी होगा? प्राइमल बीच के पीछे से चार्ज आया एंड दिस इज द डिजास्टर फॉर टीम सीक्रेट। अब साइलेंसर अकेले भागने की कोशिश करे बट पल्वराइज कर उनको भी रोक दिया और वो पट किया। मिकी on a double kill, one more attack and a walrus punch and मिकी ने फाइनल फटका देके ट्रिपल किल। मार्टू टैंक लाइक एनीथिंग और उन्होंने सब कुछ दुनिया जहान की सारी स्किल्स को टैंक किया और एक अच्छा बैश वहां से आया प्राइमल की तरफ से एंड चेंज एवरीथिंग। कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ बेसिकली मार्टू मैन वहां पे बोलते हुए। फ्री फार्म मार्टू के लिए मतलब दिस इज अ गॉड लाइक प्ले। आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर्स जो हमने देखा है मार्टू को इसके पहले भी पुल ऑफ करते हुए, स्पेशली इन दैट डू और डाई मैच अगेंस्ट थंडर मिकी को बचाता। यू नो ये बात की पुष्टि करी थी कि ये मतलब वो मैच जीतने की जो खुशी थी वो टीआई से ज्यादा थी। बिल्कुल। एंड यही खासियत है जब आपने कंफर्ट पिक पे खेलते हैं मार्टू ऑन द लाइफ स्टीलर, ही इज सो फ्रिकिंग गुड। कंप्लीटली एग्री विद दैट। इवन ही सेड दैट आई वाज सो अनॉयड कि मैं हर बार गैंग में मर रहा था बिकॉज़ सामने कोई हार्ड कैरी नहीं था, पज था और वो लाइफ स्टीलर होके मर रहे थे। कहते हैं जब भी मैं देखता हूँ गैंग में मैं अकेला होता, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता था किसी पे। अभी के लिए द स्कोर लाइन इज 6-2। इस छोटे से गैंग में जहाँ पे सीक्रेट couldn't confirm that Matu's kill, उसके वजह से एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है। आई थिंक इंसेनिया कैन बी इन डेंजर, ये ही इज डेड फॉर श्योर। माना बर्न भी आएगा एंड यस डैमेज ओवर टाइम जो आपका कर से पड़ेगा उसके वजह से। बट स्ट्रेट का ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? फर्क नहीं पड़ता बट बट हाँ मतलब एज साइलेंसर इज पोजीशन 5, वो पावर थ्रेड्स और सिल्वर एक्सो बनाने से रहा, बट स्टिल इन हीरोज जो होते हैं जैसे साइलेंसर ये आपका लिच हो गया, इसको फर्क जरूर पड़ेगा बट इट वाज डिजास्टर। आप देखिए अरे हमें काटते हो, उन्हें तो मत काटो। देखिए
काटते तो आपकी जिंदगी है और वो है कि अपनी लाइफ की बात कीजिए फिक्स के साथ, हमारी तो बहुत बढ़िया थी। फिक्सिस की तो बहुत ऐसी अल्फा लाइफ है मैच है। आज कोई हीरो पानी के रेफरेंस वाला जो आप फिक्सिस को बोल। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स थोड़ा ज्यादा अंदर जाते हुए बट यहाँ पे देखना पड़ेगा। मॉर्फ डैमेज तो दे रहे हैं बट लिच का आर्मर भी मौजूद है एंड यहाँ पे निशा गेटिंग द बेटर आउट ऑफ द प्यारेटस और यहाँ पे नीके काफी डीप आ गए थे, कोशिश थी कि टीपी आउट कर जाए और सक्सेसफुली कर भी लिया। बट दे लॉस्ट देयर कोर 3 मिस किया उन्होंने को अपना पोजीशन 4 खोया। बट ये सीक्रेट के लिए एक अच्छा गैंग था, सीक्रेट को गेम संभालने के लिए एक मौका मिला, गेम के अंदर वापस आने के लिए एक मौका मिला है। पर नेटवर्क का इतना फर्क नहीं है, बट जिस तरीके से गेम का मोमेंटम जा रहा है और मॉर्फ का जो मैं देख सकता हूँ कि एक मोबिलिटी घूम रही है नासिर मियां, लाइक वो वेव फॉर्म मार के उन्होंने जिस तरीके से टक को कंफर्म करा एंड ही वाज द फर्स्ट वन जो एनिग्मा को भी मारा था जाकर। सो निशा विल बी अ ग्रेट डेंजर। निशा इज गोइंग टू बी द हॉट स्पॉट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। निशा का मेरे को मॉफ बहुत सही लगता है, मतलब द वे ही प्लेस इट एंड वो अपना जो बिल्ड बनाते हैं मॉफ के साथ इज वन ऑफ द डेडलीस्ट मॉफ एवर दैट आई हैव एवर सीन। एंड अभी उनका ही डिसेंट फार्म चल रहा है एंड आई गेस मिड गेम में अगर उनका टेम्पो चल गया देन ही विल बी द वन डिक्टेटिंग कि गेम कौन से कैसे चलना है, कैसे चलना है। Okay then. There you go. फिर से एक और इनिशिएशन एंड इसी की बात कर रहा था। I mean Liquid does have this potential कि जाके स्नाइप कर सकते हैं और यहाँ पे कोशिश की गई थी उनको ही मतलब अपने वॉल के अंदर रख दिया। They will die. But They will फिलहाल rot. के लिए यहाँ पे देखिए चेन फ्रॉस्ट आ चुका है टीम लिक्विड के तरफ से, एक ऑलरेडी किल हो चुके हैं, दूसरे भी जा चुके हैं, तीसरे के काफी करीब। बट निशा देखिए सबके बीचों बीच स्टैंड कर रहे थे बट नहीं, उनके स्टन को कैंसिल कर दिया गया एंड नाउ ऑन द चेस एंड देयर यू गो। टीम लिक्विड 4 प्लेयर्स यहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं, अकेले बेचारे लाइफ स्टीलर बचे तो थे एंड यहाँ पे वो भी किल्स निकाल रहे हैं। अब निशा के साथ कोशिश है फाइट करने की और निशा ने बोल दिया चलिए हटिए यहाँ से निकलिए, उनको मारना तो मुश्किल है। जी हाँ, आप एक बार अडेप्टिव स्ट्राइक पे स्विच कर जाते हो और देखिए यहाँ पे टीम सीक्रेट के एक और सपोर्ट भी आई थिंक टीपी कर रहे हैं बट कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे माटू को यहाँ से निकलने के लिए। तो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेड था टीम लिक्विड के लिए, डाइव कर रहे हैं और यहाँ पे टीम सीक्रेट उनके स्टैट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करके रिएक्ट कर रही है। Did resolution buyback? पता नहीं, let's see. Cause the very first person to go down from the secret side is resolution, cause उनको चार्ज पड़ा था, आइस बॉल पड़ा, वॉलरस पंच पड़ा, पल्वराइज बहुत कुछ खाया उन्होंने। उसके बाद इट वाज ऑल फ्री शूट फॉर निशा एंड पपी। पपी ने भी काफ़ी देर तक अपने स्किल्स यूज़ करे, ग्लेव्स मारकर उन्होंने हैरास किया एंड पास लास्ट गेम में ग्लोबल नहीं था, वरना आई गेस लाइफ स्टीलर की भी डेथ हो सकती थी वहाँ पे अगर उनके पास ग्लोबल रहे। निशा की आइटम प्रोग्रेशन क्या होंगी मियां? वो अगली मांटा वगैरह बनेगा? मेरे को लग रहा है he'll go for ethereal blade। काफी टाइम हो गया भी देखे हुए। ओ देखिए vanished, बहुत ही बेहतरीन स्नाइप। You wanna see a magic? I will make lich disappear and they did. मांटा स्काडी देखो बहुत सारे आइटम्स इन्होंने क्यों कर रखे हैं, हरिकेन पाइक, मांटा एंड बटरफ्लाई। आई थिंक इस गेम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टीम सीक्रेट ये जो अर्ली गेम जो प्रेशर था जो हमने बात करी थी टीम लिक्विड के अगेंस्ट, दे आर होल्डिंग ऑन टू इट वेरी वेल और बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट भी कर रहे हैं एंड दिस इज गोना गिव सो मच टाइम फॉर क्रिस्टलिस टू गेट हिज फार्म ऑनलाइन, क्योंकि थोड़े से फाइट से दूर रह रहे हैं। ही हैज टू रिकवर सम फार्म एंड अभी उनको वो स्पेस मिल चुका है कि थोड़े से फार्म रिकवर कर ले। और कल हमने देखा क्रिस्टलिस का बहुत ही बेहतरीन प्ले फर्स्ट गेम के अंदर एमके के साथ एंड होल्ड करके रखा था गेम को काफ़ी देर तक। तो आज देखते हैं स्नाइपर के साथ क्या जलवे दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए मीके जा रहे फार्म करने के लिए। एट दिस पॉइंट आई गेस टीम सीक्रेट टीम लिक्विड्स प्लेयर्स नीड्स तो अर्ली बीकेबीज थोड़े फाइट में जाके थोड़ा सस्टेनेबिलिटी इनको मिल सके, बिकॉज एट अ पॉइंट इट्स स्टार्टिंग टू गेट अनोइंग स्पेशली फॉर एनिग्मा। जब आप अपना ब्लैक होल लगा रहे हो यू नीड टू हैव दैट बीकेबी टू एटलीस्ट पुल दैट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे अगर ब्लैक होल पे बीकेबी रहता उस टाइम पे देन मे बी मिशा कुड हैव बीन टेकन डाउन। बट यस स्नाइपर का एक इंपॉर्टेंट आइटम हरिकेन पाइक खत्म होता हुआ एंड आई थिंक नेक्स्ट आई एम प्रीटी श्योर इज गोइंग फॉर अ बीकेबी। Yeah. But
स्कोर लाइन लेवल हो चुकी है और व्हाट आई कैन सी दैट मिकी ने द नेक्स्ट आइटम ही गॉट आफ्टर द फेस बोर्ड इज BKB। ओके ये कहते ना अर्ली गेम से ही आप बिल्कुल भी चांसेस नहीं लेना चाहते, बट माटू का भी डेसो आ चुका है 17-18 मिनट के अंदर। अगर फेस बूट आमलेट एंड डेसो आता है देन इनके फटके ज़रूर सपोर्ट्स को गलने मतलब फटके लगने वाले हैं, स्पेशली साइलेंसर को। साइलेंसर के पास कुछ एस्केप नहीं होता अंटिल एज आप 4 स्टार या ग्लिमर केप बना के जाते हो। माटू का डैमेज विल बी टू मच, बट ये देखिए इन्होंने टस्क के अंदर करा इन्फेस्ट। टस्क के अंदर इन्फेस्ट मतलब आइस बॉल, सीधा शार्ट और वॉलरस पंच के साथ दिस लाइफ स्टीलर विल बी डीलिंग लॉट ऑफ डैमेज। यहाँ पे उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया, निशा ने वजह से उनका स्मोक कैंसिल हुआ था, बट ही वांटेड टू गो ऑन पप्पी। पप्पी के पास अभी भी डिस्टेंस है, पर पप्पी का यहाँ पे बचना इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने इंस्टेंटली बायबैक करा, यहाँ पर एक और प्लेयर जैक को भी मार दिया और अब बॉक्सी को ट्रेड करके फायदा उठा रहे हैं। बट यहाँ पर क्या मॉर्फ को कोई और मार पाएगा? मांटा खोलकर उन्होंने इल्यूजन चेंज करी, बट आई थिंक जा इज वेटिंग फॉर द मोमेंट, बट ही डिडंट गेट दैट मोमेंट टू हिट दैट ब्लैक होल और अडैप्टर स्ट्राइक सिक्योरिंग द डील। यहाँ पे बायबैक हुए हैं 2 साइलेंसर एंड नेक्स्ट असैसिन का, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लाइफ स्टीलर तो नहीं टस्क एंड एनिग्मा को मारा है। अब उनके पास 2 प्लेयर नहीं है, इस 20 सेकंड के एडवांटेज लेने की कोशिश के लिए वो रोशान लेने जा सकते हैं। अगर रोशान लेते हैं और निशा या स्नाइपर को रोशान मिल जाता है देन ये फायदा होगा। और सारे गैंग्स के अंदर मतलब खुदा का एक वो है आशीर्वाद लगा लो कि स्नाइपर को कोई परेशान नहीं कर रहा है। वो स्नाइपर और पपी की हालत सेम है, बोथ डोंट हैव एनी एस्केप स्किल्स एंड निशा ने यहाँ पे रोशान लिया। मिया डोंट यू थिंक स्नाइपर को लेना चाहिए था? नहीं, मिशा ने सही लिया बिकॉज़ ही इज द वन हु इज द वन। हां, हमेशा अंदर घुस रहे हैं, सो आई गेस नाउ वी कैन इवन प्ले वेरी फियरलेस। अंदर जाके उनको ये करने की जरूरत नहीं रहेगी कि इफ आई डाई आई कैन अगेन रिवाइव एंड आई कैन गो एट विद माय। एंड आप देख रहे होगे लास्ट गेम में क्रिस्टलिस वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द टायर 1 एंड हिटिंग, उनके करीब कोई जा भी नहीं पाया था। एंड निशा ने बहुत अच्छे शेप शिफ्ट से प्राइमल को लिया था एंड उन्होंने प्राइमल के स्पेल्स यूज करके एनिग्मा को पकड़ा था। मियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एंजॉय कर रहे हो टैलेंट बनकर। क्या मैं समझ सकता हूँ कि आप बस एड अप हो रहे हो लाइनअप में? बहुत जल्द मियां आ जाओ मियां, व्हाई नॉट? यू हैव इनक्रेडिबल नॉलेज। नहीं, नॉलेज प्ले एंड प्ले बाय प्ले में फर्क होता है। आई कैन कम इन एज एनालिस्ट। ओह अच्छा, अभी नॉटविन वहाँ नहीं है कि हम एनालिस्ट हायर करें अलग से। बट फिक्सेस को लाए हैं हम। क्रैक क्या बात कर रहे हैं? एज अ प्रो एनालिस्ट है जेंकिंस ऑफ इंडियन डोटा। जेंकिंस ऑफ इंडियन डोटा आप और मैं क्या है? क्या हम शीवर बन जाए, बट ये जेंकिन है, ये लड़का हमारा जेंकिन है। जंकिन डंकिन डोनट्स, ये देखो भूख तो है, भूख तो लगी है आपको। नहीं, डंकिन डोनट्स से वो कैंडी क्या मंगाते थे? वो हॉट चॉकलेट। आज हॉट चॉकलेट किसी को पीना है? कैंडी से पूछना कि ये जो शौक था उनको किसने दिया था। क्या ये आपका काम था? बट फिलहाल के लिए एक फाइट की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। मैनिफेस्ट उसको ही डाल दिया तो ये तो मतलब अभी आई थिंक टीम सीक्रेट का ही है गेम। मुझे नहीं लगता टीम सीक्रेट का जो अर्ली फेज था जहाँ पे लिक्विड कर सकती थी कुछ, बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया। इट्स जस्ट अबाउट कि एक पेनफुल डेथ होने वाला है, बट द ओनली सेविंग ग्रेस जब तक मातू है, एक अच्छा गैंग फॉर लिक्विड कैन चेंज बिकॉज उनके पास वो बर्स्ट पोटेंशियल अभी भी मैं कहूँगा है, बट दे हैव टू पिक द राइट हीरोज। दे हैव बीन डीलिंग विद मीशा, उनकी मतलब रातों की नींद जा चुकी है। अब तक तो क्रिस्टलिस के बारे में सोचे तक नहीं है क्रैट। ये बात तो पॉइंट है कि साइलेंसर को बिल्कुल भी अभी तक हीट नहीं मिली है। सारा जो वो दमदार है ना वो निशा ने संभाल रखा है, अब जैसे होगा। बट यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि बॉक्सी के अंदर लाइफ स्टीलर ने इन्वेस्ट कर रखा है और रेजोल्यूशन इज ट्राइंग टू चेंज। वहाँ पे 4 टायर के और 5वें का भी यहाँ पर टीपी बैकअप आ चुका है। जैसे 5 मैन गैंग होने के चांसेस हैं, बट इंस्टेंटली स्प्लिट अप होंगे। मिकी एंड माटोमा वेंट टू द जंगल फॉर द रिस्पेक्टिव क्रीप्स। और अब ये देखिए लिक्विड अभी सही में बहुत पीछे है, बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे मिड के टावर से प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है और टॉप और बॉटम लेन के दोनों टीयर 2 वो खो चुके हैं। और वहीं पे अगर आप बात करेंगे टॉप लेन जो हमारे टीम सीक्रेट का ऑफ लेन है, वो दोनों टावर जिंदा है। मिड का टावर टीयर 2 है और बॉटम का टीयर 2 है, तो टावर की रेस में कम से कम 2 से 3 टावर पीछे ऑलरेडी लिक्विड चल रही है। अच्छी बात यह है कि जस्ट 3 टावर पीछे होने के बाद भी नेटवर्क का ज़्यादा फर्क नहीं है।
अभी भी माटू को थ्रेट माना जा सकता है। अगर एक टाइम भी डिसेबल आता है फर्क पड़ेगा, बट मिकी ने यहाँ पर पलवरा यूज करा, बट रोर मारने के बाद आई डोंट थिंक ही विल बी गेटिंग एनी चांस टू बी अलाइव अगेन। वो एक सेकंड भी दिलता उससे पहले। जैक द नेक्स्ट असैसिन, मॉर्फलिंग, एवरीवन रेजोल्यूशन मेड श्योर किए मिकी को इंस्टेंट टेक डाउन करके गेम से बाहर निकाल दिया जाए। अभी देखिए, अभी लिक्विड आपको लॉस सा गेम खेलिए, खोया खोया सा खेल रही है। कोई ऑब्जेक्टिव सा नहीं चल रहा है। आप देखो नॉर्मल क्रीप से पल्वराइज चल रहे हैं, माटू पे फार्म है, बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है। द नेक्स्ट आइटम इज गोइंग फॉर इस बैशर, बिकॉज अगर इस मॉर्फ को मारना है देन बैश चाहिए, बिकॉज अगर इसने एक बार डी दबा दिया और अगर एजिलिटी से स्ट्रेंथ में चला गया देन जो काम 2 सेकंड में हो सकता था, क्योंकि 1100 HP मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट वो जब वो 3600-3800 HP हो जाती है बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी मुश्किल तो होता है, बट फिलहाल सी दैट डैमेज, ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट बर्स्ट कर सकते हैं। दिस इज वेयर यू नो टीम सीक्रेट इज ट्रांजिशनिंग इनटू दैट वेरी डेडली फेज, जहाँ पे लिक्विड के पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा, बिकॉज लाइफ स्टीलर को ऑफ कोर्स ही इज कीपिंग अप विद द फार्म, बट निशा आप देखिए मॉर्फ के साथ ही इज ऑल ओवर द प्लेस। हमने मॉर्फ जब कैरी खेलते हुए देखा, हमने देखा है कि मॉर्फ वाले प्लेयर्स अपना यू नो प्यारा वक्त निकालते हैं, पूरा फार्म वार्म करते हैं, फिर आके कुटाई करते हैं, बट निशा हैज बीन देयर सिंस मिनट 5 कोई भी गैंग में, और इनका इतना ज़्यादा योगदान रह रहा है गैंग में। और आप बोलिए, देखिए शेप शिफ्ट कर रहे हैं, यू नो फॉर्म चेंज कर रहे हैं अपने, ही इज गोइंग इन, ही इज डूइंग सो मच। प्राइमल बीस्ट का यहाँ पे फॉर्म लिया था, फिर टस्क का भी फॉर्म लिया था। गैंग को इतना अच्छा अपने यू नो ग्राउंड्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसा हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलिस, अभी तक तो टीम लिक्विड ने सोचा भी नहीं है उनके अगेंस्ट करना क्या है। तो आई थिंक दिस इज लिटरली स्टॉलिंग गेम जहाँ पे लिक्विड खेल रही है। थोड़ी देर में वही आएगा कि स्नाइपर इतने फार्म हो जाएंगे, एक रोश फाइट होगा, उसके बाद पुश फॉर टियर 3 एंड एंड द गेम। जी बिल्कुल, आपने जो एनालिसिस किया है यहाँ पर फिक्सेस सर, आप बहुत अच्छा डोटा खेलते हो, और ये बात आपने जो सही पकड़ी है ना कि क्रिस्टलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गेम तो है, भूख भी लगी आपको और गेम भी है। बट निशा, लाइक जैसा हमारे एक्सपर्ट मियाँ ने बताया था कि ही विल बी प्लेइंग लिटिल फियरलेस, उन्होंने यहाँ पे किसी न किसी को तो स्पॉट करा। बॉक्सी ने टाइमली यहाँ पर टेलीपोर्ट कर अपने आप को सेफ रीजन पहुँचाने की कोशिश। अभी भी आई थिंक टावर, ऊपर का टावर तो है नहीं, इतना फर्क नहीं होगा। अदर जस्ट दे आर वेटिंग फॉर रोशान और गाड़ी होने पे उसका, हाँ दे जस्ट काइटिंग फॉर रोशान, बिकॉज उसके बाद टियर 3 जाने में एक अलग ही ऐंठ और एक अलग ही सुकून होता है, बिकॉज इफ़ यू फेल आपके पास एक बैकअप होता है। और निशा ही होंगे जो टियर 3 पे चढ़ के टावर तोड़ोगे, बाकी चारों पे सपोर्ट दे रहे होंगे। लेट्स सी कि अब जो क्रिस्टलिस है वो किस तरीके से गेम के अंदर ट्रांजिशन करना पसंद करेंगे, बिकॉज लिक्विड के अंदर अगर थोड़ा सा भी मस्तिष्क में कुछ हुआ देन वो अभी लड़ाई नहीं करना पसंद करेंगे, बिकॉज अभी फार्म के अंदर इट्स वेरी टफ टू कंपेयर दिस गाय। बट अगर इंसेनिया अगर लग रहा था कि इनको कोई कुछ कहेगा नहीं तो मुश्किल है, बट यस माटुम्बा को यहाँ पे रोल मार दिया, बट उन्होंने मिडनाइट पल्स मारकर होल्ड बैक करने की कोशिश। को ब्लैक को लग सकता है वहीं पे, बीके भी ऑन करके प्राइमल अंदर आ रहे हैं और ट्रैम्पल करते करते जा रहे थे, बट निशा को रोकना इज इम्पॉसिबल। वे फॉर्म मारी अडैप्टिव स्टाइल एंड बीके भी के अंदर ही उनको मार दिया। स्नाइपर अब थोड़ा सा फन करते हुए लिटिल शॉक्स लिक्विड स्टार्ट विद इंसेनिया, थोड़ा सा बैकअप देने आए माटू एंड एवरीवन इज इन डेंजर। अकेले माटू है जो टॉन्ट मारते हुए जा रहे हैं, बट जो ब्रेक थ्रू चाहिए था रोशान के बाद, विदाउट रोशान सीक्रेट मैनेज टू क्लिंच इट फ्रॉम लिक्विड ग्रिप। रैक्स जा चुके हैं अब यहाँ पे मिड लेन के जा रहे थे, ग्लिफ लगा दिया, थोड़ी देर के लिए डिले होंगे, बट यस जैसा फिक्सिस ने बोला ये रैक्स को जाने से अब नासिर भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, एंड दे कैन स्टिल गो ऑन, वो और लड़ाई कर सकते हैं। बहुत डिफरेंस है फार्म का। कैसे वापसी होगी लिक्विड की नहीं हो सकती, इट्स ओवर। अब आपके 24 मिनट में इफ यू आर 15 के अहेड एंड आपके पास अगेंस्ट में मॉफलिंग एंड स्नाइपर है जो दोनों भी लेट गेम के अंदर और फटते हैं, लेट गेम में और फटते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इनके पास कुछ ऑप्शन। आई थिंक अभी स्टार्टी भी आ गया होगा निशा का। निशा ने बटरफ्लाई क्यों किया था, बट ही सॉ कि सामने जो दो कोर हैं दोनों भी मीली है, तो उन्होंने बटरफ्लाई की जगह स्कार्डी बिल्ड करना शुरू कर दिया। बट आप देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए मीके का ऑन दैट प्राइमल बीस्ट और निशा का। मीके ने बीके भी चलाया और वापस कुछ नहीं किया, पीछे मुड़ के भागे और वहाँ पे स्नाइपर के भी फटके पड़ रहे थे। यू नो एक पॉइंट रहता है कि जब भी आपके गेम के अंदर एनिग्मा जिंदा रहते हैं यू स्टिल कैन पुल ऑफ अ कॉम्बो, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि स्नाइपर इतने पीछे रहते हैं, अब तो राइट क्लिक डैमेज में ही एनिग्मा खत्म हो जाएगी, स्टन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मुझे तो लगता है मतलब टीम लिक्विड को जीजी कह देना चाहिए इस समय, क्योंकि द नेक्स्ट थिंग दे विल डू इज
clearly go for the edges and यहाँ पे मतलब अल्ट्रा किल रैम्पेज जो भी करवाना है करवा दो, जीजी दे दो, बस खत्म करो ये गेम, खत्म करो ये ट्रॉमा, सेकंड गेम में जाओ और कोशिश करो ये कमबैक करने का। एंड दिस इज लोअर ब्रैकेट फाइनल जहाँ पे जो टीम जीतेगी वो फेस करेगी टुंड्रा को। इट्स द बेस्ट ऑफ 5 सीरीज। सो सीक्रेट की टैक्टिक हो सकती है टू एंड दिस गेम अर्ली ASF और जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा थकान ना हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के द्वारा। मतलब फियरलेस डोटा जिसे कहते हैं वो हमें दिखाया गया था। द ओनली पॉइंट जहाँ मुझे लगा कि हाँ लिक्विड कुछ अच्छा खेल रही वाज दैट मिड माटू फाइट, जहाँ पे टीम लिक्विड ने अच्छा खासा जीता उस गेम को। उसके बाद के जितने फाइट्स में जो टावर डाइव किए हैं, आई थिंक टीम सीक्रेट वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड स्पेशली इस मैच के मतलब अनडाउटेडली MVP तो रहेंगे ही निशा, क्योंकि उनका जो प्ले था हैज़ बीन ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। एंड नासिर मियाँ, आपको क्या लगता है, मतलब MVP मेरे हिसाब से तो निशा ही थे, आपके हिसाब से? निशा नो डाउट, नो डाउट, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था कि अगर सीक्रेट को ये गेम जीतना है then निशा हैज़ टू बी द वन दे शुड बी गोइंग फॉर। एंड जो निशा ने प्ले करके दिखाया है एंड जो उन्होंने मॉर्फलिंग से खेला है, इट्स गॉड लाइक, इट वाज गॉड लाइक डेफिनेटली। एंड मतलब लिक्विड का जो ड्राफ्ट था, जो यहाँ पे ड्राफ्ट के साथ कोशिश कर रहे थे, वो मतलब कर ही नहीं पा रहे थे टीम लिक्विड के प्लेयर्स, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एक जवाबी तौर पर मौजूद रहते थे, आ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स क्या ही कर पा रहे थे। वाज ट्राइंग टू गो आफ्टर मे बी पप्पी, जायक, बट even at a point Zayak was also getting so impactful there. So हर एक प्लेयर टीम सीक्रेट का एक अव्वल दर्जे पे खेलता हुआ, एंड आई थिंक वो जो उनके अंदर की जो आग पनप रही है, आई गेस ये जाके फटने वाला है टुंड्रा के ऊपर। जब ड्राफ्ट हुआ था और आखिरी पे एक मॉर्फ आया था, तो ऑब्वियसली ग्रीडी था। उस टाइम पे लिक्विड को अगर जीतने का प्लान था ना, देन बॉक्सी और एनिग्मा में भी सपोर्ट्स को, लिच को कुछ ना कुछ प्लान कर पहले से उनके कोर को अटैक करना चाहिए था, मे बी रेजोल्यूशन को। एवरीबडी वाज स्ट्रांग, ठीक है माटू पे फार्म था, बट माटू अगर कैरी फार्म करे सपोर्ट मारने के लिए, देन समथिंग इज रॉन्ग। आपको कोर वर्सेस कोर की फाइट में भी कुछ करना पड़ेगा। अब देखो अभी तक तो स्नाइपर तक बात ही नहीं आई, ये तो बस मॉर्फ का गेम था। स्नाइपर आते तो और कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी माटू के लिए। सो इट वॉज नॉट सो डन, कुछ खास और कर नहीं पा रहे थे। देखिए डैमेज दे पा रहे थे निशा को, बट जस्ट बिकॉज कि एक टाइम पर 5 लोग मारेंगे, देन अकेला लाइफ स्टीलर भी क्या ही कर लेगा। देखिए रेजोल्यूशन फॉर मतलब निशा वाज रनिंग ऑल ओवर इट, मतलब उन्होंने केयर भी नहीं किया पीछे वो लोग कहाँ जा रहे हैं, ही जस्ट वेंट इन और उन्होंने सारे के सारे 3 प्लेयर्स को मार दिया। देन ही केम बैक टू द पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, एंड दोनों के पास कुछ स्पेल्स या डैमेज था ही नहीं जिससे वो निशा को रोक सके। आपने बोला ना नासिर मियां कि 24 मिनट में अगर टीम के पास 15,000 की नेटवर्थ है, अब इट्स नॉट अबाउट कि 15,000 की नेटवर्थ है, इट्स नॉट कि आपके पास तो वैसे भी गोल्ड नहीं है, आप क्या करोगे उस नेटवर्थ का जो सामने वाला एडवांटेज लेके बैठा, आप तो बिल्कुल फ्लैट आउट फेल हो जाओगे। वो देखिए आइटम देखिए ना, आप अगर एक प्रोफेशनल मैच के अंदर 800 का GPM लेके चल रहे हो, XPM आपका 1000 चल रहा है ऑलमोस्ट, इट्स नॉट डन। मतलब 25 मिनट की गेम में तरीके से बोलते हैं कि 10 मिनट में आपके 100 क्रीप है, देन यू आर गॉल्डी। यहाँ पे 25 मिनट में आपने 270 क्रीप छू लिए। अगर एक आप बहुत अच्छा खेले, आप बहुत सुंदर गेम दे, 13-0 और 20,000 की नेटवर्थ है। क्रिस्टलिस अभी तक मार्केट में नहीं आए, सोचिए ये प्लेयर और कितना डैमेज दे सकता थोड़ी देर में। इट वाज ऑल अबाउट स्नाइपर किसी को टिकने तक नहीं देता। इट वाज अ डिसेंट गेम, बट सीक्रेट ने स्टार्टिंग से मारा। आपने पूरे गेम में कितने ब्लैक होल्स देखे हैं? एंड वी वर एक्सपेक्टिंग जाई टू बी द गेम चेंजर फॉर लिक्विड। हु वाज एक्सपेक्टिंग इट? इट वाज एक्सपर्ट जेंकिंस। देखिए जाई ने किया है पास में, बट इस बार मौका नहीं मिला। एंड सिंपल बात यह है कि लिक्विड के प्लेयर्स वर जस्ट ट्राइंग टू डाइव टू मच, बट अभी वक्त आ चुका है हमारे प्यारे क्लाउड एक्स के पास चलते हुए जाएंगे एंड देखेंगे व्हाट डज ही हैव टू से अबाउट दिस ब्यूटीफुल इवेंट। Hello everyone, this is Cloud X once again at the Dota2 11 at the Singapore Indoor Stadium. Today I'm going to show you what entrance and exit looks like. So everyone's got their own unique passes, just like I've got mine. On the back of it, you've got a QR code, which I'm going to cover here so you can't steal my stuff. Everyone that enters and exits needs to tap their card on one of these things. As you can see that gentleman doing it. When you do that, Valve essentially knows that you're inside the arena. And if you've linked your Steam account to your pass,
you're eligible for drops. So you could get the Treasure of the Crimson Witness just for simply being in the arena and watching the game. I'm going to show you what the press area looks like today. So yesterday you saw us going up these stairs. This is the entrance to the press box. As you can see, the panel has already begun for game 1 today. It's going to be Liquid versus Secret in an elimination match. The arena is already full. It's 11:30 in the morning over here in Singapore. And this area, so these 5 seats over here are reserved for the press. You can see Vignesh from AFK over here. Say hi, Vignesh. Up here, they've got a separate skybox set up for the press. So as long as you show your press ID, you can get inside. They've got some food and drinks. And in here, you can set up your laptops. You can see all the other outlets working. Hey, nice jacket, man. Thanks, bro. Halloween. You bet. That's the skybox. This is where most of the press folks hang out, do their work, plug in their laptops and their chargers. It's relatively quiet over here. I'm going to quickly show you what the vibe is like outside as well. So we entered from there. There's a second exit to the press box over here. Down there is the entrance to the general attendance arena. So that's where everyone else is sitting on the stands. So there's a lot of firsts that can happen with coaches in particular. And that's it. That's the inside of TI. Hope you guys have enjoyed this little backstage tour. Do tune into the live stream with Nodwin Gaming and hope you guys are having a blast. See you around. This is CloudX signing off. Work at all anymore, so I think they all add their value. So I think, yeah, 3 courses. I've never had 3 courses before, but I think for now it's working pretty well. And it's working pretty well indeed. Already guaranteed top 3. Of course, if they want to move forward, they do have to win the next game. So I hope those 3 coaches give some good speeches and have some good insight. And it's only, it's only a short period of time. So they got to choose their words carefully. Someone who does not choose his words carefully is Direction Slacks, who we're heading to right now. Someone who does not choose his words carefully is Direction Slacks, who we're heading to. That's right. That is right, Shiver. Hello, hello, hello. The crowd is hyped. Woo! Shiver, I'd have 0 plans for this crowd right now. They're just bringing, oh my God, there we go. Woo! Sir, how you enjoying the game? This is the best interview I've ever done. Listen, who are you filming? You filming me? I film you. What's your name? Hello. David, nice to meet you. Oh, yeah, you having a good time? Yeah, having a good time. All right, he's having a good time, everybody. All right, all right. You guys seem very calm. How was the game so far? Please, real interview. Yeah, it was really good. Oh, wonderful. What was your favorite part? When Morphling killed everyone. We're Morphling killed everybody! Oh, fantastic. We got Juggernaut over here. Hello, Juggernaut. Pardon me. Hello. Juggernaut, thoughts? I really hope Liquid takes game 2, man. I want a game 3. Game 3, man! Woo! And we have some hype people over here. Pardon me. Excuse me, ma'am. Where are you sitting? There, we'll make you some room. All right, please, excuse me. Coming through, make some way. There you go. Thank you so much. Enjoy the rest of your game. All right, here we go. Over here, we had some hype boys. How's the game? Good, mate. Everything's all good. Good. Boys. Who do you... Shut up! Back to you. Thank you. Enjoy. Thank you so much. Oh no! Everything was going great. Shut up. All right. Well,
Thank you for that, pulse of energy that we just get from the crowd over there. I hope that Team Liquid's feeling it too, because they're going to need it, and I think indeed a lot of people in the audience would love a third game. So Liquid needs to step it up. What do they need to do? That's the main question. How are they going to bring this back, Effie? Because they got a little bit blown out of the water, that one. I think, yeah, that was pretty stompy, but it wasn't due to individual skill or just how good these teams are. I think in the draft, their Enigma got very solved, and they really had no means to deal with this Morph. That was kind of a gotcha. So I think that they're definitely potentially scrapping the Enigma for next game, but if they get a more even draft, then I don't expect them to be too concerned, right? I don't feel like they're beating themselves up over this one, to be completely honest. And we know that they really prepared, because we saw it yesterday in their series versus Aster. I mean, they had 5 days, and they have 3 coaches, like we just saw. Yeah, they better come in prepared, Jenkins. Anything in particular you want to see them do different, or you feel like this was just an off game indeed because of that draft? We've seen it before, and I think we'll see it again. Matamba, he's won a TI, so he's got 1 ring, but he prefers 7 rings if possible, as many as possible. And I think this is when you bring out the comfort picks. This is where, Sniper becomes value, where Pudge becomes value. Pull out the Lone Druid, give the people what they want. Yeah, give Sniper, give people. I think two heroes that got figured out at the main stage. It was Enigma, and I think Lashrak especially, because it just doesn't feel as strong as it did during the group stage, even last chance qualifiers. But I got to go back to Jenkins' point about picking, something a bit different. Because Matu yesterday, when they last picked Night Stalker, he was like, well, this is not going to be my last game at TI, because he was pretty confident about it. He was, and if he's going to be getting the last pick for his hero again, well, then he might need to pick that Lone Druid. If he thinks he's not, I don't know, if he picks Lone Druid, that would just mean that he doesn't have the confidence that there's going to be another game. So we'll just see if there's going to be another Night Stalker pick coming out in this one, because I think a lot of people, apart from these guys, of course, are hoping for a third game. The players will once again take their seats in the indoor stadium in Singapore, and I think they're ready. They look all very relaxed, actually, I must say. They're just strolling up, Effie. No pressure. Yeah, I mean, that is the best way to approach TI. Every year, the winner of this tournament seems to be the one who just doesn't feel the pressure, is having the most fun. So the demeanors look good, Secret looks great, but I mean, Liquid, they didn't seem too bothered either walking onto that stage. They did not. And earlier on, we heard Team Liquid have a lot of respect for Team Secret, of course. I'm very curious to find out what Team Secret thinks of Team Liquid. I think overall their team dynamic, like it seems like they're pretty bonded to each other, and I think Mickey is doing a lot of work, like a lot of heavy lifting there in that team. Honestly, like from the games I've seen, he's like very on point. Zai plays a lot of versatile heroes. He can play Broodmother, he can play Pingo offlane, I think what makes Liquid good right now, at least, is the same thing what makes us good. We came from last chance qualifier. We went for a long road. When we won, we already were a little bit ahead than anybody else. So we already played a tournament in order to get a little bit of an advantage. And honestly, I don't know, like, while we were playing LCQ, what the hell, like, other teams were doing at that time? Like, you can see 2 of the top 4 teams on this event from LCQ. That's storytelling right there. I think, Rezo, they were just watching you guys play, just like they're doing right now. Am I right, Jenkins? That's right, Shiver. I don't know what you're saying, but both of these teams have been through the fire and the flames. And guess what is no secret, Shiver? That's that Liquid puts out fire. And so I think we are going to get a Game 3 in this series, Lacoste. Absolutely agree with everything you said. You've been on point this whole tournament, even before that, throughout the DPC. Best analyst out there, so nothing but admiration for you, Jenkins. That's so nice. But honestly, Secret have been on quite the journey this year. I mean, for fans at home, I'm sure it's been difficult watching them throughout the DPC tours, watching your favorite team not even go to any of the 2 majors this year. But the entire redemption story these last couple of months have to be something out of a fairy tale. You swap out 1 player towards the end, right? Because Zayats did come in during Tour 3, but the team still did not look great. Something was still missing. All of a sudden,
Ice can't go to the Riyadh Masters. They bring in Resolution and everything clicks. It's like this last magical piece of the jigsaw puzzle just fit in perfectly. And it just speaks volumes on how having one player can change the dynamic of everything. Even though Nisha has always been a monster, that hasn't changed. Puppy has always been an excellent captain, and Secret has been consistent in their coaching and in their preparation. But all it took was Rezo to just come in and fix everything. Yeah, they were very consistent in their deep sea placements as well, because it was 5th every time. Yeah, consistency is good if you're, you know, top 2 or top 3. But yeah, at the end, Resolution was the solution to Team Secret's problems. Nice. Now it is time. It's all about peaking at the right time. Will Team Liquid get another shot, or will Team Secret go for it? Let's find out. Team Secret versus Team Liquid. Game 2. We are here again, game number 2. Team Secret facing off against Team Liquid, a dominant first one. And we're back again with our lovely draft panel here. Taiga, Amar, you got to see some action. I just want to get real quickly before we get too far into the draft. Taiga, what's it like going out on this big stage, playing in a game like this where it's potentially your elimination match? I mean, it's pretty... I will get pretty nervous, obviously, because like, playing in such a big stage, I wish I was here. I'm not here, it's fine. I'm cheering for my boys in Liquid. And especially with this C crowd, I've been in Malaysia, the C crowd is absolutely amazing. And I actually just feel, you know, more comfortable just playing in front of the crowd because they're cheering for you, you can hear the crowd chanting, and it's amazing. Actually, once we're in the game, you don't feel nervous anymore. Yeah. I used to feel very nervous and I used to choke a lot, but I don't think that's the case anymore. So, credits to that. Yeah, and Amar, what about for you? What's it like when you get out here on the stage and the blood starts pumping? What's going through your mind? I think nothing going in my mind. I just need to focus on the game, my screen. Nothing else matters. And in the end, I would say to my teammates, it's okay. Just so you know, if you lost, you're gonna lose a lot of money. If we lose, we're gonna lose a lot of money. That's great. I love that. Trent, what are you seeing in this first couple? Okay, positive reinforcement. That's what I'm hearing. You know, that I think some teams go for that. There's also the negative reinforcement. That's cool. Team Secret, they're gonna open straight up with a silencer. I mean, the big difference this time, of course, is that Team Liquid are gonna have second pick. Team Liquid are there on that dire side, and you know, obviously that ended up being a problem for Team Liquid last night because they felt like they couldn't get the flexibility of the Enigma that maybe we wanted in terms of trying to give that hero a good game. And that hero got shut down pretty hard by Team Secret, and we'll see what Liquid have in store this time instead. And the first thing up here is just that Broodmother. Oh, that's a really good counter pick to Silencer. I played this matchup before, and when I was Silencer, it's not great, I can tell you that. You probably don't want to lane into Brood with Silencer either. I mean, I think this matchup is not actually, like, yeah, of course, all summons are good into Silencer, but like the first pill actually helps, like the new damage buff, like you can kill like the weak spiders from Brood, and this Silencer pick was just to like test them. Do you want an Enigma, your most comfortable hero, or not? And they just won their test by not getting it. So just need to like make sure that this Brood doesn't conquer them. That is really interesting too, because Silencer coming into the event, he was one of the most picked heroes in pubs. Like he was being spammed constantly, like high MMR games, and we didn't really see the hero necessarily that much. But now to like open like this, even though there's no Enigma, really, like you said, it's like completely dissuading that pick. And I know it's gonna be very interesting to see it versus the Broodmother, because like I feel like a lot of times Silencer feels very weak in the lane versus a lot of matchups. 5 seconds. Yeah, but that's not really the case anymore. Like the Silencer now just feels like he's laning into anyone, and even on the other lane. Even like, into this is Tusk Broodmother, man. This would scare the crap out of me. I mean, does look like not a fun Silencer lane, but like maybe Crystallis has something in his pockets. Okay. Can bring up the monkey. Monkey? Oh, here it is. Yeah, there it is. Crystallis Monkey. One of his best heroes. He has like 3,000 games from that hero, right? Yeah, 2,000 games. Yeah. 2,000. Awesome. I remember when he joined Secret, you know, one of the most common trends was just a first phase monkey ban. So everyone's just like, oh, this guy's pretty good, plays a lot of monkey, let's just not let that happen. But obviously he's moved on from there. He has moved a lot in terms of heroes across it. We had Crystallis Viper early in this tournament as well. He's very open to picking a lot of stuff. So to go back now to a comfort pick in the you know, pivotal game here feels very good.
Yeah, I think the monkey gives them a lot of potential with silencer also. Like he like made yesterday Tundra 33 go jungle on Brute minute 10. Like so, this monkey has its job for this game already. It's also a bit sad that they didn't want to pick Enigma, Liquid. They usually love the hero. I know for a fact that the team is like they will always want to first phase Enigma if they could. But I think like with how Secret dealt with it last game and how they just first pick Silencer, makes Liquid actually overthink that okay, we don't want to pick Enigma into Silencer. So it's actually pretty smart by Poppy to just first pick Silencer and not ban Enigma, so they get a free ban. Right, and in a way, it's like you lose out so much value from that early picks if you are getting it into it. That I mean, there's still a lot of value in Silencer outside of just the Enigma, surely, right? I mean, I guess they maybe take it like as a strong hero, like in general a strong hero. Because for example, like Tusk cannot save from Snowball. Yeah, Tusk can kill Silencer, but you can just go on a hero and press global, and this Tusk feels useless. So like the concept still like has its place. The next round of picks here as we are on to the bans Pudge taken out of the pool, as well as the Undying, Magnus, and Pango. So a good amount of team fight actually banned out here by Team Liquid. I'm curious, you talked about the best hero in Dota, according to you the other game, Beastmaster. Is that something that we're got to be on the lookout? Or Liquid the type of team that would run that again? Or with the Broodmother in pool, there's no chance that this would be flexed? Anything else? I mean, the Broodmother is often for sure, like on Zai. Yeah, that's a decent point. I don't think like they gonna flex this Brood. Like I think it's just locked on Zai. Because I don't think Mickey doesn't play it, and I don't think Matumba, he last time played it like 3 years ago, so I don't think he's just comfortable to play it again, you know? I actually think it might happen. Matu might play Brood for the last game before he, today's actually his last day before he retire, right? Yeah. So, might end it with the Broodmother. It would be crazy. That is something that's sort of lingering in the back of, I think, everybody's heads, is that potential for retirement, and of course for Liquid wanting to keep this going, force it to a game number 3. I mean, they did it with a Night Stalker, right? Something that obviously wasn't expected. Some people were hoping for maybe that Lycan to come back, the real classic Matu hero. I don't know what he's feeling as we get to the end of potentially what could be his last game, but right now taking a lot of time on this ban. They get rid of that Kunkka, so very common trend in those 3 bans right now. Lots of physical AoE damage being taken away there. Rezo had a great game on the Magnus as well, previously in the tournament, so Liquid now looking to find that pick that doesn't give away too much. Probably just going to be an Insania hero here. Unless he goes back to some classic 5 Insania Tusk. But, it's Boxy Tusks. Definitely a Boxy Tusk. I don't see Insania playing Tusk anytime soon. So what do you feel like they're missing in the draft right now, or the sort of general shape that they're trying to take? Where do Liquid need to go? Are they trying to play a more fast tempo game? Or are they trying to just sort of secure their lanes? What do you see in here? I mean, the Secret addressed this Brood, they banned Undying, the Budge, the Lifestealer, the heroes that they think they can snowball the game with, because Brood, if he doesn't get destroyed, I mean he might because it happened yesterday, so they're just looking to step a lanes and get a push this Jakiro, good team fight, and can help them to 5-man a lot, and the Secret doesn't fight into it. Interesting. So Jakiro gets taken, the team fight, the push, all the things that you want. 10 seconds remaining. They actually hit the bans pretty well on Secret, the classic multi heroes like Punch and Max, because they usually want to keep it the semi-core heroes on Matu, so Mickey can play more of a 1 from mid. He will play this Lina, Asaf, carry type heroes on carry the game, and they will put him position 1 as a mid player. And, with now, it looks pretty bad for them, I think, because they don't have all these heroes available right now. Next, Pudge it out, and it will be interesting to see what they pick. Maybe another Night Stalker game, Yeah, I think Sven was one of those other ones that we saw a decent amount to try and give some extra armor and stuff, but that also hero has kind of fallen by the wayside of it. But they get another Nyx Assassin. I mean, the Nyx really, it's not really a good Nyx game, but I think they just think that this Nyx is broken, and I don't think it's wrong. The damage, the invis, and you also block a lot of mid lane picks. Imagine you're a mid laner and you want to pick into Nyx, you feel so bad.
Yeah, not a happy time. And they do, in fact, opt for the Primal Beast. So a couple options here. Could be mid, could potentially be off lane as well if they want to. But just another hero that, when you see the Spiderlings as well, you really do not care at all as Primal Beast. Goodness. Well, the first phase Brood definitely has a lot of challenges running into it already, but we've seen Zai get sacrificed more than a few times playing out of that off lane. Liquid now, I mean, to me at least, when I look at this, I feel like there's so much team fight on Team Secret. Do you just try and further snowball and then maybe build some like sort of tower taking heroes as Liquid to see if they can make a turn happen? I'm actually not so sure what they can pick right now because they usually want to pick next pot, right? Maybe they could go back to like picking Asaf and Lina right now and save that last pick for Marty, because I think Marty can play a lot of heroes in Dota. And I think for Mickey, on the other hand, he probably wants to pick his hero now. That's how I feel like. And it does feel like he wants one of those like big range damage dealers, like you said. I mean, Lina's gone, but yeah, the SF does look very solid. Sort of fits with some of the timings that you could have as well. Try to get yourself like an earlier Roche, gives yourself a bit of a base to work off of here and stand his ground when you get into these situations versus the Monkey King sometimes with a good ulti or BKB. Oh, and down just to 5 seconds left into the reserve time on that last round, but they go for the Tiny. A big swap up there, not that physical damage hero. What's the goal here? What you're seeing? This is the comfort hero for Mika. Like back in the Han days, like long time ago, he will always play Tiny Han, and he was like, for me personally, he was like the best Tiny out there. So maybe they're just coming back, you know, playing comfort heroes. Like maybe it's potentially the last game of TI. So why not? They immediately ban another comfort hero, right? We're getting rid of all the comforts. Get rid of that lone druid. Don't want to give Matu any of his signature heroes right now. I mean, who knows? Maybe this Tiny actually goes carry, because I know that Madumba can play Tiny. That's a good point. Yeah, there's still that flex. And that's what you said you wanted to see, Taiga, going into the end of this draft, was Liquid with the last pick with a lot of flexibility still. Yeah, we might even see Motu playing mid and make even play carry Tiny, because it can actually hype him. Zayat's trying to figure out what's going on. The look on his face is like, what are these guys playing? What's going on there? I'm seeing a lot of great Carapace plays, that's for sure. Tiny now in the pool too, Jakiro. Team Liquid's turn to ban. So Naga Siren taken out of the pool. No chances for any stall action from those illusion carries. But with last pick, the Team Secret draft, we already highlighted the team fight. What is it that they're missing out of their last pick, assuming that this Monkey King is the carry role for Chrysalis? I think they're missing like some kind of scaling hero for mid. I don't think Primal B scales as much until like very late. I think Monkey King is like the same. So I feel like they want to have, similar to Liquid, they want to have some kind of mid carry hero. And most of them are banned right now, so it'll be interesting to see what they pick. I mean, definitely they want range carry, but they also don't really need to, because the Monkey for sure will carry this game. Like the Monkey, one of the strongest late game heroes. It's just that the hero can also be a space maker. Like he has two ways to play. So if someone carries him to there, you know, Chrysalis of course very comfortable on that hero. Something like the Dawnbreaker still being in if you want to like find a Rezo hero too. I mean, I just think that maybe like, I mean, maybe they just go for the, I mean, SF looks bad. I mean, I guess, I mean, they want the range for sure. So like, they get their game plays where like, Kristas just sits on the trees, makes his Brood like life hard and just stays in his lane. Ah, Co-op, okay. Whoa. So what's the thought there? Well, Co-op is kind of also semi-core, you know. They're essentially running like three semi-cores, like how we used to do it back in the days with OG. So I actually like the draft a lot. It makes a lot of sense together. But I think they might want to put Tiny carry if they can do that and somehow fit the puck in this lineup. Down to the last couple of seconds here for Team Liquid. 4 seconds to decide their fate. And it's going to be... No random. Oh, the sniper. Right. Interesting. Thoughts as we get into this game here. The drafts have been completed. Sniper versus Queen of Pain. What are you guys thinking? Who's going to come away with this? Are we going to a game 3? I think we will go to a game 3. I see Mickey Tiny. I'm already excited. I mean, I understand the second pick is
stronger, and of course they got like the counter picks and what they want, and they will get the lanes. But I will always go for Secret. They got a Monkey King, but you want more from him. So let's see. Yeah. How do, like, let's say we're looking at Team Liquid though. Like, what do they need to do, Amar? I know you're cheering for Secret. What do they need to do to take this win on Liquid? How do they play this game? So, like, first big goal. I don't know. Just scale to the game, and you will win. And you'll win. That's a pretty good option. All right. That's all the discussion that you really need here, I guess, huh? And for Taiga, what do Liquid need to do to be able to claim this victory here? What's the recipe for success for them? If they can get stable lanes, because they are heavily counter-picking lanes right now, like Tiny into Quap might be pretty rough for Tiny, and Monkey into Brood, Monkey is gonna win. So if Mickey can snowball this game and get 10 kills in like 20 minutes, I'm sure they could got this. All right, well, let's see indeed if they're going to be able to do that as we get ready to head on into this game number 2. As, again, one of those moments where it's all on the line. We'll see if they can make it happen. Going over to Sir Action Slacks right now as we get into this interview. Thank you so much, everybody. I am here with Heat from Team Secret. Woo! Heen, my friend, quite an intense game last time. You guys survived that very aggressive laning stage coming out from Liquid, and it looks like they have just as an aggressive lane this time. However, you guys have a Monkey King. That's not traditionally, somebody that can survive getting run over. Are you confident in that pick? I don't know what you're talking about, and why would Monkey King get ran over? Well, you tell me, what is Monkey King good at? Hey, in my games, he's always throwing in the lane. Broodmother just eats his ass like it's nothing. We have a player with more than 2,000 games played on Monkey King, so I'm pretty confident. Okay, that is confident stuff right there, my friend. So I want to talk a little bit about the attitude of the team here. I mean, this is, where you guys got to last year, a lot of pressure. Are they feeling it, or do you think it's just full confidence? No, I think we're feeling much better. We recovered after our loss against Thundra last night. We talked out what some of the issues were that led to like bad in-game comms. So, I mean, game 1 went great. So we're hoping to close it out 2-0. You're always so calm on these, Heen. All right, can we do a real crazy one? Give me an immortal fate. Make some ludicrous claim here about this game, please. Anything at all. Call it out. Babe Ruth it. We're gonna get 2 rampages on 2 players. 2 rampages on 2 players. All right, fantastic. Oh my God, this will be one of the greatest games in TI history as we throw it over to our casters. Thank you so much, Slacks. Absolutely baited there as usual for the interview. Able to get the coach to say some crazy things. Now, we might not have rampages here. We'll see if it ends up. Alrighty, ladies and gentlemen, we are back. Team Secret versus Team Liquid. BO3 series lower bracket final, the international का grand finale का दिन. मेरा नाम है Super Johnny. Again with me on the desk is Nasir, Krat और Fixes. 1-0 की lead Team Secret ने बनाई है after the previous series, जिसमें Krat शुड़ा से जीत हासिल करी या पिटाई कर दी Liquid की? It was पिटाई. जीत हासिल तो फिर भी सटल हो जाता है. वो तो एक वन साइडेड गेम था. निशा ने जो खेला, नासिर मियाँ ने बोला, नासिर मियाँ को खुद बहुत पसंद है निशा का मॉर्फ देखना. उन्होंने वही शो देखने को मिला. एंड इवन ट्विटर पे भी दिखा सीक्रेट के, उन्होंने लिखा वेलकम टू निशा शो. सो इट वाज अ निशा शो प्योरली. आई थिंक कोई दौरा ही नहीं है कि जिस तरीके से टीम सीक्रेट ने खेला था. बट इस बार काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पिक्स हमें नज़र आ रहे हैं क्रैट. सो मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ. देखना चाहता हूँ हाउ दिस मैच टर्न्स आउट टू बी. एंड यहाँ पे लेन्स चेंज हुए हैं. दे हैव आई थिंक पहली बार हम लोग लिक्विड को इस टीआई के मेन स्टेज पे देख रहे हैं कि दे हैव शिफ्टेड देयर लेन, स्वैप देयर लेन्स. मार्टू हैज गॉन मिड और यहाँ पे मीके कैरी खेल रहे हैं. सो इट्स अ टाइनी कैरी एंड we'll have to see how this really pans out.
फिलहाल के लिए क्वाप आई थिंक पहली बार हम लोग देख रहे हैं एक क्वाप पिकअप होता हुआ, तो लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट। हाँ, मैंने ये कल कॉल किया था कि एक क्वीन ऑफ प्लेन देखेंगे मेन स्टेज पे, एंड हियर इट इज निशा द बेस्ट प्लेयर टू प्ले क्वीन ऑफ प्लेन। लेकिन देखते हैं अगर बेस्ट प्लेयर खेल रहे तो क्या रिजल्ट भी बेस्ट देखने को मिलेगा या नहीं, यू नेवर नो। टीआई का ग्रैंड फाइनल का दिन है, लोअर ब्रैकेट, बहुत सारा पैसा ऑन द लाइन, तो कमबैक्स की उम्मीद मैं तो करके ही चलूंगा। जैसा नासिर आप कल पूरा दिन बोले थे आपको डोटा देखना, आज मेरे को डोटा देखना। ये सीक्रेट को थोड़ा ड्राफ्ट फेवर करता होगा। अब लास्ट गेम तो उनके फेवर में ड्राफ्ट था भी नहीं, बट निशा ने पूरा शो स्टील कर लिया है, एंड ये ड्राफ्ट तो थोड़ा उनके हल्के फेवर में है। एंड विद निशा प्लेइंग क्वीन ऑफ पेन, मेरे को लगता है कि दिस शुड आल्सो बी एन, मेरे को लग रहा है ये 2-0 जाएगा सीक्रेट के टेबल। 2-0 की कॉल हुई है और मीके ने यहाँ पे फर्स्ट ब्लड ड्रॉ कर दिया है। सो आई रियली लाइक लिक्विड्स लेट गेम ट्रांजिशन, बट क्रिस्टलिस एम के कलम ने देखा था क्या खौफ चलता है उनका। फिलहाल के लिए रेजोल्यूशन ऑन द प्राइमल बीस्ट, एक ऑफलाइन प्राइमल, एंड वी हैव सीन इट्स बीइंग सक्सेसफुल। रेजोल्यूशन हैज बीन अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, बट फिलहाल के लिए क्रिस्टलिस के थोड़ा दबाव उनके ऊपर, एंड मंकी को भागना पड़ेगा। बट डैमेज देखे यहाँ पे ब्रूट का काफ़ी आता हुआ, बट पॉपी मेकिंग श्योर कि उनके आगे की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार ना कर पाए टीम लिक्विड के प्लेयर्स, और यहाँ पे उनके ऊपर रोक लगा रखा है। बट फिलहाल बाउंडलेस स्ट्राइक मिस होता हुआ, अगर लग जाता तो अच्छा रहता, खुशियाँ मिलती, यहाँ पे थोड़ी सी सांस रहती। बट फिलहाल के लिए एक और इनिशिएशन, ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आई थिंक क्रिस्टलिस माइट गो डाउन, एंड देयर यू हैव इट। सो आई थिंक टीम सीक्रेट के लिए एक ख़राब शुरुआत होता हुआ, बट यहाँ पे ऑन ट्राइंग टू फाइंड आउट सम ट्रेड ऑफ, जी हाँ मिला तो है, बट एक सपोर्ट ऑन द अदर साइड, एक क्रिस्टलिस कोर उनका जाना, ये घबराने वाली बात है। बट आप देखिए यहाँ पे सिर्फ इधर ही नहीं, यहाँ पे प्रकोप चलता हुआ, काफ़ी डीप डाइव कर चुके हैं बॉक्सी, बट निशा मेकिंग श्योर सही टाइम पे ब्लिंक आउट कर चुके हैं, एंड नाउ ही इज़ बैक टू सेफ्टी। एंड स्नाइपर एट दिस मोमेंट, नो इज ही गोइंग बैक टू द बेस या फिर लेन पे ही रहेंगे? उनको जाना पड़ेगा, ही हैज़ वेरी लेस HP, 1/10 HP है उनकी, और जस्ट टू सर्वाइव द लेन उन्होंने 3 ब्रेथ बैंड बनाए स्टैट्स के लिए, ताकि QOP का हरास उनको झेलना पड़े वहाँ पर। वो फिलहाल एक अच्छा ट्रेड लिक्विड अपने फेवर में निकालते हुए, एंड जैसा पिक्चर्स ने पहले बोला, ही इज रूटिंग फॉर देम इन द लेट गेम स्टेज। बट नासिर, क्या जो पिछले गेम में हमने देखा, इज देयर अ पोजीशन और इज देयर अ वे दैट सीक्रेट कैन रेप्लिकेट दैट अगेन? इट ऑल डिपेंड्स ऑन निशा। अगर निशा का लेन स्नोबॉल होता है, देन ही विल मेक एवरी अदर लेन स्नोबॉल, क्योंकि QOP आप बर्स्ट कर देती है आगे। जी जी जी। हिज अल्ट एंड स्क्रीम ऑफ पेन आती है, 1-2 हीरोज को बर्स्ट करती है, एंड वो चले जाती है। एंड अगर उनको मिल जाता है अर्ली गेम एडवांटेज, देन जैसा आपने लास्ट गेम में देखा था, जब निशा स्नोबॉल करते हैं गेम, वो सिर्फ स्नोबॉल ही क्वाइट ट्रू। आई मीन स्नोबॉल भी नहीं, स्टीम रोलर था जो चला दिया गया था पिछले गेम में लिक्विड के ऊपर। बट इस वक्त रेजोल्यूशन एक और पिक दे बैठेंगे यहाँ पे, टीम लिक्विड 3-1 से लीड करते हुए। और लिक्विड का भी ये एक सीन है, अगर टाइनी थोड़ा स्नोबॉल कर लेते हैं, जी, टाइनी कैन लिटरली विन देम द गेम। या आई मीन आई डोंट सी अ वर्ल्ड जहाँ पे टाइनी आई थिंक इजीली बर्स्ट डाउन कर सकते हैं, पोटेंशियल रखते हैं इवन क्वाप को भी, अगर एक अच्छा फार्म आ जाता है उनके ऊपर। तो टीम लिक्विड की आई थिंक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई। जाहिर सी बात है माटू को ट्रेड किया गया था, बट इट्स ऑल राइट, वंस यू आर गेटिंग अ क्वाप, तो इन रिटर्न तो क्या ही कर सकते हो आप। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे चीज़ें चल रही हैं, टीम लिक्विड की एक शुरुआत अच्छी हुई है। क्रिस्टलिस को भी अर्ली गेम यहाँ पे थोड़ा सा शट डाउन किया था। अब जाय मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ब्रूड वन ऑफ द कंफर्ट पिक्स रहा है, और जाय का परफॉर्मेंस भी ब्रूड के साथ बहुत ही बेहतरीन रहा है। पुश पोटेंशियल भी मौजूद है, टावर भी अच्छा खासा ले सकते हैं, जकीरो भी है आपके पास, और ब्रूडलिंग्स के साथ भी थोड़ा सा ना वो प्रेशर अप्लाई कर सकते हो।
तो multiple avenues है. This draft of Liquid looks a lot better than the previous game and how they're playing around. Well, let's see. देख अच्छा रहा होगा, ज़रूरी नहीं है इसका मतलब ये भी हो कि रिजल्ट भी अच्छा ही होगा. हमने कई बार देखा है प्रेफरेबल ड्राफ्ट जो हमारे रहते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर परफॉर्म कर जाते हैं कई मैचेस में. अभी तक एक शख्स हैं जो काफ़ी देर से खामोश बैठे थे. क्रैक, व्हाट्स अप? एक्चुअली मेरी मीटिंग चल रही थी तो बट यस मिकी कैन बी इन डेंजर. 3 रेडिएंट उनको यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश, बट पीछे से एक आया बड़ा भाई और उन्होंने ट्रैम्पल करके कोशिश तो कर रहे हैं बट वुकोंग कमान मंकी किंग ने यहाँ पे कर दिए कमिट एंड दे गॉट मिकी जो इस गेम के अंदर हार्ड कैरी का रोल निभा रहे हैं. और माटू मिड पे, और माटू ने भी नाइसली टाइमली टीपी करके उन्होंने स्नाइपर का यूज़ किया, शार्पनर लेकर ही टीपीड आउट. मतलब उन्होंने टावर ट्रेड कर लिया. 3 रेत बैंड, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. 25 मिनट के बाद ये रेत बैंड वैसे भी डबल स्टार्ट देते हैं आपको. इसका मतलब जो 2 स्लॉट्स 3 स्लॉट जो बचे हैं जिसके अंदर एक जूता आएगा, एक ड्रैगन लैंस आएगा और एमओएम आ सकता है. 25 मिनट तक ये फार्म फिर भी डिसेंट रहेगा और एक अच्छा खासा डैमेज आप दे सकते हैं. और अगर आप बात करेंगे मंकी किंग की, मंकी किंग के लिए स्नाइपर एक काउंटर ही है. अगर 3 डांस को काउंटर कर जाते हैं साथ में. बट जाय ने अपने टीआई रन के अंदर ब्रूड मदर से ढेर सारी वो करी है ना नॉटीनेस. ओह, आप देखिए रिजोल्यूशन सेफली बाहर जा तो चुके हैं. एंड यहाँ पे एक चीज़ टीम लिक्विड ने अच्छा किया कि चलिए टॉप पे वहाँ पे गैंग ज़रूर हो गया था बट बॉट का ट्रेड ले लिया टावर लेके. तो कहीं ना कहीं अपने आप को नेटवर्क में थोड़ा आगे रख रहे हैं. एंड नीके का फार्म बहुत ही अव्वल दर्जे पे चलता हुआ एंड रेजोल्यूशन इज सेकंड. सो जाहिर सी बात है अगर आप नेटवर्क पे नज़र डालें तो कहीं ना कहीं लिक्विड इनफैक्ट लिक्विड के लेन्स अच्छे गए इन कंपैरिजन टू टीम सीक्रेट. बट हमने देखा है कि लिक्विड बिलीव्स इन दोस टर्न अराउंड्स फाइट्स में बहुत ही अच्छे अपने प्लेयर्स को पोजीशन करवाते हैं. एंड मोर ऑफन देन नॉट जो पिछले वाले गेम में हमने देखा था मोर ओकेजन्स टीम लिक्विड डाइव कर रही थी एंड टीम सीक्रेट वाज सो वेल प्रिपेयर्ड कि हर एक फाइट के साथ हर एक सिचुएशन के साथ डील कर पाए. एक ही सिचुएशन था जहाँ पे टीम लिक्विड ने बहुत बेहतरीन खेला था, वो लाइफ स्टीलर वाला प्ले माटू का. बट फिलहाल के लिए टीम सीक्रेट स्मोक करके यहाँ पे एक किल निकालने के फिराक में नज़र तो ज़रूर आ रहे हैं. बट जाय का किल निकाल पाएंगे या नहीं ये एक बड़ा सवाल. आई थिंक स्पॉट कर दिया गया है एंड इनका कोरियर को दे मार गिराया. मैं एक्चुअली देखना चाहता था क्या था उनके ऐसे कोरियर के अंदर. एंड जाय भी थोड़े से परेशान थे. बट फिलहाल के लिए आई थिंक 3 प्लेयर्स कमिट करना, लेंस खाली छोड़ना, थोड़ा सा फ्रीडम वापस से मिल जाता है मीके को, माटू को कि फार्म कर पाएँ. फिलहाल के लिए लिक्विड के जो हमारे सपोर्ट थे आके रेडिएंट के फार्म चुरा रहे हैं ट्रायंगल में आके. तो यहाँ पे टीम लिक्विड इज ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट. शुरुआत तो अच्छी हुई है. 4-3 का स्कोर. अभी भी ओनली 1 के नेट एडवांटेज टीम लिक्विड के पास. वो टाइनी अगर स्नोबॉल किया तो हमने देखा है कि लेट गेम टाइनी कितना ज़्यादा घातक बन जाता है ऑपोजिशन के लिए. Once Tiny gets jagged, उसके बाद तो I don't think Radiance में कोई भी है ऐसा प्लेयर जो Tiny के साथ फिर 1v1 कर सकता है. Just because of the ultimate आपके पास immense damage होता है. अगर आपने सिल्वर एज भी ले लिया, डेडलेस भी लिया, डेडलेस तो फिर भी स्लॉट वेस्ट है. सिल्वर एज आज ज़्यादा ले रहे हो, जो आपको क्रिट चाहिए होते हैं वो आपको सिल्वर एज से भी मिल जाता है. प्लस आप अपने उनके पैसिव डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आप उसको एक्टिवली यूज़ करते हैं. सो कुछ लिमिटेड आइटम्स है टाइनी के पास. अगर वो टाइमली आ जाते हैं देन दिस टाइनी कैन बी अ बिग थ्रेट. और मैं ज़्यादा आइटम नहीं लूँगा. 20-25 मिनट तक अगर आपके पास ब्लिंक डैगर, इको सेबर, शार्ड है और सिल्वर एज भी आ जाता है, बिकॉज नॉर्मल एमएमआर में आप निकाल सकते हो. ऑल्दो आई नो दिस इज अ कम्पिटिटिव गेम, मुश्किल होता है यहाँ पे लेना. मैं 5 मिनट और देता हूँ. फिर भी कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा मुझे रेडिएंट्स का जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है. बिकॉज ब्लिंक इन किया, इको सेबर के 2 फटके, स्टन एंड टॉस कॉम्बो विल बी इनफ टू डेसिमेट. खत्म बाहर. इनफैक्ट दावा किया है टीम सीक्रेट ने इस गेम में कि 2 रैम्पेजेस निकालेंगे, वो भी अलग अलग हीरोज पे. एंड दावा नहीं, वो सिर्फ मतलब ऐसा. अरे आप चीज़ों को ना थोड़ा मसाला डालना सीखो ना, सिर्फ ऐसे मत करो. आप इतने सेक्सी कोरमा ग्रेवी बनाते हो, वैसे ही सोचो ये गेम को. बट फिलहाल के लिए भूख तो है.
भूख तो सबको लगी है, खाना भी आ रहा है बहुत जल्दी, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्सी के ऊपर इनिशिएशन हुआ है, ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, ये तो ना बच पाए, और जकीरो इंसेनिया भी आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन आइस वॉल का इस्तेमाल और आइस पाथ का, और यहाँ पे ले लिया एक प्यारा ट्रेड जैक का। बट फिलहाल के लिए आप देखिए जाय यहाँ पे जीवित तो थे, गर्स डाला है उनके ऊपर, बट कोई बात नहीं, पीछे चले जाएंगे, सेफ तो रहेंगे। बट आप फार्म देखिए, माटू भी चल रहे हैं टॉप पे, यहाँ पे मीके भी चल रहे हैं टॉप पे, टीम सीक्रेट के खेमे में काफ़ी परेशानियाँ। बट नासिर मुझे आप ये बताइए, ये फाइट के बाद हम बात करेंगे उसके ऊपर, जिस तरीके से कॉप को मेल्ट किया, बेबस लाचार परेशान असैसिनेट करने गई थी, जी हाँ, he had all his kills, तो सोचा कि स्नाइपर अकेले रहेंगे, स्नाइपर को मार के निकल जाएंगे, बट पीछे पूरी लिक्विड की पूरी टोली मौजूद। But where do you think this draft of secret is going to flourish? I mean, early game, mid game, जब QOP के पास BKB के साथ एक और आइटम आएगा, या तो वो ऑर्किड या अग्नम, तब सांजन का आया, तब जाकर, क्योंकि ओह गॉड, ये देखिए क्या चल रहा है। ऑब्वियसली रेजोल्यूशन आए, फाइट को थोड़ा सा देर स्टॉल करेंगे, मैक्रो फायर का इस्तेमाल, वुकॉन्ग्स कमांड भी फिर से लिक्विड रियलाइज करते हुए, हल्का सा ओवर एक्सटेंशन हुआ था, यहाँ पे मीके को गंवा दिया है, निशा काफी लो एचपी पे, फिर से आइस पार डाल के उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे। जाय का जलवा यहाँ पे नजर आता हुआ, बट यहाँ पे 3 हीरोज खत्म हो चुके हैं इन ट्रेड ऑफ विद वन। सो ये जो छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं टीम लिक्विड के प्लेयर्स, इसका कहीं ना कहीं कभी कभार खामियाजा भुगतना पड़ता है। 3 for 2 ट्रेड, पप्पी तो छोड़िए, क्या ही बोले, बाय बैक किया है उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ ग्लोबल यूज करने के लिए बाय बैक किया। अब ये देखो ना फिक्सेस, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन 5 को वेस्ट कराया, बट वहाँ पे कोड 2 गए हैं, 1-2 स्नाइपर एंड मिकी दोनों गए हैं, सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर देम। देखो, और मिकी ने और निशा ने बहुत सारा डैमेज दिया है, अगर निशा ये गैंग में बच जाते देन एक कंप्लीट विक्ट्री होती, एंड जो निशा का आइटम प्रोग्रेशन होता वो बहुत और स्पीड अप हो जाता। मतलब मैंने नोटिस किया है फिक्सेस, सॉरी जेंकिंस की, जो हमारे नासिर मियां है, उनका गेम का इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर फिक्सेस जेंकिंस है, व्हाट डज दैट मेक यू, मी एंड नासिर? आई लव टू बी शिवर, होस्ट तो मैं हूं। 2GD, 2GD I'm back to famous acts। हम तभी भी उस मियां क्या बने फिर हम? मियां पर सुनामी। They both have the मियां की और सुनामी की जो बियर्ड है बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। हाँ, सुनामी बना देते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी देखिए एंगेजमेंट हो चुका है, फिर से टीम लिक्विड खतरे में, मीके काफी लो एचपी और भारी नुकसान होता हुआ। यहाँ पे कोर 1 being traded for कोर 3 पसंद नहीं आ रहा मुझे, और यहाँ पे आसार खराब लग रहे हैं, असैसिनेट करने की कोशिश क्रिस्टलिस को, बट कोई डैमेज नहीं। बट डूल ब्रेथ यहाँ पे मिस हो चुका है, और they're trying to take this Crystallis down, but I don't think he will be surviving. I don't know why did he go there. Maybe he should be. जिंगल उन्होंने मिस किया, वरना उनकी एचपी आ जाती और वहां से निकल जाती। क्या उनका जिंगू मैक्स था क्या? हो चुका था हिट, प्रॉक हो चुका था। Oh my God, that's a big blunder मियां, आपने जो पकड़ा है इस वक्त। मैंने क्रिस्टलिस को कल से देख रहा हूँ कि मंकी किंग पे वो अपना जो स्ट्राइक है, बाउंडलेस स्ट्राइक है, वो बहुत मिस करते हैं। गेम तो अभी शुरू हुआ, आप कल से कैसे? बट मैंने आज स्नाइपर कल भी तो खेला था। अरे आज आप मीटिंग में थे, बट यहाँ पे आई थिंक इट विल बी डेंजर। ओके, जाते जाते उन्होंने अपने साथ नेक्स्ट असैसिन को लेके गए, कहते ना हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। जैसे आपका जो लाइफ मोटो यही तो है। बिल्कुल ऐसे ही चलना चाहिए जिंदगी, मतलब आजकल आप वैसे भी इतने बड़े तैराक हो चुके हैं, डूब के जाना है नहीं, तैर के जाना है। अच्छा, आप तो तैर सकते हो ना, आप तो वो फेलिप्स हो। हम फेलिप्स नहीं, जेंकिन फेलिप्स, हम गुड़गांव के फेलिप्स, डैडी फिक्सेस। बट फिलहाल आई थिंक इस समय माटू फिक्सेस, जैसे आपको कोई डैडी बोलता है ऐसे, मतलब जिस तरीके से आप चाहते हो सुनना, उसके वजह से आपको इतनी परेशानी होती है, आपको हफ्ते तक नींद नहीं आती। बिल्कुल, मतलब रातों की नींद मतलब मेरी चली जाती है, क्योंकि मैंने बोला था ना स्नाइपर के 3 आइटम्स में क्या क्या आएगा, जूता, ड्रैगन लैंस और एमओएम। टिपिकल, यू नो, आई नो एजिलिटी प्लेयर्स, आई एम अ वेरी गुड कैरी। खूबी है, मतलब आई एम अ गुड कैरी। बिल्कुल, ये सब भाई भूटानी के यू नो छत्तीस के आपने सीखा है। बट फिलहाल यहाँ पे काउंटर गैंग करने की कोशिश, रेजोल्यूशन यहाँ पे भाग नहीं पा रहे, आइस पाथ में भी फंस चुके थे,
बट फॉलो अप नहीं, माना उतना नहीं है जाय के ऊपर, तो दे माइट टेक सम सेकंड थॉट्स। बट देखिए यहाँ पे मिड के तरफ बॉक्सी के ऊपर बॉक्सी भाई आप नहीं बच सकते भाई तो ना बच रहे। बट चलिए मीके अभी तक जिंदा है तो ये एक अच्छी खबर है। बट अगर ऐसे ही गेम चलता गया तो आई थिंक टीम सीक्रेट, जैसे नासिर बोल रहे थे, वो मिड गेम पे जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं वो शायद कंट्रोल लेने में सक्षम रहे। अब जैसे नासिर ने बोला था ना बीकेबी के बाद एक आइटम, देन ही सेड ऑर्किड ऑफ 11 सेप्टर, और मैंने बोला था सांजन गाया। सो इंस्टेड ऑफ सांजन गाया ही वेंट फॉर विचब्लेड। विचब्लेड एक काफी अच्छा आइटम है और चेजिंग आइटम है और सामने को स्लो भी करता है, डैमेज ओवर टाइम भी देता है एंड बट इट्स अ कॉस्टली आइटम, उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। बट जाय को दूसरी बार उनका जो स्टन है, जो चार्ज है, वो मिस आउट हुआ है। इससे पहले भी कोशिश की थी जब उन्होंने पीछे से इंसेनिया ने एक अच्छा सपोर्ट दिया था। बट अगर सपोर्ट्स की भी बात करूँ ना, आई फील लाइक कि साइलेंसर से ज़्यादा एफर्ट, मतलब कहते हैं ना इफेक्टिव जकीरो है। बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूल ब्रेथ, एक स्किल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्किल मेक्स यू लिटरली वेरी स्लो और डैमेज ओवर टाइम। अगर आपकी टीम में किसी के पास वेल ऑफ डिस्कॉर्ड है, अरे सब खत्म हो जाता है। लिटरली एचपी ऐसे जाती है जैसे जल रहा हो इंसान। लिटरली जलेंगे। फिलहाल के लिए मीके ने ले लिया है आर्केन रून। और मैंने टाइनी की भी आइटम क्या बोले थे, ब्लिंक डैगर, इको सेवर, और वो दोनों आ चुके हैं। अब अगला आइटम अगर इन्होंने सिल्वर एज बना लिया, इसका मतलब रेडिएंट का जितने प्लेयर्स हैं सब थ्रेट में रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, जस्ट बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिटिव गेम, दिस इज नॉट 3500 MMR गेम जो मैं खेलता हूँ। बट ओके, बस साइलेंसर काफी आउट ऑफ पोजीशन, बट आई शॉट थोड़ा सा मिस आउट हो गया, उनका खुद का रास्ता भी बंद हो गया। बट टम्बलर टॉय का बड़ा ही खूबसूरत उपयोग, बट दैट मोहम्मद अली पंच एंड इट वाज ऑल। क्रिस्टालिस ने इंस्टेंटली यहाँ पर वुकोंग कमांड मारने की कोशिश की, उन्होंने टॉस करके बचाने की कोशिश कर ली, बट यहाँ पे पोजीशन 5 वर्सेस पोजीशन 1। बट यहाँ पर निशा भी गेम से बाहर हो चुके हैं। मैक्रो फायर, ड्यूल ब्रेथ, लिक्विड फायर, एवरीथिंग ही टैंक्ड एंड दैट एचपी वाजंट एनफ। अभी लिक्विड के पास एडवांटेज है जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोर 2 गया है सीक्रेट का नीचे साथ साथ पोजीशन 5 के साथ। बाकी के सारे पे दे विल बी फॉलिंग बैक, बट मिकी को ध्यान देना पड़ेगा कि ये गैंग वन साइड नहीं होता है, उनको अंदर जाकर बाहर भी आना है। बट आइस पाथ लगता है उससे पहले ट्री डांस यूज किया एंड ही वेंट बैक। सम फास्ट हैंड्स डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीम सीक्रेट कोर 1 क्रिस्टालिस। एंड देखिए सबकी फाइट यहाँ पे शुरुआत हुई थी और the very first time he tried to do Wukong command, second time he went down, third ये देखिए Wukong command 3 बार कैंसिल हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे पॉपी का भी इफेक्टिवनेस हम लोग को देखने को मिला था, एटलीस्ट साइलेंस करके गए थे एंड टाइनी सॉर्ट ऑफ बिकेम इनएफेक्टिव, वहाँ पे अपने स्किल्स का प्रयोग कर ही नहीं पाए उस सिचुएशन में। अगर ग्लोबल मारने का चांस मिल जाता पप्पी को, देन निशा नहीं मरते, क्योंकि ना मैक्रो फायर लगता ना आइस पाथ लगता। नासिर, योर अप्रोच इन दिस गेम इज अमेजिंग, बट बीके भी यूज करके ट्रैम्पल किया, डैमेज देखिए कितना ज्यादा दे रहे हैं। मिकी को बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी पड़ चुका है, ही इज द फर्स्ट वन टू गो आउट ऑफ द गैंग। पप्पी भी यहां से गेम से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, बट फिर से हमेशा एक ही ट्रेड हो रहा है। Why the fish? Why this guy Mickey is dying every time? Because he needs to realize उनकी जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैजिक वॉन्ड यूज कर असैसिनेट को तो उन्होंने अभी तक डॉज करा, बट ही इज मूविंग टुवर्ड्स द टॉप tier 3। आई थिंक बॉक्सी हैज ऑलरेडी स्पॉटेड हिम और मे बी हिल गो, बट उतनी देर में भी क्रीप नहीं आएंगे। 14 सेकंड और हैं और 30 सेकंड में क्रीप आते हैं, बट बॉक्सी लॉस हिज ट्रैक एंड रेस्ट। लिक्विड गाइज दे आर अप टू रोशान एंड सीक्रेट को कुछ आइडिया नहीं है, बट दे कैन रोशान, उनके पास काफ़ी अच्छा शार्पनेल है, साथ साथ वैम्पायर ऑरा लगाकर यहाँ पर एचपी सक करने की पूरी कोशिश ब्रूड मदर की तरफ से, और ड्यूल ब्रेथ, लिक्विड फायर, दिस थिंग्स आर एनफ। और सीक्रेट को कोई आइडिया नहीं है, ये रोशान उनको एडवांटेज जरूर दिलवाएगा। एंड सीक्रेट करती भी नहीं क्योंकि उनके बीकेबी यूज हो चुके थे, क्रिस्टालिस ने अपना बीकेबी यूज कर लिया था, तो अगर वो डाइव करने जाते देन देयर इज अ हाई चांस। एंड आप देखते हैं क्यूओपी की अल्ट सिर्फ अभी आई है, तो इट वाज अ डाइसी सिचुएशन एंड तो उन्होंने ये स्किप कर दिया। I think this was much needed, but more than Matu at this point, अगर मीके रखते ये चीज़ तो मुझे थोड़ा बेटर लगता, क्योंकि मीके has been dying in the fights right from minute 1। जब भी हम fights में देख रहे हैं, एटलीस्ट लास्ट 2-3 fights में काफ़ी इनएफेक्टिव रहे हैं मीके, एंड ही नीड्स टू रियलाइज कि जो अर्ली एक फार्म लीड मिला था वो उनके हाथों से धीरे धीरे जा रहा है। अब देखिए नेटवर्क पे ही इज ड्रिप डाउन और क्रिस्टलिस यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी उन्होंने दिखाई है, बट माटू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑन द टीम राइट नाउ मे बी। और ये चीज़ हमने देखा लिक्विड की तरफ से, दे आर नॉट प्लेइंग लिटिल पैसिव, दे आर प्लेइंग अ लॉट प्रोएक्टिव, यहाँ पे फाइट्स फोर्स आउट कर रहे हैं, दे कीपिंग देम इनटू थिंकिंग। बट टीम सीक्रेट का भी जो रिस्पॉन्स रह रहा है
जो अर्ली ऑन थोड़े बहुत छोटे मोटे मिस्टेक्स रह गए थे उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सुधार लिया है। सिर्फ पप्पी का नुकसान हो रहा है, बट उसके बाद जो इम्पैक्ट, ओ भाई देखिए किस तरीके से कहाँ गए पप्पी मेल्ट डाउन हो गए। एक स्किल आया एंड ग्लोबल साइलेंस भी इस्तेमाल कर दिया। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट फाइट इट्स गोना बी लिटिल इनइफेक्टिव, कोई फायदा नहीं रहेगा काफ़ी देर तक ग्लोबल साइलेंस ऑन सिटी। तो टीम लिक्विड को एक अच्छा एवेन्यू मिल गया है कि और थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। दे हैव द एजेस, दे गोना यूटिलाइज इट। C2. Okay, then यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, but the stunt house combo and ice path and a macro fire and everything he used on to eliminate Secret's Nisha. I think Liquid is not going out without giving a fight. So game 2 तो काफ़ी strong लग रहे हैं जेंकिंस। आपको क्या लगता है कि are we going to witness the game 3? Yeah, definitely. I mean, अगर इसी प्रकार गेम चलता गया, अगर ऑब्जेक्टिव्स टीम लिक्विड अच्छे खासे तरीके से लेती गई, जाहिर सी बात है गेम 3 देखने की मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये गैंग के बाद आई थिंक टाइनी को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फार्म भी मिल चुका है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बट क्रिस्टलिस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनका फिर से योगदान। ये गेम के पास पोटेंशियल भी है, थोड़ा सा लेट गेम अगर खींच सकते हैं क्रिस्टलिस भी। अब सीन है कल सिंगल हैंडेडली कितने देर तक खेमा संभाला था पूरा अपने टीम का, और यहाँ पे फिलहाल के लिए टीम लिक्विड एक और ऑब्जेक्टिव टियर 1 टॉप लेने के फिराक पे। I don't like this BKB option. काफी अच्छा ले रखा है मुझे लगता नहीं टाइनी का BKB इतना वो होगा। हाँ, टीम को गेम में खड़ा करने के लिए काफी मजबूत रहेगा, बट he needs to realize this कि वो even just to tank के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, उनको कुछ इफेक्टिव भी दिखाना पड़ेगा। सिल्वर वगैरह लेते मे बी he could have done more, अगर वो सिंगल एलिमिनेशन पे जा सकते थे। आई डोंट नो, बट BKB से कितना टीम फाइट उनका स्टेबल होने वाला है। बट मार्टू के पास इतनी रेंज है कि विदाउट इवन कमिंग इनटू द टावर्स रेंज ही इज गिविंग अ सीरियस डैमेज टू द टावर, और पीछे से जाय का सपोर्ट आ रहा एंड धीरे धीरे करके लिक्विड इज एक्वायरिंग द मैप एरिया। सारे टियर 2 लेने का मतलब है इसका, अब वो श्राइन ले सकते हैं। श्राइन मतलब जहाँ से पूरा उनका आउटपोस्ट आता है, उसके वजह से एक्सपीरियंस गेन के अंदर भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। बट रेजोल्यूशन चार्ज टुवर्ड्स द मिड एरिया, उसके बाद TP करके निकलने की कोशिश वो कर सकते हैं, बट अभी भी बाकी के रेडियन प्लेयर्स भी उनके आसपास है, जैसे मंकी एंड क्वीन ऑफ पेन एंड द पापी, और अकेले एक प्लेयर जो ऊपर है दैट इज जैक। जैक को भी बेसिक आइटम की जरूरत है, वरना हमेशा टीम के साथ दिखते हैं। अगर अभी थोड़ा सोलो खेल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आइटम्स की दरकार होगी, तभी अलग वो लेन में बैठे हैं। मुझे वो मैथ्यूज के निक्स असैसिन के याद आ गए। Oh my God. That was one of the most epic निक्स असैसिन हमने देखा था। 10 मिनट में वेस्ट हो गए थे, उसके बाद अगले 15 मिनट जाके डायर के साइड बैठे थे। बट फिलहाल के लिए एक अच्छा पिक ऑफ मिलता हुआ। Well, it's just बहुत जोर से भाला मारा है। हाँ, बहुत जोर से इंसेनिया थे, तो मतलब लिक्विड को खास तौर पर कोई बड़ी चोट नहीं लगेगी। बट जी हाँ, टीम सीक्रेट को आई थिंक एट इस पॉइंट पे अपना जो कंट्रोल उन्होंने गवा दिया है मैप का, वो थोड़ा सा वापस रीगेन करना पड़ेगा। एंड अगर नहीं कर पाते तो परेशानियाँ होंगी। फिलहाल के लिए एक फोमैन स्मोक यहाँ पे अग्रसर कर रहे हैं, एंड देखते हैं इसका क्या कमाल दिखा पाएंगे। फिलहाल जाय को स्पॉट आउट भी कर दिया। बाउंडलेस स्ट्राइक का बहुत ही फायदेमंद इस्तेमाल, और यहाँ पे एक पिक निकाल लिया है। टीम लिक्विड जाय के बिना तो फाइट में एंगेज नहीं करना चाहेंगी, तो छोटी मोटी चोट यहाँ पे अच्छी खासी जीत होती हुई टीम सीक्रेट की। स्मोक्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड नासिर आई थिंक ये मैच इज़ फार फ्रॉम बीइंग ओवर नाउ। ये मैच अभी बहुत बाकी है। अभी निशा के पास BKB आ गया है, तो वो फाइट में थोड़ी देर टिक पाएंगे। आप लास्ट 2-3 गैंग में देख रहे होंगे कि जकीरो के सारे स्पेल्स वो टैंक कर रहे थे और उसी में मर रहे थे, बट अभी उनके पास BKB है। देन मैजिकल डैमेज अगर उन पे इनएफेक्टिव होता है, देन ही कैन डिश आउट अ लॉट ऑफ हिज ओन मैजिकल डैमेज। मार्टू की एजेस भी चली गई मियाँ, इसका मतलब इस एजेस की टाइम में द ओनली थिंग लिक्विड डिड वाज टू एलिमिनेट ऑल द टियर 2 टावर्स। बट the bad part, the sad part, the confusing part is कि हाँ, स्नाइपर गॉट डेडलेस। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करी उन्होंने। आई थिंक बिना BKB डिड ही टेक BKB। अगर ये स्नाइपर खुला रह गया, ये स्नाइपर आत्मा खींचने का दम रखता है, बट अगर कोई चढ़ गया इस पे, QOP ने अगर ब्लिंक कर दिया BKB मार के उनके ऊपर, हाँ, then he is dead। आई थिंक लाइक HP इतनी है कि वो क्वीन ऑफ फेन को टैंक कर सकते हैं, बट डेडलेस के अगर फटके निकल गए, देन क्वीन ऑफ फेन के भी एग्जिट हो सकते हैं। उनके अल्टी में जो बैक पीछे ढकेला जाता है, तब आप हिट नहीं कर पाते हो। एंड उनका एक स्पेल भी एक आएगा, टैलेंट आएगा, फियर भी हो सकती है। वो 25 लेवल पे आएगा। मियाँ आप देखो, आई नो दैट यू आर वन ऑफ द हाई टैलेंट्स इन द डोटा, बट इतना भी वो मत समझो हमको जेंकिंस।
देखिए ओ तेरी एक के बदले दो आ गए यहाँ पर। बेहतरीन उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे बीके भी जरूर ट्रिगर किया है बट कोई फायदा नहीं रहेगा फिलहाल के लिए। यहाँ पे बॉक्सी को वापस भेज दिया गया है बट मीके ही इज ऑन द रिट्रीट बट बाउंडलेस स्ट्राइक आता हुआ वूकॉन्ग्स कमांड का इस्तेमाल करेंगे बीकेबी का सही टाइम पे इस्तेमाल करते हुए मीके बट ये देखिए पेड़ फेंक मारा उनके मुंह पे और वो चले गए वापस फाउंटेन की तरफ। इंसेनिया हैज बीन रियली इंसेन इन दिस माटू जिस तरीके से डैमेज डिश आउट करते जा रहे एक के बाद एक बट फिलहाल उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है बट अब 4-4-2 ट्रेड एक अच्छी खासी जीत टीम लिक्विड की इस फाइट के अंदर होती हुई प्रेशर डालेंगे जी हाँ टियर 3 के ऊपर और ये टियर 3 तो कहीं नहीं जा रहा। जकीरो भी हैं साथ साथ ब्रूड मदर भी हैं आपको पता है वो जो थर्ड स्किल का इनको प्रकोप पड़ता है तो काफ़ी मुश्किलें होती है और यहाँ पे पपी की एक कोशिश टाइनी पे ब्लिंक है स्टंट टॉस विल बी इनफ टू इरेडिकेट Puppy from this planet Earth. They know what they're doing. They want the tower. निशा ने अपनी अल्ट यूज नहीं की है लास्ट गैंग में उनके पास बीकेबी वगैरह सब था he could have burst out 2 people with his ult नहीं कर पाए बस मुश्किल हो गया उनके लिए he couldn't use it maybe he got this is the way I don't know where Zack came in and Zack को तो एलिमिनेट करा देखो स्टंट टॉस के बाद he didn't get any option वो तो मर गए उन्होंने बीकेबी ऑन कर रिट्रीट किया टस्को उन्होंने पिक ऑफ करा एंड क्रिस्टालिस लिटरली he was on to the Mickey बहुत कम HP में बचे थे उन्होंने पेड़ उठाया एंड पेड़ से yes it was the पेड़ who did the job। यहाँ पे माटू देखो माटू की HP बहुत कम थी माटू जाने से पहले he did a lot of damage Zack का बायबैक था एंड I think Zack died again that stunt toss this stunt toss is too much आसान नहीं होता यहाँ पे बचने के लिए। अगर मिकी मर जाते तो मैं सोचता ठीक है गैंग फिर भी सही रहा बट मिकी जिंदा रहे अगर कोर जिंदा रहते देन इट्स अ विन विन और टाइनी को फायदा जरूर होगा। टाइनी जैसे जैसे आइटम बढ़ाएगा टाइनी विल बिकम मोर फेरोशियस। तो मिकी के पास माना हो चुका था अभी रिप्ले में देखा था तो मिकी डिडंट हैड माना अगर मिकी के पास माना रहता मिकी बोल रहा निशा के पास माना रहता तो माथू और मिके दोनों मर जाते हो गए एंड बहुत जल्द मरते एंड नॉट जस्ट दैट आई थिंक जब वो फाइट लेने के पोजीशन में थे एक प्रॉपर फाइट ब्रेकआउट किया था इट वाज द 2 टैंकी प्लेयर्स फ्रॉम लिक्विड जो उनके सामने थे। आई थिंक उनका इंटेंशन भी ये था कि अपना अल्ट बचा के रखा था जस्ट स्टिल टू ट्राई एंड टेक आउट द स्क्विशी वंस मे बी टेक डाउन स्नाइपर बट उसके बाद अपने आप को रीपोजिशन भी किया था और वापस फाइट में आए थे। एंड जैसे नासिर ने बोला ज़रूर उस बात से सहमति रखता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि आते ही फिर उसके बाद बीके भी नहीं था सस्टेन ही नहीं कर पाए उस फाइट के अंदर और अभी देखिए किस तरीके से यहाँ पे उनके टावर्स जा रहे हैं एक के बाद एक टावर्स के ऊपर डैमेज दिए जा रहे हैं और आई थिंक ये बॉटम टियर 3 HP is too much जी हाँ बहुत ज़्यादा 5-man smoke टीम लिक्विड की I think सारे स्पाइडरलिंग्स यहाँ पर मरते हुए दिखेंगे बिकॉज उनको स्क्रीम पड़ा है और साथ साथ पड़ा है उनको कर्स। मैं याद आया कि जब इतना फार्म वो खा रहे हैं साइलेंसर तो फिक्सेस आपसे पूछ लेता हूँ क्या आपने हमारे खाना ऑर्डर कर दिया है? देखिए आपने तो मतलब प्रोटीन बार के सारे जिंदा रहने की ठान रखी तो आपने नहीं किया ना नहीं कर पाए थे आपके लिए आपने मियाँ के लिए कर दिया मियाँ के लिए वो 10 किलो का आटा का वो भी कर दो बंडल ठीक है आटा कर देते हैं 1 महीने का राशन मिल जाएगा बट फिलहाल के लिए राशन की सख्त दरकार टीम लिक्विड को क्योंकि यहाँ पे माटू पिक ऑफ हो चुके हैं एंड ये एक बहुत खराब शुरुआत है इस फाइट के अंदर क्योंकि मीके को भी बहुत ज़्यादा कुटाई पड़ रही है बेचारे निशा तक को नहीं मार पाए इस सिचुएशन में और टीम सीक्रेट आप देखिए यहाँ पे दे आर डेफिनेटली फाइटिंग बैक और 2 प्राइमरी कोर्स को यहाँ पे गिराना टीम सीक्रेट के लिए एक बहुत ही किफ़ायती जीत आप बोल सकते हो। जाई फिलहाल ऑन द चेस रेजोल्यूशन को ढूंढने का प्रयास कितने सारे ब्रूडलिंग्स हैं बट एक बाउंडलेस स्ट्राइक आता हुआ सारे ब्रूडलिंग्स खाता हम खल्लास। रोशन अवेलेबल है सीक्रेट रोशन जाकर स्टेबल कर सकती है गेम एंड जैसे मैंने आपको बोला था क्यूओपी अगर स्नाइपर पे चढ़ जाएगी वो बर्स्ट करेगी और लास्ट गैंग में वही हुआ क्यूओपी सीधा गई स्नाइपर के यहाँ बीकेबी खोला और सारे स्पेल्स मारे और स्नाइपर वाज डेड। आई थिंक दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चाहिए बट फिलहाल के लिए यहाँ पे कमिट कर गए थे पिट के अंदर और यहाँ पे बॉक्सी को गवा दिया वेंट इन फॉर दैट स्टील बट अब देखिए जैक ने यहाँ पे इंसेनिया को भी स्पॉट कर लिया है और ये भी नहीं बचने वाले हैं जिस तरीके से इनकी हालात हो रखे हैं। स्नाइपर फिलहाल आगे बॉक्सी ने बायबैक किया टीम लिक्विड वांट्स टू फोर्स दैट फाइट निशा जस्ट बेयरली सर्वाइविंग विद एन एचपी आया यहाँ पे असैसिनेट बट नहीं
That was Yasha. That was Yasha and plate fail. और यहाँ पे इंसेन प्लेज यहाँ पे टीम सीक्रेट पुल ऑफ कर रहे हैं। माटू फिर से दिक्कतों में फंस चुके हैं, बट यहाँ पे क्रिस्टलिस डैमेज देने की पूरी भरपूर कोशिश, बट नहीं, इस बार लिक्विड ने टर्न अराउंड किया और ये एक मेजर फाइट जीता जिसके बलबूते पे यहाँ पे फाइट ले सकते हैं, रोशान को किल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हेल्बर्ट भी खत्म हो गया है, तो अभी माटू की तो जिंदगी हराम है अगर बीके भी नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे एजेस भी माटू ने ले रखा है और बीकेबी भी आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आ ही जाएगा 500-600 गोल्ड। तो वो कनकसिव वो ग्रेनेड आता है, स्नाइपर का शॉट क्या करता है? कंकसिव ग्रेनेड आपको पुश करता है डैमेज ओवर टाइम, और आप एक तरीके से फ्लेम ब्रेकर है बैट राइडर का। सो जितने भी स्क्विशी प्लेयर होंगे जैसे कि साइलेंसर हो गया, जैक हो गए, इवन थोड़ा तो इम्पैक्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ फेन को भी पड़ेगा बिकॉज स्पाइडरलिंग्स का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक बॉटम साइड मेगा 7000 की नेटवर्क इज टू मच अभी के लिए, बट वही बात है इनिशिएशन कैसे होता है, फाइट पे पोजीशन कैसी है, उसकी वजह से गेम आगे बढ़ेगा। बट आगे टॉप पे बहुत बड़ी लेन आ रही है, एक जिंगू मास्टरी, एक बाउंडलेस क्रेट विल बी इनफ। यस इट इज, ढेर सारा कैश, एक लिक्विड कैश। मंकी किंग बेसिकली अभी बाबू भाई बन चुके हैं। नहीं वो तो राम का डायलॉग स्नाइपर का वीकेंड आ गया है, बट ही डजंट हैव अ बायबैक। अगर वो मर जाते हैं जी थोड़ा सा मियां माइक ना नीचे कर देते हो ना, वो झाड़ियों में माइक फंस जाया है। आपकी आवाज सुनने में हमको बड़े मजा आता है और आप बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन देते हो जो फिक्सेस से तो नहीं आएगी। देखिए फिक्सेस जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कोई नहीं दे सकता आपको, मैंने पहले से बता दिया। ऑब्वियस सी बात है, अनलॉजिकल और इनवैलिड इन्फॉर्मेशन कौन ही देता है। बिल्कुल, किसी ने कल बोला था सीक्रेट जीतेगी, फिर हुआ जस्ट बिकॉज सट्टा आपका अच्छा है तो डजंट मीन आपके। नहीं, बट फाइट यहाँ पे शुरू हो चुका है और देखिए यहाँ पे प्राइमल बीस्ट भी घुस चुके हैं, वुकोंग्स कमांड खोल दिया गया, सारे प्लेयर्स ग्लोबल साइलेंस हो रखे हैं और यहाँ पे स्नाइपर के पास एजिस जरूर था। अब पीछे से देखिए क्या डैमेज आउटपुट आ रहा था। फिलहाल यहाँ पे क्वीन ऑफ पेन ने अपनी अल्ट चला के इनकी एजिस तो फोर्स आउट कर दी, बट देखना पड़ेगा फाइट के अंदर वापस से किस तरीके से अपने आप को मंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलिस डाउन हो चुके हैं और ये देखिए टियर 3 टॉप का हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अब स्नाइपर पीछे से और ज़्यादा डैमेज देते रहेंगे और ये रैक्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से टीम लिक्विड की झोली में आ जाएंगे। तो टीम सीक्रेट ने फायदा उठाने की कोशिश की थी, फिर से ये बहुत ही इम्पैक्ट विजन नहीं है क्या? यहाँ पे ट्रैम्पल किया गया है, पल्वराइज करने की कोशिश। यहाँ पे जाय काफी लो एचपी पे, उनको भी दे धमाक गिरा दिया गया है। बॉक्सी हैज बीन ट्रेडेड ऑफ, बट उसी के साथ ट्रेड्स आ भी रहे हैं उस छोर पे भी, और यहाँ पे चीजें काफी संगीन हो चुकी हैं। अब देखना यही रहेगा कि यहाँ पे टीम लिक्विड यहाँ से कहाँ जाते हैं। आई थिंक इट्स ओवर। मिकी ने तो अभी तक अटैक स्पीड तक नहीं बनाई है, मतलब सही में दिस टाइनी वाज नॉट कोर 1, इट वाज पोजीशन 5, पोजीशन 4 मोर ओवर। मतलब स्टंट टॉस की वैल्यू थी, जो काम था माटू ने किया। माटू प्लेड अ गट्सी बिल्ड, ही गॉट डेडलेस बिफोर बीकेबी, आफ्टर बीकेबी ही इज अनबीटेबल। एजेस का फायदा उठाया, एजेस जाने दी बिना बीकेबी प्रॉक करे, उसके बाद दे वेंट इन। अब देखिए उनके पास मेरे ख्याल से A1 साइड क्लीन बैरिक्स है, बॉटम पे एक मीली बचा और मिड पे भी शायद कुछ रिमेनिंग्स हैं, बट लिक्विड के पास अब एक कंसिडरेबल एडवांटेज आ चुके हैं। दे नीड टू हैंडल दिस माटुम्बा ASAP। गैंग के अंदर सबसे पहले माटुम्बा को टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर माटुम्बा को फ्री टारगेट मिले देन इट विल बिकम रियली टफ फॉर टीम सीक्रेट टू स्टैंड एंड सर्वाइव बिफोर दिस माइटी टीम एंड माइटी प्लेयर स्नाइपर। जी बिल्कुल, अब तो आउटपोस्ट का भी कंट्रोल ले चुके हैं, 2 टावर्स भी खा चुके हैं। अब बचा क्या है, टीम लिक्विड थोड़ा और फार्म करेंगे और आइटम्स निकालेंगे, फिर एक और रोश लेंगे। एंड आई थिंक टीम लिक्विड के बायबैक्स बहुत बेहतरीन रहे हैं, नॉट गोना लाई, क्योंकि वो रोश फाइट में उन्होंने पूरी काया पलट दी और वो फाइट की एडवांटेज वहाँ पे एजिस भी मिल गया, स्नाइपर का उनका बीकेबी भी कंप्लीट हो गया, तो बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल इन्होंने किए थे। और आप देखिए अब मतलब बचा ही कुछ नहीं है, बस ये 2 रैक्स एक रैक्स निकालना है, फिर 3 साइड मेगा हो जाएगा, उसके बाद तो मतलब ज़िंदगी ख़राब है। हाँ डील कर सकते हैं एट दिस पॉइंट मेगास को, बट दिस इज गोना रिस्ट्रिक्ट द फार्म सो मच, क्योंकि जब हमारे मेगा क्रीप्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा एचपी भी रहता है, प्लस बहुत कम गोल्ड भी देते हैं, तो प्रोग्रेशन इवेंचुअली टीम लिक्विड का होते रहेगा। और देखिए लिक्विड को ज़्यादा स्टॉल नहीं करना है, एक अच्छा फाइट लेना है और ये गेम को यहीं पे समाप्त करने का उन्होंने इच्छा प्रकाश करा है। फिलहाल के लिए पता तो चल चुका है, ब्रूडलिंग्स आगे बढ़ेंगे। ब्रूडलिंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर रहे हैं, 2 सेट ऑफ रैक्स ही हैं,
बस उनको ख़त्म कर दें तो यहाँ पे लगभग गेम ही ख़त्म समझ लीजिए। निशा यहाँ पे डैमेज देने की भरपूर कोशिश, यहाँ पे आइस पाथ पे उनको रोकने का प्रयास था, बट ये देखिए थर्ड स्किल का भी डैमेज पड़ रहा है। टीम लिक्विड की टावर पुशिंग पोटेंशियल इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। मिकी ने शुरुआत कर दी, हेक्स जरूर कर दिया, बट उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लोबल साइलेंस का इस्तेमाल, फॉलो अप नहीं आ पाया, बट क्रिस्टलिस डैमेज देने की पूरी भरपूर कोशिश, बट ही हैज टू गो ऑन अ रिट्रीट। यहाँ पे स्नाइपर ने अपनी बीकेबी भी चला दी, बट इन टर्न दे हैव आल्सो मैनेज्ड टू सिक्योर दिस टावर। अब रिट्रीट पे रहने वाले हैं, क्या इसके चलते एक और यहाँ पे रैक्स निकाल पाएंगे? यस जी हाँ, 3 साइड मेगा भी हो चुका है और लिक्विड गेम नंबर 3 के काफी करीब जा चुके हैं। करीब तो चले गए नो डाउट, कॉज जब थोड़ा तो और लगेगा ही जब वुकोंग कमांड से खुद ही मंकी किंग भाग के बाहर जाएगा, बिकॉज उनको पता था कि इस वक्त द टीम डजंट हैव दैट अमाउंट ऑफ बैकअप। और वहीं पे इफ यू कंपेयर द आइटम्स, बीकेबी डेडलेस एमएम और हेवी आइटम्स लेकर स्नाइपर बैठे, वहीं पे क्रिस्टलिस के पास अभी भी 2 रेड बैंड थे और आई सॉ बीकेबी एंड आइसोलेटर एंड ऑब ऑफ कोलिजन जो कि 1000 गोल्ड का आता है। सो फार्म में गेम के अंदर थोड़ा पीछे लग रहे हैं यहाँ पे टीम सीक्रेट, बट आफ्टर द मेगा गेम इट बिकम रियली टफ। बट इंटरनेशनल के अंदर 2 से 3 बार हो चुका है। बहन शिवा ने बताया था कि 3 बार कमबैक हुआ था। सो लेट्स होप कि अब कुछ और हो सकता है, और या वी गोइंग फॉर गेम 3, वो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। गेम 3 बहुत पास है, मुझे नहीं लगता कि सीक्रेट प्लस वो फेज भी चला गया है कि मतलब सीक्रेट का वो जो शाइनिंग फेज था, मतलब आधे घंटे पहले फेज था और अचानक से चला गया। यही तो गेम है डोटा क्रैश, यही तो कुछ अदाएं और कुछ बातें हैं आपकी जो आपको एक निहायती 3500 से ऊपर आई है। आप खुद पहुंचे, आप 2000 तक, आपने अपने चाचे मामू को जो अकाउंट दे रखा, वो देखिए कैसे रौंद रहे हैं उनको वहाँ पर। और ये देखिए रेजोल्यूशन काफी कम एचपी में भागने की कोशिश, बट बीके भी यहाँ पर बचाता नहीं है फिजिकल डैमेज से। मैजिक इम्यूनिटी है, बट आई थिंक इट्स द राइट, इज इट टू लेट टू से सॉरी? कम ऑन पपी, लेट्स गो गेम 3, लेट्स गो बारी। I think it's over. क्या गाने गा रहे हैं आप लोग? अरे रुक जाओ, मीटिंग चल रही है अभी आपको पता है। अभी he's a cardiologist, you know cardiologist क्या होता है? Cardiologist क्या होते हैं जो दिल संभालते हैं, है ना? कितनों का दिल संभाल रखा है, ठेका लिया है। बट फिलहाल आखिरी फाइट है गेम की, यहाँ पे एक नाकाम कोशिश और टीम सीक्रेट ताश के पत्तों की तरह गिरते चले गए। ये जो हल्का सा वो दिया है ऐसे एनिमेशन, कार्डियोलॉजिस्ट भाई देखिए फुल रॉ। मंकी किंग को अपनी अल्टी से बाहर फेंक दिया गया था। निकलिए। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं मियाँ। आपको पता है मियाँ टैलेंट क्यों बने? क्यों? आप बताओ जेंकिंस। क्योंकि मतलब बोर हो रहे थे, काम वाम था नहीं, उनको डोटा से प्यार है और आप तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे थे, सो यू लाइक आई स्टेप इन। नहीं, द रियल रीजन बिहाइंड व्हाई फूड। असली प्लेमेकर तो ये निकले फिर। मतलब इंसान इतना नीचे गिर सकता है मुझे पता नहीं था। अब हम दोस्त की मदद करने आए और ये लोग कोई दूसरी बात कर रहे हैं। मतलब अगर मदद कर सकते हो बिना खाना खाए, हम खाना खा सकते हैं। दोनों के पेट देखिए, आपका खाना खा सकते हैं। अपना बजट दे दो तो काफी नहीं है, आपके लिए और चाहिए। कोई बात नहीं यार, थोड़ी तो लज्जा कर लो फिक्सेस। पता ये फिक्सेस रात को बोलता है कि आई नीड टू बी थिन, पतला होना है, फिर सुबह ये चार्ज हो जाता है, फिर इसको ठूसने का है। 87.25 से 86 पॉइंट। ये कितना भी फीड कर ले, ही विल नेवर कैरी। ओके नहीं, आपने मेरे साथ खेला नहीं है जी। जो खेले हैं जानते हैं कितना अच्छा ये खेलता हूँ। नाम चलते हैं उड़ीसा के कैफेज में। हाय पंक, इसीलिए ओडिशा है वो। क्रैट पंक को हाय बोलिए, बत्ती बना देंगे आपकी। नो डाउट, मतलब फिक्सेस अ वेरी ग्रेट प्लेयर, इन्फॉर्मेटिव गाय, बट अगर इनका फोन ले लो तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। फोन का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। फिक्सेस के दोस्तों को हाय बोल दीजिए। वर्ल्ड फेव पंक हाय, थैंक यू सो मच फॉर फीडिंग हमारे साथ जुड़े रहे इन्फॉर्मेशन टू द जेंकिंस ऑफ इंडिया। देखिए जेंकिंस के अंदर एक कशिश है, हाँ, जो फिक्सेस में नहीं है। बिल्कुल है। बस वो जो होता है नहीं है कि मतलब आप एक आर्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कुएं में हो, मेंढक है बगल मेंढक में, के तो कुएं जो है, मछली है वो तैर ठीक से नहीं पा रही, तो बिल्कुल सही बोला है यहाँ पर। बट इट वाज द गैंग जहाँ पर चीजें थोड़ी खराब होना चालू हुई थी, बिकॉज अभी तक 3000 की नेटवर्क थी। आई थिंक रोज फाइट वाज द गेम चेंजर। ये फाइट थी इस फाइट के अंदर इट वाज, हाँ ये भी फाइट थी,
बायबैक वगैरह बहुत हो गए थे और कोर्स नहीं मरे थे, अकेले स्नाइपर थे जो मरे थे। मिकी काफ़ी कम एचपी में बच गए थे एंड दे पुश फॉर द टीयर 3 तोड़ा था, बैरिक्स नहीं ले पाए थे जहाँ पे साइलेंसर के कर्ज की वजह से। इस फाइट में तो कंफर्मेशन हो गया था कि अब चक दे फटे नब्दी किल्ली हो चुका है। देखिए मिकी आए, मिकी ने संटॉस कॉम्बो मारा एंड चलते बने। और आई थिंक उसके बाद और फाइट के अंदर कुछ बचा ही नहीं था। आई मीन रेजोल्यूशन गए बट ठीक टाइम पे बीकेबी प्रॉक्स मोस्ट क्यूओपी कुड डू वाज जस्ट बेट आउट द एजेस फ्रॉम माटू, बट माटू का जो डैमेज आउटपुट था दैट वाज इनसेन। रेजोल्यूशन बेचारे पीछे जा भी नहीं पाए, वो हल्के हल्के से धक्के पड़ रहे थे, हल्के हल्के से धक्के पड़ते पड़ते मर गए। अब तक तो मतलब देखिए अभी थोड़ी देर में ऐसे फेंक निकाला उनको निकलिए यहाँ से वुकॉन्ग कमांड से। और यहाँ पे टीम लिक्विड एक ऐसी टीम है गेस हमेशा एक उनका पैटर्न अगर नजर डालें, दे हैव ऑलवेज बीन दैट कमबैक वाली टीम कि मतलब फर्स्ट गेम थोड़ा सा स्लिप हो जाता है फिर आते हैं मतलब खुकार होके। बट टीम सीक्रेट आई थिंक मूविंग ऑन टू गेम नंबर 3 दे नो कि दिस इज देयर ईयर एंड आई हैव अ फीलिंग कि टीम सीक्रेट इज हेडिंग टू द ग्रैंड फाइनल्स। ऑलराइटी जस्ट बिकॉज आपने बोला सीक्रेट जी, तो मैं सीक्रेट बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो अच्छा सट्टा किया गेम आपने है, बोला। आपका जो सट्टा गेम है ना बहुत स्ट्रांग है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव दिस गट फीलिंग, ये गट फीलिंग कहाँ से आती है आई हैव नो आइडिया। हाँ 6 लोगों से आती है ना। आई एम वेरी 101% श्योर कि जो फीलिंग है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सिखाई नहीं है, कोई लिखाई नहीं है, बस एक सट्टा है कि ये टीम जीतेगी। यही डोटा है। डोटा सट्टा नहीं है, डोटा गेम है। अच्छा नहीं अच्छा गेम है। बोलना कुछ भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी हो जाते हैं, आप सोच के चलते हो एक चीज होता कुछ और है। फिक्सेस वही तो नहीं होने देना है। यू नीड टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज इन योर कंट्रोल, दैट्स व्हाट मोबास आर अबाउट। यस यू हैव टू मेक श्योर इट्स इन योर कंट्रोल, बट जी इफ यू बिलीव इन समथिंग तो पूरी कायनात कहीं से भी कहीं खींच लेते हैं। जस्ट बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल लॉयर ही फील्स लाइक कि हम डम हैं। मैं बिलीव कर रहा हूँ, आप उड़ के छत पे चले जाओ अभी। आप मुंह के बल नीचे कूदो और मैं चाहता हूँ कि क्या आप सरवाइव कर पाओगे। आपके पास एजेस है, यू नेवर नो आप एजेस हो। एग्जैक्टली बट बिलीव करने के साथ साथ वो एफर्ट्स भी देने राइट एजेस तो आपके पास दो हैं। इसके ये आगे ये देखिए, आपने देखे वो अभी आए थे जेंकिंस, इनके मौसी के लड़के हैं। अरे देखिए जेंकिंस को ये जितना बोल दें, हाँ मैं अप्रिशिएटिंग हिज यू नो। अच्छा मैं कौन था वैसे, मेरा डिसाइड नहीं किया हमने। रिसीवर। अच्छा हाँ शिवर यस। तो आसपास भी नहीं दिखते। सही है बेइज्जती कर लो होस्ट की। नहीं भाई यू कॉल्ड योरसेल्फ। I mean Shiver is a legend. I would love to She's be a legend, but अगर same status में achieve कर लूँ तो I think I've made it. आपको मतलब मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगे, आपकी बहुत बिजी स्केड्यूल चलती है। हाँ आपको गेम सीखनी पड़ेगी, वही तो दिक्कत है। आई थिंक डोटा पूरी सीखने के लिए मेरे को तो बहुत लेट हो चुका है इन माय लाइफ स्पैन। नहीं यू आर नेवर टू लेट टू। आई थिंक डोटा से अच्छा स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स आई थिंक एक काउंटर स्ट्राइक है, बट आफ्टर दैट जस्ट बिकॉज़ इट्स यूजर फ्रेंडली, थोड़ा आसान है, लोगों को समझ में आ जाता है, गोली चलानी, बंदा मारना, बम लगाना है। नशा है वो आई डोंट थिंक। आई मीन सी आई कम फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड, मोबाइल बैकग्राउंड से आता हूँ। मजा तो आता है देखने में, बट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स जो लेवल का नॉलेज क्रैट का है और नासिर का है, वहां तक पहुंचने में बहुत साल लग जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, लग जाएंगे मेरे तक पहुंचते मतलब ठीक है जाने, मैं सिखाऊंगा। आपके पास कंबाइंड मेरे ख्याल से 50 साल का एक्सपीरियंस है जो आप और आपकी टीम का है। देखिए जैसा भी है एक्सपीरियंस मैटर्स एक पॉइंट पे, बट यू नो ये हमारे बीच के नहीं, हमारे अभी गेम आ चुकी है सीक्रेट और लिक्विड, यू नो लिटरली एलिमिनेशन अभी खत्म है, सब अपर ब्रैकेट। लिक्विड के 5 बंदे बताओ, आज हो जाए लिक्विड के 5 बंदे बता दो प्लीज। लिक्विड के बंदे कौन कौन? हाँ बताओ। एक हमारे प्यारे बॉक्सी हैं, हाँ जी ठीक है, एक हमारे प्यारे माटू हैं, हाँ ठीक है। पोजीशन भी बता दो ना साथ साथ। अरे देखिए बॉक्सी अभी टस खेल रहे थे। पोजीशन बताओ पोजीशन। अरे वो P4 खेल रहे थे, ठीक है। माटू हमारे कैरी हैं, मीके हमारे मिड थे, ठीक है। ऑफलाइन पे हमारे जाय भाई हैं और जो हमारे सपोर्ट हैं वो है इनसेन यार। भाई पहली बार हुआ है 5 दिन के इवेंट में 6 दिन में कि इसे को सही बोला है। आप लाइक व्हाट आर एफर्ट सर। आरटीसी आए थे वैसे थोड़ी देर पहले स्क्रीन। मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ना उतना अच्छा डोटा खेलना चाहिए जिससे मैं उनका नाम मतलब याद रखूं। लेकिन मतलब ऐसे अगर प्लेयर्स करे जैसे मैथ्यू ने किया था, नाम याद है, नाम एक और याद आता है फिक्सेस ऑलवेज मैच के बाद, एंड दैट इज कैप्टन एक्शन स्लैक्स। सर एक्शन स्लैक्स मैं कैप्टन की बोला पता नहीं, बट लेट्स हेड टुवर्ड्स हिम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Shendo. Happy birthday.
You get to pick one. Great. And somebody else out there, happy birthday to you too. Watch out. There you go. Pick it up. Look at the camera. There you go. Yay. All right, well, back to you guys. Happy birthday to you too, Sheever. Happy birthday. Thank Happy you. birthday, Shearer. Thank you. Yeah, it's a little bit late or early, whichever one you're going. Something that Puppy wanted to have happen, Effie. No, he didn't. When you look at that iteration of Secret from last TI, it had such an incredibly dominant phase throughout the online tournament era where they just felt like the best team in the world, right? And then when potential to go far, but just like in all things, your players get poached. Maybe they get sad, maybe Zai and things Matu change. are very brave. Saying no to Puppy, and you probably needed to say that into his face. They weren't in the same room. They There's no probably way. weren't in the same room. That was actually, it was all done over computer screens. And Puppy talked in that same interview about how much easier it was because it was all digital. Now, it did lead to good results because in the end, they have two players that re-embody that friendship and love. It's Zayat and Rezo. I have a friend, which is Zayas. You know, we played together for like 2 years. It's amazing to, you know, be on the lane with a guy who you really enjoy talking to. So it was the middle of the season, and I was like, yeah, I'm ready to roll, you know. And who do I go with? I have one friend. I have a guy who I can talk to. So we happened to call and was like, yo, guys, yo, bro, what are you gonna do? I were really tryharding in pubs. I played every day around of 10 games, and also my win rate was very high. I back my rank 50, around of 50, and I were very in good form, I guess. So we're like, who we can join, and we're like, maybe some alliance. You know, they're like a bit shaky right here and there. Maybe some NA team, you know, it's always good to come to NA and like, you know, for the qualifiers and stuff. I've been there, I know how it works. Maybe I can do the same, you know. And the third idea was like, maybe Team Secret, but it's like, nah, dude, no way. Like, it's wet dreams, you know. Clement was like, what position are you playing anyways? I'm like, dude, I'm playing offlane for 2 years now. Like, come on. That's such a Clement thing to say, but anyways. We just wait a little bit. And after some time, he's like, yo, bro, I got invited to Secret. Yeah, at the moment when Clement called me, I was so surprised because how to say, I didn't know that might happen, to be honest. And he's like, he's playing there, and then at one point he's like, yo, bro, what are you doing next week? I'm like, what am I doing? I'm playing, you know, chilling. He's like, you want to play a tournament in Riyadh? I was like, hell yeah, like, let's do it. And then basically, like, you know, they decided to make, you know, to try me as a standing on that tournament, and things went great from there on. I'm pretty happy to being here, and also I believe in Team Secret I can do a lot. I mean, long history, so let's see. It was just a thought, but I didn't really believe that it could happen. But you know, here I am, wearing the eye on my T-shirt right now. That's crazy. Life is crazy sometimes, for sure. It's actually incredibly wholesome how both of them are now on Team Secret. And they are on the final day, and they are doing pretty well. Both teams, though, one game away from taking that second spot in the grand finals against Tundra. And only one team can advance, which is a lot of pressure. That is a lot of pressure. You can feel it from all the way over here. We can feel the pressure that is on this
1. Just give it Dota2, Effie. It should be fine, right? It'll be fine. What does it even mean at this point? Top 3 is still top. Yeah. Nah, there's a lot of pressure in this game 3. Yeah, Obviously, both of these teams so badly want to make it to the grand finals. They are the LCQ teams. They were the underestimated teams after the end of the DPC tours this year, and they both have a lot to prove. I think for Puppy, the only thing remaining for him to do is just win his second TI, get that first place with Secret finally, and who knows what's going to happen next for him after that. Same for that, man, although we do know what's going to happen after that. We do, but yeah, going back to pressure, Team Liquid, they had a magical lower run bracket so far. So you know that they've been on the brink of elimination so many times this tournament, beating Entity 2-0, beating OG 2-0, then Thunder Awaken in one of the best series of all time, and then beating Astra as well, clutch series as well, and now pushing into the game 3 as well. But that was just a really wholesome video that we just saw. I'm still thinking about it, but you can really see the synergy between Resolution and Zayats in that one. And I'm also glad that he told that story because at ESL Malaysia, he did mention that they both wanted to join Team Secret, but they didn't really know how to facilitate that. And it just ended up happening for them. So it was just really cool to see. I think Resolution as a player has grown so much over the years. His hero pool has expanded. He's played so many different roles. He's bounced around from region to region, and he announced his retirement after last TI. But as we know, in Dota, Jenkins, nobody stays retired. Really yeah, that's why I look at Matumba, and I think like we've talked about it so much because the absolute legend is retiring. It's like, is he really going to after this run? I mean, Liquid has been backed into a corner 3 times. They've been in that game 3 where they claw it back, right? They've won 3 game 3s in the lower bracket. It's actually been clawing because it was not easy. No, it wasn't easy. Every time it wasn't easy. And then already they weren't supposed to be here. They got in through the last chance qualifiers. So it's like, we talked like previously when we saw them walking on, oh, they look like they feel no pressure, both of these teams. It's because how could their brains have any chemicals left to feel pressure at this point? They've been pressured for like 2 weeks straight. These guys are ice cold now. They really are, but honestly, it's just been so touching to watch both teams make it this far. Obviously, Liquid are carrying with them the weight of their teammates' retirement. We've seen them talk about him with such high regards. And how they want to have one good last run with him. And I really think that this result is more than they ever expected. So hopefully the pressure does not affect their gameplay at this point in this elimination game. And also, we do overuse a word Giga Chat quite a lot, but first time hearing it, Giga Coach. That's a new one. Team Liquid with 3 coaches. 3 people, yeah. It's one entity. We do say, too many chefs in the kitchen, blah, blah, blah. But for them, it seems to be working because everybody, as we've seen in the interview, has a lot of respect and they think without one piece, it would just not work. Yeah, they all have their own role and everybody is respectful, and apparently there's no stepping on other people's toes, which would be very easy to do with a lot of coaches around there. Speaking of coaches, of course, I want to reiterate that we've got Heen and AY in the tournament as coaches that have already won TIs. Blitz, this is his first TI in the booths, and I say that because he has obviously been at a lot of TIs as talent. We're going to find out how much impact the coaches will have had during the drafting of this third and deciding game. Team Secret versus Team Liquid. Game 3. It all comes down to this game 3, all on the line. Both of these teams clawing at a spot. The final game that they want to be playing in this. You guys got to watch backstage. Just before we even see the draft, who do you think has the momentum coming into this? Who are you kind of favoring? Are you just going to stay biased with your old teammates? And for me, I will definitely say Team Liquid. They just won the last game. I can feel the momentum. Everyone is smiling. I just saw them earlier. They look pretty excited to play the game 3, so definitely Liquid. I mean, for sure, I want Secret to win, but you get second pick, you win. It's as simple as this. I cannot just simplify it more.
Yeah, why even play the game, you know? Yeah, yeah. We should just end it after the coin flip. We shouldn't even do the draft. Let it go. This whole thing would be over very quickly. Well, we do have a draft that's going to get taken place now, and you can see a couple of changes already coming out. So the Broodmother taken out of the pool, CM. This was a hero that's also risen in popularity a lot. Marcy and the Lesh. So a couple of those key heroes that we've seen still left in the pool. What are you guys liking? And also, how does that second pick affect the rest of the draft going in? I mean, the second pick is just way easier to draft, and like you will just counter pick into counter pick, and like you just pick on first stage something solid that even if you counter it, it's fine. Whoa. Okay. That is not what I was anticipating. Nobody wants to go out on Silencer. All right, that's just how it is. I actually thought they would pick Silencer when they banned Brood, because now Enigma's in the pool. Actually, Ench is not that bad into Brood because you know the shot. I don't think you guys have seen it before. Little friends. Yeah. Yeah. Because if you put that spell on the enemy target, all the spiders goes on him. It's actually pretty funny. Funny, is it good though? Everybody says that shard is garbage. I actually used it once. It's actually pretty good. People just doesn't know how to use it properly. Okay, all right, I'm with you. Sounds good. Well, they do have, like you said, that Enigma open. Do Team Liquid want to go for it though? Again, that hero has been all over the place in terms of some success, some failure, and Silencer's still in the pool, so if they wanted to swap it to another core role or something, they could do that also. I feel like maybe they want to go for the Lina, because last game the Lina was banned by Secret, now they changed it to Brood. So maybe there is something with the Lina. It should be Enigma, I think. Enigma Tusk, maybe? Oh, you right, Emma. Interesting. So what is it about this Lina? You said there might be something about this Lina. What is it that makes this hero so insanely good, particularly for Liquid? I mean, I think they get what they want. Mickey plays like the carry from the mid lane. Matumba gets his lane winning hero who stuns or just doesn't die, and is just good into the meta. Like the meta mid laners, Lina can lane into Leshrac and Desif. Oh, well, I mean, you got the Lina right now. We got the best hero, the game-winning hero. You know, you're looking for Team Secret to take the W. They've got the Beastmaster. It's got to be feeling pretty good now. They got the natural disaster. They got everything. Natural disaster. Wow. Oh my goodness. Well, the Enchantress definitely applies a ton of early pressure, as does the Beastmaster. I mean, I'm looking at these drafts, and I'm just seeing tower after tower getting taken. Obviously, you do have some good outspam, but Taiga, are you concerned about all of that pressure that Team Secret has running early? I think after what we have seen in Game 1, I think they should have better answers now on Liquid. I think they're looking for something that would fight them, fight the Beastmaster and Ench on the early game. Because right now they only have Tusk and Lina, and they're not like the best heroes. They need to add something else, like something more like a strong early game hero to fight this beast. Because the moment this beast takes your tower, your jungle is done. It's gone, and they need to somehow retake this jungle, and they also need to apply their own pressure. So I think they maybe another sniper game. You know, sniper is pretty good against that to deep push when they come. So but they actually ban them themselves. Huh. Interesting. Zayat will actually get a chance to maybe see some other heroes before he has to pick, which has been a little unusual, I would say, for Zayat this tournament, right? He gets this like first phase hero, just has to deal with it. They end up banning like 3 heroes in a row to try and protect him. So that Enigma, as I said, is still Lindo, but probably going to be Insania's hero out of this phase, and then we're going to have that double counter pick for both Matu and Zai. 10 seconds remaining. Yeah, I can also see maybe Y1 for Insania. He hasn't played a hero for a while, like Y1 Phoenix, sometimes teamfight hero, because they really lack teamfight on the Liquor right now, and they usually want to have at least one teamfight hero on support. Now that I pick Tusk, they will need to add something that synergizes with Tusk, which is like Phoenix, Wyvern, Jakiro, for example, but Jakiro is banned, so we'll see. I do like that Wyvern that you're talking about. That always feels like it's really nice against a Beastmaster, and you pair that together with obviously the little friends and everything else that you got working with you for the Enchantress. It can definitely turn the tides of a battle very quickly. And of course, we've also seen that combination be really good. Winner's Curse into just an LSA, people get blown up. I'm not so sure about the Wyvern. Like the hero is weak, and like the out tempo might be so much. Like he's good into Beast. Beast cannot just send his units how much he wants, but it feels like it
kind of drags his team down. Like you have Wyvern Tusk support, like you don't do damage kind of. Undying. That's a lot of team fight. Whoa. Slipped its way through that second phase of bans this time. Often getting removed here. Obviously started out as pretty much the hero of the tournament, it felt like. I felt like teams had to address it a lot in their drafts, like Snapfires or something to try and handle this Tombstone, someone who can naturally hit it, but I mean the sniper's already gone as well, so could maybe be an option for Secret. Of course, then that's putting Zayats on a... I mean, it's actually a pretty good 4, I'd say, for the way that they like to play their lanes. Definitely could be strong. Needing to come up with some type of an answer. You were talking earlier also about like the Maranas, things like that as a potential answer. Is it like you have to really go super hard on a Tombstone answer, or do you feel like you can get that from like, you know, a little bit here, a little bit there, like some from Enchantress, some from other heroes? I feel like they have Beast and Lynch. They can... It's easy Tomb killers. Like, I don't feel like they have a problem with Tomb. Got some attack speed, got some range, it's always good, but the crowd, at that. You know, they love the player-hero combos. Got themselves an Invoker picked here. I just think that Undying is a good pick for the team fight, but I think Secret have tools to kill that too. Like they have the aura from Beast, and the Inch doesn't really care so much about zombies. It's only the lane that's Undying is being picked for. I will assume like the laning into Beast is actually pretty nice for Undying. Man, this Invoker, every time you get around to it, there's been a lot of different change-ups in the builds too. Do you think with Beastmaster he could go for like an Exort build, or is it still just going to be like Quaswex trying to play fast with the rest of his team? I mean, I know that people would take Quaswex against Lina on mid, but I've only seen Exort Invoker in my team, so... And use Sunstrike on like 2 side lanes, get Midas minute 6, farm on map, 6 lost minute 20. Okay, interesting. Ooh. I think that's probably more like Nisha, you know, like... Yeah. Exort Invoker, to solve the team, that sounds more like Nisha. You, hero if I feel like if I've ever seen one. She's not a group stage hero though, I'll say that much. Playoffs, yeah, this guy's been hurting at TI. But when the game comes down to it, you know, this is one of those heroes that people like to play. I think like if I have that clutch factor in me, this is a hero that can really do a lot of that position 4 role. Thoughts on it? Hate it, love it? Well, I don't really like Shaker to be honest. After playing it in a group stage, it felt pretty weak, and I don't like it into Undying either. It's like, but it makes sense with Beast because you need someone that enables the Beast in lane, right? And like with the Fisher block, you pull back the lane, and Undying can't just chase you down, hit you non-stop. They can actually stay on a lane, and potentially they might have to steal the pull because I don't think this Beast Shaker will fight into Undying. Oh, another answer now as we get some claps coming out from the old Earthshaker. But it is going to be the Lifestealer. So Liquid managed to get it again in the second phase. At this current state in the draft, we're still looking for a carry on Team Secret. We're still looking for something, depending on what it is for Team Liquid, most likely that offlaner. What are you guys feeling at this point? I mean, I feel like they're gonna ban the Razor, but for sure, like if Secret can get the Razor, I think this is such a free win. Like I don't see a way they stop the Razor, even like if they can counter pick it. But probably they will get a ban. I don't think it's hard. Oh, I was gonna say Ursa, but it's banned. Felt like an amazing Ursa game if I was left through. Yeah. Is there any like archetype of a hero that they need? Something that like just what role do they need to fill? I mean, just a solid carry, like who can lane into anything. Like he doesn't really need to care about lane so much. He's laning into Tusk with Ench. Like he's gonna have a good lane. They banned the Enigma, so there is no like insane good hero laner. So like they're gonna have like a good lane, and if he can offer like something good for his team, like if he doesn't like drag his tempo down to his team and his team like with Beast and Ench, and they win their mid and help their offlaner, I think it's gonna be easy win for Secret because the Slapter are not gonna lane into Beast at some point. Is this a Drow pick or Luna's? Potential CK2. I feel like they're banning dogs here. Yeah. Maybe they want some kind of Drow hero, you know, sit back, cause Terrorblade maybe. I mean against Lina that's scary too though.
Yeah, because if you look at Liquid's draft right now, they only have like Snowball to reach the back line. Yeah. You're not gonna have Lean on Dying trying to catch a draw or anything, right? So it's only Snowball plus Infest. I mean, that was the classic answer for a long time against the Lifestealer, those types of heroes. So yeah. Could be something there. I still feel like the reserve value is too high. I don't see like a reason to stop it. Like also like reserve beast combination is very good. Draw. There you go for it. They banned it. This is like the perfect bans for draw, I will say. Like Enigma, Dogsy, like usually great heroes against draw in the lane. And not right now, Liquid, they probably need to find a hero that actually catch this draw on a team fight. Pango. Yeah, that's actually pretty good. Those two. Pango is really nice into draw. Not usually making it this far in the draft. But his lane is gonna be sort of gonna maybe not making like it. And there is Roar and Shaker Fisher, and there is even Stas. Mars too. Of course, has his own issues versus Drow, but at least it's going in. I mean, the Mars looks good, like there is, but it's... Well, we're seeing some speeches out there as I think that they know what they're going to pick and just taking the time now to get ready, hand over heart. They're ready for what could be the last game in this tournament for either of these teams. For Liquid, it could be the last game of that man's career. He's liking what he's seeing. Are they kissing? Okay, I can't tell. It's just a handshake. They're feeling it. They're trying to get the crowd on their side. They're ready. He's doing it for you. And oh my goodness, they pick themselves a brewmaster of all heroes. Everybody's got to get in there. Let's go. I guess they're getting drunk tonight. One way or another. One way or another. People are going to sip it on up, but we'll see. All right, so we are not going to do a coach's interview here at the end, but I want to hear from both of you who you think is going to come away with this. Cut off the biases for a second. Who do you feel like has the better drafts at the very least? I honestly think Secret has a better draft. I feel like this draw is going to have a free game, free lane. I'm not sure how they're going to catch it. They need to find a way to kill him. For me, I see this is the battle of Brewmaster versus Beastmaster. The three of me against the hero who contains the summons. All right, well, we'll have to see indeed which of those two teams are able to come away with the victory here. The lower bracket finals, game 3. One of these teams moving on as we get ready to hop into this one. The coaches have left, the game underway. Gentlemen, thank you so much for joining us through this whole drafting days. I feel like I've learned so much. But now it's time for us to actually get in here as get well. the heck So out of thank here. you very much. Can we hear it for Tyga and Amar? Anyone? Yeah, a lovely draft panelist. Thank you. So we get ready to go into this one indeed, and we'll see who it is that's going to be able to come away with the victory here. Team Secret versus Team Liquid. My goodness gracious, Trent. I feel like I'm just on the edge of my seat here. I kind of have been feeling this the entire day that, I mean, you look at sort of the history of these two teams, both of them with former players that are playing with each other. We're going to do a quick little last speech here moment to Matu before they went up on stage, so we're going to get into that right now. All right, guys, one last time around the bend. Let's fucking get it, yeah? Truly, I really believe in this lineup from the moment that we all got together. I really love all of you guys. I know that you guys are all smiling and it's cringe, but I really do love you guys from the bottom of my heart. Nothing that happens in this game will change that. I'm always so proud of every single one of you. Thank you for letting me be a part of this journey. Sincerely, I wish you all the best. No matter what happens, let's have fun. Yeah? Let's have a smile. No matter what happens, we smile at the end of this, yeah? We enjoy ourselves. Good. I love you, brother. Truly, it's been a fucking honor one way or another. Wait, why don't we just pick Lone Druid? Dusky. All right, एक बहुत अरे ज़्यादा नहीं All right ही fixes बोल दिया मैंने all right ही शांत हो जाइए थम जाइए थोड़ा ऐसे होता है मैं बोलने जा रहा था ब्लिट्स ने क्या heartfelt message दिया अपनी टीम को वहाँ पे आंखों से आंसू निकल गए अरे ठीक है आंसू को संभालिए क्योंकि अभी भी गेम बाकी है सोचिए आप एक ऐसे मैच में हैं जहाँ पे मिलियंस लाइन पे लगे अगर आप हारे पूरी दुनिया आपको देख रही है मिलियंस आ गए ना पॉकेट में यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर और आपके जो कोलैबोरेटर है वो आके आपको ऐसा हार्टफुल मैसेज भेज रहे कि कुछ भी हो no matter we win no matter we lose I still love you कितना इमोशनल मोमेंट अरे यही तो पेशा है
इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो दूसरा टीम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बहुत ही बुरे इंसान हैं। ये बुरे नहीं है, हम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बातें करते हैं। बट यस, अभी मतलब मोस्टली अभी जो ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है अराउंड देयर कंफर्ट पिक्स, हमने देखा है इन सारे प्लेयर्स को खेलते हुए। टीम सीक्रेट का पुशिंग पोटेंशियल इज इमेंस। यू हैव अ बीस्ट मास्टर, यू हैव गॉट एन एंचा, साथ में साथ ड्रो का ऑरा, इन्वोकर भी है, फोर्स स्पिरिट्स भी आ जाएंगे, मतलब वो तो रहता ही रहता है। साथ ही साथ निशा के ऊपर निशा ने जिस तरीके से अपनी कमान कस रखी थी फर्स्ट गेम में, वैसा ही कुछ अगर गेम देख ले मियाँ तो मजे आ जाएं। हाँ, क्रैट कुछ सवाल पूछ रहे हैं फिक्स से। ड्रो का ऑरा है एक बढ़िया सा, नाम में क्या रखा है? भावनाएं समझिए। हाँ। नहीं, ऑरा कोई मरता नहीं है, सब जिंदा रहता है। बट अब गेम थोड़ा सा रुक चुका है जी, वक्त थोड़ी सी थम चुकी है। ये आखिरी मैच होने वाला है, टीम सीक्रेट का हो सकता है या लिक्विड का हो सकता है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो TI 11 से थर्ड पोजीशन पे बाहर, टॉप 3। Top 3, not a bad run, but yes, this TI has been about the domination of the Western European teams. तीनों top 3 teams वेस्टर्न यूरोप कहाँ गए वो चाइनीज टीम, सी टीम्स का अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं वो उस मुकाम तक का, बट कोई बात नहीं। सी टीम्स तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए थे। वही तो हम इंतजार ही कर रहे हैं कि मतलब कुछ बढ़िया देखने को मिले सी टीम्स का काफी टाइम से। बट यस, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल राइज। वो डिसअपॉइंटमेंट चाइनीज, बहुत डिसअपॉइंटमेंट यार। आई वांटेड आरएनजी टू डू गुड, बट उनके जो अलग सिचुएशंस आ गए थे, 4 प्लेयर कोविड हो गए थे, सिर्फ एक बंदा अकेला स्टेज पे बैठ के खेल। दैट वाज वेरी हार्टब्रेकिंग। दैट वाज हार्टब्रेकिंग, आई कंप्लीटली एग्री। आई मीन बुरा लगता है, स्पेशली दैट गेम, क्या मैच था वो एंटिटी के अगेंस्ट। एंड इमेजिन आफ्टर 107 मिनट गेम दैट यू एंड अप लूजिंग, आपके टीममेट्स आपके साथ नहीं है। बट वी आल्सो अंडरस्टैंड कि मेडिकल इश्यूज थे, प्लेयर्स वर नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए वो होटल रूम से अपने खेलते हुए हमें नजर आए। एंड आई एम प्रीटी श्योर ही आल्सो अंडरस्टूड हिज टीममेट्स कंडीशन, but the man stood there, played like a warrior. I have to say huge respect, not just to RNG but बाद में एक और टीम के साथ ऐसा हुआ था, I think it was Thunder Awakening, right? Yeah, जो एक आखिरी प्लेयर, एक ही प्लेयर थे स्टेज पे अकेले में जाता था, like huge props to those players। मैं नहीं कर सकता था ये चीज़, मैं बहुत डर जाता। मतलब वो मेंटालिटी के साथ ही आना है कि मतलब आप सोचिए इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो बट यू आर स्टिल लाइक प्लेइंग ऑनलाइन। जाहिर सी बात है अगर आपके बगल में आपके टीममेट्स रहते हैं, जो एक सपोर्ट मिलता है ना, जो पुश मिलता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे टीम लिक्विड के प्लेयर्स थोड़ी सी प्रेशर बनाने की कोशिश में, बट जैक का वो जो स्टन आया है, फिशर आया है, वो थोड़ी दिक्कतें पैदा करते हुए मतलब एस्केप मैकेनिज्म चले जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार अपने इको स्लैम्स को कैसे मारते हैं, बिकॉज पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जैसा लाइनअप है यहाँ पे टीम लिक्विड का, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर गोइंग टू गो फॉर देयर BKBs। बहुत मुश्किल रहेगा कि कनेक्ट कर पाएँ, बट अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वी नो अर्थशेकर, इको स्लैम, गेम चेंजिंग। हाँ, बहुत सारे गेम चेंजिंग अल्ट्स हैं इनके पास भी, लिक्विड के पास भी, जैसा पांडा की अल्टी हो गई है। देखते हैं ज़ाय कैसा यूज़ करते हैं अपने पांडा वेरिएंट और क्या आइटम मिल जाते हैं। ओ फर्स्ट ब्लड टस्कर मरते हुए, क्या ये डबल हो सकता है? कैन ही? वो लेवल अप हो चुके हैं, सो दैट वाज अ सेविंग ग्रेस फॉर हिम। ओ थोड़ा चेस करते तो शायद ही मेरे हिसाब से उनको मिल जाता, बट स्टिल। Radiant's middle tower is under attack. चलिए मैच की तो फिलहाल शुरुआत टीम सीक्रेट के लिए अच्छी हुई है, फर्स्ट ब्लड मिल गया है। अब देखना यहाँ है कि यहाँ से कहाँ तक जाते हैं। पपी अपने फेवरेट एन्चेंट्रेस लेजेंडरी प्लेयर हैं, चैन और उनके एन्चेंट्रेस के क्या ही कहने, बट जो स्लो भी मिलता है कभी कभार वो बहुत दर्दनाक रहता है। अभी तक शायद लिया नहीं है, स्लो अभी अल्ट हो चुकी है उनकी। हाँ, तो लेवल 6 काफी के चेंजेस बाद हो गए हैं ना, वक्त के साथ डोटा भी बदलता है। लेवल 6 के बाद वो स्लो होंगे। हम आज भी प्यार करते हैं उस गेम से, हम बदल नहीं सकते। इंसान ही क्या जो बदल जाता है। लिक्विड में ज़ाय है जो गेम का पड़ला चेंज कर सकते हैं मिड गेम में अपने लिक्विड के फेवर में, अगर इनका स्टार्टिंग अर्ली गेम अच्छा नहीं जाता है तो। जी
जो पांडा है, जो अग्नम के बाद जो एक एक्स्ट्रा पांडा आता है उनके पास, मतलब वो एक्स्ट्रा पांडा ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा. एंड दे आई थिंक टीम सीक्रेट हैज़ टू इंश्योर कि यू नो रेजोल्यूशन को स्पेशली कि उनको किसी तरीके से बर्स्ट डाउन कर दे. स्टार्टिंग ऑफ द फाइट उनको स्पॉप करने ही ना दे, बिकॉज वंस जाय गोज आउट इन हिज यू नो बेयर फॉर्म्स, प्राइमल बेयर जब आ जाते हैं, मतलब स्पिरिट फॉर्म्स में आ जाते हैं, तब दिक्कत हो सकती है. उनको बर्स्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज पांडा इज नोन फॉर टैंकिंग. बट फिर भी हमने देखा है, it has happened, you know, chain stunts कर देते हो, people have dealt with Panda. Roar, they have to manage there, मतलब roar उसके बाद Fisher, then goes with invoker के tornadoes and all. अगर ऐसे पूरे combine कर लेते हैं, then high chance है. But also could pick out Lina, potential squishy primal roar target. But यहाँ पे disables बहुत सारे हैं टीम सीक्रेट के पास, and Liquid need to get their BKBs online really fast. और यहाँ पे कोशिश जाय को ब्लॉक करके यहाँ पे जैक अगर कुछ कर पाते तो, बट नो, डिड नॉट हैपन. फिलहाल के लिए फॉक्सी स्टिल अप्लाइंग प्रेशर. लास्ट 2 गेम से टस्क खेल रहे हैं, हाथ भी गर्म हो चुके हैं उनके. हैज़ बीन प्लेइंग अ डिसेंट टस्क, नो डाउट. इम्पैक्ट रहा है उनका गेम में काफ़ी अच्छा. बट इस गेम के अंदर अगर सीएसिंग की तरफ नज़र डालें तो माटू इज डूइंग प्रीटी वेल. निशा भी अपने लेन्स में, अगर लीना के अगेंस्ट भी आप यू नो टिक रहे हो, इज एन इन्वोकर, वेरी गुड थिंग. एंड देयर यू गो. फटका धीरे धीरे जितना दूर जाते हो जॉनी उतना ज़्यादा जोर का. जी हाँ. ओ काफ़ी कम एचपी बट गुड ट्रेड्स. पपी थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए रेजोल्यूशन के साथ वापस घूम के अपनी लेन में पहुंचेंगे. 2 कुरियर मार दिए. 2 कुरियर मार. 100 रुपए फ्री. मैथ्यू, इज दैट यू? 3 प्लेट मोमोज. Radiant's top tower is under attack. बट उस पे भी 10 रुपए और बच जाएंगे. भूख तो है. जॉनी पूछ रहे हैं, भूख तो बहुत भूख तो है. भूख कभी मिटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान का अगर भूख मिट जाता है तो वो इंसान हार जाता है. जी आज इतनी डीप बातें कर रहे हैं क्योंकि आज फाइनल का दिन है. आज इमोशनल रोलर कोस्टर से हम यू नो इतने लंबे अरसे का इवेंट है. एंड नो जी हाँ, बीती बातें सब अपनी दिल की मन की बात आज हम करेंगे. बट यहाँ पे देखिए निशा को पिक ऑफ करने की भरपूर प्रयास, और यहाँ पे पिक भी कर दिया गया था. आइस वॉल डाला ज़रूर था, बट अभी वो लेवल तक नहीं आए कि मेजर स्लोज कर पाए या कुछ मेजर इम्पैक्ट दिखा पाए. फॉस एग्जॉट के इन्वोकर हैं. इट वाज अ 3-man गैंग. दोनों सपोर्ट्स को उन्होंने रोटेट करवाया था. स्टिल वर्थ इट इफ इट्स अ निशा इन्वोकर एट योर शॉटिंग डाउन. जायक ने निशा के लिए मतलब मिड पे दोनों के दोनों रून्स उठा लिए, पावर रून ले लिया था. तो ये देखिए बेचारे, अनदर बहुत दर्द लगता है जब अर्शेकर को ना ऐसे मारते हैं. एंड आई गेस यहाँ पे और एक पिक मिलता है. लिक्विड सारे मैप पे प्लेस करते आ रहे हैं. मिड लेन, टॉप लेन, बॉटम लेन, तीनों के तीनों लेन्स में उन्होंने किल्स उठाए हैं. ओ इंसेनिया. ओ चलिए एक इम्पिटस, नाइस. एक काउंटर किल, गुड. बट अगर ये निशा को सनस्ट्राइक पे मिल जाता तो और अच्छा रहता उनके लिए. बहुत. इट्स ऑल राइट. आई मीन वी नो कि पपी एक ऐसे प्लेयर है हु कैन पुल ऑफ दोस मैजिकल प्लेस. एंड अगेंस्ट अ लाइफ स्टीलर आई कैन लाइक द एंचा अ लॉट. बट अभी के अगर मिड लेन की बात करें, यू कैन सी हल्की सी बस लीड है लीना को. अभी वो किल की वजह से हुई है. जी हाँ, वो किल की वजह से मिल चुका है. एंड इट्स अ क्वास एग्जॉट इन्वोकर, सो वी आर गोना सी मोर ऑफ दोस meteors, chaos meteors falling down. एंड ये जो बिल्ड आ रहे हैं, यू कैन हैव एक्सेस टू द 4 spirits. तो वो जो लेन पुशिंग पोटेंशियल है वो टीम सीक्रेट आई थिंक दे कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल. आई डोंट थिंक कि फोर्थ स्पिरिट से आप लेन पुश पे ज़्यादा फोकस रखते हो. बेसिकली फोर्थ स्पिरिट मतलब आपके साथ 2 प्लेयर है लेन में और एक साथ डिनाई भी करते हैं. तो जो आपकी क्रीप फेज होता है ना लेन इक्विलिब्रियम, वो अपने फेवर में हद से ज़्यादा हो जाता है. हर बार आप हाई ग्राउंड पे रहते हो, सामने वाले को ओवर एक्सटेंड करना पड़ता है, गैंग करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और एग्जॉट इन्वोकर की प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो फर्क होगा, बट टैग टीम की वजह से देखिए कितना ज़्यादा स्लो है रेजोल्यूशन. अभी भी उन्होंने अपनी अल्टीमेट कमिट नहीं करी है, बट दैट साइलेंस एंड 2 शॉट्स वन एनफ. लिक्विड के बॉक्सी इज आउट और वहीं पर लाइफ स्टीलर इन्फेस्ट करा क्रीप में एंड ही वेंट टू द सेफ जोन.
इट्स ओके अब एक पोजीशन 4 को अगर खोते अगर मार देते सक्सेसफुल होते हैं प्लान देन हम फायदेमंद बोलते हैं हम तालियां बजाते हैं बट कभी कभी होता है रिस्क लेना पड़ता है बिकॉज रिस्क के आगे रिस्क से रिस्क है तो इश्क है रिस्क इश्क है और रिस्क से बनते हैं नाम और नाम इन्हें बनाना है फिक्सेस आपको बनाना है नाम अरे हमने तो बना दिया कहाँ बनाया आपने अरे देखो वहाँ पे जितने होर्डिंग्स लगे हैं आप कभी कल गुड़गांव में हम घूम रहे थे वहाँ पे देखा नहीं था आपके नाम कितने नाम दिखे थे कि अमृत गौरव बोलते टपाटप देते ऐसा कुछ अरे ऐसी ऐसी चीजें मत बोला कीजिए एंड माता आप चल तो रहे 2GD के नक्शे कदम पर ठीक है बट फिलहाल के लिए जी अगर बात करें हम 3-3 का स्कोर लाइन हो चुका है जेम्स हार्डिंग बोलना है के बार से ठीक है तमीज नहीं आप हमारे लिए हमारे प्यारे क्रैटू हो बट यहाँ पे आई थिंक इसके पिछले वाले गैंग में वी सॉ यू नो ड्रो आल्सो कमिंग इन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फाइट एंड अच्छा है आई लाइक दिस रोटेशंस आई लाइक दिस कमिटमेंट्स दे आर गोइंग ऑल आउट लाइक चाहिए रहता है वापस जाओ फार्म भी अच्छा कर रहे हैं ड्रो जस्ट लिटिल बिट बिलो माटू सो एट अ पॉइंट आई थिंक टीम सीक्रेट को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे भी करके एक एवेन्यू बनाए जिसपे वो गैंग कर सकते हैं उनके ऊपर बट ये देखिए जाय थोड़ा एग्रो आए थे इन्फो कलेक्ट किया जैक को स्पॉट किया पता चल गया कि ड्रो इधर तो ना है इधर ना है तो ऊपर है तो अब इनके जंगल का पूरा कंट्रोल लेंगे सो स्मार्ट प्लेस बाय लिक्विड छोटे मोटे प्लेस डूइंग सम गुड प्ले इम्पैक्ट लेकिन देखते हैं इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है एट द एंड ऑफ द गेम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मैच दोनों की दोनों टीम्स के लिए विनर गेट्स टू मेक इट टू द ग्रैंड फाइनल्स टीपी करके बच के निकलने की कोशिश बट नाकामयाब रहेंगे रेजोल्यूशन अब पकड़े जा चुके हैं माटुम्बा मैन अपने टीममेट्स के साथ मिलके उनको पिक ऑफ करते हुए जाए थे जिनको वो किल मिला हिडन स्पॉट उनको लगा नहीं कि उन्होंने टीपी कर लिया वहाँ पे स्टिल सर्चिंग फॉर द कि भाई वो कहाँ पे था लगुना मार दिया क्योंकि वो रून लेने जा रही थी बिकॉज रून कंट्रोल ज्यादा जरूरी लगा उन्हें लगा 60 सेकंड के अंदर फिर भी ठीक हो जाएगा मे बी दैट रून बिकॉज इनवी रून का एक किल पोटेंशियल बन जाता है यू डोंट नीड लगुना ओ बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल गैंग बिकॉज ना लगुना उनके पास ना उनके पास ड्रैगन स्लेयर है बट आई थिंक पीछे से ब्रू मास्टर आए और उन्होंने काफी हद में मदद करी यहाँ पर मेरे हिसाब से टोर्नेडो की जगह घोस्ट वॉक करते तो शायद से कुछ हो पाता डस्ट यूज कर लिया था और डस्ट भी करा था डस्ट भी मारा था टस्कर ने डस्ट भी मारा था इसका मतलब यही तो चीजें है ना नासिर मियां आपका जो ऑब्जर्वेशन डिटेलिंग है वो बहुत खूबसूरत है और जैसे आप देखते हो और आपकी नजर से दुनिया देखना डोटा की बहुत खूबसूरत लगती है मुझे नासिर मियां ओह प्यारा इको बट बहुत प्यारा सेव इको के बाद बहुत प्यारा सेव बट यहाँ पे फॉलो अप करने की भरपूर कोशिश मीके तो कहीं नहीं जा रहे डायरेक्ट मेरे हिसाब से अभी ये भी मर जाएंगे तो उन्होंने देखिए वहाँ पे गिव अप भी कर दिया डबल वो एक्स चलता है और उसके बाद वो जो प्योर डैमेज भी लगता है उसके बाद जो स्लो आ रहा है आप करोगे तो करोगे क्या फिलहाल के लिए टीम सीक्रेट के लिए एक अच्छी कमबैक इस फाइट के अंदर ट्राई करेंगे टियर 1 पे थोड़ा प्रेशर डालने के लिए उनको पता है लगुना भी नहीं है उनको पता है यहाँ पे पांडा का स्प्लिट भी नहीं है पांडा स्प्लिट फॉर्म भी उनका नहीं है तो पांडा की स्प्लिट पे भी चार्जेस आ चुके हैं यू नो आई डोंट नो वेदर यू गेट विद शार्ड और सेप्टर बट आप दो चार्जेस में स्केप्टर पे आता हां अगेन सेप्टर पे यू कैन गेट 2 चार्जेस समझ रहे फिक्सेस दो बार आपने 2 बार यूज किया 6 हो जाएंगे यही तो जादू है बस कंट्रोल करना है और ऐसा मतलब यू नो देखा नहीं है आज तक करते हुए ये जो आप जो मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हो आप कह रहे हो कि 2 चार्जेस नहीं मिलते देखिए मिलते हैं बट आपको रिफ्रेशर बनाना पड़ता है फिर आप 2 अल्टी चलाओगे स्केप्टर के साथ मिलते हैं बट आई थिंक फायदेमंद क्या है रिफ्रेशर 4 हो जाएंगे तो 2 बार 6 और रिफ्रेशर के बाद 12 बियर ऐसे घूम रहे होंगे मतलब 2 टीम्स का तो मतलब हर एक इधर घूम रहा होगा बाद में ना आपके पीसी में डोटा भी नहीं ना अभी डोटा नहीं है ना आपका ना हम खेल रहे हैं 4 मैचेस हो चुके हैं बट एक साथ आप 2 नहीं चला सकते क्रैट ये सब बेसिक चीज है आपको समझनी चाहिए बट यहाँ पे थोड़ी सी खेत आप क्रैट उनकी इंटेलेक्ट नहीं मैच कर सकते व्हाई आर यू आर्गुइंग विद हिम एग्जैक्टली पता नहीं यू विल गेट लॉयर्ड या आप मैं ये मानता हूँ देखने से आप वकील के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हार्वी स्पेक्टर के कॉलीग कौन होते थे माइक रॉस लुइस लिट ही इज लुइस लिट यस स्टिल द फाइनेंशियल गॉड बट
During this 9th season, I'll get to punch you 2 times then. Fixes the financial god. अगर 2 बार मुक्के खा के पैसे मिल रहे हैं, इसी के लिए तो हम जीते हैं। बट चलिए, अरे देखिए ये तो खून पी लेता है भाई, ये तो बात क्या है। आपको बॉक्सिंग में होना चाहिए था फिक्सेस, अगर मुक्के खा के पैसे चाहिए तो। नहीं, Why don't you become a professional boxer? बहुत मेहनत है। अच्छा, इधर अगर खून पी सकता हूँ बैठे बैठे, एसी चल रही है, तो क्या दिक्कत? कंफर्ट में। हाँ, कंफर्ट में। तो बट अब हम उस ऐसे फेज पे आ चुके हैं, थोड़ा सा मिड गेम के अंदर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, और लिक्विड अभी भी नेटवर्क के मामले में आगे इसीलिए है क्योंकि माटू के पास बहुत अच्छा फार्म है। माटू इज डूइंग प्रीटी वेल। माटू आई थिंक ही वांट्स टू गो ऑल आउट, एंड मुझे भरोसा है कि माटू इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे, बड़ा करने वाले हैं। निशा ने मिडास बनाया है, सो आई गेस इज गेटिंग अप फॉर लेट गेम। हां, आई एम फाइन। गेटिंग अप फॉर लेट गेम। लेट गेम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन लेट गेम पहुंचने से पहले कहीं थोड़ी देर ना हो जाए। क्या बोल रहे हैं जॉनी, बताइए मिके। वो फिक्सेस आपको गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं चुप कराओ। देखिए, मैं चुप कर हो जाऊंगा, आप दोनों मीटिंग पे चले जाते हो, कैसे होगा? हमारे नासिर हैं, हमारे एक्सपर्ट डोटा के। अगले 5 मिनट तक नासिर जी बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही बोला है नासिर जी, आप बोलिए तो कुछ तो बोलिए, आप बात कीजिए थोड़ी। हाँ, गेम के बारे में ही बात करते हैं कि कैसे ये लोग अपना टेम्पो चेंज कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा आइटम आ सकता है जिसके पावर स्पाइक पे कौन सी टीम को एडवांटेज मिल सकता है। अभी देख रहे हैं ओ पांडा, थोड़ा जाई ने थोड़ा मिसक्लिक्स किया है। और एक बहुत प्यारा सा इको, बट आई गेस दोनों भी ड्रो आई है हिसाब से, और एक किल मिलेगा। लीना का लगुना स्ट्राइक, लहूमु लगुना। ओ दिस इज अ वेरी ओह भाई, ये लिक्विड के लिए तो मतलब गॉड लाइक फाइट था। ये बेचारे ड्रो को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। जाए आगे आ चुके हैं, अब ड्रो के ऊपर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल टीम वाइब तो लग रहा है यहाँ पे। कनेक्ट कर दिया और टीपी भी आएगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले अगर क्रिस्टलिस का किल मिल जाता है तो दिक्कतें हो सकती है। मिल भी चुका है, अब टीपी भी आया है, बट यहाँ पे पूरा इंसानिया ने इंसानी फॉर्म में अपने टीममेट को जिंदा रखने की पूरी कोशिश। मिके को जरूर गवाया, पर टीम लिक्विड के लिए होती हुई इस फाइट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज। फाइट बहुत लंबी चली। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कौन हु वाज पिक्ड, इट वाज रेजोल्यूशन हु गॉट पिक्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद लिटरली ही कंप्लीटेड रिस्पॉन्ड टाइम, ही केम बैक टिल देन फाइट वाज ऑन। और ये जो मिकी का ओवर कमिटमेंट था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रो रेंजर, ओके दैट किल वाज वर्थ इट, बट स्टिल अभी मतलब दैट इज माटुम्बा फॉर यू राइट नाउ। ही इज लीडिंग द चार्ट्स, 8300 उनका गोल है। और बस मिकी इज प्लेइंग हिज बेस्ट हीरो लीना से उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस टूर्नामेंट के अंदर, ही हैज बीन इनक्रेडिबल। यस, लाइक यू फिक्सेस। या ऑफ कोर्स, आई मीन हैज टू बी बीइंग एट दिस स्टेज, नीड्स टू गेट दैट। बट ये वो फाइट की शुरुआत है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आई शॉट का इस्तेमाल किया वहाँ पे। रेजोल्यूशन को सांस लेने का मौका नहीं दिया। बहुत प्यारा स्नोबॉल था जिससे सारा का सारा एंटिसिपेट कर रहे थे कि दैट वाज कमिंग। एंड देखिए, एक और पिक, एंड दिस इज अ बिग वन। निशा को शट डाउन कर रहे हैं, माइडस तो बना लिया है, बट कोई जो इम्पोर्टेंट आइटम्स रह रहे हैं। अब देखिए, 4 स्टाफ भी आ गया, चलिए, बट दिस इज एन इजी एवेन्यू, अनकंटेस्टेड रोज जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक टीम सीक्रेट विदाउट देयर इन्वोकर, विदाउट निशा रोस्ट फाइट कंटेस्ट करना चाहेंगे। और एक पॉइंट भी आएगा यहाँ पे, चलिए इन्फो भी आ चुका है, उनको पता है, बट डज ही हैव दैट इको? नहीं, इको का भी आ जाएगा 10 सेकंड में। उसके बाद में भी दे माइट कंसिडर, बट उनको चल के जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। चुराने की कोशिश, बट नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। यहाँ पे जाए नॉट द बेस्ट ऑफ माना, थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हैं, बट इंसानिया पकड़े गए। आई डोंट थिंक ये तो यहाँ से बचने वाले हैं, इनको यहाँ पे भेज दिया वापस फाउंटेन, बट चलेगा। दिस इज समथिंग दैट टीम लिक्विड कैन लिव। मुझे ये लग रहा है गेम 1 के बाद लिक्विड ने ठान लिया है कि भाई हम निशा को फ्री फार्म के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब भी मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं और इंसेनिया के पीछे और वो निशा के पीछे पड़ रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बाद? बताइए कुछ फिक्सेस।
पता है उनको कि निशा को मारना इतना इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर उनका फार्म रोकना कितना इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि अगर एक इन्वोकर एक फाइट के अंदर टिक गया, once you commit your 2 spells, थोड़ी देर बाद और spells आ जाएंगे. So Liquid understanding which target to pick and who to go for, and priority रहती है, and Liquid knows they have to go for it, and वही exactly कर रहे हैं. And just burst down the invoker, भेजिए घर उनको, ख़त्म कीजिए माजरा. तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, and Team Secret will have to do something to try to keep him alive. But now things are gonna get so bad because now invoker needs at least 5 more minutes to farm. Midas है, थोड़ा जल्दी आ सकता है, but BK भी चाहिए ही चाहिए उनको सस्टेन करने के लिए. चलिए यहाँ पे सनस्ट्राइक आ रहा है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा दिया है, बट आई डोंट थिंक किल ले पाएंगे बिकॉज रेजोल्यूशन बहुत पीछे थे. अगर रेजोल्यूशन वहाँ रहते तो किल आ जाता. एंड जायक ने शार्ड उठाया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ब्लिंक. क्रैट, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अर्थशेकर पे डू यू थिंक शार्ड इज इम्पोर्टेंट या फिर डू यू थिंक ही शुड हैव रश्ड फॉर ब्लिंक? बेसिकली आपको पता ही कि शार्ड से कुछ खास होता नहीं है, आपका फिशर पे भी स्टन हो जाता है, बट ये देखिए इन्वोकर को लिटरली डेसिमेट कर दिया लगूना एंड लाइटनिंग स्ट्राइक कैरी के वजह से. एंड इस मैचअप में मिकी ने तो भाई पिछाड़ दिया इन्वोकर को. अंटिल लेस गेम होल्ड होती है, थोड़ा संभल जाती है तब फायदा है, वरना तो ये गेम आई थिंक इट्स डन. जिस स्पीड से काइट कर रहे हैं, पावर पीक दिखा रहे हैं लिक्विड वाले, मुझे लगता नहीं कि सीक्रेट को मौका मिलेगा. एंड सीक्रेट हैड अ इनक्रेडिबल रन इन दिस टूर्नामेंट एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. जैक अभी लेन काटते हुए निकल रहे हैं एंड ही टीपीड समवेयर बिटवीन बॉटम टियर 1. अब ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से शायद टेलीपोर्ट करके घर जाना चाहेंगे. अभी भी ब्लिंक से वो 1400 गोल्ड दूर है, बहुत मुश्किल है इस समय. मतलब और उनके पास टीपी भी नहीं है अपने बैकपैक पे. सो ओके यहाँ पे बॉक्सी को रंगे हाथ पकड़ा गया. ओह निकले कौन? लाइफ स्टीलर. बट चलिए आई थिंक दिस इज स्मार्ट फ्रॉम लिक्विड. फोर्स नहीं किया वो फाइट को एंड दिक्कतें आ सकती थी, बट जायक का जरूर ट्रेड लेना चाहेंगे. ये अपने घर से काफ़ी दूर है, बेबस लाचार, वापस इनको घर भेज दिया. हाँ अच्छी बात है, मतलब 30 सेकंड वैसे भी लग जाते हैं उनको बेस तक जाते जाते. चलिए बट अभी के लिए आई थिंक इन्वोकर will have to see how quickly he can get his core items up, and right now has been forced into a little bit of a back foot, but at this point और 1.5 मिनट है लगभग. यहाँ पे टीम लिक्विड चाहेंगी कि जल्द से जल्द थोड़ा माना वगैरह आ जाए तो एक और फाइट फोर्स कर पाएँ. एंड लगुना रेडी तो है बट उसके लिए उतना माना नहीं है अभी उनके पास. और इनफैक्ट ओके ही इज गोइंग फॉर अ हरिकेन पाइक. ब्लिंक क्यों है? हाँ ब्लिंक भी है, हरिकेन पाइक भी इन्होंने क्यों कर रखा है. तो इनिशिएशन चाहते हैं, वांट्स टू बी मोर ऑफ दैट इन्वोकर जो टू द फ्रंट ऑफ हिज एनिमीज, राइटली डैमेज थोड़ा डील कर पाए. बट ये इस बार इंसेनिया अपने आप को जिंदा नहीं रख पाए उस सिचुएशन में. एंड ऐसी छोटी छोटी जीत टीम सीक्रेट ले रही है. मतलब अगर ये गोल इट्स फाइन. अगर आपका पोजीशन 5 आपके लिए स्मोक गैंग टैंक कर रहा है तो आई थिंक लिक्विड विल बी हैप्पी विद इट. तो रहेंगे जरूर. बट यस अब सीक्रेट का यही तो अप्रोच रहेगा कि एजेस ख़त्म होने दीजिए, तब तक अगर कुछ साइड पिक्स मिल जाते हैं तो फ़ायदेमंद रहेगा. बट फ़िलहाल के लिए मिके देखिए अभी लाइफ स्टीलर से भी ऊपर चले जा चुके हैं. हमें भी पता है कि लीना की फार्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहती है. एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा राइट क्लिक डिफेंस डैमेज डिश आउट कर सकते हैं. हाँ लेट गेम लीना इज ऑल अबाउट राइट क्लिक डैमेज. मेरे हिसाब से इज डेड. नो नाइस फोर्स, नाइस फोर्स. बहुत प्यारा सेव था इन्वोकर के साइड से. बहुत प्यारा. तो आप भी हो मियां भाई. थैंक यू. अब ये बंद करेंगे फिक्सेस अपना आलोम विलोम. इट फील लाइक साइमन बना ले. अनुलोम विलोम है वो. आलोम विलोम, अलोम विलोम, अनुलोम. हमारे यहाँ दिल्ली में आलोम विलोम कहते हैं. इसीलिए तो गलत है दिल्ली वाले. बदनाम है. तो आप ऐसे गलत नहीं टारगेट कर रहे हो. टारगेट नहीं कर रहा. तो उड़ीसा को कैपिटल बना दे दिल्ली उसका, इंडिया का बना दीजिए. बहुत ही एंशिएंट स्मार्ट सिटी इन द वर्ल्ड में भी गिना जाता है. बट अभी के लिए उसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पांडा नजर आ रहे हैं. पांडा यहाँ पे खत्म हो चुके हैं. तो जाई का यहाँ से जाना थोड़ी सी घबराने वाली बात है क्योंकि फाइट लेने में थोड़ी सी कतराने वाले हैं जरूर लिक्विड के प्लेयर्स. बट अगर मिल सकते हैं. बट इनको भी मार दिया है, सब मार दिया यहाँ पे. बट ये देखिए उनको फिनिश किया बट उसके लिए कमिट करना पड़ा लगू. बट उसके बाद देखिए जिस तरीके से प्राइमरी हो रहा है, माटू भी डेड, मिकी भी डेड, सब खत्म, सब बर्बाद, सत्यानाश.
हो चुका मेरे है हिसाब टीम से लिक्विड ने का। बहुत ओवर कमिट जी हाँ, किया। बिल्कुल आंख बंद करके ओवर कमिट किया गया और टीम सीक्रेट बैठे थे फिराक में नोच लेंगे और कर भी दिया ये। और जो 4 स्टार्स का जो यूज होके ड्रो को बचाया दो गया, 4 स्टाफ दो लगे। 4 स्टार, मतलब एक ड्रो ने खुद का पाइक यूज किया और एक पहला 4 स्टार जिसमें से उनको लाइफ स्टीलर से दूर किया गया। दैट वाज वेरी क्रिटिकल प्लेस हियर। मतलब जाय को मौका तक नहीं मिला। ही गॉट स्टन बाय द फिशर। फिशर के आसपास अगर आप टोटम भी मारोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ शार्ट वो फिर से स्टन रहते हैं, तो सन स्ट्राइक वाला कॉम्बो तो खाना ही खाने था। बट ड्रो को जब बचाया और उसके बाद एक एक करके एंड एवरी वन गॉट शॉक्ड। एंड डिड यू सी दैट एक्साइटमेंट ऑन जैक फेस कि यू नो आप 4 महीने 6 महीने पहले जो एक ट्राई हार्ड पब में खेलता था, आज वो देखिए ही इज प्लेइंग द लो ब्रैकेट ग्रैंड फाइनल्स एंड यू नेवर नो इन एनी अदर 10-20 minutes he will attending his first TI International Grand Finals like Fixes you did in 2011 against eHome. एंड वो जीत के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मतलब अच्छा लगा था। मतलब आप कौन से प्लेयर खेल रहे थे? Puck. He was dandy. Now he's landy. क्या बातें कर रही है, सब अश्लील बातों का प्रयोग। अगर आप नावी के कोई एक प्लेयर को इमिटेट करना चाह रहे हैं वो टाइम पे, किसको करना चाहेंगे? हम करेंगे पप्पी को। पप्पी यू कांट लीव पप्पी एंड डैंडी, बाकी के उसमें से बताइए। अब तब की लाइनअप पूछ रहे हैं। 2011 पता है यार, कुरो भी थे। कुरो थे? अरे माता रानी, हे अगर तू ऊपर है तो या तो मुझे उठा ले या तो इसको उठा ले। हबोट थे, इतने अच्छे अच्छे लोग थे। बट अभी के लिए चलिए चलते हैं। देखिए फिर से लगुना ब्लेड का इस्तेमाल इस बार लग रहा है पपी का यहाँ पे अंतिम काल हो चुका था। इंसेनिया भी अपनी टीम को अच्छे खासे तरीके से जीवित रखते हुए बट यहाँ पे थोड़ा और लेके अंदर जाना चाहेंगे। यहाँ पे शिकार हो चुके हैं हमारे प्यारे अर्शेकर जैक। अब रेसोल्यूशन की बारी लगती है और ये देखिए बड़ा मुक्का, जाएंगे वापस बेस के अंदर। देखिए रोकने का कोई मौका नहीं। एंड जहाँ लग रहा था कि टीम सीक्रेट शायद रिकवरी कर सकती है, लिक्विड ने बोला अरे ऐसे कैसे? बिकॉज उस गैंग के अंदर वाई सीक्रेट वॉन, बिकॉज दे मैनेज टू पुल ऑफ किल ब्रू मास्टर। ब्रू मास्टर बनने के बाद टीम के अंदर जो एक प्लेयर जो केओस क्रिएट करता है वो जिंदा था, वो मर गया, उसके बाद वो गेम जीतना ही था। बट इस गेम में ब्रू मास्टर ने जब अपना इम्पैक्ट दिखाया कुछ बनता ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था किसी के लिए भी वो कुछ कर पाते वहाँ पर। बट यहाँ पे जो EMP मारा था यहाँ पर ऑलरेडी माटुम्बे पे इतनी माना तो थी नहीं, फर्क नहीं पड़ा। बट बाकी के सारे फिर आ जाएंगे और ग्लिफ यूज करके उन्होंने टावर बचा लिया। नेटवर्क पे ज़्यादा फर्क नहीं है बट सीक्रेट नोज द मंत्रा नाउ कि क्या करना पड़ेगा तब जाके वो जीत पाएंगे। देखिए पपी के पास कुछ खास नहीं है। अभी उन्होंने यहाँ पर उनको स्टंट टॉस करा, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ चुका था ऑलरेडी एंड ही वॉज लिटरली वेंट टू द कॉर्नर। वहाँ पे लगूना, उसके बाद फट के जैक ने कोशिश काफ़ी अच्छी करी थी। देखिए जैक भी कब तक बचते, कब तक अपनी खैर बनाते एंड एवरीबडी चेज टू द हिल। और उन्होंने स्टन मारा बट उससे पहले लीना ने बीके भी ऑन करा, मिकी ने 1v1 करके जैक को पिक ऑफ करा। उसके बाद टस्क एंड मिकी बोथ वेंट फॉर द रेजोल्यूशन बट पीछे कहीं पर ड्रो रेंजर को भी पिक ऑफ कर लिया था। तो आई थिंक पांडा ने उनको उड़ा दिया था ताकि कुछ डैमेज डील ना कर पाए। यही तो दिक्कत होती है। आप क्या होते तो आप क्या करते अगर आप पांडा होते तो क्या फिक्स भाई? वही करता जो इन्होंने किया। सामने वालों की तार खींचते नेट वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो बट वो गेम पॉज हो जाता है। मतलब कोई खास तौर पे सॉल्यूशन ऑनलाइन होता अलग बात है। फिर नासिर के अंदर का लीग ऑफ जागता और आपकी पिटाई करता। बॉडी बड़ी है, मतलब पेट बड़ा है, तौंत बड़ा है, अंदर कुछ नहीं है। बट ही वर्क्स आउट एवरी डे मोर रेगुलर देन यू फिक्सेस। अरे वर्किंग आउट की बात ही आप मत करिए। हम जो वर्कआउट करते हैं ना वो नासिर दा की जान छूट जाए। बात तो सही है। मैं इस मामले में फिक्सेस भाई का साथ दूंगा बिकॉज 11-12 लैप मारना गैलेंट के इज नॉट इज जॉब। आई फील लाइक कि आई शुड यू नो क्योंकि एक और फाइट की शुरुआत इस बार यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दे रहे हैं। यहाँ पे वापस से बाय बैक करना चाहेंगे बॉक्सी। मिके स्टिल ऑन अ किलिंग स्प्री। यहाँ पे दे द मार्क मारा है, रेजोल्यूशन को बाहर कर दिया है। तो टीम सीक्रेट थोड़ी सी बैकफुट पे है। टस्क का जरूर बाय बैक फोर्स हुआ है। ये जो सारी फाइट हो रही है दिस इज ऑल फॉर दैट रोशान कंट्रोल, क्योंकि रोशान भी स्पॉन हो चुका है। इस बार स्पॉन हुआ है प्यारे शार्ट्स के साथ। और यहाँ पे टीम लिक्विड वापस से रोस्पीड के अंदर घुस तो रहे जरूर रहे हैं बट टीम इसके बारे में इख्तिलाफ हो चुके हैं। बस इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे किसी तरीके से फाइट को स्टॉल कर पाए। और डैमेज देखिए माटू को किस तरीके से पड़ा। बट यहाँ पे बॉक्सी वापस घुस चुके हैं। पपी
मेजर डैमेज डिश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट माटू यहाँ पे दिखते हैं कितना ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे। पपी के ऊपर यहाँ पे प्रहार करने की कोशिश, वो स्लो होए जा रहे हैं और मिके ने ले लिया है एजिस ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टलिस को मल्टी शॉट एरो का इस्तेमाल किया, सीक्रेट के पपी को मिल चुका है डबल किल। निशा यहाँ पे घोस्ट वॉक करके एस्केप आउट करने के पूरे फिराक में, क्योंकि रेंजर ने कहर बरसा रखा था, कोई उनके पास भी नहीं जा पाया और ये मैच लेता हुआ एक फिर से फ्लिप बोर्ड चेंज। जो 4 स्टाफ्स का यूज कर रहे हैं सीक्रेट, बहुत प्यारा कर रहे हैं, मतलब क्रेजी है। आपने लास्ट गैंग पे यही बोला था। 4 स्टाफ से जैसा घुमा रहे हैं मातू को सामने आने नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत प्यारा खेल रहे हैं, मतलब जो कंट्रोल ले रहे हैं टीम फाइट पर। आई थिंक और ये फाइट में मतलब किसी ने ड्रॉ पे कंसंट्रेट ही नहीं किया, ड्रॉ पीछे खड़ के आराम से अपने ऑटो हिट्स किए जा रहे हैं और मिकी एक साइड से रोशन लेने पे फोकस थे और मातू इनको जोन आउट करने में फोकस थे। बट मातू और ड्रॉ का इतना रेंज बढ़ चुका था कि मातू अगर चाहते तो भी वो सामने नहीं आ पाते। अब यहाँ पे मैच ना थोड़ा सा उलट सा हो गया है, क्योंकि अब नेटवर्क के मामले में भी टीम सीक्रेट हल्की सी लीड ली है ऊपर। बट स्टिल लिक्विड के पास एजिस का एडवांटेज है, बस ये बोल सकते हैं। उनको अगले 3 मिनट में एक फाइट जीतना है, नहीं तो जितना वो एजिस का फायदा है वो नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि इन्वोकर धीरे धीरे उनके आइटम्स आ रहे हैं एंड वी नो अगर एक इन्वोकर अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए, उनके सारे कॉस्टवेक्स एग्जॉस्ट फुल पे चले जाते तो डैमेज कितना रहता है, कंट्रोल कितना रख सकते हैं गैंग्स के अंदर। ये रेजोल्यूशन ने भी एक 4 स्टाफ बनाया है। जी हाँ, सब काइट करना चाह रहे हैं। पप्पी ने भी 4 स्टाफ बनाया है और वहाँ पे आपने देखा पप्पी ने कितना स्लो करवा दिया माटू को उनके राइट क्लिक डैमेज को। एंड ये एक मतलब पप्पी अपना रेज वेस्ट पप्पी मातू से अपना रेज वेस्ट करवा रहे हैं आगे खड़े होके, खुद को एम करवा, मुझे मारो, हाँ मारो मुझे मारो। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला था 3 मिनट, बट ये निकले हैं इंस्टेंटली। इनको चाहिए फाइट्स, अवेलेबल है सारे और उनके, और यहाँ पे बेसिकली लिक्विड ने को ये समझ आया कि अगर हम हमारे सारे एबिलिटीज़ के साथ पहले अगर इनिशिएट करें तो वी हैव द अपर हैंड, तो लिक्विड वही करने जा रही है। उन्होंने उनके पास ऑलरेडी एजिस का एडवांटेज है एंड जाई के पास अपनी अल्टीमेट है, स्प्लिट है, तो दे आर लाइक कि क्यों हम वेट करें सीक्रेट के आने का, हम चलते हैं सीक्रेट के पास। जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इनिशिएशन, राइट। इवन टीम सीक्रेट के पास भी एवेन्यूज है, बट टीम सीक्रेट अभी ऑफ कोर्स एजिस है तो फाइट फोर्स नहीं करवाना चाहेंगे, और मे बी नॉट, क्योंकि पप्पी ने भी एक स्मोक डाल रखा है, 4 मैन स्मोक यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। मे बी यहाँ पे किसी को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश, क्योंकि आमतौर पर यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि टीम सीक्रेट इस टाइम पे फाइट फोर्स आउट करना चाहेंगे। इंसेनिया ने ले लिया जेब, तो चाहेंगे कि थोड़ा बहुत वॉर्ड विजन कंट्रोल। ये जाई का बड़ा पिक हो सकता ज़रूर था, बट आई थिंक जाई को कहीं ना कहीं पता लग गया और ये पीछे ये लिक्विड स्प्लिट हो चुकी है, अगर वो टीपी आउट नहीं करते देन सीक्रेट को बहुत आसान पिक्स मिलेंगे। ओ देखिए बड़ी मछली यहाँ पे मिल जाती हुई, और मीके तो चलिए एजिस ने उनका बेट आउट करवा दिया गया, बट वहाँ से फाइट भी चालू हो चुका। क्या डैमेज आउटपुट आ रहा है, बॉक्सी बेचारे धरे के धरे रह चुके हैं। अब यहाँ पे माटू काफ़ी करीब गए थे इन्वोकर के, बट फिर से हरिकेन पाइक का इस्तेमाल कर दिया। पूरा ध्यान उन्होंने मीके के ऊपर रखा है, क्योंकि मीके सच पोटेंशियल थ्रेट इन्वेस्ट करके उनको एचपी ज़रूर थोड़ी सी दी है, बट यहाँ पे देखिए जिस तरीके से डिफरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया है, और एक के बाद एक टीम सीक्रेट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस फाइट। मीके डाउन हो चुके हैं, बट ट्रेड में क्या मिला है, सिर्फ जैक और मे बी रेजोल्यूशन कैन गो डाउन। ऑलरेडी काफ़ी लो एचपी पे है निशा, बट उसके बावजूद भी देखिए जो डैमेज आउटपुट आ रहा है, ये लाइफ स्टीलर उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये यहाँ पे ओह माय गुडनेस, क्रिस्टलिस आप क्या कर रहे हैं, किस दुनिया के प्राणी हैं आप, क्योंकि इस दुनिया के ये तो जो 4 स्टाफ हुए हैं आप कहाँ हाई क्लिफ पे जो उनको 4 स्टाफ किया गया और 2 मीली हीरो से दूर किया गया, दैट वाज द एमवीपी प्ले, बिकॉज अगर क्रिस्टालिसिस यहाँ पे मर जाते तो इवन हो जाता ट्रेड। कहाँ जा रहे हैं देन अगेन भाई ये जो 4 स्टाफ्स के प्लेस हो रहे हैं भाई, यहाँ करके कुछ नहीं होगा। अरे हमसे मिलो, जैक न्यू इट कि वो वहीं पे आएंगे,
And he was already waiting there. What a presence of mind. Amazing, like Jenkins of India. Oh, region rune. Oh, he will join his team. सोने पे सुहागा हो गया. और यहाँ पे तो ये tier 2 तो जा ही रहा है. और ये जो था ये सारी fights की initiation. But Mickey survived, man. उसके बाद अभी जो second life थी, Mickey ने काफी देर तक. हाँ, BKB नहीं देखो BKB में भी उनको कितनी देर रुका के वहीं रखा था, रोर की वजह से. He got to use just 2 of his spells. ज़ाहिर ने ध्यान रखे थे जितने यहाँ पे torture हुआ था सारा. देखिए ना मिकी के अंदर इन्वेस्ट करके उनकी एचपी फिर बना दी थी. अगर वो नहीं होता तो लिक्विड बहुत बुरे तरीके से ये टीम फाइट हारती. उसके बाद उनको सोल रिप भी मिला था, उनको हील मिला. आप देखिए अभी कितने फोर्स होती है ड्रॉ. अभी एक भी कहाँ हुआ है? अभी एक हुआ है, उसी ने नहीं हुआ है. मियां प्लीज आप मिसगाइड मत करिए. मिसगाइड मत कीजिए. अब ये देखिए और एक 4 स्टार होता है. 2 हुए हैं क्रैड. कितने हुए फिक्सेस? 1 हुआ है. शायद इनके पास ना वो दिव्य दृष्टि है. दिव्य दृष्टि है इनके पास. इनके पास दिव्या है और दृष्टि दोनों है. दिव्या दृष्टि दोनों है नासिर में. दिव्या और दृष्टि. सही है नासिर मियां. वो तो है. और देखिए देखते देखते 9000 का. एक बार बताइए फिक्सेस, जो हमारे होस्ट है शिवर, वो नेक्स्ट गेम के ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर. अच्छा डेटा कलेक्ट कर. नहीं देखिए एक गैंग की वजह से 9000 का नेटवर्क एडवांटेज आ गया है. अब तो देखिए इन्वोकर ने जो फार्म गवाया था. तो प्रॉब्लम है इसकी यहाँ पे क्रिस्टलिस के करीब तक नहीं जा पा रहे और यहाँ पे टीम लिक्विड को माटू का फर्क भी नहीं पड़ रहा है. काइट कर रहे जा रहे, बस मीके को डैमेज करके फिनिश कर दे रहे और लिक्विड का जो डीपीएस है वो वहीं पे आज तो जाना पड़ेगा. और यहाँ पे पपी का भी देखिए डैमेज कितना ज्यादा रह रहा है फाइट्स पे. मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एक जो इम्पेटस मार रहे हैं तो जान निकल सी जा रही है. और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इको स्लैम को वेस्ट करवाया. बट यहाँ पे रेजोल्यूशन देखिए, यहाँ पे उनके इरादे काफी बुलंद. स्नोबॉल जरूर किया, इनफेस करने का मौका तक नहीं मिलेगा. एक और किल मिलेगा और लग ऐसा रहा है कि माटू बम्बान अपने आखिरी सांसें गिनते हुए, क्योंकि यहाँ पे एलएस भी जा चुके हैं, टस्क भी जा चुके हैं. इसका मतलब ये कि ये गेम भी धीरे धीरे लिक्विड के हाथों से जा चुका है. और अगर फिक्सेस सीक्रेट टुंड्रा में क्या होगा फिर? अब मौत का नंगाना. पांडा डांस है ना. Why you wanna see naked deaths dance? अरे भावनाओं को समझिए, भावनाओं को. जो होगा बहुत ही. अरे देखिए पपी मतलब ये सपोर्ट है जानी. टावर बना है मक्खन का और ये चला रहे गरम छुरी. मतलब ड्रो से ज्यादा तो उनके पास अटैक स्पीड दिख रही है. मशीन गन पपी या कैसे चलती है? धड़ मार दिया. ये तो ढोल बजा रहे हैं. अरे ढोल तो बज चुके लिक्विड के. एक और रोर का इस्तेमाल बचाने की भरपूर कोशिश यहाँ पे. बट पपी को कैसे संभालेंगे? पपी के इन्फेस्ट के जो इम्पीटस के जो चाटे पड़ रहे हैं. फिलहाल देखिए यहाँ पे लगुना का इस्तेमाल जैक के ऊपर, बट वापस से मुझे लग रहा है रीइन्वेस्ट करेंगे. फिर से मिटेयर का इस्तेमाल, केओस मिटेयर का. बट यहाँ पे इस बार बीकेबी के साथ बैक ऑफ कर रहे हैं. टीम लिक्विड बौखला गए हैं और यहाँ पे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स बौखला गए. बिल्कुल, उन्होंने बहुत इम्पीटस डिसीजन लिए. इम्पीटस और उसके बाद उन्होंने उनकी बहुत सारी यूटिलिटी भी यूज कर ली, जैसे बीकेबीज. बीकेबीज पुश भी करवाया. हाँ, और यस, सो इट वाज अ ग्रेट मूव बाय टीम सीक्रेट. एंड फिक्सेस ने सारी डिटेलिंग देख ली. पूरा डिटेलिंग. अभी कुछ भी बोल रहे हैं, कहते बौखला गए. क्या होता है ये? वो देखो ज़ैक ने कहा, yeah man, I've done it. ज़ाहिक is feeling it. मतलब वो पूरा फील ले रहे हैं. चलिए ग्रैंड फाइनल्स में चलिए, क्योंकि ये अग्नम मिला है. अग्नम ले गया. अग्नम आ गया. ओ निशा ने अग्नम लिया है. ओ निशा ने अग्नम. और चीसा. अंदाज़े अग्नम. हाँ, अंदाज़े अग्नम. निशाए अग्नम. निशाए अग्नम. और यहाँ पे चीसा भी जो था बेच दिया, नहीं दे दिया पपी को. पपी का जिंदा रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक्स भी आ चुका है. अब क्या करेगी टीम लिक्विड? क्रैट बताइए हमें. टीम लिक्विड बस उस मौत के नंगे नाच का इंतजार करेगी.
अरे देखिए यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बचाता हुआ कितने देर तक घुस चुके हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन के एचपी काफी कम मिके अनचेक बट ये जायक इंतजार कर रहे थे सही मोमेंट का किया भी ये दे धमाक मारा बायबैक भी फोर्स करवा दिए सीक्रेट के प्लेयर्स आप देखिए मार्टू मैन गायब हो चुके हैं और ये इम्पिटस का जो भाला पड़ रहा है मिके के ऊपर बाकी सब कुछ पीछे और यहाँ पे जाएंगे बेस के तरफ टीम सीक्रेट अपने जीत के काफी करीब सनस्ट्राइक मिस हो रही है भाई रख चुके हैं सनस्ट्राइक मिस हो रही है कोई मलाल नहीं है क्योंकि ये बॉक्सी कहीं नहीं जा रहे वापस अपने दो डाई के अलावा और यहाँ पे जो डाईबैक्स भी हो गए रैक्स तो जा रहा है उसके बाद सिर्फ एक रैक्स के साथ थोड़ी अपनी पेट भरेंगे जाएंगे वो फाउंड अभी सीधा जी लीजिए और ये है टीम लिक्विड के आंखें ये हमने कल भी बोला था कि जीजी हो जाएगा 20 सेकंड बचे फिर वो टस्क वापस आएगा नॉट सॉरी टस्क वो यहाँ से दिखाएंगे 24 सेकंड्स में आया कोई बात नहीं जॉनी कोई नहीं वापस आ रहा है ये गेम जा चुका है और कोई वापस नहीं आ रहा बिल्कुल ये एंशिएंट अब इसके तरफ जा रहे हैं और टीम सीक्रेट खेलेंगी एक और बेस्ट ऑफ 5 टीम टंड्रा के अगेंस्ट जैक को मारा कोई फर्क नहीं डाईबैक करेंगे बायबैक करेंगे और इसी के साथ टीम लिक्विड का सफर इस टीआई में खत्म होता हुआ बट पपी इतनी खुशी इतना मार इतनी कुटाई इससे पहले देखा मैंने पपी को इतना खुश पपी के लिए इंटरनेशनल विन भी ऐसी थी जेब में हाथ डाला घूमते हुए चले गए बट फील सैड फॉर दिस मैन but no doubt Matumba everyone from the team liquid they deserve everything in this world because it was not easy because they lost the very first upper bracket match उसके बाद lower bracket से जो ये crawl करते हुए आए हैं they made it to the top 3 and they deserve everything. Matu, don't cry, man. You played like a champion. Feels bad. He is the TI7 champion. इनके पास एक रिकॉर्ड है जो किसी के पास नहीं है ये अकेला ग्रैंड फाइनल जीते इंटरनेशनल का 3-0 क्लीन स्वीप आज तक कोई भी 3-0 नहीं जीता बड़ी चीज ये है कि मतलब टीआई चैंपियन कहलाते हैं खुद को और दूसरी तरफ पपी अपनी दूसरी एजेस की तरफ एक और कदम बढ़ा चुके हैं this pretty hard we had a great journey you know मजा आया देखकर और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द सीक्रेट की रेजोल्यूशन जैक 6 महीने पहले टीम में आए हैं एंड आई फील लाइक कि वो टीम इंटरनेशनल जीतना डिजर्व करती है हाथ मिला लो जैक से यस और हिज हैंडशेक डिडंट गॉट डिनाई कोई डिनाई होगा यहाँ पे सिर्फ भाईचारा प्यार और ये देखिए दो पपी यस लेजेंड्स पता है ये सिर्फ हैंडशेक से नहीं होगा दैट्स अ $1 million फोटो राइट देयर $1 million मोमेंट $1 million अभी और देखिए दो कैरीज भी एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए फिक्सेस हम आप भी हमसे हाथ मिला ले फिक्सेस हम आप भी एक बेस्ट ऑफ लक फॉर टीआई हमारी तरफ से राउंड ऑफ अप्लॉज टू लिक्विड एंड माटुंगा मैन सीक्रेट की नहीं ये जीत हुई है डोटा 2 की और सारे फैंस आप चुप हो जाइए क्रैटन का कुछ करो यार इन्होंने रोज का बना रखा है ये रोज जीत हुई है डोटा की ई स्पोर्ट्स की अरे सप्रू साहब आ जाइए इनको ले जाइए अपने साथ प्लीज काश बट स्टिल आई मीन उनका अभी हमारा हाल ऐसा हो रहा है उनका थोड़े टाइम में होगा वो भी फिर बोलेंगे कहीं और व्हाट अ जर्नी व्हाट अ गेम बट एंड रेडी कर रहे हैं अपने आप को इस बार प्रिपेयर होके आए लग रहा है पपी कल रात को अच्छी नींद ली है ये स्टैंड्स तक ऐसे ही पहुंच जाते ये गुड़गांव आए थे कल कल गुड़गांव आए थे हमारे साथ सूप पीने चले थे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग पपी सो एक्साइटेड मतलब वो कभी इतना एक्साइटेड हुए थे पूरा क्रैट बन चुके हैं मतलब उनका जो बच्चा ना ऐसे बाहर निकल चुका है अब बस फूटने के तरफ जा रहा है मैं पिछले हफ्ते में इतना फूट गया हूं and it's gonna be a rematch of the upper bracket. Oh yes, yes. In a best of 5. In a best of 5. जाओ टुंड्रा ज्यादा नहीं खेली है और टीम सीक्रेट के पास एक्सपीरियंस है तो बट इट्स ओके मैन कल भी यही नहीं था अगर हम पहले 3 मैचेस ही जीत जाएं बट यू नेवर नो it's been a great journey till now upper bracket final was very crazy lower brackets were crazy so we will highlights देख लेते सब जो भी आप लोगों ने मिस करे नासिर और फिक्सेस ने हमने कुछ नहीं मिस करे बट यहाँ पे मतलब ना टर्न अराउंड चालू हो गया यही टर्न अराउंड था बहुत ही बढ़िया था एक गलती जिंदगी भर you know the one mistake Mooney did that time वो एक बायबैक स्नाइपर का and like they lost everything same निशा एवरीवन प्लेड वेरी गुड एंड स्पेशली क्रिस्टलिस मतलब इस टाइम पे निशा की भी बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी थी इवन वो भी अपनी एक परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे थे बट ड्रो ने अपना जो पेशेंस था वो मेंटेन रखा एंड ही प्लेड रियली गुड पप्पी को फीड करा है आई थिंक वी हैव टू गिव स्पेशल कमेंट्स टू जैक क्योंकि एक पॉइंट था उनकी जान जा चुकी थी ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट हिज ब्लिंक डैगर बट उसके बाद जो इनिशिएशंस हुए हैं
especially it all started with picking off Zai. देखिए मनु गिनी है 4 स्टाफ एक हुआ था अभी एक भी नहीं हुआ अभी फिक्सेस कितना हुआ एक भी नहीं हुआ एक भी नहीं हुआ अब एक हो अब होगा देखो ऊपर आएगा ना अब हुआ एक आपकी जो दिव्या और दृष्टि हैं जो इनको आपकी दिव्या एक आंख में दृष्टि दूसरी आंख में सही है आंखों में रखना सही रहेगा मियां सही है आंखों में काजल आंखों में तेरा ही चेहरा धड़कन में तेरी ही याद कहती है पप्पी दीवाना देखा बट क्या मैच था टीम सीक्रेट मतलब ऐसा लग रहा है इट्स लाइक टोटो वुल्फ से तोड़े नहीं है वरना पीछे उनके चाचे बाबे पकड़ लेते जाते ऐसे कि लग गया आपके मिलियन से काट रहे हैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं नासिर की जो टीम होती है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर इक्विपमेंट हां मैं पप्पी का स्कोर 10-2 है अगर पोजीशन 5 का 10-2 चल रहा है देन आंखों में तेरा ही चेहरा है हर जगह इनका ही चेहरा है इनका ही खौफ है मैंने बोला था टीम सीक्रेट जा रही है और यही हुआ लिक्विड ऐसा लगा कि हाँ 18 साल की नेटवर्थ है भाई मजाक है क्या टीम सीक्रेट व्हाट प्यारे पैनलिस्ट आई थिंक मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कह रहे हैं जी सेम भेज दीजिए चलो उन पे ही चलते हैं बिकॉज यहाँ पे देसी जेंकिंस वहाँ पे ये कुछ तो बोल देंगे थोड़ी देर में इट्स बेटर इफ वी हियर व्हाट दे हैव टू से जी हां प्रोड्यूसर साहब लेट्स गो with Avo saying hello to us as well in a winners interview. No, wait till I have. Yes, we're here with Resolution. I mean, what is game? What is series? What is this game? There was turnbacks. We first team wiped them. They team wipe us back again, like in 10 seconds. What is happening in these games? Holy my! I don't know. It's crazy. It's crazy to be part of this game. It's crazy to watch how my teammates are like forcing around and kiting the fight, and like how my Clement Inch is carrying the game. Some fights, it's like, what is happening? I'm like Beastmaster, I'm just there to roar, guy, and provide an aura and watch my teammates thrive. Yeah. We actually saw you frenzying Puppy halfway through the game. You stopped frenzying the draw. It was all frenzy for Puppy. What was that team decision like? Like, guys, it's our Inch that's doing the damage. How did you decide that? No. I just felt it in the moment that Clement is doing so much work that I got to empower him. With all I have. Okay. What's the reset looking like for you now? I'm sorry it happened this way, but we'll hopefully make you proud in the finals. Thank you so much. One more thing, this flag, support for my country, please. Everybody who can do something, just please do it. And I'm gonna make my country proud as well with a performance. Thank you so much for the Red Sox. Congratulations, and we'll see you in the grand finals. Back to you. Thank you very much, Avo and Rezo. Indeed, he has already made his country, his team proud with that performance. We'll see if he can also do that in the grand finals, because our grand finalists are set. We only have one more series to go, and then we know who wins the cost. That is insane. It really is, and just by looking at the scores throughout 2022, Tundra had Secret's number 5 out of 6 times. So that's pretty nuts. But the grand final, Secret does have this momentum. They played 3 games. Historically, teams coming up from the lower bracket, they have this like slight advantage because they're all hyped up. They have just won a great series, not getting eliminated game 3, and the other team does have freshness, but the team coming up from the lower bracket, like they have this mentality that they want to win. Momentum. Exactly. And we talk about that a lot because it actually matters
a whole bunch. There is a bit of an hour break, so you do need to mentally reset to go again. I'm glad that Rezo has found his method to do that, because he is also no stranger to being in grand finals. Neither is Puppy. The rest has not yet been in a grand finals of TI. What is that pressure like, you think, Effie? How do you reset? Because meditation obviously worked for Rezo, might not work for everyone. I mean, it's definitely different player to player and team to team, so it's really hard to say what either of these teams are going to be thinking or doing beforehand. But for the most part, if you're coming off of a win like that, you're just feeling confident, and especially you're feeling trusting of your teammates, right? To win in such a way where you're all kiting each other around, helping each other with force stops, like, it's gotta inspire that sense of camaraderie. So I think for both teams, I mean, Tundra don't have to do the reset, but they do have to sit down and think. They just need to kind of separate from what's going on right now and play like they're in their rooms, play like they're at home, and just play their best Dota. Play their best Dota, indeed. We are going to watch the best Dota in the grand finals, but we also do need to close the book on the team that came third here at this international. It is Team Liquid Jenkins. I know that they have won over the hearts of so many people. It is sad to see them out, but there's definitely a respectable position to end third. Yeah, definitely. I think probably the reason that they won over so many hearts in this tournament is, like, I mean, of course, the players, the personalities, they're amazing. But also the fact that their games have been so tough, and we've watched them you know, go through the meat grinder and get better. Every single time it felt like they were going to do it, or we saw them do it, and then it felt like in the previous game, oh, this is Liquid in the game 3, this is where they go through the meat grinder and get better. Obviously, at some point, it's likely that that's going to stop when you've already done it 3 or 4 times. Going all the way, winning TI, very difficult thing to do. But, you know, yeah, hats off to them. I cannot believe that somebody can put their brain through so much raw emotion, so many chemicals flowing through there, and then they're still human at the end of the day. Like, imagine how they felt. Like they said, last chance qualifiers, they felt better winning that than winning TI, and then they say it again, they felt better winning a series than winning TI with Tumba, and it's like, how do you do that every series? How do you do it? I mean, I think it's just the support system, right? You heard that speech from Blitz. 3 coaches, But you heard him say, no matter what the outcome is, we're going to smile, and I'm proud of all of you. And that really just is a story of Liquid. That's why they've captured so many fans' hearts. That's why they were able to make it this far, just because of how much they trust and respect each other, and how they're just able to stabilize their system, their support system, in these tough environments. Yeah, tough environment indeed. And for Matumaman, this was, of course, the last time that we got to see him on the stage playing his best Dota. He's also the person that Avo is standing by with right now. Thank you. I'm here with Matumaman. Matumaman, before the tournament, you're talking about how it's not the last result that defines you, right? It's the whole career, your whole journey. And I want to know a little bit about that. How is this chapter of your life for you? What has it meant for you to play Dota for this long? I mean, I always thought when I started my career that I wouldn't be playing for so long. After like third year, I already contemplated about quitting, but I stuck with it. To be honest, I was young and I didn't really have anything else to do with my life, and Dota was something just like brought like pure happiness for myself. It gave me purpose, and it really also defined me as a person, like who I am and what do I do. And I mean, it's been a great run, and now it's bittersweet moment that it's over, but I'm happy and I'm sad, and I mean, I'll get to process these feelings later anyway. I'm sure a lot of people have joined this journey alongside you. Is there anyone, or maybe your friends, maybe your teammates, that you'd like to speak any words to at this moment? I mean, I've interacted with a lot of people during my career that, I mean, most of them are happy moments. I mean, I cherish my old teammates from old Liquid, winning TI with them, like one of my most memorable moments of my life, and it will stay that way. I think this one will be one of them as well. And there's just a lot of good moments with a lot of people. I mean, I can't really name all of them because, like, there's dozens and dozens and dozens coming up, even the casters and the analysts and everyone, like the different teams that I didn't even play with them. Like these players, I consider them my friends and in some ways a family too. So it's really sad to say goodbye to them, but sometimes you gotta move on in your life and figure out something else.
for this next chapter of your life, is there anything you're looking forward to doing? Anything you're really excited to do now that, except for a while, I know. Anything you're gonna do in the next coming days? I mean, this is a hard question always. I feel like I'll just relax and reflect a bit. I felt like I've been in a war on a battlefield of Dota 2, fighting for the ancient. So I think I just need to relax a little bit. And after that, I'm looking to spend a lot of time on my sailing boat during summer and kind of just get the feeling what do I really want to do with the next chapter of my life. Do you have anything you'd like to say to all the fans as well that have supported your journey throughout this whole TI, throughout your whole career? I mean, I felt like no matter what team I was on, I was always almost a fan favorite, and it really warms my heart to have such a support for, I don't know, like why they picked me, that a lot of people just like kind of wanted to root for me. I mean, even here, it's like, I felt like every team that we knocked out was kind of rooting for us, even like we knocked them out. That's like, that's the gist I got, and it was kind of weird for me. At the same time, I felt like I had like, everyone was really cheering for me, like I was the one, you know, like, but it really, like, it's amazing feeling, even though Secret won this series and I exit the stage and people are just cheering Matumba Man, like the whole stadium is going wild. It's like, it's an amazing feeling, good way to go out as well. Thank you so much for your time, Matumba Man. It's been an absolute pleasure, not just for me, but for anyone who's interacted with you in the scene, and as you said, for the fans. And we all wish you luck, whatever you may do from now on. Back to you, Shiva. Thank you very much. And indeed, he definitely can look back on his Dota 2 career and smile, because this was a glorious one, Lacoste. Absolutely. I mean, one of the greatest that ever touched the game. And the way he talked about like Dota, this is what Dota is about, a journey that is going to take you somewhere unexpected, meeting new friends, friendship, love, hanging out together, playing with different people from all around the world, and also like defining you as a person. Dota does become a part of you. I can't even imagine how he feels right now. There's probably just so many emotions to process, from your entire TI journey to this loss to your retirement. He's feeling so much, but honestly, what an incredible player and person. To be able to witness that kind of introspection and humility is just a really special thing. So, I mean, we honestly wish him all the best in his next chapter. Yeah. On his boat. On his boat. Exactly. You know that he's 4 anchors plus sea captain when he yes. started, and now he's actually going to be a sea captain. What a great way to wrap up his career. But you know, there's always that little bit, that glimmer of hope. That's I mean, I he's think on that everybody boat. has it. He's on that boat, and he's like trying to sleep. He's hearing the cha-ching noises, right? He's hearing the hidden creeps. He's hearing the neutral camps slapping, you know, just like we were hearing, you know, the music with the intros is like the Dota sounds. He's hearing that in his sleep. Well, that is what I think carry players normally think about, you know, the creeps and getting the gold. You know, that's all very nice. Us support players, we're more like having to process all of our feelings after a game, because we have to try to make our carry players happy. And I know that processing feelings, it can take some time. And sometimes you need a little bit of help to process those feelings. Okay, boys, bring it in. Get a nice rotation to our seats. Plenty of space for everyone. As long as they make it by 52 seconds, right? Okay, before we officially start, we have 2 new faces for once. Newcomers, tell us a little about your journey here, about your breaking point while playing support. Did you say support? Gary, which link did you click on? Do we get ranked role tokens for this? No, this group is for real supports. Yeah, real support. Moon? Hi, I'm Moon. I play support. Hi, Moon. We see you. Okay. I guess I kind of feel unappreciated lately.
Like, I can't do shit without some toxic carry trying to tell me what to do. Thank you, Moon, for using a feeling word. Unappreciated. Remember, everyone? It's okay to feel as a support, because... You can't support the carry. Jack, I know you think you're helping, but let's give the others a chance. They don't all have management experience like you. You can't support the carry if you don't support yourself. There we go. Nice job, everybody. So like I was in this game yesterday, and my carry, he just plays up at the top. I go to pull, Dustin, he's doing it again. Howie, are we forgetting something? When you want to share, you need to wait until I... Okay, so I was like playing this game yesterday, and we had the perfect laning phase, like level 6 at 6 minutes. So I was 1x2 in the lane, I harassed them all to like no HP, I had a stack pull, everything was gonna be perfect, we're gonna win this lane so hard. Say, just play careful for 30 seconds while I get the pull off, and then he dies instantly. Oh, man. And this guy, he's buying back, he's breaking his items, TPing mid, running it down. Howie, we're missing something important. How did that make you feel? Feel? Pretty standard. Maybe like a Monday? Something to add, Peter? Howie, that's just for you. Well, Peter? He plays position 4. He gets to build real items with actives. You got 3 kills last game. All I did was get one shot by massive crits. We don't farm shame here, Peter. This is a fully warded triangle, our safe space. Try your mantra. KDA does not define me. That's right. KDA does not define you. So, the topic for this week... As I was saying, today's topic is blocking camps, not emotions. Fear, start with you. Can you share a time you blocked your emotions so you could win a game? No. Okay, let's start with someone else. You know what? You're stacking in the troll spawn skeletons? All the trolls are following me, but these little fucker skeletons never do. It's fucking bullshit, dude. 我明明已经反到他的眼了，可是我每次要排的时候，他都过期了。我操 I smoke, and then my carry just auto attacks a creep. Y medio se mete contra 5 héroes, lo tengo que seguir, me muero yo y encima me flamea. It's not just one time or sometimes, it's every single time I dig. There is no RNGesus. It's only the kobold, only him. It's always him. The kobold isn't real, and it can't hurt you. Sorry, noob question. When do we learn about the secrets my invite mentioned for driving as supports? He's here. He's here. You want to know the real secret to thriving? You just fucking quit. Now I'm here for the eats. Only the best for you. And that's one thing we need to remember, gang. We're worth it. Did Ice Frog make this game for cores? Yes, but he also made it for you. The Tome of Knowledge? Oh, yeah. You're allowed to have it. The frog meant for you to have it. Don't let him take it away from you. Right. Yes! That's right. It is. Well, I'd say we won that lane, boys. Team, we all know that carries are mindless clicking machines. Mids, tower diving adrenaline junkies. And off lane, well, we'll never understand the kind of freaks that like to play off lane. What we do need to learn, what we work on in here, is that you are the special ones, the supports. You're the ones who see.
Without you, the game descends into chaos. The dumbest strat wins. So when you march into your lane, I want you to know, to feel, that no matter what the Ragers say, no matter how little gold and XP you earn, no one can ever stop you. We have this space reserved. Yo, they're in here. Didn't I tell you guys to buy some smokes? We need more. Get some dust. 你真的不做点什么吗？ You heard the man. Give me the tome, too. Maybe next time you'll remember to stack my camps. Now! Carries can't do everything. Do you want to get reported or what? Remember, dream boards next week. And work on those behavior scores. Yeah, sorry, Dustin. I don't think this group's for me. Oh, pardon. This is my kind of party. Oh, check it. Miracle's already in the fountain. Hey, dive, Gary. And this time don't feed. Oh, that was definitely an amazing one. All right, guys, we got to set up something else entirely because Grand Finals is a little ways away, but we do have an all-star match. I want to have some final thoughts, though, on the Grand Finals. Jenkins. On the Grand Finals after that. On the Grand Finals. Or All right, I got it. On TI. 70% of the time, we don't see a Grand Finals. We don't see a Grand Finals repeat the upper bracket finals. I mean, it's just been a great TI. I'm so grateful to have watched it. And may the best team win. Amazing TI. Let's enjoy it together. Let's enjoy it together right now. Ladies and gentlemen, are you ready for the All-Star match of TI 11? Come on, All-Star! Let's go, baby! Let's go, baby. Jenkins, you're not the only person who can look beautiful on stage, my friend. So can I. And also, Period is... Jesus. This is much harder. I forget what it's like. Anyway, They only gave us one wig for a reason. Yeah, that's true. Mr. Flax. Yes. Today, we have some of the biggest all-stars to ever grace Dota. And Yes. they will be playing a very special game mode. Perhaps you've never heard of it. I've heard of it, but I try to avoid it as much as possible. Okay, toxic. Well, ladies and gentlemen, may I present to you our all-star match this year? It's Ability Draft! Ah! That is right! Oh, no. I don't know anyone that can play that well. I don't know anyone that plays it at all. Oh So my today we'll God. find out if these guys have ever played it before. Period Flax. We'll find out. Would you like to introduce our first team? I would love to introduce this first team. This is my team. This is Team Thunder High. This is them. That's them. I think that's them. What are we waiting for? Get my team out. Do I say them one by one? Is that them? Ice, ice, ice. Oh! Let's go, Thunder High! Team Thunder High. Fantastic. Yeah. Look at these all-stars. Ice and his team. All-stars. Holy moly. Thunderhide is looking pretty You're in big stacked. trouble, son. Absolutely. And may I present their competition, who I have deemed will probably win, which means that they will most likely lose. Ladies and gentlemen, put your hands together for Team Dragon! Boom! Absolutely, Team Dragon with Yuno, Bobek, Sundarin, Wars, Mr. Choco, and Ice Fraud. No, I'm just kidding. He's on. Bring him out on the stage, ladies and gentlemen. Team Dragon. The greatest of all time. Look at the energy. Absolutely. Woo! I'm feeling it. Holy moly. Oh, come on, Period. You saw the energy. Your boys waddled into that stage like they were a real pro player. No, Awful. My guys are the real deal. I don't know why they've got this slot up to face them. Team Thunder High, easy peasy, easy GG. They're so washed up.
You got so many washing. You got SVG on your team, the most washed player in human history. How dare you? SVG's more washed than a washing machine. We've got Ice. We got SVG. Yeah, baby. I'm not gonna interview you. Stay away from me. We got Giuseppe. We got Imperius. We got Be True. We can't lose. Be it. All right, hold on. All right. Mr. Choco, are you feeling good? Are you gonna take this? Yes, we're gonna win this, man. How much? So easy. This is for South America. All right, we're doing this one for SA. I'm feeling it. Anybody over there? Oh, I've got some players over here, buddy. You better believe it. Go ahead. We got Ice. Ice, how you doing, bud? Hi. Hi. Are you excited about this game? Do you play much ability draft? No. Okay. Okay. I still believe. Who All right, else have you got over there? We're going over here? Come back to me. Let's talk a little bit about ability draft. Y'all, if you never played ability draft, let's walk you through this fantastic game mode. This is a thinking man's Dota. Well, I'm in big trouble. But yeah. If you get bored of Dota, if you're such a master that you need to just goof it up even more, you can play as Ice Frog, all right? You go into the game, you get a hero, which is, I believe, called a body in the ability draft community. Is that what they call it? They call it the body, and then you get some random abilities that you have to draft, like the drafting phase, and make broken combinations out of hero spells. Okay. That's how it works. Now there's a fabulous little flourish you did there. Now there's some truly broken combo. Get this shit off me. There's some truly broken combos in ability draft. Okay. What like? Okay, for example, if you get Bat Rider's Sticky Napalm and Shadow Shaman Shackle, it does like a half a second tick, you can just insta-kill somebody. Okay, all right, cool, yeah, I get That's the only one I remember. I'm sure SVG plays a lot of ability draft. He's one of those smart dudes who plays He's shaking his head, he doesn't, okay, yeah, all right. He does, don't worry about it. So it should be a very broken game mode where one team will clearly have a good idea of some combos, and then they'll be able to, you know, steamroll the other ones. Okay, well my money's on Team Thunderhide. Duh! You idiot, you already said that several times. I just want to reiterate my stance that my team will win. That's all. I just want to, you know, put that out there. All right, well, whatever. Team Dragon has some true pros. I have Cinderin on my team. Oh, please. Cinderin, in case you forgot, used to go to TIs and also... He attended, we'll put it that way. Sometimes. And we also have, you know, you know from the voice line, clearly. We all love Yuno in the arena. Absolutely. Absolutely. Yuno fans out there. And we all know that Ice takes nothing seriously, so he will be absolutely dunking this tournament for you. That's true. He might throw. Yeah, he might throw quite hard. Not true. He smiled when I said that. He intends to throw. Daryl, do not throw, please, I beg you. No throwing! Okay. All right, now I know the ability draft community. They're bunch of real sickos. They're very sweaty. They are very sweaty. Now, I like to say it's a metaphor for high school. Okay. Imagine that all the bullies in your high school, there was no one left but bullies. Right. That's all that's left from the ability draft arena. They all know everything about ability draft, and they're just begging people to come in and get abused. And that's what we're going to see here today. It should be fantastic. I'm not saying ability draft is not a fantastic game mode. Get in there and get... If you like being abused, you wouldn't be a Dota player, all right? Go play some other loser game. We're in here for the, you know... We like the pain. We like the pain, all right? And ability draft is the most pained you could ever be. It is. I avoid it like the plague. I'm terrible. Don't say that. It's... I'm so bad. I can't draft. I mean, I'm not going to be able to help them at all. If they need any help, they better lean on very hard on any of these guys that actually play ability draft. I'm terrible. All right, take it easy. Now, what we can tell you about, once again, is what they're playing for. So many players around the world have fought in all-star matches for the honor, the dignity, the responsibility... Responsibility! ...of eating the cheese! There it Ladies is. and gentlemen, Roshan's cheese, watch your head. Oh, my goodness. My goodness gracious. This is interesting. We cut it up. This year has been turned into loads and loads of tiny, tiny bits of cheese. That's right. It's COVID safety. So we can just pick that up. We have not earned this. You don't eat the... Put that one right back in there. Good luck. Oh, you don't get to eat it? You didn't win ability draft, young man. Well, yeah. Aren't you supposed to take the wax off these? Yeah. No, I didn't eat the wax. He's eating the wax. Hell yeah. I can't peel this. I'll just suck the cheese out. Cover.
Don't eat the wax. Ah. Oh, God, that tasted awful. I'll put that in my pocket. Don't leave that right there. Okay, I'll put it there. That's a good idea. That's fantastic. At any rate, let's talk about some of the best heroes in ability draft. Now, the drafting portion is random, my friends, so we don't know what heroes will be coming in as the quote-unquote bodies. The bodies. The bodies. But we do know that some are better than not. Nature's Prophet, one of the best ones. Very good, Great okay. Right click, great everything else. There's some real terrible ones. What are the worst? Most carries, Slark. Slark's no good. Imagine Okay. Slark without any of his abilities. Garbo tier. Right, yep. Absolutely Garbo Noted. tier. I hope my team is paying attention. Not that they can do anything about it if they get Yes, unlucky. no, they will get dumpstered. There's nothing that they can do. But yes, it should be quite interesting to see the biggest broken combinations on the stage. What do you think would be the best hero in ability draft? I'll let you guess here. One of the strongest of all time. One of the strongest abilities of all One of the time. single best #1 picked abilities out of all of ability draft. And it is not the abandon button. I have no idea. It is Sakuchi! Alright, Sakuchi! Mr. Weaver Sakuchi! Movement speed, damage, invisibility, invincibility. Yeah. Very easy. Take note, team. Yeah, Shakuchi, take very notes. good. Thank you. But yes, it should be exceedingly. Oh my God, one guy's very excited about Sakuchi. Yeah, My boy up there. Sakuchi! Sakuchi! Fantastic. Anyway, as the teams gather in, what was your last ability draft experience like, Pyrian? I mean, I've been playing Ability Arena, which is kind of similar, I That's guess. a sellout. Shout out to Suns fan. Ability Arena, very cool. I don't play Ability Draft because you have to have a big brain. And I don't have a big brain, Jake. I'm a small-brained individual, so I avoid it. Ooh, I will say one other thing. Very important here. There is a forbidden art in ability draft. Forbidden? And this is called picking a hero and then just picking all of his spells as yes. normal. Now, this is a dirty What's the name move. for that? Ice Frog's a genius at balancing. You're going to go ahead and steal Ice Frog's homework and present it as your own. I am pretty messed up, period. But what are they? What is that called? If the default hero is called a body. The body. What are they called just building default heroes? You say it's cheating, but it should be worse. He's an asshole, is what He's he an does. That's what we asshole. call him. All right, you don't build Phantom Lancer on Phantom Lancer. That's Okay. messed up. But there is a benefit. The talents still work. So on some heroes, it's a necessity. Zeus, you've got to get the lightning. You've got to get the lightning. Oh, you have so many talents. That makes sense. Actually, I remember that. That's I right. do remember that from Ability Draft. Ags, Yeah. I don't remember what that does. I think it works. What? Oh yeah, Ags works on all the Ags. So if you have any ability that gets an Ags buff and you buy Ags, you get that. All of them. All of them. Naganet. God forbid someone buys Ags on that again. Now, I think that was the shard, the reel in. Don't buy the shard, but if you get it, if you get the net, I believe you get the reel in. You get the reel in. Do you get all of the abilities? On the shards and on the ultimate, if you choose the right spell. Oh my God, there's some my shouting. God. Oh, they're talking. Your team is yelling at my They're guys. talking What's at- going on here? Go ahead, put it on the camera. Let the talk it. Sorry, I don't speak English very well, but I kill everybody. He's gonna kill everybody! Run for your lives! All right, fantastic. Well, that's unpleasant. Let's keep it civil. I'm with Be True. You're one of my players. How's it going? Well, the feeling is playing on stage is incredible. It's been my dream to play on TI stage, even though it's ability draft mode and I will be playing it for the first time, like, whatever. And also, can I take this one? I wanted to say something to my family, to my parents. It's been a difficult year for them. Yeah, because like we are Ukrainians and we were forced to leave our hometown. Yeah. Yeah, because our home city is under attack as the rest of Ukraine. So I just want to say my family, мама, папа, бабушка, я вас люблю. Все будет хорошо. Yeah. And I want to thank to everyone who supports Ukraine. It really means a lot to us. And yes, stand for Ukraine. Thank you. Thank you, Be True. Thank you. Good luck in the game. Anything to say over here? Last one, I believe. Are just about ready to start the draft, I believe, Jake. Unless you have
One other thing from your team over there. One final thing? What final thing? We have Yuno over there. She brought her own devices. It's all pink. It's free win. Okay. Yeah, your own devices have been used. Does this mean free win? What? Fantastic! All right, we're ready to go here. I think everybody's pass just about loaded into the lobby. Ladies and gentlemen, Ability Draft, the all-star match of TI 11. Oh, I can't wait. Can anyone root against Team Thunderhide now? I don't think they can. They're clearly the best team that are clearly going to win. Clearly. Well, no. That's all I've got. Okay. No. But the game will be commencing very soon. Now, the drafting portion of this game mode it's quite intensive. Okay. It's quite long. So perhaps we should go over to a different area so that we can observe it and help you guys walk this through. Okay. We will have the comms coming in from the teams for the entirety, but me and you, Piri and Flax, we will be bumping in here and there. Are we going to cast the game? I don't know. No one instructed us of what to do before we got on the stage. I've waited years for this opportunity. We could just do it and see if they'll fire Let's us. do it. What are they going to do? Come in and stop us? Try it. The game should be starting soon. We're up to the draft. Let's go, baby! Let's take a look at some of these bodies and hear these comms. Isn't there usually bans? Yeah, they're usually bans. Oh, do we cast off one monitor? Okay, let's go. Here we go. What do we got? Your team's got... Oh no, I've got Drow, Lifestealer, Wyvern, Marcy, and Ursa. That's pretty good. I mean, yeah, they got Marcy's an ability. Yo, Primal Beast is an ability draft? I didn't even know this. Let's listen to their team comms. This is very important. You have to pick the first pick Aftershock or we don't. Yeah? Who picks first? They have ice. I have no, we have the draft like talk. Oh, it's wrong. Yeah, they're talking a lot. I don't know what they're doing. Nothing seems to be important coming in there. This is a broken ability here. That is Earthshaker's stunny thing. Fisher? No, the other one. Aftershock? You know what it's called. Aftershock? Aftershock. That's right. Now, Aftershock is one of those broken abilities. If you get that sucker, you can have something that casts a lot, like Shaman Shackles, right? Okay, yeah. And it's Aftershock Shackles. Oh. That's broken. Lifestealer with the multi-shot. You've got Shakuchi. You've got your Shakuchi. I told you, bro. These guys do not play ability drafts. Sakuchi is #1. That is Decay. Picked up on Wyvern. Okay, broken. Cinderon's gonna go hook Io. Tombstone Marcy. That sounds like the stupidest thing I've ever heard. Io hooks someone into him and then what? Oh, there's Rage as well. Rage rearm, let's go. Yeah, Rage rearm. Yeah, I'm gonna try Rod, maybe it works. Yeah, it's also very good. Should go for Take bug, bro. Rearm is bait. Rearm is bait, dude, yeah. Also What good. should I take? Come on, guys. Yeah, I'm Sidekick. I'm taking bug first, I think. Oh, I can get hook into. I like it. Wait, I have 6 seconds. I have no idea what to choose. No idea. Yeah, me neither. It's... Okay. Okay. That is the Sans fan mode and just... I mean, I'm straight. Oh, they got Rage. They lost. I don't know if Rage is that good. I think Ice Golem is better, probably. Rearm is good. Or just go Pulverize. Like, I come from the Invis and Pulverize them. Okay, Fuck it, those guys. Feel your heart. No idea. I'm healing everyone. Tether Soul Rip, alright? He's playing I Healer just wanted to Wyvern. work with I think I'm going Aftershock. Dismember, right? Race? Yeah, Race? Dismember. Oh, yeah, Race. Yeah, we have which Race. skill I Can always go rearm. Oh, I don't know. You Afterwards. know. You are carry. this one? I don't You know, go man. full carry. You go full carry. Oh. Alright, is it Purious Maybe. carry? I have no idea how. Race? Oh, the shot on a melee hero. Oh, we lost. you get Is there ulti, right? anything? Balls? Last Yeah, seven. she got Oh shit! It went random on them. Oh my! Oh boy. It's a fucking disaster. Oh no! I'm useless. I'm gonna take Yoshi. Oh, you know. I think I take Pulverize. Oh my I take Pulverize. God. I can hook Pulverize. Okay. Okay. I'll get Flesh Keep then. I'll get Flesh Keep. I'm
I'm gonna be just like we should get youth mates, I think. Okay. I think Alright. for one. Okay, I'm gonna perma heal with Trample Sukuchi. Who I choose now? Oh, that would be good. That sounds amazing. That's really good. Presence of the Dark Guard, okay? I think I'm taking. I want rebound flesh goal if I get it. We I'm have just gonna go ultimates, right? We have team touch fight. people. Yuno will carry us, and we just team fight. Go, carry us. See what happens. You can do it. 3 seconds, I need to go guys. first for the flash Okay. goal. This is correct. Nice, that's perfect. Rage Just not. versus... Great. Oh, nice. We give trample to Undying. Yeah, I'm going We should get trample on Undying. It's insane. Yeah. I'll get trample, don't take trample. Don't take I trample. can go Take Cold anything. Embrace, Side Kick, or Defense Matrix, whatever. I have rearm. Magic cut. Oh, I'm picking like... Can I get like 2 outs? No, right. I So don't they think get- you can. Well, they say we're not tryharding, right? But it feels like we are already tryharding. Yeah! Oh! Yeah. You guys are tryharding. I don't know. Yeah, I think time lapse. Time lapse is pretty good. Yeah. Just don't take Requiem. It doesn't work without souls, I think. Oh yeah, you did. Dude, Yuno was just playing Shadow Fiend or what? Yeah, with It is actually Shadow Fiend. Laser or dispose. With Drower. Laser or dispose? Laser. Okay, laser. I have some good bursts. I have 2 pure spells. Did you play the ability arena? Wait, who's going top with me? Yeah. Oh, nice. You I'm get going trample top. Shikuchi. You're going top with me. You want me to Yeah. farm or you want me to? baby. I don't So want to good. fight. That's good. I'll try and farm. So good. This is so broken. I'll take decay them, and I'll CS. Sounds like a plan. What about Gemini attack? I'm very confident, boys. This looks like This one. Yes, Yeah, we will yeah, attack. I think Yeah, so. yeah, yeah. Yeah. You can attack twice. Okay. So far, so good. Yeah, I'm just gonna pick this. what the hell, man? What is your build? Oh, your heels look so ugly, guys. That looks like it looks terrible. I'm not gonna lie. It does. Okay, let's go, boys. We'll be fine, guys. I need to go bot, correct? You go with me, but I help you. Hello? You are position Yo. 3. So I'm top. I'm top I with don't you. see. Yes. You are With disabilities? Dick sounds. Yes. Okay, Perfect. come on. Never We're bad. top, right? Come on. Drinks are we are top. We win this, eh? Yes, We're top lane. Yes. Okay. Yeah. Who's farming? You farm. You farm. I farm. You farm. Okay, Yeah. curious. I'm We supporting. kill them. We farm and we kill I don't them. have a spot. Go for it. We have Guys, we SVG didn't do and our round Beetroot. stuff, like team talk, team Don't speak. talk about that. Let's go. You have no time, boy. No, don't tell me. We gotta go. Smoke and go. Smoke and go. Oh, I will rebound, jump, decay all of them. Let's go. Dream. Oh, I forget my items. See, I'm getting more. Go ice. Go ice. Run. Man, Go, go, go. do you see Prepare my mic? for battle. No? It's so small. What should I buy? What should I even buy? I think this. Stick. Stick is good. Yeah. I'm doing one, then I'm gonna use the courier and bring tangos. SG, Places Vamos a usar How the hell am I? ¿Quieres gankear? I mean, this is the chat. This is the chat. Yeah, Go to the first blood. First blood? Okay. Yeah. I have. We going, you guys. We go in. We go in. Yeah. Maybe here. Goodbye. Alright, I'm back. Sorry. I have to like. Wait, do we get? Vamos lá, galera. Vou falar em português, vocês me entendem? Vamos pra cima. Wait, this is Hey, an bro. ultra chat Hey, move. sister. Ultra chat move. Yeah. Oh, shit! I saw a wave. I see a shadow wave. They didn't see it. Wait. Let's get you know. I got it. So it begins. Yeah, we get both. Пацаны, запеканная. I have sentry only. Що ми надрафтили? Qué rico. The battle begins. Nice! It's the best voice line I've heard. Help me. Vamos bajo, manito. Traffic, we're top, right? We're top. I need to go bot. Yeah. Come, bot. I don't know why. Life is
Castilla is here. He's Oh, low. another. Oh, they have DP. Oh no, it's a choco. No, it's a choco. Ya no estoy farmando nada, manito. Perdí una lane entera. I give you a tank. No. No. Cinder jumping out. That's that spell. Double strike blade for Decay. Sounds pretty good. Go, go, go. Decay. Farma, manito, farma. Hey, he has no mana on Shaker now. Everybody level 2. You might have to mango beat. I mean, wars. Okay. Let's see. I'm gonna push Okay, I the go lane. full. Oh, out. I Farma, pull. manito, farma. Oh. Oh. Go, go, go. Last hit the range. Go, manito. Easy. Farma. Estoy atentando. I think he went. Mano. Where's Cinder go? Debe cargar a Yupepe. Va a cargar a Yupepe. Uh-oh. Oye, Pepe, mano. Oye, Pepe. Go. Yep. Oh, they have After this. Voy a morir. Bye. Eating creeps is hard. And if I kill Cinder, I'm gonna Go, trap nice. the shit out of him. Yeah, let's do it. Come on, we can kill. I am ready. Going Marcy? Okay, I got. Sure. Sorry. You just go whatever you want. Very Oh, you need strong. to trample first. But yeah, it's not. It's not hotkey. Let's like this. I'm fine. Oh, I have no verify. You have no skills. Oh, please. Nice. Deny all the raids. The Harlan going. Have you not played this game before or what? Hello. Going well. You know, Cinder, I'm giving you mercy. And I'm giving you a chance this game. That's why. Ah, yeah. Do not make me angry. Mano, de nuevo, carga. Yo tengo estos. It's not working. My dad is the only have to do. I can't do anything. We can do it. Do you know how to... Your skills are so bad. Wait, you don't have a hotkey on the spell at all? Oh, yeah. Oh. Next stone? Lleva. Lleva creep. So much gold, what am I gonna buy? I'll buy Dagon, I guess. We can find. Yeah. 啊，我的电有问题。 That's alright. Yeah. I need to change the key somehow. You can I don't know how to do it. Okay, 5 seconds. I have a tombstone. I promise. Okay, after that, I'm gonna use it like old school Sin, right? We just use buttons. ¿Qué Okay. hizo? ¿Sí? ¿Quieres ir para encima? Sí, a Yupepe. Alright, we just chill here. Pega, Pepe. Okay, we can trade him. Even with side 2. Nice. It's actually disaster, boys. I'm not gonna lie. Pega, mano. Pega. Carol, you're gonna have to carry us. I'll go full. Okay. Nice one. God gamer alert! God gamer detected! Choco es muy malo, Ibe. Oh, I have to buy items, right? Are you ready again? Yeah, I'm ready. Oh, you did. Oh, you went 2 and I mean, I have. Get level 4. So I guess the I'm Carga todo. Será. Muy annoying. muchos creepers. Dale, mano, carga. gonna leave. Gucci, man. Go away. God gamer alert! God gamer detected! And how many chances are you gonna give? We only need one. I'm setting you up for the ultimate fall, my friend. And when you fall, it will be glorious. Wyvern TP top. Radiant's bottom tower is under attack. Vámonos. Ah,
strong. Opa! Vamos, mátale. Goddamn trample. Put this ability in the game. Oh, trample is push. Oh, okay, I see why you guys are dying. It's stupid. Mana. I think we missed mid. We need a rupture or something. It was rupture. Okay, mano, carga y se muere. I have a tombstone. I have Okay, skill trample level 2 and level 5. That's just a simple Foundling's life is all a gift. They ran out. No way! Go. Manito, vos estás solo. Sí. Y uno solo, that's what I told you. Have no Pero estoy a farmear, y uno a farmear. I'm coming. They warned you. Dangerous. Well done, guys. Well done. Nice. Damage. Nice. I'm ready. Run for a ride. I mean, I can't He's dead. Okay, let's farm. Okay, I go bottom. Do we have anyone plus one? I can hook ulti. Here. Need plus one buttons. Anyone TP bottom? I'm going back bottom. I'm just going back top, dude. Yeah, someone's farming in this game. Yeah, I'm ready to go on him. We can kill. Very scary. We're the Gucci. I just make space. Start. Yeah, let's go. I'm ready, Buffy. They come in. Pero no tengo mana, estoy llegando. Chase. Do you have any shoes? Oh, he ran. No problem. We go. They're ganking me. I wanna do a dip bar. You know, you're coming. Be careful, you know, they all together. We can still fight. I think they have vision. They have vision. Oh, they see us. They're bad. Yeah. They're bad. Let's go. I'm coming. Wanna fight? What do you have? You have soul rip? Yeah. That's it. I can't make it so rip. You want to kill you or what? Yeah, let's go. I mean, Just charge him, okay? Charge. I'm so bad now. Manito, That's so bad. Are we gonna fight? We can't. I don't know how, but yeah, let's go. Oh, how do we engage? I engage. Oh, that's it. Okay. Nice. They go and lose. Kill them. I'm dead. For me. Oh no. Okay, I go back top. Our engage is so bad. Our engage terrible. I go I bottom. don't understand where they have Yeah, of course. I hear you. I hear you guys. That's it. I'm almost seeing Want to play with curse or what? I might have Oh, you have curse. Here's the broken guy. The trapper situation. I am. Screw that guy. I go back. Yeah, just run for him. He placed a sentry here. I'm coming here. He can't find the D word. He can't find it. They're going top. Yeah, we can fight. And he warded. Maybe he warded there as well. You wanna fight all the time? Yeah, we can. I have 20 sticks. TP's coming. Let's You fight know? with the Tom. They show it off. yeah. Take a defense. You wanna push me to fight? Yeah, the problem is the guy who should push you. Just run away. I go top. Oh, we should have guys. They wanna fight. Go here. We wanna fight as well. He's the Gucci. I know, guys. Yeah. What's it coming? Eat it. Alright, I'm taking 12 boys. I'm taking the 12. I need this. That's some next level. Solo level. I can keep going, guys. I can take it back top at 5. Yeah. Oh, mine is good. Our engage is so bad. It is kind of bad. Alright, I have flesh gold. Let's go. Yeah, I can go. I will carry this. Right. Oh, Just give me space. Oh, so close. I have no range. I have no range, man. Go, you can do it. Fight. I have no range. Guys, we go fight. Okay, we go fight.
Go, Manito, go. Help him. Oh, I got it. Vámonos. Pretty good bug. I might. Yeah, thanks. Yeah. Whoa, what Yeah, I have nothing. I am beast, boys. I am Go. beast. I got one. Okay, I have a dying. Now I'm perma healing everyone. I'm dying, dead. I'm dying. Yeah, To the right. Get to the right. I got him. Get him. I can heal you. I can maybe jump. Yeah. Let's go. Careful. Wait. What? Get on board. And they have one unit spawning on Hold on. We have to kill Drow. He's spawning with us. Yeah, now I'm perma healing everyone. That's it. If we can catch Drow, it's good. Okay. Alright, I go for him. Let's do this like I think they will TP now. Yeah, they all TP Coming bot. TP bot. Yeah. I mean, I keep the P anywhere now. I have to rearm. We can push the bot lane. We have 2 mid and Primal Beast is bot. They split. Bot is also Yeah, bot. 2 heroes bottom. I think we should play top. We should pressure top Bot again. and Primal Beast is bot. Yeah, just play defensive repairs. Top right. If you need it, I can TP bottom somewhere and heal you. Okay. We They can maybe definitely still have kill help. him. They We trying have stun. to gank. Yeah. Just shoot. So much go. I got it. Okay. Oh, coming as well? No. Back. Let's go. Careful. I can't say. Oh, you're okay. Nice. I will have another soul rip. Second ulti on me again. Nice. Wow. No, I more than it's a family. Okay, they farm a lot. That's why they don't fight. Stunning him. Stunning. Oh, no. Nice. I can take you there. I'm not going to that fight. I keep failing. Okay, maybe I learned to do it. Want to defend top, to be honest. Okay, back base. I'm taking top tower, boys. Yeah, I can't defeat top side. Oh, they're keeping top. They're bad. Okay, I can come top What soon. should I get? I have no clue. Okay, Your hero go. looks so weird. Go. It's down. Oh, I'm coming to stop too. Come on, guys. Keyword shaker. I'm coming. Go back. I'm reacting. Stop whole team. Good. Wait, and stop. You want guy? I'm reacting. Down. Okay. Okay, I'm alright. I'm in the zone, but I can't. Wait, defeat. Yeah, you're alright. Hello. Nice. Okay. I tried to pistol up here. Yeah, I tried to pistol. They got me. Okay, let's push now. They already have Everything. ultimates. Wait, I'm going base. Be back. 1 second. Це база. Це фейдам. Це Do you see this Cinderman? Ladies and gentlemen, we are here now taking a little break from the in-game comms to talk to you a little bit about the action. What do you think about so far about the game period? The laning stage is over and we're into the most crucial part. The early to mid to early mid. Oh! Landed by Cinder. That got him exciting stuff. He took a little bullet there. Mr. President, I like that. Have you All right, tried let's talk having about more these damage to broken actually kill combos the that we creeps have like a seen hook? so What the far. fuck? I'm really liking Have you this tried Undying being with better the aiming? You Sakuchi should have and gone the Arlington Trample. That and is gone better. legit. Sakuchi and Trample, pretty broken stuff here, as we see from Bafik. You're Undying, running around. Whoop! The hooks are all over the place. He was Cindering. landing them at the start, and now he's missing them all. It's always the way it goes with these punch pickers. It's typical. Yeah, lag. Yeah, right. Cinderin, fishing for heroes like he's fishing for people on his tier 2 teams, just absolutely throwing it in and seeing who he can get. Brutal. Incredible stuff here. Double damage coming out for Yuno. I want to hear a... No, I don't want to hear that ever again. Thank you so much. Thank you so much. As we now move in here, Winter Wyvern, look at this combo. Oh, the hook! Oh, that's a nice fish. Just as we're flaming Cindy lands one. And the Winter's Curse. Big charge right through the middle. Curse does catch the diners. Oh! Big slam coming out from the punch. Can Sin get out? There's a dispose. Cinder in trouble. He's down. His tombstone doing work. Look at all those zombies. That's a lot of zombies. They got the zombies. Now, that's a lot of zombies. You promised me we wouldn't start doing this twice again, and here we are. Oh, very nice charge work. from War Sickle. Lower gets it off, but two drops like a stone. And now look, the chase with the Shakuchi is on. Going down on Imperius. Is it time lapse or cheat? That was a time lapse, Tom. Time lapse?
That's a cheeky time lapse right Ice there. has been doing well. These curses have been pretty blooming good so far. I gotta admit, Ice build looks absolutely like the dumbest build ever, but he is definitely making it work. He does have that aftershock and the Marcy abilities there, pretty strong He's stuff. building it like normal Drow, Yes. but then doesn't have any of the abilities of Drow. I mean, broken hero, honestly. You can build whatever you want on Drow. You could have the most brain-dead dude playing Drow. He's still probably going to win, as we can attest from the Crusaders in the arena. And here we go. Mr. Choco, I do like that. He is bringing in the flavor, if I may say so myself. Look at this guy. 0 points in overcharge. Why? I can't explain it. He can't link. SVG's in big trouble. There's the dismember coming out from the Shikuchi Trample Undying. That is very toxic. Yes, that LOA is SVG, in That case is you're SVG. wondering. So do flame him after this game is over. Absolutely phenomenally terrible performance. Please stop with that voice line. Thank you so much. As we continue here with the Lifestealer. God gamer alert! Shut up! All right, yes, we're continuing. And now we will see that bottom tower getting pushed in. Baffik going in. The dismember! The no animation dismember. You love to see it. Yes, you love Oh, they got the time lapse on. Here goes the tombstone. Here comes Petruge. Trying to go top of Warziggle. They do. Yuno's tanking a lot of tower hits. What now? What now, sir? Yuno, run! Lifestealer's got multi-shot, I think. Oh, that's a rock, baby! Cinder and beautiful. Absolutely fantastic. I'm so happy that we're here to watch Cinder and have any sort of relevancy at an international again. It's like a historic page in moment. history. You wouldn't want to miss it. No, incredible stuff here. Imperious, he's looking hungry. What's that guy got? I don't know. Let's have a look at the Let's have a look. He's got multi-shot. He's got some things. He's got one of the Primal Beast ones. I don't play that hero. He's got a lot of Lifesteal, mouths. and he's got time lapse. Get Cinder and kill him. Yes. Hell yeah. Go back to Denmark. Oh my God. Sorry to all of our Denmarkians. Let's go ahead and take another listen into the team comms, and we'll be back with more action. Oh, big jump in. You're not dying, my friend. I never died. Oh, God. Yeah. Can I have some ring? I'm going back to get it. Let's put some aggressive vision. I'm about to like boots and travel this game, I'm not gonna lie. Alright, go top. Okay, I'll put you. I have arcane and soul ring. Is under attack. I'm thinking needed Paris. I think they're crumbling. I actually think they're crumbling right now. Nice. I think my ulti That only no items, right? smashes them 2 times instead of 3. It's very weird. Oh, there are neutral items, actually. Yeah, I think so. Oh, nice, we got Bobo. Okay, we have some vision, boys. I think it maybe not. Oh, no. We will. Oh, yo, DD. I'm gonna heal you. Defend mid Good, tower. I'm gonna go base it. Me, Yeah, I can get you full life. I need people No, that no, You I really go wanna go base? I go base. I'm kinda ready to keep bottom. I have bots, I can keep built. Yeah, okay. So Kuchi though, the guy. With defenses mid. Yes, defense. We can I get get it. okay. I'll TP bot. I'll TP bot. Try. Yeah. We have review. I got this. Nice left. This is strong. Oh. Guys, Look extra at- preposition. You kinda didn't need me, yeah? How can we defend against this? Let's go for a smoke. Okay. Okay, we have a new captain. Alright, You lost your job, SVG. That's okay. I'm ready. You lost your job, SVG. I They can keep have. Yeah, let's go. We need a Let's thing do this, for- guys. I come in. I don't know. Too slow. Let's go. There you go. Oh, hopefully, yes. Yeah. Triangle. You. Fine, you know. Okay. Yeah. We need like this. Okay, maybe Stunning, you're getting old, man. Back to tower. Oh, God. No, They don't have Nice. Now they know. Now they It's know. actually a disaster. They use dust. Mid tower. They have Mid reached tower. over Stop. here somewhere. I backdoor mid tower. Hopefully not in We here. don't have. I'll go back Oh, to they are farm. doing mid tower. Dyer's I middle smoke us. tower is under attack. We have flippers. I'll try to come from behind. Dyer's structure. Go people.
They should be smoking. We can start. Fisher into hook. Fisher hook. Okay. Yeah. Oh, they are avoiding us. Let's go. Yeah, they don't want to fight us. Radiant's top They tower have to be is under careful. attack. I see throw. No wyvern. Are you scared? Here. You wouldn't say that to me in real life. Should push, guys. Gets the entry there. Nothing is scary about you, sir. Fisher hook drown. If we can. Oh, okay, I can't reach. Uh-oh. Raw is behind. Radiant's top tower is under attack. Oh, there's one here. Dial. I have no ult. This fight's on you guys. Dyer's middle tower is under attack. do a lot of Dyer's damage. middle We tower can roach has too. fallen. I have bugs. Yeah. Cannot Do you fight want it to? like that. Yeah. What? Single road? Let's go. No. Big No. fight. No. Okay. Let's kill Can we someone. fight We can Yeah, also yeah. try smoke. Okay, let's go. BKB Yeah. and then we fight. Yeah, finish your Alright, I have BKB. bots. I join. I mean, So, let me check. Yeah, let me yeah, check yes. Yeah. Maybe I can play I'll with go Richard. for spot. Okay, but we are 3 here, guys. Hey, Let's go Tim. back. Are we no, I fighting? think we have the high ground. No. Are we fighting? Oh, Right. can I finish my blocking back? They're here. No, you don't try to go BKB. You just do try hard. We need to punish. We need to punish. We can TP ball then. Radiant's bottom tower is under attack. I mean, I can go bottom kill. I have bots, yeah. Radiant's Go bottom. Yeah, give me a second. I was okay. Okay, I'm going. Let me start. Stack here, stack here. Nice one. Okay. I'm farming mid. Oh, bottom, They bottom. do it again on me. Nice. It's alright, they're all there. Keep on me. Qué rico. Yeah, we get they try to fight us. Yeah, they try to. I told the guy to die. Dyer's I mean, She top can tower die. is under I'm attack. gonna come. I'm gonna die. Yeah, Get the pressure, guys. back. I can give you one. Guys, a problem. Back. Almost on Oh, Someone slow. on shaker, on the Back, 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 back. He has no mana. Dagger. Well, I'll take I think Yuna finishes BKB, it's almost done, and we try to fight them. Alright, I wanna jump. That's What Where spot is do you this? reckon? OTP. Oh, they're here. It takes too long. Nope. Okay. I can maybe get Oh, here. There, illusion. It's illusion. here is a courier. Okay. Can we all just by having engaged? Both for free. Maybe get him. Oh, I get him. Illusion. Nice. Yeah. Oh my god. Help me, boys, help me. Are we doing this? yeah, Nice of course. damage. Kill Tombstone? I can still shaker. How many ults for me? I'm kind of far. We're not dying. Oh, you are. Go. I am dying. My. Nice. Your damage is just too high. He got a lucky hook. Yeah. Can we go rush? Oh, I got it. Or not rush? Oh, yeah, I'm tagging now. Let's go. Actually, it's a secret spot. Can we do this? I tank. Get that. Oh, I can start the middle. I mean, I'm up. I got a Dinkus Matrix if you want. Anyone? Yeah, I'm going. I get bots in. Stun it. Oh, look at those stuns. That fight. Oh my god. Yeah. Okay, go back. Go back. Okay. I got TP, but I don't think we can fight. Radiant's top tower No, is you under attack. Nice. Oi, no. Wait, that's Nice. Oh, man, the thing? What a bucket. I don't have it. Radiant's top tower is under attack. I TP bots. Visibility. Maybe I can turn, yeah. BKB is Radiant's bottom tower is under attack. Okay. I'm rearming. Try to survive. Away. Oh, I need a rebound target. Oh, shit. Consider it. Rebound target. You already? Oh, there it is. Please keep that. I must have BKB. I have rebounded. Okay. She has no BKB. We can go. They are here. I go. I need rebound target. Yeah. Universe, don't fight coming for them. you. Wait for me. Go back. That's good.
Is under No shit. attack. Fight me. Fight me. Okay, let's do this. Let's do this. Go, go, Fight. go, They have one hero bottom. Be right back. Yuna is tipping. You can initiate. You can initiate. Oh, they're coming. They're coming. I'm keeping them. Oh my god. Stop. Coming to draw. Oh yeah. No. It's alright. It's alright. Go on drop. Go on drop. I stop for him. Nice. No. Oh, okay. Yeah, okay. Ready. Oh, yeah. Nice job. Great job. I can maybe look here. Maybe here. Anybody tip Synderen? Mass tip Synderen? Mine. I'm out of tips. Oh, what is this guy doing? base heal. I have ult. Can you show me this? I can maybe hook. I can. Dire's top tower is under attack. Nice. Oh, what the hell? Nice. Nice. 5 seconds. It was a worthy trade. We might continue. Dire's top tower You know is under demoralizing. attack. Yeah. We get hooked here. Guys, I'm out of the Sorry. Dire's middle tower is under attack. Care. Draw my back. Draw back. Draw back. I want to fight. Big bug. Big bug. Careful. Careful. Yeah, stand there. We need to wait until the ulti disappears. It's kind of my second. My ult out. I think we chill. I think we. Shockwave ice. Oh, Shadow finish oh, on this. Oh, ice bot though. Ice bot. let's go. They have Oh, look vision at it. here. Yeah. We have. I don't know. Might. Oh. Yeah, Nice. Draw. I got drone. Do we have Good to work, guys. We are doing this. Can we get any two cover for people. that? Nice. Can we get any cover for that? I'm gonna buy a Buster. I guess. Top, maybe? Nice. Totem. Oh, I can get eggs if enchanted. Do I have eggs? Dude, No, yeah, I don't have any eggs. Synderen. Mercy. Mercy, please. Shockwave's milk. Why are you so mean? Sorry. Next hook is yours. The next one? I don't know. Your hook rate's not been so good this game. Your KDA isn't looking as hot either. What is this? Things seem to be crumbling. I wish you luck, my friend. Radiant's bottom tower is under attack. Oh, damn. Mid, payload. Radiant's structures are Alright, fortified. boys. I have Axe Decay. Let's go fight. Okay. Yeah, we saw. Let's go fight. Something's gonna happen. I don't know if it's good, but something. Okay, I'm 100 from X. 100 from X. Got them. I'll kill him here. Kill him. Are scanning. There may be coming many here. Careful. Radiant Oh, here. are scanning. Oh, I'm dying. Yeah, they're all here. Get out. Go back. Radiant's I can top go back. tower is under attack. Don't fight. Nice one. Oh, that's oh, yeah. It's alright. Radiant's top tower is under attack. Wow! There you have it, ladies and gentlemen. Now, the boys, we are back. We're going to take a break from the in-game. Hello there, crowd. Good to see you guys yet again. Shut the hell up! Stop! Please. No one is enjoying that anymore. The stadium is doing it, and we do not like that. So, anyway, here I we want go. the whole crowd doing it. Shut up! As we continue this fantastic game, the very It's memorable been game. riveting. I've been glued to the monitor at all times. Truly a game that will go down in Dota 2 history as Yuno with a beautiful BKB force tap. Wow, Yuno is killing this game right now. Yes, well done, Yuno. As Perhaps they're- you could go mid and end the game. No, it's all good. As now, we will continue here. A lot of good warding if you can look at that mini-map there. Oh, yeah. The double obs wards, very We call strong. that a sausage. A sausage? A sausage. Two obs wards that are close together forms a sausage. Wow.
And if they're really close, it's called a chipolata. I don't know what half the words you're saying right now, but I am into it. You talk about that sausage, and I am there, my friend. Oh, As yeah. now, we see Cinderin going into a very sneaky position here, looking potentially to do something as the push is coming. SVG on the high ground. War Sickle, the Pudge that has no hook. Looking potentially to do something. Yes. All right, calm down. Well, you know, we'll see what It's a happens. little There's too Oh, no hook. There's a hook from Cinderin, but Ice gets the disposal. Oh, The Winter's wow. Curse, is that going to interrupt? You better believe it. What have they got next? Oh, there we there goes SVG. That's a Death IO disappearing up to space. On top of Mr. Choco, what can he do? Nothing. Imperius eats him for breakfast. Bafta giving a chase down as BK's going to run out of As we now see Yuno moving, making her way back. Pudge jumps in. I like how that Pudge charged into the Winter's Curse. Oh, yeah. That was just attempted murder. Oh, yeah. I've never seen anything like that before get in my in life. there. Absolutely incredible stuff there. The Creeps, the true MVPs of this match, God trying bless to them. push as hard as they can. You know what? Here's an idea Yes. for ability draft. The creeps also get random abilities from jungle creeps. Oh, that is smart. I think that would be fun. That would Consider be it. good. Great job, Pyrian Flax. Excellent game balance. Baffic trying to cut the creep wave here. And make sure they hit Ice up. going up. Let's go, Ice! Push that tier. Go on, Barrel. Do it, baby. They're gonna fort. Why did they fort? Why? Stop. No, Stop keep forting. going. Just keep going, guys. No, guys, no, don't go back. All right, now they're thinking about continuing here. Ice, he's hunting for Baffic. Baffic, he's gonna grab the illusion rune. And then, there we go, Ice! God, Gabriel! There's the stun! He's doing it. He's doing it. Get it. Oh, He's my invisible. goodness Where's the gracious. detection? No, he's invincible He's away. and invisible. He's There away. he goes. He's got the dust. He is dusted. Oh, my You goodness. get that courier. They're trying to tease him. They Where's he will not going? fall for it, my friend. Ice, no. Okay, Ice, come on now. Oh, Okay, he's gonna TP'd out. TP away. This creep-cutting behavior, this guy is try-harding his life out. Yep. Incredible game, and he does not want it to end. He wants this ability draft game to last for the rest of his life. Well, Team Thunderhide are up 10 kills and 3k gold, so if this ends soon, I think they win. Well, we shall say. Oh, we got initiation! Oh! SVG coming in! Boom! Out of nowhere! Ball on top of that giant zombie. The tips are out! Mr. Choco! With the tips. Choco. Oh, nice Sinner. one, Cindy. He's walking in a straight line, you melt. Unbelievable. How do you miss that? This is not good, Pyrian Flax. Oh, They're going in. This is great. It's going to be over soon. That's not true, Pyrian. Anything could happen. There comes the hook. Blind hook attempt. Look at SVG. Is just Chad walking up there. My goodness gracious, and he Well dies. played. How come when he died he was an Earthshaker? He was an Earthshaker the whole time. He had the Undying ult. Of course, he had the Undying ult. And don't you see, my Beautiful. friend, the power of ability draft. And now we see Yuno is just getting big, getting ready to defend so that this match can last for as long as humanly possible. Kill me. No, we're having a great time here, ladies and gentlemen. As now we see, boom, that's a great toss. And we will get these boys moving. 37 to 25, 4K net worth ahead for Team Thunderhide. I reckon we should just give it to Thunderhide at this point. They've clearly won. Now I think, I don't know a lot about Dota, but 4K net worth. Oh, in goes Ice. Here we go. And then he's just giving it the old leap away. In goes Ice, out goes Ice. In Defense goes Ice. Matrix. I think they're just throwing him for fun at this point. No, he's got the Ags on, and he's got Totem. Oh. Totem. So he's Oh, got the enchanted the totem. Shaker Totem. Oh, fantastic. Look at him go with like a graceful There it is. See? Thank you, ballerina. Ops. Thank you, Observer. Yep. Yes! I got it! Thanks a lot, Observer. Fantastic observing. Uh-oh, big smoke attempt here. This could be the end here in Flax. It could very well. I hope my lads can do it. Let's go. There's there it is. Every time this charge comes in, the Echo Slam goes off, the house goes down. How are they going to have to kill? They do kill the Primal Beast. Imperius gets the time lapse off on like no HP. Kill Cinderin. Actually, let him live. He's doing nothing. Save Ice. Now Cinderin making his way out here. Nice tombstone hitting. Boom! Shakalaka! He's out! Yuno! She's bringing it in! This is the most exciting thing that a Chinese team has done on this stage this entire tournament! Let's go, Yuno! Woo, baby! The fans love that one. Oh, sorry about that, guys. Here we go. Yuno, stirring it up! It's the RTZ 1v5! Let's go, Yuno! Let's go, Yuno! No! Yes, Daryl! Yes! Yes! Let's go Thunderhide! Yes, Daryl! Oh, Yuno, A low
local boy buyback, does it. toxic buyback. Come on, ladies and gentlemen, that is not cool. As we now see Ice taking it for the local Singaporean crowd. Woo! But what? Let's hear it for Daryl. Let's hear it for Daryl. Ice, his hometown, baby, and he's come here to win. All right, here we go now. Oh! Look Watch out. out! Oh, nice heal. Holy moly, that was more surprising than when they told us it would be ability draft as the All-Star game. And there we go! They are hitting the rocks now, ladies and gentlemen. This is the fortification. Stop! Okay, as we now see them going forward. Big stun coming out. Cinderin looking hungry. He's got the hook. He's got the shook. But can he get the... Can he get the look? The look of... Yep, there it is. That's why... Can he be the cook? He's gonna cook something up right here. The recipe. There you go. There's a ball going up into space. Absolutely. He disappeared. Warsicle goes to the TP out. Not today, Sir Daryl with the Winter's Curse. That guy disappeared just like our careers before and after this also. Oh, yeah. That's it for us now. Absolutely fantastic. That's it for us now. The tombstone is down. Can they fight it with the zombos? Doesn't look like it. Bafik looking absolutely blustered here as his own zombies kill him. Oh, no, that's Choco. I think your lad should call it. No. Yeah. No. Yeah. Play it out. There we go. The tier towers are going down. SVG. This is looking like a race here. Bafik, he's trying everything he can. He's got the... Oh, no. Daryl's playing out of his mind. Oh, here comes Big Yuno. Yuno's back. And she's hungry. Hungry for the souls of the noobs. Get them, Uners. Go. 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 Fight. Kill them. They're getting the tier 4. Okay, they're just pushing the tier 4s. No big deal. Imperius is trying to bait something out here that he's going to time lapse. There it is. There we go. Actively trying to throw. Oh, the Echo does nothing. The Echo into nothing. Yuno defending. BKB by Yuno. Everybody else getting around here. Yuno has got the back. This BKB out. They're going to wait this BKB out. No! There's the jump. Can Ice get the dispose? This is it for you. Oh, the jump. Oh, and the hook into the fountain. Let's go. Oh, dear. Oh, Hit but the the throne is exposed. Period flax. This is looking like it's it. It is very much looking like it's it. Big there's a huge curse. Oh, my There's a goodness huge gracious. curse. Oh, my goodness gracious. The ancient is falling. They are pushing them back. For some reason. You don't know. You don't know. Please. You don't please. Okay, fantastic. My goodness gracious. What a game, what a game. No buybacks on the enemy team. They might just run it. GG, cool. GG, Cinderin is trying to give up right now. Yes, Sind. Too easy. Cinderin is calling GG. What did they actually accept it? They actually accepted GG. Yuno. She fought so hard. Cinderin, how can you do this? They did it. Team Thunderhide did it. There's my team of winners. Look at them hugging, embracing. Yes, team. No! Yes, team. A main stage win, yes. Come to the cheese, my friends. Come. Beautiful dub. An easy dub by the Thunderhide. Team Thunderhide, follow me if you will. We must do a winners and losers interview. Oh, Please, I'll do that. Flax. I'm going to go along the line. Please, the winners interview for the First cheese. of all, let's talk to Ice. How was it winning that game on the main stage? Obviously a huge deal for you. It is. It is. SVG, did you enjoy that victory? I saw a lot of strength from Cinderin. I don't think I'm ever going to forget it. He doesn't have much strength to steal, but you managed it. Well done. I'm sorry, sir, I don't know your name. Giuseppe, how's it going? Doing good. How was that victory? I mean, it was kind of easy, actually. So, yeah, kind of easy. Well said, sir, well said. And sorry, hold on. You were Imperius. Yeah. I knew that. How was that victory? Was the best game of my life. Best game of his life. Well done. And be true. How was that? That was incredible. My team is like grand final champions of TI. There you go, Slacks. Do I give them the cheese now? No. We have to do the losers interview. Excuse me, the exit interview first. Yeah. Okay, fantastic. Cinderin, what the fuck, man? What can I say? Super nerd builds from SVG and Ice. We're super salty. We tried our best, but
They were just way better. I'm changing my team for next year. Yeah, duh. Thank you. It was amazing. Sir, how does it feel being a complete embarrassment to your entire region? It's all right, man. I played against Size who used every ulti on me, so it's fine. And also, I've broadcasted like whole year of Alliance Dota. We will bounce back stronger. We will come back together. We will be the best. Fantastic. Just like Alliance Dota, I'll see you never on this stage again. All right. Sir, thank you so much for coming out here today. What was your thoughts about that game? I don't understand, but... Great! No. We're so close to doing more. Okay, fantastic. I don't know what the hell that was. Sir, how you doing here? Good. Mr. Chaco. Yeah. That was not as delicious as I thought it was going to be. Can you explain yourself and your failures? I mean, I was playing support, so basically it's not my role. So I try to help Juno because she plays good. Yes. We try. And Imperius is very lucky. I mean, he's so bad with Life Stealer. Incredible excuses. Thank you so much. Very good. And translating, helping out. Juno, possibly the only person on the entire team with any skill whatsoever. This must be an absolute banger of a loss for you. How does it feel to be trapped with these losers? 就他问你今天的天气还好吗？不是，你作为新加坡这边的一个主人，怎么不让一下这边的客人呢？ He says ISSI is great and you know it's well deserved. That's fantastic. I agree, ladies and gentlemen. May the winners eat the cheese. Go The cheese, come. Eat the cheese. Eat the cheese. You must peel off the red bit. Do not eat it. Nobody wants you here anymore. Oh! Run! He's back. Yes. It's actual cheese. Eat the cheese. I don't eat care the cheese if you're allergic to the cheese. Unbelievable. And the cheese has been eaten. Fantastic. Truly an all-star match that we will never forget. We'll never forget this day. Ever. May it live in Burned infamy. into my Ladies brain. and gentlemen, don't go anywhere, because you don't want to miss this. Check it out. Woo! I have suffered the atrocities of the living and followed the trails of the damned. On both sides of the Spirit Veil, they whisper my name and fear me far more than death. Welcome back to the International, Moretta. I hope I said it correctly, but Dota just got a little bit bigger. No, you guys, you've already... Tell us what the announcement was. We don't even get to know. Welcome back to the panel. I'm James. I'm joined here by T-Governor, Lizard, and Sheep. And by the way, I just want to say you all look spiffy. Ooh. Excellent. Thank you. Top notch. Nice to see you back as well. Yeah, we missed you dearly. Tsunami was kind of weird. Don't do our boy Tsunami like that. We're back at the panel. We're a mere 15 minutes away from the grand finals. Yeah, it's lovely to be back. Do apologize about missing yesterday. I'm slightly a medicated, ear-infected host, so we're... There's a new hero, James. Yes, I know. And I killed it. What's the name? Muerta. Well, I mean, we're saying it. She's awesome. She looks really cool. I'm super excited to play her. And she has a gun. She's like, what, the third hero now with a gun? We had the sniper. How do you know this? Snapfire. It was on the video. She has a gun. I saw the gun, but how do you know? Because there's only 3 heroes I've had this conversation with my friends before. I was like, I need a hero with a gun. They were just like, after sniper, who is that? It's like Pangolier. He's got the little... Oh, yeah, but that's a cosmetic. It's not in his base, right? Oh, sure. I mean cosmetically. Yeah, no, I'm talking like actual gun. Actual gun. This is very important, by the way. I'm very... Any guess on the lore?
No. She has a gun. She does have a gun. I don't want to butcher it this early, so I'm going to wait and see. But excited to see. You're waiting for Slack's video, is that? It's probably going to be a mobility spell on the hero. It's going to be very fluid design because all the new heroes are pretty fun to play. Probably going to be a core that becomes a support. Okay. But yeah, early 2023. Let's see. How about She's going to be broken on what's her win rate going to be on release after 2 days? 71%. Okay. You're way too excited about this. You don't even get to play it. But you know what we do get to see very soon? Is the grand finals, and this is what we're excited about back at the panel. So let's take a look at the brackets and how both our teams got here. It's going to be Team Secret versus Tundra Esports, and a great run from both of them in the upper bracket. They were the upper bracket finals, so they have been the best performing team over the last 5 days. But of course, we saw Secret drop down to the lower bracket, beat out Team Liquid 2-1. It's natural for them, right? Like the way they came here, even through the last chance qualifier. Yeah, last chance qualifier team, but Tundra just absolutely, flawless so far. I think they've dropped, what is it, 1 map? And at least in their last 12 games, they were on a big win streak, and Secret then knocked them down in the group stage. They did have several draws. I believe it was like 4 draws, but yeah, at least in the playoffs, they have had an incredible run. They are, again, pretty much the undefeated team. Well, they are the undefeated team. I mean, Puppy Curse dictates that he has to come second, so I don't know if it's worth Don't covering. spoil the script. Oh. Is that it? That's done. That's it. I'm gonna leave. The admin's not going to ask. You're not going to ask Puppy to GG. That was the ability draft. But yeah, Tundra, in terms of their kind of like road to the grand finals, I mean, what are they bringing to these grand finals? Because I think Jenkins actually had a really good point earlier in terms of the team that comes from the lower bracket. Is it 70% win rate so far in the grand finals? So the curse for Puppy could be broken. 30%. Is it 30%? No, I'm saying it 30% the other way around. Yeah, that's true. One curse against another, right? Like Secret coming from that lower bracket at the same time. Secret finishing second, Puppy, that's his place, right? That's as according to Keikaku. Okay. This ear-infected host believes that we're going to look at their last meeting. Yeah, and I heard it correctly. Don't worry, production. You're doing a great So their job. last meeting. Let's take a look at some of these drafts here, T-Gov. And the reason why we need to look at this is there's only been 3 TIs in history where the upper bracket match has been replayed again in the grand finals. So the fact that we get to see a game that we saw yesterday, this information is super critical. I think the main thing for this is the Tundra adapted against Secret. They allowed in Game 2 and Game 3 Secret to play this Dawnbreaker. They learned how to shut Resolution down, and they found kind of the key to preventing Secret. So Sheep, is Puppy the kind of a guy that adapts, or does he just stick to his guns? Ooh, I felt like they adapted quite nicely in the past, but he said after his match versus Entity in the qualifiers that he had to take time to figure out what it was that they were doing well, right? So if you can't come up with that with Tundra, then you need more time than just one best of 5. But you having this break changes everything. I mean, they weren't able to prove it in the upper bracket, but if you have that break, you have ideas, they're tested in the upper bracket, and now you come to the grand finals, you should have good ideas now. But there's also this problem that they already had 1 match today. And to get to here, right, to get to grand finals, you actually had to prepare for a different team. Like, how much time did you have since yesterday to actually adapt and do everything differently? I mean, they've been adapting all tournament, and they've, improved even today, I believe, these teams. But the team that's had such a great road and hasn't needed to adapt, really, I think, is a little bit Tundra. And here to tell us about their road to the finals is Purge. Thank you, James. I appreciate that. So, Tundra, coming into this tournament, if you guys have been missing out, they qualified for the tournament on their own merits. They had a lot of good performances throughout the year, but not the most impeccable. But once they got here to TI, they've definitely overperformed. They did so good in the group stage. They topped Group B, getting first place there. But they relied on some pretty common strategies. Crystal Maiden, definitely one of their big ones. 10 out of 18 of their games that they played in the groups was CM involved. And it's not just on the back of CM. I think their offlane player 33 stood out so well against his amazing teammates. Definitely one of their star players on the back of heroes like Visage. Visage has been absolutely instrumental for their strategies. He wins his lane, he pressures the carry, he buys the Wraith Pact item, and then they use this when they've
choked out the map a bit to push down lanes and end games when Tundra is finally ready to do so. Another hero he's really been relying on heavily for this tournament that we're definitely going to see in the grand finals is the Broodmother, another summon hero, even better at pressuring the laning stage, and he goes on to dominate the map more wholly. Less good at pushing, but still super impressive and very often banned against them in the first phase. And how can you talk about Tundra without mentioning their mid laner, Nine? Nine has been playing impeccably so far. He plays a lot of Thompson-esque mid heroes, these high space creation gank heroes. In the last game we saw him, he played Tusk here, went around the map ganking constantly, switches up his item builds as the team needs it, and this creates a lot of space for his farm heavy carry Skeeter, as well as 3-3's offlane, who does also pick up a lot more farm than normal. So these are the strats basically and the recipes that Tundra has been relying on to do so well in this tournament. And before we get into the games, let's hear a couple words from Tundra, comments on their coach, AUI 2000. So AUI has always been known like as the, you know, the nerd or the person who has all the knowledge about the game, and it's true because he plays a lot of pubs and he plays a lot of party queues. He actively thinks about the game while playing these games, and he learns a lot of small tricks and optimizations. AUI is like the master of efficiencies, and he always teaches us like the smaller, granular details. Yeah, I think he does a lot for us. It's like just as important part of every other player in the team. I think things that we've been working with him a lot is improving our communication, because you know a lot of times like you have these team fights, and after a couple seconds of team fighting, it's all like go this one, it's, you know, just total chaos. So we had a lot of conceptual talks on how to structure the team fight communication in the best way. I think there's one thing that Avi's been really great at. And then outside of the game, he's also been very instrumental to our mental health. I think we as a team didn't really understand how to cope with losing and like how to recover and learn from these things. And it's a process and it takes time. And I think AUI, along with our psychologist, was a big help. I mean, he's a great guy. In and outside of Dota, he helps me personally a lot to improve as a human, as a player. He does that for everyone in our team, and he's irreplaceable. I love him. There we are, Tundra talking about their coach Aoi, and Aoi, you know, we've seen coaches this tournament be instrumental, but Aoi's, he's not been, you know, he's a little bit quieter in terms of he hasn't spoken too much, but he seems like the brain of the tournament when it comes to wanting someone behind your team. Yeah, he doesn't reveal way too much when Slacks is interviewing him, but when he talks to us, like back 1 year ago when he was paneling with us, like that man has a brain that's constantly on Dota. Like that's the only thing he thinks about. It's these small little intricacies that they just mentioned. He's going to make and force his players buy branches, just so they have that extra efficiency. Or mangoes. The mangoes, yeah. I feel like he has everything in terms of the toolkit, so you don't have to rely on like other people. He can just literally do the in-game, the out-game. Like he's just like an all-rounded, just kind of a perfect coach, basically. I like him too. Yeah. Thank you, Sheep. Yeah, and of course, they're going to be going against Team Secret. So Team Secret, if I would say Tundra are the brains, Team Secret, really the dedication. Puppy founded his team a very long time ago, and this is the first time, I believe, that he's got his team, Team Secret, into the grand finals. He won TI1, and 10 TIs later, he is here. But to tell us more about this specific tournament, this TI's road to the grand finals, it's going to be Tsunami. You heard it from James. This has been a hell of a journey for Team Secret, and it's been going on for quite a while. Obviously, the organization was formed many, many years ago. Getting it to this grand finals, getting it to this year's grand finals has been a hell of a route. It all started at the beginning of Tour number 1. To qualify directly for TI, you had to get some DPC points. And to get into the DPC points, you got to do well in the leagues. Secret didn't do so well, and it wasn't even with this roster. Sumail and Ice, they bore that Secret jersey at the beginning of the year, got 5th place. Tour 2, keep the same roster, get 5th place. Tour 3, start mixing up a little bit. Unfortunately, Yapzor had to take a step down due to health reasons, and yet again, they get 5th place. You need 1,020 points to directly qualify for TI. Secret ended the year with 78. That means that they need to go to qualifiers.
They go to the European qualifiers. They go to the Western European qualifiers. They go up against Entity. They get second place. Yet again, they fall just barely short. Now they have to go through last chance qualifiers. Now they have to bring out a little bit of their own knowledge, a little bit of their own secret sauce. They bring out the Leshrac. Yes, obviously this hero has become a signature for all of TI11, but it all started in the group stage, and Resolution has been using it to great effect. Yeah, take a bow. You've been doing good, not only for Secret, but for everyone else. Something that Secret especially have been very effective with is their flexibility, though. They've been bringing Dawnbreaker to a great deal of prominence throughout this tournament, and yet again, it seems that they are comfortable putting it in a variety of roles. You never really know where this hero is going to be. Offlane, carry. She's been doing work for Team Secret, and it's kind of hard not to expect that when you've played so many matches. Yes, because of this very, very long journey that Team Secret have had to go through, they have quite a litany of games under their belt. 45 games played throughout Last Chance Qualifier, and I guess that's around 3 hours ago. It has been a arduous task for Team Secret to wrap this up, but let's see if they're able to do it. You don't need to hear it from me, though. Let's hear how Team Secret themselves felt about their run. I mean, the best moment obviously was beating PSG LGD in the upper bracket and then beating Thunder in the upper bracket again to solidify top 3. Mattered a lot because now I'm exactly in the same spot as I was in last TI, so that's pretty good. It meant so much to me because I always come to TI, I always go to the upper bracket, and then I always lose the first game in the upper bracket, and I start all over again from the lower bracket. But this time, we won the first game. I was like, oh my god, this is the first time ever I won my first game in the upper bracket. It meant so much to me. It does definitely feel like we're sneaking in this time. And I mean, sneaky last chance qualifier. You know, you see Team Liquid there also at the same time. I think they helped us a lot, but I would say as well that it was super hard to be in those qualifiers because it's a mini TI, like 100% mini TI. Like you gotta go through some tough games. I don't really know the future, but so far I feel like we are in a pretty good state to take the whole thing. And I don't know like what's gonna happen. Maybe we're gonna choke. Maybe we're gonna play our best Dota ever. But I feel it. I feel it. Rezo feels it, and Puppy, it's amazed he's here, and the journey he's come on, really, with the sneaking in the last chance qualifiers, is this Team Secret's grand finals. Oh, I mean, I don't want to say yes, but I feel like it should be. He won the first one. Is that just because they put inspirational music on their video, but not on Tundra Esports? I can feel it. Yeah, they've actually kind of like brainwashed me. They brainwashed me. Yeah. But no, I feel like it would be so poetic if they can get just looked Rezo in the eyes. Yeah, I fell in love. Sea blue eyes, and you fell in love. That's it, right? Mm-hmm. Yeah. Exactly that. Yeah, you guys, come on, man. Tundra already beat them once. Come on, they can do it again. And I really like their approach to Dota. Like, I think they just have a pick your poison type style where you can't just, you can just try and ban 33, but then you have 9 and Skitter, and they just kind of cover each other so well with all of their different strats. And they kind of exposed some problems with Secret last series already in this third game where you have 33 who's reliably building this Wraith Pact every game, and Rezo doesn't because he's trying to play as a core. You have a Puppy trying to build it himself like 30 minutes into the game. It's, they have 2 different styles coming into this. It is just whose ideas are better. That's right. Like on the offlane, you have a carry player being the offlaner, and then you have that. This is it. We're ready. The grand finals are coming your way. Let's introduce our first team. It's going to be Team Secret. Led by Puppy, finally making it to the grand finals, joined by Chrysalis, Nisha, Resolution, and Zayats, getting ready to sit down to play their best of 5 and their opponents, Tundra Esports.
undefeated so far of this international. Skitter 9-33, Satsa and Snaking, joined by Coach Aoi. This team had only dropped one map, and they dropped it to their opponents that will be facing in the grand finals, Team Secret. One of these teams will go down in history, their names added to the Aegis. This match, who knows what it has in store, but let's hear from the teams, because we actually got Secret to talk about their undefeated opponents. Tundra. I think Tundra overall have 5 skilled players, and they are a bunch of, I call them cheaters, you know? They're just a bunch of cheaters. They got some cheaty strats, you know? 33 is just gonna come up with some stuff, and you're gonna look at it and you're gonna be like, yep, that's cheating. That's just cheating. They have 2 guys, basically like 9 and 33. They're like kind of unique in a way that what heroes they're playing. Like 9 is playing some Spirit Breaker mid lane. Tundra using a lot of Zoo heroes for Search 3, because that heroes kinda cheesy, because if he plays it and you not counter well, you're gonna lose like in 20 minutes. In my opinion, in my head, Tundra is still the best team to beat. On top of the fact that they're 5 skilled players, they just kind of like manipulate the game a lot. And that's what Dota really is about. It's about breaking the game. And they do it pretty well. Manipulating the game, Tundra have been doing that all the way through this tournament. And last time they played Secret, every time they got that big team fight, that one win, Sheep, they just held control, Tundra. It was so hard for Secret to really kind of just push back against them. It's because they're so good at micro and just abusing the map to its fullest. You take any half of the enemy's map and you're cutting waves. You know, you saw they lost a team fight and 33 is just using his courier to drag a creep wave down the river to keep it away from their towers. Like, these guys are just abusing this so hard, and you can't ban all of them. And you're speaking of micro and all these cheesy heroes from 33, Pup even calling them kind of cheaters, but that's not what I saw like in the last series that they've played. Tundra outplayed them hard. They got into Team Spirit's head. Yeah, Tundra's kind of morphed themselves into this hyper-defensive team where they wait until they know the best timing they can play on, and then when they hit that timing, they cross the river, they occupy the map, and they choke out their opponents. Like this series, it's Secret having to come in with the adaptations, with the understanding of Tundra. Like Tundra, they don't need to change anything. Yeah, it's a really good point, because Secret have been adapting though. Last time these two teams played, they picked up the Silencer, which they had success with, and that was their counter to Tundra's team fight. When Tundra wanted to go in, the Silencer bought enough time. Last series, Secret beat out Liquid, and they pick up the Earthshaker. This is a great counter initiator, also with the Beastmaster that had Raw, and they really allowed their carries to shine. Admittedly, we saw Puppy on the crazy the carry Ench, but that felt like it was an evolved Secret. It felt like I feel like this time they've got more in their arsenal to come up against. Definitely, it did look like they prepared for Liquid. What were Liquid good at? They were good at kind of losing the mid game, but then clutching it at the end. Like the way Secret drafted as well, Morph and Sniper, they went late. They got that Shaker that you were speaking of. Like they got that Shaker to secure those late game team fights. But honestly, Puppy is angry. Like he picked that Ench first phase Enchantress, 0 heals, leveled stats, just carried the game. Yeah, but it's the fact that we're talking about adaptation, but for Secret, it's not about finding new heroes. It's about going back to the heroes that they have had incredible careers on. You know, like with Puppy and Enchantress, he's got 148 games, 66% win rate in his entire career. And then you go to Nisha as well. He's in like top 5 morph players in the world for quantity of games, 78% win rate. Like you just, in these moments where you're at TI, you don't try and find new. You go back to the old that has found success. And I'm expecting to see these heroes pop up again in this grand finals. Yeah, we've seen like Crystallis's Monkey King as well coming up again. Like I think he is a great story of someone who people, you know, doubted throughout the qualifiers. I think even his old teammate Fishman said it felt like Secret didn't believe in him, but now it does. It feels like that. It feels like you can see it in his play. You can see it in the drafting. Like they'll pick Rezo early and he'll clutch it all out, and you have these later picks for Crystallis, and he is really showing up. Yeah, I mean, Crystallis is showing up, but you've got to think about Tundra esports carry as well. Skidder, in his interview, he just said, this TI just feels right. And people have considered him just to be probably the best performing carry here. Obviously, they're in the grand final, so certainly, you know, that there's some proof to that. But like, what about Skitter? If you know Skitter, and if you go all the way back to like some small European tournaments, like these heroes that are in the meta right now, that are being played on TI, these are all his comfort heroes. I go back to their series versus Aster. They win against Stark.
Then they pick it up themselves, and he goes like ultra kill godlike on it. Like all of the heroes like Slark, CK, Lifestealer, they fully fall into his comfort zone. The fact that you talk about Skidder being comfortable and like he thinks he's gonna just be good in this TI, like that, getting a carry play in that mindset, having that confidence, and going, yeah, it just feels right. That's so scary for them. That's probably why they're also finding success, because they talk about the mental game in their pre-interview. The fact that they're in this good mind space and then they're undefeated. Oh, that is so scary. I mean, if you're going to beat someone in the grand finals, you need to be mentally there to be able to push your heroes to the limit with your team. And we did see that from Secret when they were chasing down Liquid in the final moments to close out round 3. So I think Secret are probably going to be, on a high after that win coming into this. But Tundra should be feeling, I would say, confident. They did beat Secret earlier on. Calm and collected. That's how I describe it. And that's really the team. It's big for them. It's massive for them. AUI himself was saying that it was the mental game in Arlington that caused their loss, and they got psychologists now. They're looking good. And looking at the mid players as well, one of the things about momentum is Nine playing mid. Like, how would we describe Nine's play style? Nine, the mid for Tundra Esports, he seems to move a lot. He gets involved. Am I wrong? This no, is what you're right. You were super right. He's like an ultimate playmaker at the moment that comes with a ton of flair. I feel like that kind of mid laner is what you need to win the TI. Like, you need a maniac on the mid lane, like playing his tasks, just doing crazy stuff. I go back again to Topson, to Monkey King Pagna mid lane, like just innovating, doing new stuff. That's what you need from your mid. Like, you need to get in their heads. Like, you need to pick Tusk first phase, and then they're thinking, oh, is this Tusk mid? Is it position 4? What's gonna happen? And then they just throw it on mid, and it's like Nine getting in your head. And he's getting like 20 kills. Can you kind of stop Nisha though? Can you get into Nisha's head? Nisha, the mid lane for Secret. I mean, this guy, he seems so calm and collected, and he's got Puppy next to him. Did you see the Morphling game earlier in game 1 against Liquid? Him just like taking over the tough, snowballing into high ground, going for high ground pike, waveforming in, piking out. Like, yeah, Nisha right now, if he plays like he did in that first series, he is. Wait. You say right now, like in the first series, Sheep. When's the last time you saw Nisha underperform? Never. Go back through your calendar, yeah. I mean, Nisha is amazing, and so is Nine. I really respect Nine's thoughts on Dota. Like, he loves mid because he loves controlling the pace. He loves controlling the map. He likes having access to side lanes and making stuff happen. Like, Skidder was saying that him and Snaking are just like, Nine talks about his teammates and say how they're biggest nerds, and they all just love talking about Dota. Like, they just all brings so much to the table, like 33 bringing a lot of micro information, helping with item skill builds. It feels like everyone has something that helps each other, and you bring that to Nine on his mid, and he's just able to like make everyone's like strengths shine. The thorn in the side of some of these players, though, were often the soft support. Zayats was killing it in his last game on the Earthshaker. But he's also bringing the energy. And that's the key thing. When we see these little player shots going right now, Secret, they're the ones like Resolution. He has Zayats right there on camera. Like Rezo, he's joining in with the crowd. He's like doing the wave. Zayats during the game, he's standing up. He's hitting a fidget. He's like air punching to the enemy team. Like, this team is energy. Tundra, on the other hand, calm. Like literally, they win a fight. You hear the team cons of the true sight thing. Nice. Just like Aoi said it would go. Yeah, exactly. Yes, Master Aoi. Thank you. We shall win this for you. Like, they are just, it's polar opposites in energy between these two teams right now. Yeah, if you're Tundra though, you don't need energy. You're winning every single game. Hey, they lost the map. Stay cool, stay calm. Exactly. All according to plan. Yeah. Of course, this will be a best of 5, and this will push them to their limits. Do you think they can have the stamina? Because they've played a lot less games than Secret. Come on. This, you know what? Go on. I don't want to know. Oh. You know what I want? I want the match 1 to start here. The grand finals. Let's get into the game. Team Secret versus Tundra Esports. Grand Finals, Game 1. Thank you very much, James. Yes, we're here and we're ready live from Singapore for the grand finals of the International 11. Tundra up against Team Secret. I'm ODPixel and I'll be joined for this draft by the one and only Seb, Notail and Fog.
Ladies and gentlemen, we cannot wait for this. The draft has begun. We'll be able to get it up on your screen soon. But boys, you know, you've been here before. This time in a bit of a different capacity. What do you have to say about these two teams, the roads that they've been on, and what you're expecting to see today in these drafts? The best Dota you can get all year. This is going to be absolutely amazing. You know, as a Dota fan, I couldn't be more excited. This is the best time of the year, the best series of the year. So let's just bring it on. Top of the crop, as they say. Let's get 5 games. Let's just get the 5 games. Yeah, no, it's exciting. I mean, the first bands went away, like they went straight ahead with the Doom and the Brood that they did also last time. And this time the Lesh went through. It's already a big change. Lesh has been banned against Secret in every single game so far. Yeah. Like during this weekend, playoff weekend. So now they're no letting surprise. it through. They're letting it through with an idea, right? Yeah. Tundra has decided to play against the very, very scary Secret Lesh. Nisha has been incredible on the hero. Rezo has been also doing, you know, great games on it. So yeah, very, very big statement already from Tundra. It's like, we're ready to break your best hero. It's going really fast already. I really hope that it slows down a bit for the second phase bans, because I wanted to mention Neta's hero is in first phase this time around. Quite often they end up with a Visage or a Doom or whatever they can get their hands on. I thought that yesterday in the third game they should have banned the Enigma second phase, and they ended up not. And I think now they beat their Visage. If they ban the Enigma and kind of coerce them into the Visage pick again and have a strong idea, beat it one more time, I think they can set themselves up for like an advantage for the rest of the series. Seems like a pretty solid approach that a lot of teams have been taking, right? Try to limit 33 if he's not opened up with, as we see, the Doom, the Brood, try to force him into something that's less comfortable. I think you go through with this path, you know, and if you're going to go against the Enigma one more time, I really hope you got the right answer. Because it seems to be one of the strongest heroes, like first item, Wraith Pack kind of hero in this meta. I'm glad you brought it up too, because I think Pano was also mentioning there is a different dynamic between both teams, right? Rezo never really buys the Wraith Pact for the most part for this team, while for Tundra, 33 tends to be like taking a step back more, being that support offlaner. So it's a really interesting dynamic they do have between both teams. Yeah, they have two very different styles, these two teams. Like, these are really two different styles of Dota that are going to be clashing. Secret is very much about, you know, the lanes and the momentum. They also enjoy to scale, whereas Tundra, I would say, is a style that utilizes the map much more. And the early game. Like, Tundra has almost been winning every single early game that they go into. I mean, statistically, they just seem to have this snowball effect, also related to the Wraith Pack. But yeah, they get a lead early on, the map starts closing in. There's a few, I guess, cases where it hasn't happened, but I think right now I'm quite happy for what Secret got and what the position that they're in. There are a few things to mention. Obviously, in the grand finals and in the best of 5, you know, side and pick priority matters a lot. Second pick has been king so far. Every team, I think, left in this tournament, like the top 4 were favoring second pick. Tundra and Secret are both also favoring second pick. Tundra got priority for this game, and they went ahead and picked second pick. It's very classic when you're in a second pick situation to try to pick open heroes. And in Tundra's case, it is. Saxa can play the Mirana, so does Snake King. I think 9 even played it one game. The Tuskar can obviously be put on support position as well as mid, so they're keeping it open and they're looking to really try to counterpick Secret as much as they can in the second phase. I think they're looking to, you know, match the Tusk with the Leshrac mid in case they get the Notion, but we've seen Resolution also play a very mean Leshrac this tournament. Mid players have investigated the Mirana versus Leshrac also matchup, so I don't know if it's something that's we could see. Probably something, We could see that too. We haven't seen this one too much, but it's a Saxa specialty, right? That has to be a Saxa hero. So yeah, I mean, everything is pretty still flex for Tundra, minus the Hoodwink. Quite like the concept, at least, versus Lesh, because the biggest problem about this hero is just knocking him down, right? Not letting him use that Bloodstone to effect to just heal up. Hoodwink with the Shard and everything too, you amplify damage that everyone else is doing. You have the high burst from Sharpshooter. It's an interesting concept that could. And they also have a very long range high nuke. Oh, there we go. Secret go for the Enigma. I'm actually very happy to see that. I think it could also be a support Enigma. I've seen Poppy play that Enigma himself. I mean, he's been very famous for his Enigma over the years, but he actually brought it back to his own kind of playbook very recently. Obviously, it could very well be an offlane hero and Rezo's hero. That's probably the most likely, but we'll see what Secret goes with that. Yeah, really interesting. Because that also could probably be the Wraith Pact carrier as well too for Secret. So maybe now they're starting to switch their dynamic a little bit to match Tundra. Definitely. And yeah, I think this is one of the few drafts where 33 has been really set up for success. Usually they kind of throw him under the bus. I mean, you know, when it's 33, it's not really throwing him under the bus. He strives under, you know, with any hero in any situation. But right now he's gonna get a late pick, you know, either 18 pick, like after this sequence from Secret, or actually the ultimate late pick, last pick maybe for Tundra. So, you know, we're looking to see 33 in a
in a very favorable situation, which is always scary to play against. Yeah, it's been 7 out of 9 games where his hero got first phase. Yeah. The last 9. So here he gets a delicious second phase. I'm curious to see what it's going to be. Beast is out, Brood is out. Visage is still in, but last time he picked Visage, they lost. He's played a lot of Tide also with a lot of success. It could be a hero he looks at. 10 seconds remaining. We'll see. I mean, he could also be quite innovative and, you know, do something we haven't seen him do yet. 5 seconds remaining. But yeah, we see the Lich, so most likely the heroes are starting to get locked. Like Nisha's most likely the Lash, Resolution's going to be the Enigma. So one of the trends we've seen this tournament, obviously this Leshrac has been dominating, and one of the answers to this Leshrac has been a heavy amount of physical damage. It's something that punishes the Bloodstone, you know, when he kind of dies through the tag team or the Slaughter. We've seen the Snipers, the Linas, and then we've also seen, as an answer to that, the Liches and the Sven with the Shard or Lich Frost Shield, kind of helping the Leshrac fight through. In that case, you know, Tusk counters Lesh, but Lich helps Lesh play against Tusk. Oh boy. And we're going for the Naga. Ooh. I think this is one of the stronger strats that I've seen come out of Tundra and also in the meta. They get the classic Naga Mirana, but it's also this very long range, kind of hard to get heroes together, so it can be a real pain to be an Enigma or to even be a Leshrac in these type of games. And it seems to be Tundra's style that you guys were mentioning also too, is opening up the map, right? That's what this hero always allows you. It lets you pick and choose your battles when you want to. When you're playing versus something like high cooldown like Enigma, can tend to thrive. If you want to visualize how this game might play out, you know, for Secret, think about Tundra, first of all, is one of the teams that utilizes nighttime the best, I think. You know, they respect very much the 2 sequences in Dota, that is daytime and the reduced nighttime vision. So they usually go on the offensive on nighttime, which is actually a key factor on how they dominate their games. Think about nighttime, playing versus Naga Illusions, scouting your heroes, Moonlight Shadow, you do not see heroes, and then you have this Tusk Hoodwink, bottom kind of high bursty heroes that can just pop a Leshrac, pop an Enigma right away. That's the kind of pressure, in and out pressure that Tundra really excels at in team fights, and Naga fits that style perfectly. All their heroes are really designed to do so. Yeah, so we see a lot of interesting things going on. They banned Nakes themselves. Last time Secret played against Naga, they actually ended up having the Nakes. Nakes now, I mean, every lifesteal works in Illusion, and I think that's a big reason. The open wounds with the Leshrac. With the Leshrac, And now they banned the Morphling to protect the Naga pick. They were already planning it, and now they're also banning Bloodseeker, which is something that they also played previously. I want to say, I'm not sure. But there was a Morphling game here. In Bloodseeker, the same thing. You can also end up becoming this lifesteal bot where the Illusion poke stops mattering, but yeah, I wonder what Crystallis is going to go for. I don't think it's an easy choice for him. No, they've targeted him a lot, right? We've seen throughout all DPC, people that kind of made the jokes for him, especially him himself. He's like, yeah, I have my 3 big heroes, right? A lot But of them he proved all the haters wrong, like honestly, that's why he's here. I think they really have to think about and try to guess what 33 is going to be looking at also, and try to kind of... I mean, they don't even care the Visage. Look at that. I think that's a big statement also coming into game number 1. You know, you have a chance to make him maybe feel uncomfortable, but instead you're going for what you think is the right pick for them. Not sure how much I would like Visage for Tundra anyways as the last I mean, pick. probably not the strat with Naga, I would say. I don't think at all that's what he would should go for. 10 seconds remaining. Yeah, it could be the Tide, I perhaps? think they have to respect the Tide, and that most likely will try to pre-pick for the Tide Hunter. Yeah. Yeah, I agree. I think the Tide is also what he would be looking at. I also think Batrider is a really strong hero with this kind of strategy. I don't know if it works. I mean, it has some value, you know, with the heroes that you have, but even against the Lesh and the Lich, you can get like some high magical damage scaling meta hero, but I don't think he's played a single Batrider game. Maybe not this tournament, but it's definitely one of his very strong heroes, so it would not be a surprise. Seen a couple teams even try like the Brewmaster versus the Lash, right? Where you just lift him, ignore him. A lot of situations too. Is left in the pool. It is. You also get a dispel. You get a dispel for There's a draw ban. Yep. Okay. It could be a great brew pick, by the way, and it's a very big 33 heroes. Yeah. 33 hero, by the way. I think it's a great suggestion. When I see like the Drow as well too, we saw, even though the game was kind of back and forth, you saw that long duration silence and a lot of fights just devastate him too, so. I do think it's a little anti-synergy with the Naga. Quite often, it doesn't really mesh super well. But of course, I mean, I respect, I'm the biggest Brew fan on this panel. I don't care what you guys say, Brew for life. I would pick Brew every day. It's a great Every hero. game. Same. But not really, because I can't play it. But if I could play it, then yeah. Let's see, I mean, they have very little time to work with. What's and left a for lot of Crystallis? heroes have been banned for Crystallis, yeah. I mean, he's played some Ursa and Ursa this game? No, probably not, right? But out of the heroes that he's been looking at, I mean... Yeah. I'm just, it's hard for him to choose, I He's think. played Ursa and Dawnbreaker that I can think of this tournament. Dawn is still that aren't banned. The Dawn was nice when they played it. Oh, that is an illusion. That's an illusion killer too. Nice. Yeah, and the Flesh Sheep now also working against small instances of damage.
It's a good matchup. I mean, I think it scales pretty nicely into a Naga. It's also the hook versus the sleep. It has a lot of value. I mean, even now you can even hook through sleep. Yeah, you can. They changed that, so you can hook your allies out, you can hook the enemy. Yeah, and this Naga cannot sleep TP with the early levels of sleep. You need, I think it's level 3 sleep to get full max range. And this Pudge with Frost Shield, exactly, he's going to be really hard to take down. It's a nice frontliner, nice like distraction as well for the Lesh Shrek to kind of do his own thing. The Pudge can kind of force spells onto him and then protect the Lesh. That's Do you think this is Crystallis calling, or do you think this is like the team and he, you know, providing also good suggestions? Because I didn't even think of, you know, this Pudge coming in here. I had forgotten. I think a lot of people might. It has kind of started getting forgotten in a way, right? But because Lifestealer was so prominent, people have started to learn how to like play versus it. But They will go for it. Hey, isn't this Lich Pudge against the Tidehunter? But I think he looks at a lot of the Tide bottom, chain stun, you know, with the sleep. It's like they're going for their bread and butter strat. And obviously, I do feel like Secret covered very nice angles. Both teams really got drafts they must be super happy about. And that's the first game. So it's very exciting. Who would you rather be? Hard to say. I think Tundra, their strategy is very strong. You know, I'd put Secret on the back foot, even though I really like what they went for. So I believe that this is just too good of a Lesh game. I think Lesh is going to pace on them, and I think it's going to force them into these early fights. And with the early game that I see Secret having, I would have to go with Secret draft to draft, even though I'm also the biggest Naga lover on this panel. Like, I think Naga is an incredible hero. I think if it goes past a certain point, I think Naga is going to start being too much of an issue. But I think Secret is going to roll on them. And Fog, yourself, I mean, that first pick sort of still standing strong as these two have sort of said. And Nisha, he's sort of been the one to stand out and kind of single-handedly carry Secret through some of the tougher games. Is this going to be another one of them, or do you think Tundra do have the methods to deal with this Lesh? I'm with my boy Johan, I think, this time. I like the Lesh Pudge versus the Illusion strat. I think it's going to be pretty hard for Skeeter, but maybe 9, you know, his Tusk has been miraculous in some games, so eyes on him. I hope this game doesn't go on for Secret's case. If not, I think we're going to see another repeat of yesterday's game. Long game, Naga doing his thing. Slowly, people start getting picked off. You get forced into your base. Yeah, I mean, Secret, they're going to have to bring the same early game that they did yesterday and, you know, keep the ball rolling. Sure, and Seb, do you sort of also agree in sort of that timing sense that if this does go on, Tundra as a squad, and especially with the lineup that they have here, it's going to be tough for Secret as the minutes pass? I've seen Tundra's first map this tournament, and ever since I can't stop thinking about them. I've watched all their replays. I think the way they play Dota is absolutely wonderful, and in my opinion, steps ahead of other teams. So, you know, I can't not put them favorites. Whatever they're going to play, actually. So I really want Secret to challenge them. Yeah, and sort of just in terms of overall feel as well. You know, you're coming into this game 1 of the grand finals on the main stage. Who's got the easier to execute lineup? Easier? I mean, I think it's Secret. Yeah. I would say it's Secret. Like, I think Tundra have to dodge bullets. Like, they have to dodge the Tide lane. They have to dodge, like, the snowball from the Lesh and, like, how they're going to get momentum. Yeah. I mean, my gut is telling me Clement wants to break the curse. He is not here for second place. He's here to win. Okay, well, thank you very much, boys. Looking forward to having you join us for Game 2 draft. But for now, just before the game, we're going to be able to head over to Slacks and hear from the coach. Thank you so much, OD Pixel. Hello, I am here, ladies and gentlemen, with Howie 2000 from Tundra. First time we've seen him today. Give it up! Oh, there we go! The stadium is alive, my friend. So good to have you yet again. I got some bad news for you. Okay, Lesh, Enigma, Pudge, I hear these are pretty good heroes. You guys let these ones through, no bans. Are you prepared for this? Have you, you know, spent your time getting ready? Yeah, I mean, I think for the finals today, we decided we want to, it's a best of 5. We want to play versus the Lesh Shrek, see how it goes. You know, it's a best 5. It is what it is. Okay, all right. Are you confident in that last pick of the Tidehunter? Big beefy boy going against that big beefy Pudge. What does he provide for the team, if you would give us any insight? I mean, we're in the finals, the patch, come on, give me some real info here. I think he'll buy good aura items and give us some team fight versus them. I think Neta's Tidehunter is, like, by far one of his best heroes. He wins, like, every pub on the hero, so we're really confident on it. Okay. Sir, how far do you see this series going? You think we're going to Game 5? It'd be fun. It would be fun for you, and it'd be fun for us, but let's find out how at least Game 1 is going. We'll throw it back to the casters. Thank you very much, Slacks. And one more thing just before we get into the action. We've got a very little special video here from Resolution, a bit of a pep talk before this game begins. Let's hear what he had to say. I mean, honestly, like, this is what we play for, guys. We are playing for this moment. Let's enjoy every second of it. We're not gonna get many of these. Maybe 6 more, I mean 5 more. That's what I want, but, you know, still,
Let's. Alrighty, ladies and gentlemen, Grand Finals, the International Season 11 शुरू हो चुका है. तंद्रा वर्सेस टीम सीक्रेट. और इससे पहले कि मैं अपनी लाइन खत्म करूं, एक किल दोनों टीम्स लेते हुए हमारे पैनल में भी हल्का सा चेंज आया है. वहां पे उनके पास उनके एक्सपर्ट्स आए थे, सेब और नोटेल, बैक टू बैक 2 टाइम TI चैंपियंस. हमारे पास वो नहीं है. सो वी हैव मिस्टर एरो. हाउ आर यू डूइंग बडी? गुड. तो नोटेल और सेब के ख्यालात तो हमने सुन लिए. आपके क्या ख्याल है इस ड्राफ्ट के बारे में और इस गेम के बारे में? जैसे क्रिस्टलाइज ने अभी एक वाटरमेलन खींच लिया जी, कुछ कर नहीं सकते इसके बाद. विशाल, आपको क्या लगता है ड्राफ्ट किसकी जगह, किसके साइड फेवर करेगा? इट डिपेंड्स कि नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होता है, नेक्स्ट 8-9 मिनट में क्या होता है एक्चुअली, उसके हिसाब से. बिकॉज टस्क विल डिसाइड कि क्या होना है इस गेम में. एंड अगर सीक्रेट पीछे रह जाती है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है सीक्रेट के लिए. आई थिंक अर्ली ऑन हमने देखा भी है 9 ऑन द टस्क, वन ऑफ हिज मोस्ट डेडलीस्ट हीरोज. एंड जब भी प्रेशर में रहते हैं टस्क ले लेते हैं और एक W आ जाता है. और साथ ही साथ स्किटर आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कैरीज इस टूर्नामेंट में हमने देखा है. वेरी रेयरली हमने देखा कभी लेन्स आ रहे हैं अपने या फिर इज हैविंग अ बैड टाइम. आई थिंक कल ही एक ऐसा दिन था जो आई थिंक सेकंड मैच जहाँ पे सीक्रेट जस्ट फ्रॉम थ्रू. देयर इज वेयर आई रियली सॉ हिम फॉलिंग ऑफ विद द TB. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ही हैज हैड अ रियली गुड टूर्नामेंट सो फार. इंटरेस्टिंग पॉइंट इज टस्कर लेन हार रहे हैं लेस्टैक के सामने इन टर्म्स ऑफ क्विक स्टार्ट्स. बट आई थिंक मेन पॉइंट लाइक वही आ जाता है कि जब सपोर्ट्स आ जाएंगे इनटू द गैंग्स, लेशरैक जस्ट वेटिंग फॉर द लेवल्स टू हिट. एंड एक बार ही आ जाए देन वो अपनी जलवा दिखाने लगेंगे. निशा बहुत आरास है. या निशा इज सो स्मार्ट कि जैसे ही टस्कर आता है लास्ट हिट लेने क्रीप का, वो उसे स्टन कर देते हैं. क्रिस्टलिस पे थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश. एंड मिस्टर वाटरमेलन कसाई को भगाते हुए. लोल. यहाँ पे एक और मेहमान अगर आते हैं हमारे बीच, मिस्टर डार्शन, किम के डार्शन के भाई. आई थिंक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है कि हम दर्शन को एक वर्चुअल कॉल के थ्रू हमारे साथ जोड़ पाएं. बट दर्शन के बॉस हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल. एंड आई थिंक दर्शन इज बिजी राइट नाउ. चलेगा, मतलब दुनिया बिजी है बट यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड फॉर TI. एक लीग ऑफ्स के हेड हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लीड हैं, दोनों आए हैं यहाँ पे TI की. 2 सीनियर्स आपने बुला लिया, अब आप दूसरी सिटी से सीनियर को बुलाना चाहते. सीनियर नहीं, दूसरी सिटी से उनके डिपार्टमेंट के एक और बंदे को खींचेंगे फिक्सेस. तो काम कौन करेगा? अरे काम हो जाएगा बट पहले TI देखे. अभी नया हीरो भी अनाउंस कर दिया गया है, मुएर्ता, मेहिको से. बट आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा ये मैचअप अभी तक जिस हिसाब से चल रहा है. अगर CSing की बात करें तो नागा इज 8 on 3, फॉज इज डूइंग प्रीटी गुड 11 on 1. यहाँ पे एवलॉन्च किया, स्नेकिंग प्रीटी मच ऑन हिज कंफर्ट हीरो. मैंने लिटरली जितने भी मैचेस देखे आई थिंक 9 out of 10 टाइम्स उन्होंने मिराना ही लिया है. सो कुछ मैचेस में हैज़ बीन वेरी इम्पैक्टफुल, कुछ मैचेस में has made sure his moonlight shadow gangs are really worth it. क्योंकि कल मिराना का जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था. बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने प्रेडिक्शंस नहीं करी इस गेम की. ओह यस, बताइए. आपने बात छेड़ी तो आप शुरू कीजिए. आई थिंक कि ये गेम टुंड्रा इजीली जीत जाएगी. रीजन बीइंग इज दे आर ट्राइंग टू फार्म अ पच. अच्छा. जो कि इतना अच्छा कैरी नहीं साबित होता है अगेंस्ट नागा. आई नो कि वो इल्यूजन किलर है बट दैट्स नॉट व्हाट्स गोइंग टू हेल्प. क्योंकि टाइनी को वो सपोर्ट खिला रहे हैं, लेकिन इज अ टावर टेकर. काफ़ी रीजंस है. जो स्केल अप होना है एंड टाइड जिस तरीके से स्केल अप होगा वर्सेस अ पच, नॉट दैट ग्रेट. तो आप सोच के चल रहे बेसिकली ये गेम तुंद्रा खींचेगी थोड़ा लेट गेम तक, और वहाँ पे जो स्केलिंग है नागा की वो उनको हेल्प आउट करेगी. एंड विल बी पुटिंग टीम सीक्रेट एट डेफिसिट. बट बॉट लेन पे एक बहुत ही बढ़िया
एंगेजमेंट करने की कोशिश तंद्रा की तरफ से. Do get a little bit of value in terms of HP damage, but उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा. नासिर, आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस गेम के लिए? I'll go with Secret. You'll go with Secret. मेरे को लगता है डिप्लोमेटिक सा रीजन दीजिए अपना. मेरे को लगता है निशा विल बी अ गेम चेंजिंग फैक्टर हियर एंड पच वंस ही गेट हिज अग्नम जी वो मिड गेम में बहुत टैंक करेगा एंड आई गेस उसके सामने 2 से 3 बंदे यूजलेस हो जाएंगे. अरे साक्सा is the man who dies. बट उससे पहले ये देखिए जो ट्रेड लिया है जॉनी क्रिस्टलिस का, यहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी ज़रूर सिटर को कि जो फार्म गवाया था वो वापस रिट्रीव कर लें. फिक्सेस, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? ये बताइए पहले. भाई देखिए मैं स्टार्टिंग से टंड्रा को सपोर्ट करते हुए आ रहा हूँ बट सीक्रेट देयर ऑन अ वॉर पाथ. ठीक है. आई थिंक जो स्टोरी लाइन इससे पहले हमारे भाई सुनामी ने बताया था कि मतलब 45 गेम्स उनको खेलने पड़े टू गेट वेयर दे आर राइट नाउ एंड जो सफ़र रहा है क्वालिफाई ना करना, डीपीसी पॉइंट्स कलेक्ट ना कर पाना, फिर लास्ट चांस क्वालिफायर्स खेल के यहाँ तक आना, लोअर ब्रैकेट का सफ़र इतना लंबा चढ़ रहा है. पप्पी बूढ़े हो रहे हैं, उसी के साथ आई थिंक वो ज्ञान भी उनको मिल चुका है एंड आई फील दे आर प्रिपेयर्ड. जिस तरीके से आज ओपन रख रहे थे पिक्स टंड्रा के मेजर पिक्स, आई थिंक होमवर्क करके ज़रूर आए हैं. बट आई गेस द नेक्स्ट, जैसे विशाल ने कहा था, द नेक्स्ट 10-15 मिनट वेरी क्रूशियल क्योंकि आई वांट टू सी दैट टस गेटिंग ऑनलाइन. टस एक बार ऑनलाइन आ जाते हैं उसके साथ लेस्ट के ऊपर क्या वैल्यू निकाल पाते हैं, दैट्स गोना बी रियली क्रूशियल. और ऑलरेडी पल्स नोवा का इस्तेमाल करके डैमेज देने की भरपूर मिराना किल्स टाइनी सोलो दैट आल्सो हैपेंस. अब फिक्सेस आपने और नासिर ने जब सीक्रेट पिक कर ही दी है तो आई विल मेक द थिंग्स इवन. आई विल गो विद टंड्रा जैसा हमारे बड़े भाई विशाल गए हैं. Tundra are the hot favorites, no doubt. So अगर कंपैरिजन की बात करें तो look at watermelon, sorry, Tidehunter. Watermelon. बोल दीजिए. Tidehunter versus Enigma. Tidehunter is winning. Compare Pudge with Naga जीत रही है वहाँ भी. Yeah, Pudge को फिर से मारते हुए and the important point is कि अगर वो Pudge को मार देते हैं यहाँ पे तो Pudge loses on to 20 seconds of farming. जी. And you look at the creeps that Tide But has now. विशाल दिक्कत पता है क्या है, वो जो नेशा का लेशरैक है ना, ये हमने पहले भी देखा है कि इनकी पूरी टीम बहुत बड़े डेफिसिट में होती है एंड इट्स जस्ट निशा हु इज लीडिंग और अचानक से पूरी गेम बदल देते हैं ये. एंड दिस मैन कैन बी वेरी डेडली. बट द प्रॉब्लम इज ही हैज, जैसे पिछले गेम में हमने इन्वोकर देखा था, इन्वोकर के पास यू हैव सो मच स्पेल, सो मच एबिलिटीज, बट अगर स्नेकिंग ऐसे एरोज मारेंगे रेजोल्यूशन क्या करे, धरे के धरे रह चुके. अब तो सिर्फ राइट क्लिक के ही बलबूते पे यहाँ पे डाउन किया जाएगा बट स्नेकिंग प्रीटी लो. बट चलेगा. एज लॉन्ग एज यू टेकिंग डाउन अ कोर, इट्स समथिंग दैट टंड्रा आर फाइन टू ट्रेड. विशाल रेजोल्यूशन की स्पीच सुनी थी हमने, ही वांट्स मे बी 4, 5, 6 मोर गेम्स. It's that feeling जो हर डोटा प्लेयर फील करना चाहता है. खेलते रहो बस. टीआई के अंदर ग्रैंड फाइनल्स, यस. इस अरीना के अंदर तो यू वुड नॉट वांट योर डे टू एंड. Probably. I mean, अगर हम ऑडियंस में होते तब भी हम यही बोल रहे थे कि चलने दो बस. नहीं, बट जो जीतने वाली टीम उन्हें खत्म करो, ट्रॉफी उठाने दो, एजेस ले जाने दो. ऐसे आ रहे हैं अच्छे खासे. बट यहाँ पे गैंग की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, स्नोबॉल कर चुके हैं, जैक के ऊपर जाएंगे. निशा ऑलरेडी अपना स्प्लिटर्स रखे थे, वायरो मिस कर दिया, भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है. देखिए यहाँ पे जोन आउट करने के लिए शॉट्स डाले थे बट उसका भी कोई असर नहीं हुआ. तो फाइनली यहाँ पे 9 को शट डाउन करते हुए तो थोड़ी सी राहत की सांस. 9 हाई ग्राउंड चढ़ना चाहते थे शार्ट से, एंड ही मिस्ड इट. Interesting part is that Tundra को पता है कि उन्हें क्या करना है. They understood कि Leshrac is going ahead and they are starting to gank him. मतलब 2 लोग को उन्होंने मिड पे बुलाया रून के टाइम. उन्होंने मेरे हिसाब से देखा भी होगा कि अगर एक बार जब निशा आगे जाते हैं, ओ देखिए फिर से ऑलरेडी पीछे क्या है, ब्यूटीफुल ब्लैक होल. बट फॉलो अप भी है यहाँ पे, जैक भी मौजूद है, निशा भी मौजूद है. टीम सीक्रेट आर सो वेल प्रिपेयर्ड. इस बार स्किटर को देख रहा है, कुड गेट साक्सा एज वेल. हुडविंग पीछे जा रही है, एक और एरो मिस होता हुआ जस्ट एंटिसिपेटेड, टाइमिंग नॉट राइट. एंड ये बेचारे साक्सा भागे तो भागे किधर,
अब टीपी करके आए थे, टीपी तो है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और ये देखिए मौत ले लीजिए, कुछ करना है तो। जी हाँ, वापस फाउंटेन जाइए, जल्दी से वापस आइए, क्योंकि टीम सीक्रेट ने गेम में ले लिए एक अच्छी बढ़त, कंट्रोल भी ले आया। और निशा अगेन द डिफरेंस मेकर। सीक्रेट को यही करना है इफ दे वांट टू सर्वाइव इन दिस गेम। अगर ये स्टेप को नहीं लेंगे एंड किल नागा जी, दे माइट जस्ट लूज द गेम इन नेक्स्ट 20 minutes. Ooh. Every successful fight gives them, let's say, 3 to 4 minutes of more game time. So yeah, good move. Free tier 1 tower, not free but tower kind gold of जो free. tower gold ऐसी चीज़ है जो उन्हें चाहिए because उन्हें बच को भी फार्म करवाना है, which passively वो फार्म नहीं कर पाएगा। जी। तो बाकी लेन्स में जितना प्रेशर ये क्रिएट करता है, बाकी लेन्स में जितने टावर्स वगैरह लेते हैं, वो जो शेयर्ड गोल्ड है वो थोड़ा सा एडवांटेज दे दे। बट मिड लेन में इस वक्त 9 थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए अपनी क्रीप वेव को स्लो डाउन कर रहे हैं। अगेन वो लेशरैक पे थोड़ी सी प्रायोरिटी रहेगी ऑन निशा एंड दैट एनिग्मा एज वेल। अगर ऑनलाइन आ जाते हैं, टाइम तो लगता है, बट अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं तो बेनिफिट मिल सकता है सीक्रेट को। अगर अर्ली एडवांटेज यहाँ पे टंड्रा लेने में कामयाब रही तो दिक्कत लेट गेम में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया टॉस सीधा रेजोल्यूशन की गोदी में ले जाके फेंका था एंड एन ईजी किल फॉर टीम सीक्रेट। दे वांट टू ट्रेड द पच, कोशिश पूरी कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। बट देखिए अब पच वो फेज में आ गए कि ही इज अ बिग बॉय, ही इज इंडीड अ बिग बॉय। एंड के पास साइक्लॉप्स की भाषा में ही इज टैंकी लाइक अ नोकिया 3। यू हैड टू यूज इट। आज तो एक लाइन में मारना था, हिंदी में बोल दीजिए, नोकिया 3310 की तरह। अरे माता जी से कॉल भी करवाते हैं आपको, वो भी लाइन कर सकते हैं आप, बट वो गैग। और पता है सिचुएशन भी बहुत फेवरेबल है क्योंकि टाइड हंटर भी है यहाँ पे। ओ या तो यस, 2 टैंक्स एक दूसरे की 3310 और 5233 की लड़ाई। जी हाँ। और शाउट आउट टू दी ओजी फोन्स जिसने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से ये फोन तो सबके पास थे एक टाइम पे। सभी ने। और विशाल, दिस इज वेयर यू नो सवाल ये आता है कि व्हाट डू टंड्रा नीड टू डू राइट नाउ? लाइक नाउ व्हेन सीक्रेट इज स्टार्टिंग टू जस्ट टेक ओवर देयर जंगल, जी क्या कर सकते हैं? So they have time. You see the 1k lead and probably 1k XP lead. Yeah. If Tundra manages to kill Leshrac एक बार, that goes to 0. Ooh. Because level and net worth अगर दोनों देखोगे आप तो it is just Leshrac. और they've come for Crystallis, 3 प्लेयर आए हैं, TPs I think धीरे-धीरे आ जाएंगे, but how long is gonna this Pudge survive? Not long enough. और yeah, they have done a decent job कि Pudge को थोड़ा shut down करके रखा है। बट निशा, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि निशा के लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आई थिंक टीम सीक्रेट आर एंटिसिपेटिंग एंड हमेशा जायक मौजूद रहते हैं आसपास निशा के, कभी भी इनिशिएशन होता है एंड जायक हैज बीन वन ऑफ दोस प्लेयर्स दैट हैज बीन डूइंग सो वेल रिसेंटली, राइट? पहले निक्स असैसिन के साथ एंड सो फार इज टाइनी गेम, आई थिंक आई हैव आल्सो लाइक्ड इट। यस, टाइनी मिराना को स्केल करने नहीं दे रहे, मिराना को स्टैक करने नहीं दे रहे, ही इज ऑलवेज इन द जंगल। So technically मिराना कुछ भी नहीं कर पा रही है इस गेम में अपार्ट फ्रॉम शूटिंग एरोस ऑन एनिग्मा। उसके अलावा सैडली टस्कर फेल हो चुके हैं इन द फर्स्ट 10 minutes. Hence you see the network deficits that they have. So ideally Tundra should go for a smoke now, try to kill, but it's going to be the other way around. The secret smoke करेगी 3 man. They will try to kill off Tide Hunter because he is probably one of the leading persons from Tundra. ये देखिए, but smoke reveal करते हुए Hoodwink, he has an invis rune. No, it's actually the MLS. It's actually the MLS. But check कर लिया, sentry जरूर था, but now I think Tundra can take their fights in their own terms. Zayak फंस चुके हैं यहाँ पे, already गश मारा और देखिए पहले से ही टाइनी को बेदखल कर दिया इस फाइट से। और now I don't think Secret would want to take this fight क्योंकि of course you have stuns and all that, but avalanche and जो एक burst combination आता था, that has been ruled out. So Tundra के लिए एक छोटी सी जीत, फिर से स्नेकिंग का वो जो impact just with his MLS has been really amazing. Sneaking all the neutral camps from Tusker. आप मत कीजिए फार्म, मैं करूँगा। मैं आइटम लाऊंगा। बट हाउ डू यू लाइक दिस नागा सो फार कंसिडरिंग अभी 13 मिनट हुए हैं, वेरी क्लोज टू हिज मांटा ऑल्सो। नासिर, आपसे पूछूंगा, मतलब
कैसा लग रहा है ये नागा का स्केलिंग अभी आपको? शी इज डूइंग डिसेंट, मतलब मानता जा रहे हैं एंड आई गेस नेक्स्ट आइटम वुड बी शी वुड go for a heart or a Skadi depending on the situation. If Tidy is going ahead and tanking good, I guess the next item she would pick would be Skadi. Alright, so fun fact, अभी तक जब भी सीक्रेट और टंड्रा की भसड़ हुई है, भिड़ंत हुई है, group stages they went 2-0 against Secret. Yesterday they went 2-1 against Secret. तो ओवरऑल अभी तक 2-0 का ही चल रहा है तंद्रा का. दे हैव वॉन बोथ टाइम्स. ये सीक्रेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है. थोड़ी सी स्कर्मिश बट नो रिजल्ट्स. एंड विशाल, व्हाट अबाउट एन एग्स ऑन नागा? बिकॉज हमने स्किटर को देखा है बारंबार एग्स यूज मतलब बनाते हैं. ओ ट्राई टू जस्ट टेक ऑफ निशा, अगर वो एरो लग जाता, बट निशा बीइंग वेरी स्मार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डॉज भी कर लिया. उतनी सी जगह बची हुई थी उसमें. जितनी जगह थे वहीं पे छिप जाओ. बट या टेल मी अबाउट एग्स ऑन नागा, क्योंकि कल भी उन्होंने यूज़ किया था और यू नो एग्स के साथ जो हीलिंग होता है, तो नासिर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बताइए कि इस गेम में हाउ डू यू थिंक एग्स कैन मेक एन इम्पैक्ट? अभी अर्ली गेम में आई गेस नो, इट वुडंट हैव दैट मच इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत बुरा मेल्ट कर दिया भाई लेशरैक को. दे हैव टू स्पेंड अ बिग cooldown on worth it, I guess. And then you see the network change. Leshrac first से direct third पर आते हो. Momentum जा रहा है I guess. But I guess जैसे ही Leshrac spawn होंगे, there will be a smoke gang, क्योंकि Enigma has a blink as well as a black hole. So I guess that would be probably. But also हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस गेम में पज है and it's a combo with leech. तो काफ़ी हाई आर्मर वाला सिनेरियो बनता हुआ है यहाँ पर with these two guys. Probably gonna be a smoke here. Moonlight Shadow is back. They can go for a gank as well. Tundra को अभी ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से कि they try to find Leshrac once again so that नागा पर प्रेशर ना करे सीक्रेट टावर्स पुश कर रही है. आई डोंट नो, मतलब दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द टावर्स. स्नीकिंग बीइंग वेरी स्मार्ट कि वो वहाँ से निकल गए एंड ही इज लाइक आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन. दे आर ट्राइंग टू मूव अप, सो आई एम आउट. टेक दैट टावर, वी आर हैप्पी टू गिव इट, बट Moonlight Shadow from Moonlight Shadow used. Dire's top tower is under attack. वो बस यही करना चाहते हैं कि उन्हें उनकी नागा सेफ रखनी है. One kill on नागा and it's a tower. और एनिग्मा जाते हुए इट वाज अ वेरी गुड पिकअप. उन्होंने मूनलाइट शैडो यूज़ किया बट एनिग्मा मिले थे नहीं उन्हें, बट एक अच्छी स्काउटिंग के साथ और एक अच्छा एरो कनेक्ट करके स्नेकिंग ने एक अच्छा पिक निकाला है अपनी टीम के लिए. एंड टस्कर इज गेनिंग बैक ऑन द नेटवर्क. या टस्कर इज गेनिंग बैक. और आप ये देखिए जो नेटवर्क सिर्फ 1-2 हज़ार पे ऊपर नीचे हो रहा था, अभी राइट नाउ इट्स अराउंड 5000 फॉर लीड फॉर द टंड्रा. Yeah, the swing is mainly because they shut down Leshrac 2 times now, and also Naga farm कर रही है. नागा फार्म कर रही है एंड पच का इतना फ्लैश फार्म है नहीं. एंड ऊपर से एनिग्मा जो उनका अच्छा एक फार्म हो रहा था, एनिग्मा को भी उन्होंने पिक किया है. सो टंड्रा इज गोइंग गुड. मतलब सीक्रेट वाज सपोज्ड टू बी द वन बॉलिंग दिस गेम इन द अर्ली, बट अभी टंड्रा बहुत मतलब इट्स लाइक नो वन इज एबल टू स्टॉप देम. You know what I would have liked, Nasir, कि अगर वो पच को एज अ सपोर्ट खिलाते इंस्टेड ऑफ टाइनी mid against Tusker and Leshrac carry the safe lane, but nahi. I was also expecting the same because Tiny is also very good against illusions with his cleave damage. Look at that armor. 16 का armor पच बनाते हुए इन टावर प्रेजेंस. देखना है अभी सीक्रेट
सीक्रेट स्टिल हैज अ वेरी गुड थिंग. अगर एक ब्लैक होल में 2-3 लोग आते हैं एंड उसमें लेस्ट्रैक के सारे स्किल्स एबिलिटीज कनेक्ट होते हैं, जी, then I guess they can definitely stage a comeback. What do you say, Vishal, on this? Yeah, so they have leech. All they need is a black hole. Black hole, yeah. With minimum of 2 people. Good case scenario would be 3, and it needs to include Tidehunter and Tusker. बट अभी ऑलरेडी थ्रेट देखिए कितना फील होता है टीम सीक्रेट को. दे आर नॉट कंटेस्टिंग एनीथिंग. जैसे ही टंड्रा क्लोज इन करने की कोशिश करती थी, इंस्टेंटली आर फॉलिंग बैक. बट यहाँ पे फाइट फोर्स करने की कोशिश की जा रही है, इन विच आई फील लाइक पच डिलीशन. Oh, nice. And stun miss हुआ है. Toss in हुआ and I guess Tusker is gone. Tusker is gone. फाइनली तो Finally. बहुत कुछ कमिट किया. Actually, दोनों साइड ने बहुत कुछ कमिट किया पच को मारने के लिए. पच को मारने के लिए. She's dead. It's dead. Yes, the queen. Lich queen is dead. Oh. Ravage to hold off. Ravage. But सिर्फ टाइनी के लिए Ravage मारा. I guess that wasn't. I guess. So Ravage इसलिए था कि नागा सायरन वहाँ से यहाँ तक आ जाए, just to hold off. But अभी पच जा रहा है and they have a black hole. They will be the one to initiate. टंड्रा को बैक कर लेना चाहिए यहाँ से. If they push it toward, they might be in for it. Nisha has a bloodstone already. नहीं, last gang में ही था. And he's going for a very tanky build. मतलब he's not going for some mana items. He's going for a tanky. उन्होंने plate mail उठाया. I guess next item would be Shivas, just to slow down Naga Siren, and also Tusk Desolator बनाया है Tusker ने. Yes. So just to have some survival उन्होंने plate mail उठाया है. And I guess he would be going Shivas just to have that some slow effect auto attacks पे. I guess. काफी मैजिक डैमेज बनता हुआ सीक्रेट के साइड से. अगर if Tundra decides on going magic resistance with everything, I think this is but let's see. Nisha can always surprise. उनको मेरे हिसाब से they should go for a pipe because magical damage, magical burst and magical burst सीक्रेट के साइड बहुत है. तो a pipe would be the ideal item, I guess, अभी के लिए. वेल देखते हैं आइडियल क्या है और इनको अपने लिए क्या आइडियल लगता है. लॉट ऑफ द टाइम्स यू सीन सायक अपना ब्लिंक फार्म कर रहे हैं. मतलब आई गेस नेक्स्ट अगर 3-4-5 मिनट में उनके पास ब्लिंक नहीं आता है, देन टाइनी वुड बी यूजलेस गोइंग अहेड इन द गेम बिकॉज ही वोंट बी हैविंग ब्लिंक और उनके पास लेवल्स भी नहीं रहेंगे. ही वुड बी जस्ट कैनन फॉडर. पच का बहुत कम फार्म है. अगर आप पच जो इनका पोजीशन 1 है उनका और नागा का नेटवर्क डिफरेंस देखें, वो करीब 5000 का है. नागा इज अहेड 5000 ऑफ पच और इन्होंने पच नागा के इल्यूजन को काउंटर करने के लिए पच उठाया है. Moonlight Shadow from Mirana. एनिग्मा को जैसे देखते हो वैसे Moonlight like either we are running or we are killing Enigma. कुछ तो होगा ही. कुछ तो होगा. See, like I said, so Secret के साइड से काफी मैजिक डैमेज आ रहा है and Tidehunter is straight ahead gone and made 5. तो फीडिंग हो गई है हल्की सी. God of Guard. Black hole for Watermelon. Radiant's bottom tower is under attack. That was just a छोटा सा positioning error, I guess. जहाँ पे सीक्रेट ने धड़ दबोचा जैसे विशाल कहते हैं वाटरमेलन को. It was more of कि उन्हें टुंड्रा को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है. Because they just spotted Enigma at top lane and suddenly you do not expect him to be there. Oh, but बदला. That's a Desolator punch. Desolator. But again, tiny support है. The skill actually doesn't mean Secret would be happy to trade this off for some time for Lestrack. But again, at the same time, नागा भी फार्म हो रही है काफ़ी फास्ट एंड थोड़े टाइम में और फास्ट हो जाएगा उसका फार्म. Straight away going for hard because they know कि
टाइडंटर उतना टैग नहीं कर पाएगा probably. टस्कर खतरे में और खुद को स्टॉप ओह नाइस पुल, नाइस पुल. सॉन्ग यूज हुआ है. Very low impact game for Lich. Yeah. अभी ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फील हो रहा है कि मैप पे जितना प्रेशर टंड्रा ने बनाया था, दे हैव लॉस्ट इट ऑल. सीक्रेट धीरे धीरे करके कंट्रोल वापस ले रही है गेम का. Not really. But एक ब्लिंक डैगर आते हुए टाइनी के पास, so अभी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला, क्योंकि they will try to find. So Tiny is always trying to find moments Mirana. of engagement. Yeah, Mirana, and probably if he can look at building towards hitting towers and something. So smoke from Tundra going towards the bottom jungle. क्या वो पकड़ पाएंगे? Mid lane बच खतरे में. Stun, arrow, minus armor. TP आ रहा है. TP आ रहा है. आ गया TP. लश्राक भी फंस गए. हाँ फंस गया है, but Leshrac he can survive it. Midnight Pulse from Enigma. अगर अभी यूज होता है, I guess he should. They're going all in. Oh, nice Ravage. Slow यूज हुआ, but I guess थोड़ा अर्ली एक्सपेक्ट कर सकते थे. Ravage थोड़ा अर्ली आता तो मेरे हिसाब से Leshrac की भी डेथ हो सकती थी. अभी ये मिड टियर 2 भी गिरेगा. So I think they were in the dilemma कि उन्हें पता नहीं था कि ब्लैक होल है या नहीं है. Probably इसलिए they were a bit scared to get all heroes in below the tower. बस एक cautious move उनकी टंड्रा की तरफ से. And they decided to go with the tanky heroes to go in. Next move for Tundra should be top की side से उन्हें push करना होगा so that they can secure the Roshan. But they decide to go the other way. Which is also fine because then they get bottom tier 3 तक पहुंचा दिया. You force the enemy to defend and then go do Rosh. Then Secret का jungle technically उनका हो जाएगा. Yeah. So अभी यहाँ पे vision game किसकी विशाल आपको strong लग रही है? Tundra की they have all more than 70% of the map control. जी. Oh, black hole. One man black hole, but silence आ गया. उस black hole के पहले ही टंड्रा बाहर निकल गई. Beautiful. 1 for 2 trade, but that's not worth it. आपने black hole use किया और you couldn't get anything. Resolution को BKB चाहिए बहुत जल्दी, वरना ऐसे ही होता रहेगा. black hole आएगा, instant sleep हो जाएगा. And he's going for it. He's just a recipe away. Next 5 मिनट में उनके पास होना चाहिए. Hopefully. I think उससे पहले, क्योंकि रोश की तरफ तो टंड्रा कदम बढ़ा चुकी है. उनके पास सीक्रेट वेयर वहाँ पे एक वार्ड है, so they might be aware कि रोश शुरू कर दिया गया है, but this Roshan is going to melt because उनके पास Deso है, Tidehunter है, उसका भी minus armor. Mage Slayer. सीक्रेट कुछ कर भी नहीं पाएगी इसके बारे में. हाँ, they don't have anything. But they will anyways try. They have a Lich. Lich. Wow. Right. Combo. Nice combo है. तीन लोग वहीं खड़े हुए हैं. And Enigma, ओ भाई. And विशाल, अगर यहाँ पे Enigma का black hole होता. जी. Yes. Things would have been different. What a ravage. Tusker picks up the Aegis. And I guess this is it. 2 down. Oh. Aegis gone. मतलब क्रिस्टल भाग रहा. Can't help जाए it. तो जाए कहाँ? I think this is it. This is it. Yeah, they can just push mid and finish it, I guess. Lich has a blink. Oh, nice. Mid push आ सकता है. They will. Viable option है, but I think they थोड़ा वो safer play जो होता है उसके लिए जाने की कोशिश करेंगे कि it should be more of from the top side. Yeah. Because they have tier 1 and all. हाँ. Yeah, Leshrac survived there for 10 seconds, and if there was a black hole और पूरे 10 सेकंड में अगर उसका डैमेज पड़ते रहता तो I guess he would have melted everyone there.
So अगर आप देखोगे ठीक से तो टस्कर ने पूरी टीम को बचा लिया लीच की अल्टी से with this snowball. That was one of the ultis that Team Secret had for this fight. Leshrac out of mana, can't do anything. Can't do anything. And the Tidehunter का Ravage आया और उन्होंने instant वहीं पे use किया. And to finish off the Leshrac. Yes. अच्छी चीज बस एक ही हुई है उस फाइट में. Aegis instant pull कर ली. What that you can't say as a अच्छी चीज. Tundra is looking to finish this game fast. Finish the game fast. Naga goes for a BKB. It's done. He's dead. Okay, was it a Lotus Orb? Yeah, Lotus Orb. Yeah. So first game, I guess, Tundra. See, support सामने आते आते इस illusion से मर रहे हैं. चलते गायब हो रहे. टाइनी को देखिए, मैजिक दिखा दिया गया है. नो बायबैक्स अवेलेबल. 2 प्लेयर्स बचे हैं. एक टाइनी एक एनिग्मा. ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाएंगे. टियर 3 मिड का गिरेगा और अरे अगर ये कोई ग्रुप स्टेज का मैच होता तो अब तक जीजी कॉल आ चुका होता. बट ग्रैंड probably अभी वो सारे बैठकर सोचने में होंगे कि नेक्स्ट गेम में क्या करना है. Not so that they don't waste any time. इसलिए trying to defend, and also it is a TI grand final. Yes. You don't just call out GG. Black hole is up. Lich ulti is up. But there you have no Leshrac. Leshrac is back in 20 seconds. They need to desperately smoke and try to kill this Naga. Yeah. Naga is a huge farm. I guess Naga को मारने के लिए बहुत टाइम लगेगा. 20k का net worth advantage है अभी. हाँ. And most of it is on Naga. Heart, she has heart. That's what I said. And I guess Orchid को she would upgrade it to what would you say that item? Bloodthorn, yeah. पच पकड़े गए फिर से. पच का कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिखा है ये गेम में. हाँ. He has an Aghanims, but zero impact. Oh. Silence होगा. Oh, nice black hole. Beautiful black hole. At last. उनके भी BKB है. BKB से हाँ. But see, it doesn't make any difference. Huh? Yeah. I would not want to be that lich. This one. I guess they'll be calling it now. They can just go for tier 4s, I guess. Why waste time with the वो लोग सीधा जा सकते हैं टायर 4 के लिए. They are doing megas, bro. Oh, भाई. Go for tier 4. I guess they are mentally exhausted then. मतलब I think it's always safer to go for the racks first than tier 4. Low risk, high reward. Priority checklist of a MOBA. Clear out all the lanes first. हाँ, and also secret को frustrate कर दो कि finish नहीं. पहले एक गेम already खेल कर आए हैं, उसके बाद यहाँ भी एक खींच रहे हैं. So that I guess secret को भी मेरे हिसाब से मिराना बैन करना चाहिए, or else they'll have to pick it for themselves. Because snaking, जितने भी गेम snaking ने मिराना खेला है, they have won it against secret. एंड सीक्रेट ने जितने बार स्नेकिंग को मतलब एक बार हराया है एंड स्नेकिंग को मिलाना नहीं मिला था. सो आई गेस दे हैव टू वर्क अराउंड इट. डेड फॉर देखिए नागा की. बिकॉज़ यू कांट मतलब इट्स अ 10k लीड फ्रॉम ऑन हिज ओन टीममेट फ्रॉम द टॉप ऑफ टीम सीक्रेट. लेट्स ट्राई. अगर वो भी हटा दो. मैं तो कह रहा हूं 10k तो अपने खुद के टीममेट से ऊपर चल रहे हैं वो. दैट्स व्हाट बिकॉज़ दे सेम. या There was no impact. This game secret को snowball करना था, but मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत passive खेला है. So that's why they lagged it. Yeah, I think they just. So I think it's the 3 arrows that we saw. Yeah. From sneaking. Yep. पूरा game ही पलट दिया. Because secret really controlled Tusker. Yeah. Nisha really played well in the mid, controlling Tusker, not allowing him to snowball. Wow. But उसके बाद tough back. अल्ट मार दिया भाई इसने. No impact. Trying his level best, but कुछ हो ही नहीं रहा है. No impact. That Tidehunter is. Sad. Ouch. This Anuj.
Shout out to Mr. Bhutani again. You just saw the play. Fixes. Did you just saw it? The fake smoke. Oh, you don't even have black hole. 7. There is 6 again. The only way they can win is Oh, they found her. Should be an easy kill, but no. It Wait, should what? be an easy kill. Wait, black hole. They are waiting for you, brother. Black hole is now back. It but was back. It was Black back. hole का नासिर मियाँ Leshrac का buyback भी आ गया. I guess he should have went in with the black hole. ये दर्दनाक है, ये बस दर्द चल रहा है और कुछ कब नहीं. हाँ Torture tactics होती है ना वो. Press till it hurts. Ultimate orbs in the courier. और यहाँ पे I don't think मतलब ऐसे एक दुनिया है जहाँ पे टीम सीक्रेट को मैं कमबैक करते हुए देख सकता हूँ. हो सकता है ना फिक्सेस. You go and play. अगर मैं जाऊँगा तो नहीं, तंद्रा के लिए आप खेलिए तो हो जाएगा. टाइड हंटर ने डैमेज बनाया है तो आप समझ जाइए कि टाइड कितना आगे है. The only guy who is defending from secret is just Nisha. Yeah. Playing out with his Leshrac. Yeah, because he had an easy lane and got some kills. Sure. अब तो ये नागा के illusions भी इसकी जान खा जाएंगे. नागा के illusions. Two-side replay. ये देखिए. ये बेचारे. I think I remember. Let's hear the team comes. Yeah. Don't know what to do. They don't know what to do is the call from Tundra. But किसी महान secret ने कहा था. किसी महान इंसान ने ये भी कहा था कि if I don't know what I'm doing, then how is my opponent gonna know what I'm doing? Note. Ouch. Oh, हार्ट भी आ टाइड गया. के पास हार्ट है. I guess he was going for overwhelming blink, but उन्होंने decide करा. They know that लोग आ चुके हैं. Resolution, my friend, are you ready? Zach इंतजार कर रहे हैं. Stay in trees. Stay in the trees. Yeah. HY, famous quote. I told you to stay in the trees. How? Why don't you What a listen to leap. me, man? और ये arrow. हाँ ठीक है इधर ही. That is what secret was saying to Tundra. भाई साहब ये जो गेम है ये ऐसा लग नहीं रहा है कि फाइनल्स का पहला गेम है. सेकंड गेम के अंदर टीम सीक्रेट को एक जवाब अच्छा देना पड़ेगा. I mean take this. तुम सेप्टर दे दो एनिग्मा को एंड जो आइटम्स चाहिए दे दो. जी. Can they still win? I mean possibilities because देखिए एनिग्मा के जो देखिए किस तरीके से टॉन्ट कर रहे हैं अपने रैवेज को. बट वी विल टॉक अबाउट इट. सो आई थिंक एनिग्मा के जो स्किल जो किट है इट्स बेस्ड अराउंड हाई एचपी हीरोज. आप डाल दीजिए थर्ड स्किल डाल दीजिए अल्टीवी डाल दीजिए एक वो परफेक्ट वॉम्बो कॉम्बो कर दीजिए. बीकेबीज खत्म हो जाएं. क्या पता एक अच्छा टीम फाइट एंड थिंग्स माइट स्टार्ट टू चेंज. बट I don't see कि लेट गेम के अंदर स्केल कैसे कर पाएंगे. पज कहाँ से नहीं क्या करेंगे? लेट गेम में आई गेस एनिग्मा के पास अगर अग्नम आया देन हिज उसकी थर्ड स्किल एचपी बेस्ड पे डैमेज आपको करती है, परसेंटेज पे करती है. सो दैट कैन बी द गेम चेंजर. अगर बहुत लेट जाता है देन एनिग्मा कैन बी द गेम चेंजर. द पॉइंट इज नासिर कि इवन इफ यू डू दैट श्योरिटी नहीं है कि 5 लोग ब्लैक होल में होंगे. ब्लैक होल में नहीं. सेकंड इज ब्लैक होल के अलावा यू कैन जस्ट पुट इट इन द ग्राउंड फॉर एन एओई एंड अग्नम में आपके ब्लैक होल में ऑटोमेटिकली वो स्किल बिल्ड आ जाती है. करेक्ट. ऑटो मिडनाइट पल्स. एक सेकंड. मिडनाइट पल्स. बट दे हैव आल्सो गॉन फॉर कंप्लीट मैजिक डैमेज एंड टाइड हंटर ऑलरेडी पाइप बना चुके हैं. जी. एंड सबके पास हार्ट है so that's the only saving grace. From Tundra probably a final push but टाइड हंटर को कोई डर नहीं है. एंड ही इज लाइक कि मैं तो टावर तोड़े. मैं टावर तोड़ेगा मुझे तोड़ के दिखाओ. यही कह रहे हैं. और ये देखिए वो खड़े हुए हैं वहाँ पे. नहीं उनको ये सिंड्रेन है क्या? इंटेंशन भी नहीं था कि मतलब वहाँ से किसी को हुक करके निकालें. बट चलिए यहाँ पे देखिए जिस तरीके से जैक को खत्म किया. अगले शिकार उनके जरूर होंगे प्यारे क्रिस्टलिस. और नहीं जी इतनी जल्दी तो ना दे रहे. वो बेचारे
पपी बहुत ही लाचार हो चुके हैं, बॉट से बॉट से वेव आ चुकी है, उसके बाद टियर 4 टारगेट होगा, खत्म है गेम। सोलो डाल दिया है सोलो डार्क होल, ब्लैक होल, और वो भी देखिए किसके लिए, प्यारे से टस्क के लिए, वापस से रीएंगेज। चलो डिस्पर्स, अरे अब तो टियर 4 तोड़ दो। दे वांट टू मेंटली एग्जॉस्ट। हाँ, उनको मतलब ऐसा माइंड गेम खेलना है। जी हाँ, ये भाई हम आराम से तोड़ेंगे, हम आराम से फुर्सत से तोड़ने वाले हैं, आपको जो करना है कीजिए। देखिए खौफ देखिए, आई मीन निशा के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, सो मे बी इट्स वर्किंग। टिल्ट में भी सीक्रेट को टिल्ट करना चाह रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही मैसेज है। देखिए टिल्टिंग तो इन्होंने शुरू कर दी थी ट्विटर पे कल के दिन। विशाल, सो टंड्रा yesterday tweeted out when you make it to the TI11 finals only to play against European teams. और कल जो हमारे इंग्लिश टेस्ट के एनालिस्ट हैं उन्होंने भी मेंशन किया था कि टंड्रा दे नो हाउ टू बीट यूरोपियन टीम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन टीम्स। सो सीक्रेट के पप्पी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे उनके साथ अभी क्या हुआ है। इट वाज अ स्टॉर्म। क्या है वो टीआई का ग्रैंड फाइनल्स जब आप पहला गेम ना हारे। वाह वाह। आपको ताज में एक बेडरूम देना चाहिए। ताज हो गया ये तो। आपको वो प्रेसिडेंट स्वीट मिलना चाहिए। आप दिला दो फिक्सेस मेरे को। आप भी दिलाते, रुको फोन करके ना। जूते दिला दो मेरे को। नहीं, प्रेसिडेंशियल सूट में आपके लिए जूते का मतलब वो ऐसे डेरा बिछा देंगे, कौन सा चूज कीजिए। बट चलिए वापस गेम में आते हैं एंड गेम तो शुरू होते ही खत्म ही हो गया। आई थिंक जैसे नासिर ने कहा था, आई थिंक रियली दे नीड टू रिस्पेक्ट मिराना अ लॉट, क्योंकि मिराना का इम्पैक्ट इतना ज्यादा इस गेम में था अर्लीस्ट फेजेस में, यू नो। एंड जहाँ पे MLS जब आ जाता है, दे आर लिटरली अनस्टॉपेबल। स्टार्ट कर देते हैं, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। आई थिंक इस सब की शुरुआत हमें कहीं ना कहीं तारीफ भी करनी पड़ेगी 9 की विद दैट टाइड विद 33 की विद दैट टाइड हंटर। द इम्पैक्ट ही क्रिएटेड इन शटिंग डाउन क्रिस्टलिस, उनको लिटरली गेम में प्रेजेंस फेल्ट ही नहीं था। एंड इवन फॉर अ लिच किंग क्या कर रहे थे इस गेम के अंदर। एक चेन फ्रॉस्ट मैंने देखा जो थोड़ा बहुत इम्पैक्टफुल होने की कगार पे था, दैट वाज अराउंड द रोज पिट, और उसको भी डॉज कर दिया गया था। वही तो मतलब जिस हिसाब से टस्कर अपने स्नोबॉल्स यूज कर रहे थे, he was just closing out all, जो भी फेंक रहा था जस्ट डॉज कर लो टीम के साथ। चलो हाइलाइट्स देखते हैं। Yes. But Vishal, this is where, you know, we would want your expertise कि how deeper can Team Secret go with their bans? मतलब अगर मिराना चलिए बैन कर भी देते हैं, then you're opening up the other heroes of Tundra. You can pick it. I think उन्होंने पज ये सोचकर पिक किया था कि it is a good illusion clearer, but वो ये भूल गए शायद से कि there was Ember open for the pick as well. Probably again good against Naga Siren and controls the game a lot mid game. So Ember could have been an option according to me. Early laning भी आसान हो जाती और कल हमने देखा निशा को एम्बर खेलते हुए, बट वही कल निशा का एम्बर उतना उनके लिए इम्पैक्टफुल नहीं था, वही सोच के मे बी। And on the other hand, think about this. What if Pudge was a position 3 or position 4 or a 5 and Tiny को उतना importance ये देते जितना उन्होंने Pudge को दिया था, things could have been better. वही हम जो सोच रहे थे कि Tiny अगर मिड जाता, लेशरैक पोजीशन 1 खेलते हैं तो things could have been different, because दोनों का बर्स्ट जो मिड पे जो टस्कर का बर्स्ट होता है और टाइनी का जो बर्स्ट होता है, it could have been evenly matched. Look at the Mirana's impact. 8, 3, 25. I think हर एक 25 assist. 25 assist and 8 kills. Yeah, out. Obviously, we had seen Snaking just doing wonders with that hero. Arrows भी बहुत अच्छे थे. In fact, not just, you know, arrows to connect, जो arrows उनको zone out करने के लिए, just to prevent their cores from getting picked off. Everything had been picture perfect. Every single player, I think, of Tundra played their role perfectly. Starting में हम लोग को लग रहा था कि lanes हार रहे थे. And नासिर, मुझे पता है आप पप्पी को मैसेज कर रहे हो. आपने क्या मैसेज किया ये बताइए. आपने स्ट्रैट्स बता दी क्या? या तो मिराना पिक करो या तो बैन करो. विशाल, आपकी तो पपी से काफी अच्छी दोस्ती है. आपने तो 10 साल की डीपी भी लगा रखी है. वो If you go and look this man on Facebook with puppy, एक डीपी मिलेगी with puppy himself and 10 साल, कितने साल हो गए अभी?
6 साल हो चुके 6 साल हो गए, 4 बज गए, 4 साल बाद you are getting a new picture with him. Yes. And that's going to be for the next 10 years. And this could have happened this year also. I think Vishal was also planning to go for Singapore, but हमें tickets नहीं मिले. हाँ, काम आ गया, मतलब काम कैसे छोड़ सकते हैं? उदास कर दिया आपने हमारे बेस्ट एनालिस्ट का मुंह उड़वा दिया. चुप रहो आप फिक्सेस. जाएंगे TI. Yes. I think हमारी हाई पिछले साल से हो गई थी. नहीं, अकेले नहीं जाऊंगा कभी. It will be with friends for जहाँ sure. जाते हो महफिल आपके साथ आ जाती है उधर. I think TI gang आपका ऑरा ही वैसा है, ऐसे एरो मारते हो. Like ऐसा और है. हाँ. आप नागा सायरन हो आप. नहीं. अल्टी मार के घूमते हो. Elder Titan. Is it the presence of the Dark Lord? Maybe. मुझे लगता है देख these guys are going for aura damage, aura heroes, मतलब नागा सायरन जैसा उठा रहे हैं. I guess Secret could go ahead with Elder Titan. It's very good against it. जो हिसाब से it can stall the game for them. I think they should play with their comfort picks. Literally what they did with Liquid. Fixes grand finals है ऐसे tournament का जहाँ जीतोगे तो. Puppy is one of the best Elder Titan players. मैं चाहता हूँ Notel is the best. Notel, but currently in this scenario. Encha खेलो, Encha उठाओ मारोगे. What do you guys think about Pach की जगह Sven होता था? That would have been very late game-ish oriented. Yeah, it would have been a good cleave, bro. और Tiny की जगह Sven होता in swap positions. Could have done that. देखिए मतलब बहुत सारी. I guess Sven was banned. I guess, but is it? I don't know. Maybe. But वही the point is कि क्या टुंड्रा उनको उतना space देगी. Because they haven't given that. Right from minute 1 हम देख रहे थे starting और लेन स्वैप हो जाता था ना वो टाइम पे. आप जो है सो स्वेन को नागा सायरन की लेन में भेजते जहाँ पे नागा उतना फ्री फार्म नहीं कर सकते जितना कर रहा है, जितना हो सकता था. एग्रो ट्राइक. हाँ obviously क्योंकि नागा मतलब नागा का फार्म होता है इल्यूजन से एंड आप क्लीव कैसे भी मैक्स करोगे वहां पर एक लेवल का स्टर्न लेके देन यू कुड हैव हरास भी होगा आपको नागा पे वहां पे और क्लीव डैमेज पे आपके इल्यूजन्स भी जा रहे हैं वहां पे. Might work, might not. Yeah. But and gamble basically. Tundra, they are not giving the breathing space. I think एक moment पे भी point नहीं देखने मिला था. But I think let's hear out and see एक special interview. What do the players have to say? Stronger because they get to learn about their weaknesses. You know, when a team figures them out, are you guys worried that they can just figure you out at the right moment and then it'll be too late to learn from it? Yes. I'm worried. I'm actually worried. I mean, in Secret, if you lose with one hero, you're not picking it again. That's the law. So it might be off. Come on. Don't ruin the hero. Removed from the pool. Do you feel like the underdog to a degree? We are underdogs. Okay. There's no question about it. Okay. Let's talk about the addition of Rezo to the team. You guys have been playing together as a duo for a while, haven't you? Since the VP times, yeah. We were together in VP, we were together in Hellraisers, now here. Raise some hell. Is it true that you guys were marketing yourself as a duo when you guys were both looking for a team? Like you were looking to lane together? Yeah, I literally made that tweet that the best duo offlane was looking for a team. And it worked? Not a single request was from that tweet. Nobody reached out. They're like, yeah, whatever. Who are these guys? I mean, I think it's both the view on the game that we're sharing and outside of the game, like we share a lot of life understandings, you know, some certain things, and it's very easy to talk to. So it just kind of was a very obvious way for us to go from that point on. Is it true that you guys speak Russian to each other in the lane during the game? Yes, it is true. So half the team speaks English to each other and the other half speaks Russian? Yeah, it's just the laning. Yeah. Oh, just the laning. But sometimes we're switching lanes, so I'm laning with a Clement and it kind of break the rules, you know? And I'm playing with Remco and speaking English also. Yeah. So when you do things, you do what's comfortable, right? It doesn't bother us that they're speaking Russian. To be fair, it's even a benefit, because we can zone out of it. Yeah. Not me, I actually hear it. But for Remco's sake and stuff like that, he doesn't even hear anything what's going on. Yeah. I mean, he also has problems. He also understands what's going on, kind of. He's not hearing anybody. So to be fair, only Remco doesn't understand what's going on. We're all here, and we kind of get it. You know? Let's talk about Chrysalis as well. Remco, yeah? Remco, yeah. Yeah. You guys have both previously stated how he's a wild stallion, and you had to break him a little bit in the beginning. Wild stallion, what? I think I had no idea.
Okay, not that kind of wild style. He's his own person, Puppy. You talked about that. Okay, Yes. Sorry, maybe I went a little bit too poetic. At Riyadh or? Yeah, it was a Riyadh. Yeah, that one. Yeah, it was funny. Yeah, how's the relationship evolved going towards TI? No, I mean it's still the same. I don't think much has changed at all. It's just still a bit of goofing. We clicked. It just kind of works. Yeah. I'm usually a bit more of a clown, I guess, at times. Well, you know, whatever. I mean, I could tell you a billion Remco stories. I could tell you a billion Remco stories. What does it mean to you to be able to play in the grand finals? I get a chance to fulfill my dreams and my goals. To me, TI is always like a celebration. Like I just completely enjoy all my days here, like including the finals or not. You know, I'm just happy to be playing the high level of Dota. Puppy, you've been to 3 TI grand finals. What advice would you give your fellow teammates? My advice has always been there every day, and it doesn't matter if you're playing first match of TI or last match of TI. It's the same thing, you know? Just play the game of Dota that you're playing for how many, 20 years, 10 years, 5 years, whatever. But just play the game and do your best and be in the moment, be in the present moment. Just give it your best. Are you excited to play in front of a crowd? Does it add to the experience to you? When they start chanting like some names of the team, usually the enemy team, it's fun. It gets better. You know? The enemy teams. Please, crowd cheer for It gives me Nisha. energy, to prove them wrong, kind of. Okay. But it's fun, I guess. Yeah. Crowds are awesome. And especially if they do some awesome things in there, like, I don't know, remember like that Enigma doing the black hole that was happening in Benaroya Hall back in, I don't know, 2nd TI, I think. The crowd brings a lot of good energy. You always feel it, like, you know, even if you're completely zoned in the game, you still feel the, I don't know, sounds, even like vibrations on the ground and stuff. You know, all of the people are watching, and not only on stream, like, you know, thousands on stream, but here, literally here. And it's a very different experience. I like to enjoy crowd because I like to scream at enemies when I'm killing them. Because after the scream, I can cool down. It's much easier. That's why I like crowd, because they're screaming. I'm like, oh, hello, and we go next. Thank you, Team Secret, for talking to me. Thank you for sharing your thoughts. You're welcome. Thank you for having us. Yes, it was a pleasure. Let's go. That's the way to go. Welcome back to the panel. Yes, I was a bit concerned for Secret coming off of game 1, of course, and how they kind of looked, but actually kind of seeing that video feel really wholesome. I think like this is a team that actually get on so well and could definitely come back. And the talks of the crowd being amazing and how Zayat wants them, and Singapore has been amazing this tournament. But any takeaways from the interview? We heard more words from Nisha in that one interview than we did in the entirety of the DPC season. So I think that was the best content piece that I've watched from Secret. I know, right? Doing my research for TI, I was just like, Nisha. There's nothing. Moving on. What was his comment? It was in Secret, if we lose with a hero, we don't pick it again. Yeah. So that whole Leshrac piece that we did earlier, you can just ignore this kind of Leshrac That's also piece. very interesting, because that's not usually how Secret was, how Puppy is. Like, if you remember back in the day, he was known as that stubborn captain. If he picks a hero, he's going to stick with it no matter what, if he thinks that it's good. Yeah, and I remember actually talking to Dendi, and he was like, I play what Puppy tells me to, you know, even if I don't think, you know, it's okay, Puppy says, I have to do. But let's check in as we wait for the second game to get ready. Let's check into the arena with Slacks. Everybody, yes, hello, hello. Hello, hello, hello. We are still here in the crowd for Grand Finals Day. We still awake, crowd? Oh, fantastic. Now, I do have a very rare opportunity. These were the first things that sold out at the Secret Shop. These are the oh my God, don't show that. Valve promos. Very rare. We're going to give these away in a little trivia contest. Now, people get a little nervous in front of the camera, so we're going to do what I like to call crowd trivia. It's basically trivia for dumbos. Now, I'm not going to say that, but all right, anyway, very easy trivia. Anybody in here a large? A large? Anybody a large? All right. Hello, sir. What is your name? Tom. Tom. What's your gamer tag? My gamer tag? Yeah. It's on his shirt. Here we go. That's Papa Virgin. Call me Papa. All right, well, that ain't changing anytime soon. Trivia question for you, my friend. All right, this is very hard.
What team is Heen associated with? Oh, God. That's a tough one. Don't what? Secret. Secret, that's right, Team Secret. Ah, there you go. One loud shirt, there you go, there you go, there. We got a medium. Now, this man helped me corral some fans earlier, so get your butt over here. This is practice content. All right, this is tough. How do you spell Leshrac? Leshrac. I actually don't know how to spell Leshrac, so here you go. Enjoy. Thank you. All right, Small. Hello, sir. You look trustworthy. How are you doing? I'm doing very good. Fantastic. All right, sir. I haven't really thought of a question. Okay. Who's your favorite caster, OD or Fog? Now, there is a correct answer. They're right there next to us. OD or Fog? There's only one, sir. Fog! Wow, that's great. Unfortunately, incorrect, though. So we'll have to go to another. No, I'm just kidding. There you go, ladies and gentlemen. And everybody here, by the way, these are the primo seats, right behind the casters, right when everybody walks out. These were the guys that came in first. So give it up! And yes, we're still quite awake over here, so we'll pass it back to you guys. Keep doing your panel thing, all right? You guys give it up. Thank you, Slacks, as he rejoins the crowd to cause more carnage. Have you seen OD Pixel Cast, by the way? It's one of the best things, because those are the primo seats, as Slacks called it, but he is so animated, and Fog just kind of stands there. It's all the hand movements. It's really feeling and like part of the game. It's really good that they're standing behind OD. If it was Cap, someone might get wet as well, you know. That's true. This could happen. Yes, so we're going to be getting the players out for game number 2, Secret versus Tundra. And still, the storyline is Tundra dominating game 1. And Sheeps to kind of talk about, really how they put down the, not only just their opponents, but put down the lock on the map. What were they doing, Tundra? Oh, wow. Yeah, I really liked how they utilized their Fat Tide. They brought him away from the bot lane around 14 minutes when he finished his Wraith Pact and used his Ravage to kill the Leshrac, and this opened up the mid tower for them. And they were able to get a deep ward in the enemy's triangle during this move, which is it's very valuable, because then they move into the bot side of the map, and they know how much they can poke and dive this tier 2 tower given the information they're getting from their vision. And by combining this with having 2 high damage supports in the Mirana and Hoodwink, it meant that they were able to assassinate and kill people without even the help of their cores. So they're just constantly applying pressure and kill threat to Secret all the time. That pressure is constantly enabled by the Naga as well. Those pesky illusions like Rezo, that wasn't a game for him. Why? Because there's always one pesky illusion following him around, breaking his blink dagger, hitting him. Like, by the time he gets rid of the illusion, the team fight is already kinda over. And Mirana plus Naga, like this combo, it needs to be dealt with. Yeah, the position 5 Mirana, it's only Tundra doing it, and it's the fact that in all of their drafts as well, they've got the Brood or a Spirit Breaker, the Enigma, like they've always got an element of just map pressure that other teams haven't been able to kind of replicate in their games. And yeah, this is why Secret in this gap, or this break at least from game 1, they need to identify how do we want to prevent Tundra having that map pressure. Well, we'll have to see as we're going to be getting ready for game 2. As you can see, the teams have now joined us on stage. And of course, we talked a little bit about Tundra, just how they're locking down the map. It really seems like they figured their opponent out, at least in terms of game 1. And actually, we're going to hear from Tundra about their opponents, Team Secret. I think Team Secret is a very formidable opponent because I think they've defined their roles for each other very well, and they know exactly what to expect from each other. I mean, obviously they have Puppy, so like it kind of goes without saying. Honestly, it doesn't need to be explained. And by this point, it's also for Nisha as well. It's just such an amazing player. If you were just to think of each of their player, not even looking at any particular game, you kind of have an idea of what each hero will play. Nisha will generally play like a very high damage hero, and then Crystallis will either be some sort of utility or counter pick for the lane, and same thing with the Resolution. They know their lane matchups very well. It's like they play these stupid combos that you feel like the lane shouldn't be strong, but then they know something about it a bit more than you do, or like the synergy is a bit better, that they manage to win these lanes, and like suddenly like they have very good synergy in the game. The last time we played them in a group stage where we 2-0'd them, I think they messed up their drafts in both of their games, so I don't think we actually got to play the real Secret. Like going into this match against them, I think we are kind of on even grounds. Like both of us have kind of
since that match, both of us have kind of gone through a win streak. Yeah, I think we are on even footing, and just excited to see how the game will play out. Really interesting there that Tundra, despite, I feel, a lot of fan favorites, people, I would say pros favorites actually. I would say maybe Secret could be fan favorites, but Tundra could be the pros favorites because we heard from Seb and Notel earlier, and they kind of picked Tundra to go forward, but they're actually saying in the interview there that they feel that they're on even ground. They're just being humble, Dota Pro players. Like, very rarely do you hear someone say, yeah, I'm gonna own you, I'm much better. Like, we have a couple of those, but not too many. However, Tundra, I believe they shouldn't be as humble. The way that they're playing, it's magical. Well, you've heard from us, and soon we'll hear from the casters, because we're ready to go into game number 2 of the Grand Finals. Secret's turn to ban. Team Secret versus Tundra Esports. Grand Finals, Game 2. Thank you very much, James. And yes, we're absolutely ready here in Singapore for Game 2 between Secret and Tundra. Once again, joined by Seb, Notel, and Fox here for the draft. I mean, first off, boys, that Game 1, a pretty severe stomp, for the most part there from Tundra. What would you say you sort of put that down to overall, and what do you expect to see changed coming into maybe this Game 2 draft? Because it's Secret, we've seen from them, they've got so much more to offer than this. Tundra has a system, and I think, I'm going to try to break it down quickly before the draft develops too much, but it's about the map. It's about Neta pressuring one side of the map with his heroes, the Wraithpack Tide, the Visage, the Brood, the Beastmasters, and Skitter doing the same thing on the other side of the map. He does not leave his jungle, he does not leave the safe lane for as long as he can, and he collects information. And only certain heroes can do that. Naga, one of the best in the game. Slark, Nighttime, Night Vision, really hard to go on this hero also. Nakes with Rage in a good life stealer game. And then the 3 other heroes are very fast-paced heroes, the Miranas, the Tinies, the Tuskars, the Pangoliers, that are gonna strike kind of left and right on the map depending on the enemy's movement. And that's how they kind of win the economy game, hit timings, and then close the game. So I think you really have to respect that and either, hurt their system or, find a way to counter it. I hope that Secret will adapt and really try to counter what Tundra does on the map a little bit more that game, so that they get an even footing, because they're great players too, and they can definitely beat them if on fair ground. Absolutely. Well, here we go, ladies and gentlemen. This Game 2 draft off to a start, and no surprises so far. I mean, I think it's a lot about the second phase bans. They do choose, the first phase, they could have chosen to go against either the Brood or the Doom. I also agree with Seth that you could probably, sooner rather than later, choose to change your target a bit. I think Skitter heroes are very important for them. This Slark, this Ursa, the CK, I don't think does nearly the same that a Naga does. Naga has been, the Naga games that they've had, it seems unstoppable. It seems like it's not fun to play against. And it's not like they first phased it, but I think the second phase bans were very wasted in all the games, more or less, that they played each other. And I think, they have to find the right ones. Bit of pivot this time from Tundra, right? No Mirana, but they do get given the Marcy and the Visage. This combo is absurd. Side-kicked birds even later on. The lane is also ridiculous. And they have a lot of different combos. I've seen Tundra do stuff like this where you're now forced to maybe ban some heroes you don't want to. I've seen them do like this Luna Visage even at times that can sometimes just, you have to waste a ban because you just don't want to play versus something like that. It's very strong, and Marcy is also deny pick, right? I think Marcy is one of the heroes that Tundra refuses to play against when it comes to Secret's playbook, because they're so good at using it on lanes. I feel like Secret has one tool that can really cripple Tundra. It's the laning phase. They're very strong in the lanes. They execute. Neta even talked about it in the interview where he said that they respect a lot their laning and how much they're willing to push these lanes. And Marcy is one of the best heroes for that. So I think obviously Tundra would have been happy with the Mirana first phase, but they're like, we're gonna take the Marcy away. I feel it's almost a shame. Like we saw the Monkey versus the Broodmother in one of the games. Like they completely annihilated the laning phase in that game. I think it was all 3 lanes that were going super well for them. And I want to say they could have done the same, don't waste the ban on the Broodmother, get your Dawnbreaker, stay within your comfort, get the Monkey. The Monkey's banned, so it might have something to do with it. So we're back to the Tundra system, you're gonna have, you have to see how it's gonna develop. This Visage is gonna buy Wraithback, he's gonna take the tier 1 tower, he's gonna live in Secret's jungle, and the Marcy plus the 9 hero and the other support are gonna be missing. They're gonna be in the fog of war, and they're gonna make Secret, think twice about shoving this Visage away from his area. And on the other side of the map, you're gonna have Skitter doing the same thing with a Wraith King, or, he probably would have loved the Naga, no, Naga's out.
And I really want Secret to try to target these heroes that can achieve that map dominance and force him into a more casual Ursa game, or you know, these heroes that really cannot apply as much pressure on the map. And also the Visage, I mean, that was the one they lost to, right? I also think it's now Tundra are 1 game up. And it's the Mirana ban. It's quite interesting, I think, the Nyx ban, because we haven't mentioned it in game 1, but Tundra lost to Secret where they had Nyx. And Nyx is one of the better heroes at disrupting map movement, right? At finding information himself or finding pickoffs and getting. And, you know, Tundra came into this grand final saying, you know what, actually this Nyx is more annoying than the king of your heroes that has been Leshrac so far. Yeah. So it kind of says a lot about what's going on, you know, Dota-wise. I like that point a lot, too, because a lot of times you can see the Nyx and it's like, oh, he has, like, Carapace is excellent this game, there's all this, but it's actually the scouting, right? Yes, it's actually so much about getting the information. Finding out if Neta is alone or if Skitter's alone, and like being able to just get that quick pickoff. Yeah. And now we see, like, even like the Beastmaster ban, right? A similar thing that you're talking about. It's controlling the map, trying to read things. So really interesting bans coming out from Tundra. Yeah. I like the Secret bans much more this time around the second phase. You know, like the first phase is something else, but they're committing to a certain strategy. But the Naga's out, the Mirana's out. The amount of map tools that they get are getting very, very limited already, much more than in game 1. I want to see the Dawnbreaker come out for Secret. I mean, I think that would be a really strong pick. It can crush the Visage. Yes. If you look at what Secret did there was a game when they had this next Dawnbreaker silencer, and I felt like it gives them really strong lanes, so they can kind of beat Tundra at that game. And if they transition into the mid game, they have these global tools that even if Tundra kind of pulls off this outmaneuvering on the map, you have these global tools that are gonna allow you to, you know, even it out. You get the global silence, you get the Dawnbreaker ulti, and I thought it was an interesting approach. Definitely heroes I would like to see Secret look at. Yeah, and we also get Secret as second pick for the. I mean, they won't get the choice in game 3 and in game 5, but now we're going to be able to see how strong the second pick is going to be for them. I think the flex pick again from the Dawn, or finding a hero that can, you know, add this global presence, break this map, but still remain, like, have some things remain flex, like the Leshrac Resolution can play it, and they can keep this till the end. But yeah, I think the second phase bans this time around much better from Secret. Yeah, I like the Luna. That was when I was. yeah, exactly. It's like, I think this is thought through. I think the Mirana also, they would have gone for it for snaking. I think the Naga is a must ban for the rest of the series in second phase, unless they come up with the ultimate way to deal with it. Yeah, Luna Visage, very strong combo. I mean, we've played Tundra in TI-10 qualifiers, and they were doing this Luna Manta night vision abuse. So it's definitely a hero that they can use a little bit like a Naga. You know, constantly sending the Manta illusions, shoving the waves, sending them also to scout, because Skitter is one of the players that not only farms with Manta, he actually uses it as a scouting tool to increase his map presence. And as we were talking about with the Naga, like how he was using the illusions instead of just going camp to camp to camp. He's cutting the wave, even though it's not efficient. He's getting a little bit more info, especially during nighttime. I mean, they had full vision the whole night. Yeah. Sometimes even just suiciding illusions, just literally to get any type of information. Yep. And you know, theoretically, there are two ways to deal with Tundra's, like a split push style. The CK is one of the heroes that they really enjoy doing that with. Okay, they go for the Phoenix into Chen. It's a great Phoenix game. When do they play the Phoenix? I want to say it's only with Visage they've played it. I think I only saw them play it once, if even that. I don't even know if I saw them play it here. They played it. I've seen Snaking play Phoenix once this tournament, I want to say. I'm pretty sure. So basically, I think Secret, you have two approaches. When you play against this split push heavy kind of style, you either match what they want to do, or you know, group up and ball up and try to force them into a 5 versus 5 fight at a pace that they don't really want to get into. And I feel like Chen Lesh is a perfect lineup to push the issue before Tundra kind of gets online with their heroes. You know, think about the Leshrac Bloodstone and the mech timing. It's going to be very close. These heroes play together really well. Chen is going to bring a ton of armor and a ton of buffs on this Leshrac that are going to kind of help him live through the Tundra burst. And maybe they can just snowball the game, because usually Tundra don't really look at these early timings, and they hope that they get to, you know, get away with their map stuff like they did game 1. If you force this Visage and the CK to fight before they get the shard on Visage and the BKB on CK, they might just run into, you know, Leshrac can easily solo kill them. The Phoenix pick, I thought he played this tournament, but I don't see it. I think this is his first Phoenix so far at TI, and it's a classic hero versus Tusk, it's a classic hero versus Chen, and it's super good with the Visage. So I mean, we've seen him play it before. I think it's very cool to see something, you know, be busted out of the finals. It also makes a statement. We're seeing a very different approach from Secret this game. Very different. Remember Chen Bristol back? Remember some Chen Bristol? Yep. At TI9? Yep. I think this is a statement. It's like, you know what, this map stuff that you're forcing us to deal with, you're gonna have to play our game now. And it's gonna be a game of Leshrac, Chen, Bristol grouping up, going for early objectives, maybe even going high ground early. And it's like, have you thought about that happening to you? You think Kuro's watching? Hopefully he is. I think inner Kuro right now is like, push the base, push the base.
It lets them set the tempo even better. Because last game they kind of wanted to, but their heroes didn't have to, especially after lanes, like things just crumbled. This one, it's, yeah, like you mentioned. Yeah. They're going to be able to force them into Roche, force them to fights around towers. Counter the Visage as well, Bristleback, like both on the lane, but also in the game. I also think he doesn't care at all the CK and the Phoenix early on. I mean, later on it starts changing a bit. I really like Secret's approach so far. Yeah, it's very interesting. I feel like, yeah, Dota theory-wise, they have a much better shot this game than the last one, in my opinion. And I feel like there's a lot of pressure on the 9 hero because he needs to be the one buying time for House Kidder. He doesn't get last 33 pick. And he doesn't get last pick. 10 seconds He needs to enable his side laners this game. So do you pick against the Lesh or do you pick? Yeah, you actually don't know. You don't know. Playing Lesh. It could be Tusk Lesh. It's easy setup. I think it's quite laneable into the CK Phoenix if it's going to be CK Phoenix, which I think it will be. It's tricky. It's very tricky actually. Tundra's tended to not really prioritize, like, you know, counteracting like that matchup though, right? Like we've seen like Liquid's approach to the Lesh, they pick like the lean a lot of times. 9 usually just sticks with his style. Well, so. but still, 9 has his counter picks. Like when he saw Secret pick Pangolier, he went for Lizard Man. I forget the name. Primal Beast. Primal Beast. And I think he will take his opportunity to counter pick when he can. Like he really wants, you know, when he saw the Lesh before, they picked the Tusk, knowing that most likely I can get this matchup, and that's the one he likes, you know. So now he has to pick blind, and I think Nisha might have an opening to really punish if he chooses. Let's see what he's gonna look at. I mean, we are getting a Puppy Chan in TI finals, which I think is very exciting, by the way. Like, I love it when both teams are getting their bread and butter, you know, because this is where you're gonna get kind of the finest Dota out there. Played Dota for 20 years, and you just pick your favorite hero, you know, the one you want to play. Puppy Chan in TI finals. What else do you want to watch, you know? That's what he also picked the Chen out. How many times versus Alliance? Probably many times, yeah. I mean, there was, I'm trying to remember the drafts for all 5 games. 10 years later, back at it. And what do they go for? Arc Warden. Okay, that is very interesting. That's quite the pick. Yeah. Quite different. But look, I think Nisha's going to find something, don't you? I don't think he's going to accept the left track mid versus this. No. I think he's going to choose a hero versus the Arc Warden. What's left? I mean, Pangolier is out. Batrider got banned, so they were already setting up for it. Is this 9's first Arc? Arc Warden is very nice with the Tundra's heroes. It's very nice with their playstyle. It plays a lot like a Naga. It's a hero that's hard to deal with, that can open areas safely, get information. You know, it's an amazing pick for Tundra's lineup. It's good against Lash, but I feel like Secret's lineup is one of the lineup that can make an Arc very scary, right? Like very scared, I mean. But this is not a typical 9 hero, like whatsoever. Like maybe it's similar a bit to the OD, who doesn't rotate very much, but almost every 9 hero likes to rotate. Like there's Zeus and there's some other ones. Okay, Morphling. Morphling. Yeah, here we go. Morphling mid most likely into the Arc. Probably expected it to be a pretty good matchup. There it is, and it's going to be a Rezo Lesh track. And they're just kind of sacking this Lesh track a little bit. And because, yeah, it's a rough matchup. Lesh track mid against Arc is not fun by any means. But last time he played it, he ended up with Blink, Bloodstone, Hex very early on in the game. And I think if he gets the same type of snowball or same type of game, I think it's going to look incredible. You close the gap versus the Arc. You don't care about the Visage. Like, you can also blow him up. I don't know. I like Secret's approach here. I really like it. And I think 9 might regret, you know, not having stayed for a more active hero. But let's see. I don't think anybody's going to help the Visage this game. No, it's yeah. I mean, I feel Tundra's Dota. I think it's extremely powerful, but this is probably the first game, the game where I feel the most that they can be very challenged. Yeah, and they can be crippled. Yeah. What do you sort of reckon, Fogs? You know, Nisha Morph, it's popped off before. Is this a game where we can expect to see Nisha get to a level where he's going to be having the potential to 1v5 in these team fights? He's got good scaling. They got good ways to force team fights. It looks pretty strong. I mean, I've said it before also in the last game. I think they do want to keep the ball rolling, Secret, and if they don't, I mean, Tundra's going to run away with it again, and they're going to get to play the map, and it's going to be a very painful slow death for Secret. Yeah, I mean, I think the ball is in Secret's court. They really have to score. Nisha Morph is incredible. Like, he's one of the best morphs out there. He hasn't gotten to play it as much lately, but I think everybody that ever got to face his morph still remembers. He is an incredible morph player. He can make wonders in this game. Let's have a look. We'll find out soon. Surely we'll be able to pop over to Coach. But before we lose your kind of final word, Seb, Secret, how do they bring us back from that loss in game 1? Tempo. Play their heroes to their strength. You know, it's a Bristleback, a Leshrac, a Chen. Thank you very much, Seb. Over to Slacks now. Hello, thank you so much, Owen. I am here with Heen from Team Secret. Heen, rough game 1, as we saw, but what's the strategy here? Just give it to me straight. You know, when in doubt, Chen it out, or what are you guys going for? No, it's just we want to be able to
force objectives, because it's been very hard to force fights or like catch them. So we're figuring with Chen, our ball is stronger and faster, and we won't get as frustrated trying to catch them or anything. All right, well, thank you. Very informative. Appreciate it. Do you remember what Arc Warden does? It's been a while. Do you feel like you got enough counters to that and you're going to be okay with that last pick Morphling? I mean, we played against Arc Warden a few times in scrims and maybe even matches. But so, yeah, it was not a complete surprise pick. Hopefully you're ready. I mean, game one didn't quite go as we envisioned, so. All right, well, you know what? We are ready to see this thing go all the way. So, ladies and gentlemen, can you please give it up for this man? Give us some energy. And please give it up to our wonderful casters who will bring us in to game number 2. Thank you very much, Lax. Yes, we're ready to go here with game 2, Secret versus Tundra. Let's see if Secret are able to fare a little bit better, because that... Alrighty, ladies and gentlemen, BO5 Series Grand Finals, the International 2022 Team Secret versus Tundra मैच का ओवरऑल स्कोर अभी 1-0 चल रहा है, लेकिन अभी भी पोटेंशियली हमारे पास 4 मैचेस बचे हैं. दिस इज जॉनी जॉइंड बाय नासिर एंड फिक्सेस. हमारे जो चौथे गेस्ट हैं हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे और पोटेंशियली हम 5 भी हो सकते हैं अचानक से, कॉज 5 मैन स्टैक. बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा. देखिए जो टाइमर के साइड में जो डंडियां हैं यूजुअली 3-3 होना चाहिए. हाँ, इस बार सिर्फ 2 है. सो ग्राफिक एरर है. हाँ, वो प्रोडक्शन सही कर देगी. फिक्सेस टेंशन मत लो, दे विल फिक्स इट. फिक्सेस एंड मेरे हिसाब से वो 3 है, आपको तीसरा नहीं 2 ही है. 2 ही दिख रहे हैं यार. अरे तो तीसरे पे तो जीत जाएंगे ना. नहीं, बट दिखना चाहिए वैसा कि हाँ उन्होंने BO मतलब लॉबी में बहुत गंदी सेटिंग की है. दे शुड हैव वेंट फॉर BO5. हाँ, लॉबी में उन्होंने BO3 लॉबी की सेटिंग तो आपको पता होगी ना. नासिर लीग ऑफ सैड. चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी. नासिर आप सही कर दो, जाके उनको बोल दो, मैसेज कर दो. अभी देखो, जैसे मैंने पप्पी को मैसेज किया था या तो मिराना पिक करना है या बैन करना है, उन्होंने बैन किया. अभी मैं उनको भी मैसेज करूंगा, भाई तुम लॉबी सेटिंग्स चेंज करके BO5 डालो. एक काम करो, रीहोस्ट करा दो पूरा TI ग्रैंड फाइनल्स वापस से फ्रॉम स्क्रैच हम देखेंगे. बट यस, मिस्टर एरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स इस बार हम लोग को नज़र आए हैं. एंड स्पेशली पपी ऑन हिज कंफर्ट चेन हमने देखा है कि कुछ खुराफाती प्लेस किए हैं. बट ये जो आर्क वार्डन है, नोटेल भी परेशान हो गए. ये आर्क वार्डन जो है नाक में दम कर देने वाला आर्क वार्डन है. एंड दिस रियली फेवर्स टीम टंड्रास लाइनअप राइट नाउ. आर्क वार्डन एक ऐसा हीरो है. अरे भागो. फर्स्ट ब्लड, नाइस. और दिस वाज अनएक्सपेक्टेड. आप ब्रिसलबैक को अरे पप्पी जी, पप्पी ले लेंगे. ले ली, फर्क नहीं पड़ता. ओए होए, you never expected Bristleback to die this early in the lane. But of course it's very early phases. उनका Bristleback भी नहीं आया ठीक से. गू मारते क्या मारते? गू, नसल गू, ऐसे नाक से ना. अच्छा, ऐसे फेंकते हैं, आप स्लो हो जाते हो, आपका आर्मर डैमेज होता है, कम हो जाता है. I guess मेरे को लग रहा है ये गेम थोड़ा. अरे रुको, कहाँ जा रहे हो जाने मन? बुला लिया, देख कूद के जा रहे हैं. ओ गॉड, क्रिस्टलिस की जिंदगी मतलब झंडू रखी है. सास्का के कुछ प्लान्स हैं TI के बाद के, एंड ही वांट्स टू गेट देयर अर्ली. फेयर इनफ. बट विशाल, ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा बताइए, देख के क्या लग रहा है? लाइक हाउ आर द टू टीम्स सपोज्ड टू बी अप्रोचिंग दिस नाउ? सो वेरी स्क्विशी ड्राफ्ट फ्रॉम टुंड्रा. And अगर सीक्रेट वंस अगेन दे आर एबल टू डू समथिंग बिफोर 10 मिनट्स तो फिर काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा उनके साइड से. और लाइक नासिर मेंशन्ड, the score is correct. जी. No, it is not correct. Sorry, my bad. It is they selected as a BO3. BO3, not BO5. मैं कह रहा हूँ ठीक ही तो है ना, अगले में जीत जाएंगे. तीसरा तो विन है ना. नासिर एक गेम ऐसी करा देना, क्या जा रहा है? नहीं, उनको मैसेज करना पड़ेगा, लॉबी सेटिंग्स सही करो. कर देते हैं. But again, typical draft, one tank, one hard hitter carry. फिर निशा का हीरो जो जिस पे वो काफ़ी कंफर्टेबल है. सो गुड ड्राफ्ट आई वुड से. चेन अगेन, पप्पी जिस पे काफ़ी कंफर्टेबल है. And then Tusker was probably a deny pick from Team Secret, and उसी के वजह से I think they went for Arc Warden. They picked Lesh and Tusk in the first phase only, Secret.
बट यू नो आप मुझे थोड़ा सा बताइए निशा के आइटम बिल्ड्स के लिए, बिकॉज where are we looking at this morph to you know start like you know glass cannon mid game या फिर लेट गेम के लिए भी, बट विल टॉक अबाउट दैट. जैक ने फिलहाल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आइस शॉट का इस्तेमाल करके स्नेकिंग को काफी ज्यादा डैमेज दिया जरूर है. ट्राई टू डाइव इन अ लिटिल बिट बट नो, हैज टू रिट्रीट बैक. सो फार लेनिंग फेज आई थिंक अच्छे जा रहे हैं. अब अगर बात करें टुंड्रा की क्रिस्टलिस, थोड़ा सा उनको कैचअप करना पड़ेगा. बट यस, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, विशाल बताइए थोड़ा निशा के मॉर्फ के बारे में. सो मॉर्फ करने के बाद काफ़ी एबिलिटीज़ आ जाती है इसके मॉर्फलिंग के पास यूज़ करने के लिए. सो इट विल बी अ fair impact by him, but not that great again. This bristleback really needs to have a very good time, which he's not having at this moment. Marcy and Visage are one of the toughest heroes to play against. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है उनके लिए. मॉर्फलिंग के लिए ऑलरेडी लेन डिफ़िकल्ट है, एंड दैट मीन्स कि आर्क वार्डन की भी लेन अच्छी होने वाली है. सो everyone is going to get farmed. Nasir, like tell me about Arc Warden over here. Like what are the possibilities that they can create with Arc Warden? Intention क्या रह रहा है? आर्क वार्डन से देखो, लास्ट गेम ऐसा था जब जहाँ पे स्किटर ने अपने इल्यूजन्स के साथ लिटरली पूरा मैप फार्म किया था. एंड ये गेम ऐसा रहेगा, स्किटर टाइम निकालेंगे. मिड गेम में स्किटर स्पाइक होगा, जैसा उनके पास 2 आइटम्स आएंगे, ऑमलेट उसके साथ एक मेज स्लेयर और बीकेबी. जैसा ये आइटम्स आएंगे, स्किटर विल बी द वन इनिशिएटिंग द फाइट्स. एंड 9 ये गेम में पीछे रह के फार्म करेंगे, इल्यूजन्स निकालेंगे. बेसिकली आई गेस 9 अभी मिडास बनाएंगे पहला आइटम, देन ही विल गो विद मांटा एंड ऑर्किड. लेट गेम जाता है तो like who are you favoring for this game? See, if morphling is farm, then of course secret. But look at this. Puppy. Shutdown मिलेगा. It will be a shutdown. अगर मिल जाती है, I think मिल सकता है. Just one spray. Yeah, there you go. अच्छा खासा, you know. It was a good. It was a decent trade because bristleback को बहुत XP और health वो farm मिला है. मेरे हिसाब से ब्रिसलबैक सीधा वैनगार्ड रश करेंगे, सो दैट ही कैन ब्लॉक आउट दी मार्सी के अटैक्स एंड ऑल. ज़ायक अच्छा जोन आउट कर रहे हैं फिनिक्स को लेन से. इज नॉट अलाउइंग हिम टू स्टैक. 33 के लिए बहुत ज़रा लेन, मतलब मिड गेम थोड़ा ट्रांजिशन में बहुत इश्यूज आएंगे. अगर देखो मिड गेम में अर्ली गेम में मॉर्फलिंग बहुत अच्छा फार्म कर रहा है, ही इज़ हैविंग अ प्रीटी मच फ्री लेन. एंड अगर मॉर्फलिंग ऐसे ही फार्म करते रहे, देन आई गेस एक वेव में वो एक वेव मार के जब अंदर घुसेंगे ब्रिसलबैक के साथ, वो 1-2 हीरोज़ को तो ऐसे ही वाइप कर लेंगे अंदर घुस. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ब्रिसलबैक का अभी शाइन करने का टाइम नहीं है. हाँ. और फिर भी वो मर नहीं रहा है. सो आई नो ही डाइड वंस, बट इट्स ओके. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू किल हिम लेटर ऑन. Once he starts. So silver edge and all that. Wow, what a dodge. Snaking. He's dead. But Morphling will get the kill. Morphling will get the kill. Yep. And ये एक बहुत ही फायदेमंद किल होगा. बट यस, यहाँ पे देखिए 33 भी रोटेट कर चुके हैं. निशा को सांस लेने का मौका नहीं देंगे. एंड ऑलरेडी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं, बट नहीं, 9 ये होने ही नहीं देंगे. He should have waved out. उनके पास रीजन रून था, वेव आउट करके he would have regened it, but he thought he could kill him. So Morphling के लिए यही प्रॉब्लम है कि the number of stuns that Tundra have with the Visage and Chaos Knight and Marcy, bursting down Morphling is not that difficult. It will be very easy. हाँ, but you even have Bristleback for yourself, right, in the team to tank for you. Correct. And मिडास बन चुका है ऑलरेडी. इनका बन चुका है, 2 बार यूज भी हो चुका है. 2 बार यूज हो चुका है, बिकॉज मिडास आपके अल्टी में भी आप अपने इल्यूजन के साथ मिडास यूज कर सकते हो. So that's where it clicks. And थोड़ी देर में we'll find him at the top of the network pretty soon. I think but मेरे हिसाब से आर्क वार्डन हैज द वन ऑफ द वीकेस्ट लेन फेस. अगर उनके ऊपर कुछ चढ़ जाता है, he relies on his abilities to slow down, to kill them, but अगर कोई ऊपर चढ़ जाता है, and it will be very difficult for Arc Warden to survive. And you have a very
pretty much very good gap closer with Morphling. वो जो wave मार के जाते हैं, he's invulnerable during that time. Yes. Oh, Snake in a bit of a situation. By the way, जैसे मैं बात कर रहा था कि Morphling को burst down करना काफी easy होगा, but we also don't need to remember कि इनके पास Tusk है जो Morphling को हमेशा बचाएंगे. So I won't be surprised अगर Tusk एक blink rush करे, boots भी ना ले तो it is completely fine as at this moment. Talking about Lestrak, I think मेरे हिसाब से it would be best अगर वो भी blink build जाए, so that he can jump onto Arc Warden completely, throw him off the charts and try to finish him off. उसके बाद basically blink के बाद एक glass cannon build. I don't know, maybe a Dagon or something to kill him off. But he can go with Dagon and it will be even. Just joking. Come on. नहीं, it will be good. मतलब 33 को ही मारने के लिए भी काम आ सकता है. You have a very squishy supports to Marcy and all. Once Marcy अंदर घुसती है, then you can just wipe him off. Yeah, there goes the dual Midas. Interesting part is that Tundra top lane की भी NC farm कर रही है along with the creep wave, और bottom lane की भी NC farm कर रहे हैं along with the creep waves. So एक्सपीरियंस एडवांटेज काफ़ी देखने मिल सकता है हमें यहाँ पर. टॉप जंगल में फाइट होने वाली है बिटवीन फिनिक्स जो भाग जाएंगे अभी एंड फिनिक्स इज डेड. दैट्स इजीएस्ट 200 गोल्ड फॉर निशा. I guess अगर निशा ये गेम में ऐसे ही स्नोबॉल करेंगे then he will be the one who will be the leading the tempo. I guess there is a chance for another kill. Snowball आएगा and with dead. They have to give this to Nisha. Yeah. No. Poppy ने ले लिया. Doesn't Nisha का almost Yasha complete हो रहा है. He's going for Yasha. I think he's going for a Dragon Lance. Dragon Lance जा रहे हैं. So I think he is going to be that hard hitter जो late game जैसा हमने बात किया था. हाँ. Where Bristleback does have some substantial amount of damage, but mostly you would want him to stay on the front lines. Yeah, because it is too late for Ethereal Blade to be built right now. And बीच में वो एक बार मर भी चुके थे, so that might have been the reason. And also with Ethereal Blade, he will be forced to stay with high agility, which means कि HP काफी कम होती है उस टाइम पर, and the lineup that Tundra has उसके वजह से एक भी stun connect हुआ एक stun लगने के बाद Morphling is dead. And not just that, एक बारी अगर नेटवर्क पे नजर डालें तो CK has not been doing pretty well so far, क्योंकि बार-बार उनके टॉप लेन पे प्रेशर आ रहा है and Team Secret is taking so much good control over this map, and they might find that pick that they were looking out for. Skitter यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं. Diabolic edit pulse Nova के साथ already switch on कर दिया गया. Skitter somehow trying to armlet toggle नहीं है इनके पास, I guess. He used magic stick. 20 charges तो थे उन पे, आधी HP उनको वापस आ गई है. Very nice build from Bristleback. He's directly rushing for Scepter. Yes. I would love to see कि वो से क्या कर पाएंगे, because इतने सारे units होंगे at later stages, yes. and they would really want to kill them. Yep. I think Team Secret is doing good compared to जिस तरीके से Tundra ने start किया था, especially finding snaking बार-बार ये थोड़ा सा जो गोल्ड एडवांटेज भी निशा को मिल गया है. ही इज कीपिंग अप विद द आर्क वार्डन, एंड वी हैव टू सी कि अब नेक्स्ट गेम के अंदर क्या होने वाला है. एंड जैसा आपने बोला था, टस्क इज नाउ रशिंग इंस्टेंटली फॉर हिज ब्लिंक. फाइनली सीके का आर्मलेट कंप्लीट हो चुका है, एंड वी हैव सीन कि स्किटर का जो सीके रहता है, इट्स नॉट वन ऑफ दो सीकेस की जो 30 मिनट के बाद आ रहा है. इट्स वन ऑफ दो सीकेस जो मिड गेम पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल करा है. 3-man smoke from Tundra. They are gathering bottom. Radiant jungle में किसी को ढूंढने का ट्राई करेंगे, and it is possibly going to be Bristleback. But yeah, luckily I think he knows कि this is the time. They are showing one hero on top, and this is potentially a free tower. जिसके लिए वो ट्रेड तो नहीं कर रहे, because tower ही नहीं है उनके पास ट्रेड करने के लिए Secret के पास, so they just let it go and take the time to farm Bristleback a little bit towards his Aghanim's. Oh, देखिए यहाँ पे I think निशा के ऊपर पिंग्स आ रहे हैं, but how do you stop that? अब देखिए ये अगर स्टैक्स को कंटेस्ट करने आ सकते थे, Tundra के प्लेयर्स could have been
so much value out of this fight, but yes, after getting this इसको मिलने के बाद तो बहुत ही easily उनका scepter के जो items है मिल जाएंगे उनको, and look at it, just कुछ नहीं कर रहे हैं, बस quill spray करते रहो, damage होता रहेगा. So what you have to do is keep spraying quills and अपना back दिखाना है उनको. Back पे मारेंगे and quill sprays और निकलेंगे. Damage आएगा. Damage reduction होगा, फिर quills extra निकलेंगे. Yes. Stack होंगे quills. हाँ, वो भी stack हो रहे हैं. I'm surprised to see कि Morphling का item progression काफी stop हो गया है. 3-man smoke from Team Secret into the Tire jungle. I think they will be spotted by Visage. Visage is not what they want right now. They want an Arc Warden or a Chaos Knight. ये देखिए. And they're going for it. Yeah. But they went the other way on Marcy. Marcy को दे दबोचा है फिलहाल के लिए. साक्सा लाचार. If I were Tundra, I would be happy. Yeah. ये Crystallis का बदला था ये. Lane के लिए. Oh, they are going for Roshan. And I think they can also do that. I mean, Nestle को डाल दीजिए. I think this can be a huge mistake from Team Secret if Tundra wants to contest this. Marcy ने smoke भी मंगा लिया है, so possibly everyone will gather, smoke up and go into the Roshan pit. But Team Secret is too fast. Too fast. Okay, they have. I guess Bristleback को लेना चाहिए था. I think it's fine on Misha because Bristleback. नहीं यार, Bristleback is your front runner. मतलब वो अंदर बहुत अंदर घुस सकता है. मेन वैल्यू तभी आएगा जब बैकलाइंस तक वो ब्रिसल पहुंचेगा. हाँ. What? How did he not see catch that? Okay. चलिए. टिप भी कर दिया गया है अभी के लिए. But again, I mean, considering कि कितना ज़्यादा bully किया जा रहा था Team Secret के players को in the early game stages, they have managed to bring themselves back in this game quite nicely. That's what Morphling uncontested गया है and he is going here there, wave in and killing your supports. So वहाँ उसी की वजह से आपका cover up हुआ है. And now you have Aegis on Morphling, he can go in very fearlessly. Tundra will be in a dilemma कि पहले Morphling को मारे या Bristleback को मारे. चुपचाप से गए एक डीप वॉर्ड कर दिया. प्लीज सब सीक्रेट के प्लेयर्स अगर उधर से आते हैं, बट सीक्रेट के जो प्लेयर्स हैं वो तुले पड़े हैं कि टियर 2 इनका टॉप का ले जाएं. I guess they'll take it and they'll rotate to the mid. So Marcy का ward basically ये कहना चाहता है कि हमने तुम्हारा tier 1 तो ले लिया और हम अब तुम्हें देखेंगे कि Morphling तुम्हारी जंगल में कहाँ फार्म कर रहा है and possibly उसको मारने का ट्राई करेंगे. So but Morphling is going to go the other way around and start to split push now because वो काफ़ी independent हो चुके हैं अभी अपने आप पे. He doesn't need his team around anymore. The team can start smoking and ganking क्योंकि उनके पास Aegis भी है. Item progression wise, Arc Warden nothing special, but 3-man smoke from Team Secret. Saksa should be dead. वो देखना चाहेंगे कि क्या उन्हें Saksa once again wasting Team Secret smoke. This again team. If I were Tundra, I would be very happy that Marcy मर रही है and it's not a CK or a Arc Warden, to be honest. Eco Saber बनने वाला है Chaos Knight का along with Armlet. He will be hitting like a truck soon, which will help them to control their mid game and afterwards Arc Warden game संभाल लेंगे. Late game का भी जुगाड़. So I think इस बार Tundra के तरफ से जो approach दिख रहा है, it's more about prepping for that late game over here. क्योंकि early game तो safe to say कि Secret has won the early game. And 9 के में कोई inventory will summon नहीं है. He's going for Atos. So I wouldn't call it off fixes. The only reason being is if you see the gold lead, it's just 1k. But most of it is on Arc Warden. ना आप बाकी 3 देखिए. Yes. I understand. Arc Warden is not going for damage. He is going for a deep, मतलब magical DPS के लिए he had made Atos. I wanted to see him and see an Orchid on it. Let's see what Tundra can do. The things that we are talking कि stuns में Morphling कितना survive कर सकते हैं. Maybe just to lock him down. If you see the minimap, they are marking the jungle. They know Team Secret knows कि इधर ward लगे हुए, कहीं तो ward लगे हुए. And they want कि Morphling हमारा safe रहे so that he can farm. So they are pressuring and pushing for D wards. A lot of couriers flying here and there.
But at the same time, if you see Dire Jungle, there are a lot of wards and wards very close by. So काफ़ी diverse thinking देखने को मिल रही है हमें दोनों teams के तरफ से. Specialist array. But at this point, this blink is of Leshrac, right? So yeah, this is what I was talking about. कि Leshrac को अगर इस गेम में कुछ करना है, is to jump on Arc Warden. टॉप लेन में एंगेजमेंट की कोशिश, कॉड ऑफ गार्ड, टीम सीक्रेट यहाँ पे एक अच्छा पिक तो निकाल सकती है, बट नहीं, टंड्रा भाग गई. They just, I think Tundra should have fought it. They had Egg of Phoenix and all. मेरे हिसाब से वो फाइट लेके एटलीस्ट एक पिक ऑफ तो निकाल सकते थे. The thing is that Tundra को पता नहीं था कि पीछे और कितने हीरोज हैं. I think that's why they decided to go back, safer than sorry. And ladies and gentlemen, we have a special guest returning. Mr. Krat is back. Krat meeting कैसी थी आपकी? It was great. जापान से delegates आ रहे थे. But yes, यहाँ पे एक अच्छा सीक्रेट स्टन टिकाया तो है, बट शार्ड का इल्यूजन कुछ खास डैमेज नहीं देते, बट लाइक टू मच हैप्स इट इन दिस गैंग और बहुत ज़्यादा डैमेज. एंड द वेरी फर्स्ट वन मॉर्फलिंग की यहाँ पे एजेस हो चुकी है एक्सपायर. दिस फीनिक्स और दिस ब्रिसलबैक इज वेरी बैड. मतलब बीकेबी वेस्ट हुआ है. वॉर पैथ का ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टैक्स आगे थे, बट यहाँ पर जैक अभी भी होल्ड कर रहे हैं. ही इज प्लेइंग टस्क. शायद से ही वांट टू गो ऑन सीके. ही वेंट ऑन सीके. यहाँ पर अर्थ स्प्लिट भी लगा दिया. उसके बाद ये देखिए पर्ल स्टॉर्म, सो मच मैच डैमेज. एंड आई थिंक सीके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. एंड एनी सेकंड दिस सीके विल बी गोइंग डाउन. एंड द वेरी फर्स्ट पर्सन टंद्रा ने अपना कैरी यहाँ पर खो दिया और बाकी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. बट ये यहाँ पर गू एंड क्विल स्प्रे करते हुए साक्षा को स्पैम करते हुए साक्षा फिर भी अपनी जगह बना चुके हैं सेफ के अंदर. पर आर्क वार्डन अब एक ऐसा ड्राफ्ट, मैं तो अभी भी आऊँ, ड्राफ्ट अभी देखा है. आर्क वार्डन होना टीम में और लेट गेम की तरफ अगर आप अप्रोच कर रहे हो, देन आप विशाल भाई जैसे ब्रह्मास्त्र के रणवीर कपूर जैसे आग से खेलने. You have Morphling वर्सेस आर्क वार्डन. आई थिंक कि क्लोन से स्प्लिट पुश की जो पोटेंशियल है, प्लस आर्क वार्डन अगर टिकता है आइटम बिल वगैरह के अंदर, मॉर्फ के लिए प्रॉब्लम हो गया अनटिल वो डिस्टेंस क्लोज आउट हो जाएगा. अब ये देखो चैन पे चढ़े, चैन फिर भी आधी एचपी पे बच गए थे, बट जो पीछे से एक सपोर्ट आया ब्रिसलबैक का एंड उसके बाद टस ने आइस बॉल लगाई, उसकी वजह से काफ़ी कुछ होल्ड हो गया था. मॉर्फ ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश करी. मॉर्फ का ना एक्चुअली क्या था, उन्होंने एजिलिटी वाला बटन दबा रखा था, वो बिल्कुल मेल्ट डाउन हो गया, वरना एजेस इनकी एक्सपायर जल्दी नहीं होती. सो जैसे सीके ने स्टन किया तो ऊपर विजन नहीं था, इसलिए उनको चेन को छोड़ना पड़ा. एंड आई लाइक द वे कि जैसे टुंड्रा ने ब्रिसलबैक को इग्नोर किया जब उनका बीकेबी पूरा ऑन था. दे ऑल इग्नोर्ड हिम, ट्राई टू कम बैक एंड रीग्रुप एंड ट्राई टू फाइट अगेन. बट फिनिक्स की अल्टी नहीं थी यहाँ पर, सो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड देन हियर इट वाज द कॉल टू गो बैक. ये सबसे स्मार्ट डिसीजन यही होता है कि whenever you have a bristleback in your front, ना always ignore him. कोई bristleback आसानी से पिक ऑफ नहीं होता, बट स्किटर सेकंड टाइम ही इज इन डेंजर. थोड़ी देर पहले भी पिक ऑफ हुए थे, अगर फिर से चले गए तो मुश्किल होगा. बट आर्क वाटर का बबल के अंदर ही इज अवेटिंग एवरी पॉसिबल शॉट एंड ही गॉट जैक, रेजोल्यूशन एंड निशा. इसका मतलब कोर 1 खो दिया यहाँ पर. कोर 2 एंड कोर 3 अकेले जो बचे ब्रिसलबैक, जो हमारे कोर 1 है कैरी हैं, वो बचे. बट आर्क वार्डन का दैट बबल, टाइमली एंड प्रिसाइजली. तो यहाँ पे हमें देखने मिला द पावर ऑफ आमलेट टॉगल एंड द क्रिट रीजन फ्रॉम सीके. अपार्ट फ्रॉम दैट लेस्ट्रैक ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया ब्लडस्टोन यूज़ करके अपनी टीम को हील करने की, विच वॉज अ सैक्रिफाइस, बट इट कुड हैव बीन बेटर आई फील. ये देखिए थोड़ी देर that bubble man, that bubble changed everything. No, he died. Yeah, okay. Yeah. बहुत ज़्यादा पड़ गया. Zach, my brother, like if you lose this one too, you will be under pressure and your TI run will be in danger. TI final से आपको याद दिला दूँ, it's a BO3. It's a BO5. No, it's a BO3. देखो रूल्स चेंज हो गए. क्राट से BO5 उन लोगों ने लॉबी गलत बनाई है. That's क्राट आप फिक्सेस को कुछ बोलना चाहेंगे? It's okay man, sometime ये होती रहती है प्रॉब्लम and we are just humans. I like humans. the look that Krat had. What? ये कब हो गया? It's okay man, like so that we can hit gym like जल्दी. Yes. It doesn't matter आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, but if you are on a mission, but you have to accomplish it. लाइट ढूंढनी है. लाइट तो हम बना लेंगे, अपनी लाइट हम बनाएंगे. अब मैंने सोच लिया है कि लाइट मैन्युफैक्चरिंग मोर इजी टू फाइंड. तो अब ब्रह्मास्त्र से स्वदेश की तरफ जा रहे हैं. हाँ, अब हम जा रहे हैं, अब मोहन भार्गव बनेंगे. वानर अस्त्र वाला लेके भगलेंगे हम. It's okay. What do you think, Krat, कि should Leshrac go for a BKB or he should go for a Ghost Scepter?
मेरे हिसाब से बीके भी मस्ट है, बिकॉज ढेर सारा मैजिक डैमेज भी है और ऊपर से डिसेबल्स भी है। अगर सीके का स्टन और यू नो मर्सी का डिस्पोज इनिशिएशन, अगर लेशरैक पिक ऑफ हो गया रेजोल्यूशन मरते ही बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी। बिकॉज एक आइडल दिमाग में होता है कि ऑफलाइन आपके लिए ना छाती पे गोलियां खाता है, जो मेन टैंक का काम होता है, ठीक है, वो चलो क्रिस्टलिस्ट कर सकते हैं, बट क्रिस्टलिस्ट की जाती अगर उनको कुछ हो गया फिर तो गेम ही खत्म हो जाएगी ना। गैंग बट टुंड्रा 5 मैन स्मोक गैंग, बट हाई ग्राउंड की एडवांटेज हो सकती है। बट यहाँ पे सीधा क्लैपनी यूज करा एंड डिस्पोज करने का कुछ फायदा होता, उससे पहले ये देखिए कितनी जल्दी टस्क को एलिमिनेट कर जैक को गेम से बाहर निकाल दिया। एंड एवरीवन दे रशिंग आउट, दे वाज गोना गो बैक। उनको पता है कि इसको स्किटर के पास जितना फार्म है कि वो कर सकते हैं बिल्कुल तबाही। उन्होंने उनके पास इको सेवर था, उन्होंने इको सेवर को डिसेंबल करके बीके भी कंप्लीट किया। मे बी फिर से ये हमें समझ नहीं आता है कि वाई इको सेवर की अपनी वैल्यू है, बीके की अपनी वैल्यू है, जस्ट बिकॉज वो या तो गैंग में शिफ्ट करते रहते होंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक यू कैन डिसेंबल बीकेबी। नो यू कांट। पर मैंने बहुत बार देख लिया ये, इस मैंने टीआई में कि पहले इको सेवर बनाते फिर बीकेबी जल्दी बना के फिर बाद में इको सेवर बना लेंगे, ऐसे कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं। और मे बी ऑब्लिवियन स्टाफ से यू कैन गो टुवर्ड्स अ ब्लडथॉर्न एरिया। It all depends on the pace of the game, I think. अगर तुम्हें बीकेबी की जरूरत है, you should go for one. अगर you think कि ये लंबा गेम जा सकता है कि मैं आगे इको सेवर के बाद एक बीकेबी बना लूँ, तो you go for इको सेवर then. You know there was a patch, there was an update. You know एक टाइम पे अभी क्या है सिल्वर एज में क्या लगता है, एक शैडो ब्लेड लगता है, एक क्रिट लगता है और एक रेसिपी लगती है। पता है नासिर बीच में क्या था, देयर वाज अ शैडो ब्लेड, इको सेवर और रेसिपी। वो सबसे मतलब कुंका जैसे प्लेयर के लिए, स्लार्क जैसे प्लेयर के लिए हेवन आइटम था, बिकॉज 2 स्लॉट एक में आ जाते थे। मतलब वहाँ पे फिर एक प्योर डैमेज आइटम ऐड होता था, डेडलेस या एमकेबी, जो स्लार्क जैसे को बहुत ओपी कर देता था। बट यस अभी रोशान के अंदर दिलचस्पी दिखाई है दोनों टीम ने। ऑलरेडी टुंड्रा ने उस एयूई रीजन के अंदर अपना दबदबा बना रखा है, बट स्मोक कर अब सीक्रेट भी इस चीज़ को जवाब देना चाहती है। बट ब्रिसलबैक स्मोक के अंदर नहीं है, बट दे वांट कंटेस्टेड, बट धीरे धीरे वो स्मोक के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। डायर्स को अंदेशा है शायद से, तभी अकेले जो ब्रिसलबैक है वो रोशान के साथ गुत्था कर रहे हैं। बट बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस वक्त टॉप टियर 2 के अराउंड से घूम कर आना चाहते हैं, बट वहाँ पर उन्होंने एक स्पिरिट लगा रखी है, व्हाट यू कॉल इट, डार्क रेथ बोलते हैं शायद उस स्किल को। बट या इट्स ओके, बट डायर भी अब फॉल बैक कर रही है बिकॉज यू नो ओके। नीचे आप देखें ना आर्क वार्डन का क्लोन कितना ज्यादा ऑलरेडी टियर 3 के पास आ चुका है, बट यहाँ पे पहला टीपी आया, दैट इज लेशरैक। लेशरैक विल बी देयर टू डिफेंड दैट टियर 3 और ये फाइट अच्छी है। अब आर्क वार्डन एक स्प्लिट पुश का डर भी बना के बैठा हुआ है। ओ जैक यू कैन बी इन डेंजर, डिस्पोज करने की कोशिश हो सकती है, यहाँ पे डिस्पोज कर एंड यस ही इज जस्ट डेड। ज़ायक अकेले चले गए, ज़ायक ने अकेले जंप मार दिया विदाउट एनीवन। So it's imagine कि इतने सारे यूनिट्स एंड एवरीवन हिट्स यू वंस। सपोर्ट्स गायब हो गए एंड टुंड्रा इज ऑन अ रोल। गेम नंबर 1 जैसा मुझे सुनने में आया था कि आपने बताया कि दे लिटरली रेक्ट पपी एंड सडनली पपी एंड टीम तो टीम सीक्रेट के बाद अब ये गेम 2 के अंदर जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बिकॉज अभी ट्विटर पे बहुत सारे लोग दे आर लिटरली रूटिंग फॉर क्लेमेंटेनेटर, हमारे पपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दे वांट कि पपी यू नो शुड गो अहेड एंड लिव दैट सेकंड टाइम एजेस, बट जिस तरीके से टुंड्रा खेल रही है मुझे लग नहीं रहा कि ये इतना आसान होने वाला है। आई थिंक इस मोमेंट पे दे जस्ट शुड पुश बॉट और मिड मेक सेंस। एजेस ऑन स्किटर और यहाँ पे नेटवर्थ में भी वापस से थोड़ी सी पकड़ बनाते हुए स्किटर आ चुके हैं, शामिल हो रहे हैं। इवन एक्सपी की बात करें तो आर्क वार्डन इज स्टॉप, बट आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 33 को यस हकाल दिया इस फाइट से। अब देखना यही रहेगा कि टीम टंड्रा का जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो क्या रहता है। फिलहाल के लिए जस्ट नॉट टेकिंग दिस जंगल जितना फार्म मिल सके and they'll have to back off. No way, I don't think विसाज के बिना वो फाइट इनिशिएट एंगेज करना चाहेंगे। अब कल के अपर ब्रैकेट फाइनल के अंदर भी यही हुआ था, पहला गेम टुंड्रा जीत गई थी, सेकंड गेम के अंदर दे जस्ट डिड वन थिंग, दैट वाज विसाज मारो योजना। विसाज को हर बार टारगेट किया एंड दे लिटरली कन्वर्टेड होल गैंग इनटू अ विक्ट्री, और उन्होंने वही चीज स्पैम करी जब तक ड्रो की क्रिस्टल से डर के सो लोग घर नहीं चले गए। सो अभी भी अगर वो वाला टैक्टिक लगाते हैं देन दे कैन लिटरली न्यूट्रलाइज, बिकॉज विसाज का गेम में होना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आर्क वार्डन 27 मिनट के अंदर जो फार्म है आर्क वार्डन का इट्स नॉट दैट मच, मतलब आर्क वार्डन पे वो भी बनाने लग गए ईथर लेंस बना। ओके आर्क वार्डन कैन बी इन डेंजर यहाँ पर। तेरी बड़ी क्लोन था, पैसे तो मिलते, पैसे अच्छे खासे मिलते, फिक्सेस इट्स लाइक प्लेयर ओनली। मैन स्मोक फ्रॉम टुंड्रा मिड लेन, माइंड ब्रेकर और साइकिक हेडबैंड। माइंड ब्रेकर मेरे ख्याल से इस वक्त लिशरा के माइंड ब्रेकर
अगर नहीं माइंड ब्रेकर ये लेगा मॉर्फलिंग किसकी तरफ है? सीक्रेट की तरफ गिरा है क्या? शायद सीक्रेट की तरफ है तो मॉर्फ है, वरना हेड। ओके ज़ायक को फिर से पकड़ने की कोशिश, यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी स्नेकिंग पीछे से। इस बार मिराना पे मौजूद नहीं, बट जाहिर सी बात है जेम उठा लिया इन्होंने, तो वही बात है अब थोड़ा सा विजन कंट्रोल लेना चाहेंगे। ऑक्ट्रिन कोर भी कंप्लीट हो गया। सो क्रैट, मुझे ये आर्क वार्डन के बारे में थोड़ा और बताइए, जो बिल्ड के लिए गए हैं इंटेंशन क्या रहेगा? यूजुअली जो आर्क वार्डन मुझे पता है, मैं देखते आया हूँ, लाइक उसके अंदर you get dragon lance, hex, hurricane spike ऐड हो जाता है, डैमेज आइटम ऐड हो जाता है, लिंकन वगैरह डाल सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको कुछ नहीं करना। बट अगर एक बार आपके बबल में फाइट हो रही है, आर्क वार्डन इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, स्प्लिट पुश का कांस्टेंट थ्रेट रहता है सामने वालों पे। अगर आपने सच्ची में ध्यान नहीं दिया ना, देन हाई चांसेस दैट क्लोन हैज अ पोटेंशियल टू किल एन अपोनेंट टू, भले वो कोर 1 भी हो। अगर यहाँ पर पूरा लग गया कॉम्बो जो लगाते हैं, वो डार्क पैड लगाना, स्लो करना, उसके बाद बबल के अंदर फाइट करना, क्लोन के भी पोटेंशियल होता है। तो एक तरीके से 2 प्लेयर आप खिला रहे हो, एंड इट्स अब ये देखिए इट्स नॉट इजी। लेशरैक ने यहाँ पर उनके क्लोन को पिक ऑफ करा, एंड टियर 2 टावर यहाँ पर लूज करते हुए देख रहे हैं टीम सीक्रेट। टीम अभी भी मिड पे एक टियर 2 टावर बचा है। I expected a fighting build coming out from 9, but वो पूरा utility build जा रहे हैं, just damaging, giving damage from spells, blocking them. क्योंकि डैमेज के लिए मियाँ साहब वो है ना, हमारे सीके हैं, स्केटर हैं, यू नो, एक सीके बहुत डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है, और वो क्रैकलिंग डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है, यू नो, विद इन सेकंड द प्लेयर विल बी डेसिमेटेड। तो वो वाला काम संभाल लेंगे। यहाँ पर ये है कि अगर वो आर्क वार्डन पीछे से सपोर्ट कर पा रहा है अपने प्लेयर को, जैसे उस दिन ऊपर वाले गैंग में क्या था जिसके अंदर 2 कोर्स मर गए थे आपके, कोर 2 कोर 3, वो बिल्कुल अलग था। एक टाइम पे लगा था स्किटर विल डाई, बट जैसे वो बबल के अंदर आया, स्किटर को इवेजन मिला, लाइफ स्टील मिला, क्रिट मिला 3rd किल से, एंड ही वाज बैक ऑन फीट, और उसके बाद रेजोल्यूशन एंड मॉर्फ दोनों को पिक ऑफ कर लिया था। देखिए यहाँ पे लीड धीरे धीरे, फैंटाजम 70 सेकंड का कूल डाउन। सेप्टर पे तो मेरे ख्याल से लोगों की भी इल्यूजन बन जाती है लाई हीरोज की, एंड अगर one pull and one hit from everyone। और सोच के लिटरली अगर आपके पास वीक पीसी है और सबने सेप्टर बना लिया सीके ने, क्रैश हो सकता है, बिकॉज सारे प्लेयर्स हिलने चालू हो जाते हैं, सबकी इल्यूजन बन जाती है। और यहाँ पे तो पूरा मंजे पड़े हैं कि फैमिलियर बचाने पड़ेंगे 33 को, बट यहाँ पे उन पे बबल लगा दिया, उन पे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी। ब्रिसलबैक का सेप्टर हो चुका है, इसका मतलब अब गू चारों तरफ निकलेगा, एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ ट्रबल। अगर ये बीबी ने धमाका मचा दिया, अगला आइटम असॉल्ट है, असॉल्ट आने के बाद तो बीबी विल बी अ थ्रेट, बट बीबी को डैमेज पड़ रहा है बहुत ज्यादा। बीबी इज इन दैट इन सेफ जोन, बट यस ये देखिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं सीके, और सीके को यहाँ पर पीछे फेंकने की कोशिश, और काफी अच्छा सेव। ओह माय गॉड, 10 सेकंड फॉर एजिस, 10 सेकंड फॉर एजिस, he'll go in। चौके बट रेजोल्यूशन है लास्ट मोमेंट के अंदर, he was saved, but यहाँ पर वॉर्डर्स पंच एंड हवा के अंदर मर्सी यहाँ पर काफी कम एचपी पे बचे हैं, बट दैट निशा ने यहाँ पे उनको कंप्लीट कर दिया। एंड नाउ दिस फाइट, ब्रिसलबैक इज गोइंग डाउन द कोर फ्रॉम द सीक्रेट, एंड अब जो जंग है वो है सीक्रेट के निशा, हु इज प्लेइंग मॉर्फ। उन्होंने यहाँ पे सीके को करा है बिल्कुल मॉर्फ करके कॉपी कर रखा है, दोनों तरफ से काफी ज्यादा डैमेज है, बट उनको स्ट्रेंथ मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड यस, गैंग इज सो मैच्ड अप, इट्स वेरी हार्ड टू फोकस। आप कहाँ देखना चाहोगे, बट वहीं पर 33 ने यहाँ पर अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड बैक करा, एंड जैसे हो जाएंगे एक एक करके, देखिए 3 प्लेयर, दे लॉस्ट द क्रू, 2 कोर्स, कोर 1 एंड कोर 3। अब यहाँ पर जो आर्क वार्डन है, विल ही मैनेज? यस, बोथ सर्वाइवर फ्रॉम दिस गैंग विल मैनेज टू सेव देमसेल्फ। उनके 2 बायबैक कॉस्ट हुआ है, एक चेन का और एक इनके कोर 1 का भी, ब्रिसलबैक का, क्रिस्टलिस। सो आई कैन से इट्स मीडियोकर। अगर मिड का टियर 2 भी ले लेते फायदा होगा, बट ये देखिए इट विल बी अ डाईबैक, इट विल बी अ डाईबैक। ओके, दैट वॉल इज मोहम्मद अली पंच। ओके, ये टाइम है तोड़ने का, आई थिंक इट्स ओवर, बिकॉज़ ये बहुत गलत जगह सुपर हुआ यूज करी है इन्होंने। ओके ओके, यहाँ पर अलग जंग चल रही है, यहाँ पर अगर स्प्लिटर कनेक्ट करे और डैमेज होता है, ठीक है। 9, like he was so panicked he forgot to use clone। वो क्लोन अलग झाड़ियों में कोने में झाड़ियों झाँक रहा है कि यहाँ पे कुछ होगा, बट इस फिनिक्स की मौत की वजह से मिड टावर पुश किया जा सकता है, मिड 2 टावर जा सकता है, बॉटम टियर 2 जा सकता है, और ये जो एडवांटेज है 2000 गोल्ड की, ये नल एंड वर्ड हो सकती है, चांसेस हैं। बट अभी हमने एक अच्छा गैंग देखा जिसके अंदर टू एंड फ्रो चीजें गई, एजिस वाला स्किटर 2 बार मरा, एंड सीक्रेट के पास अभी भी है इस गेम के अंदर कुछ लम्हे गेम को अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए। आई थिंक दिस ग्रैंड फाइनल इज गोइंग टू बी लॉन्ग। Interesting pickup from Morphling. Deadless. Your Morphling would never want to go deadless in ideal situations. So उसे पता है कि वो damage dish out नहीं कर पा रहे physically उतना, so he has to go for a deadless, and it could have been something else like a Spardy or something. देखिए यहाँ पे फिर से विसाज को
Yes, Visage is dead. या ये तो नहीं बच रहे, and I don't think यहाँ पे commit भी करना चाहेंगे without sneaking fight तो लेना At this moment they just watch the jungle. Yeah. Get the. But I think gem भी उन्होंने उठा लिया होगा, considering Phoenix के पास gem था, and gem भी उठा लिया, jungle control भी ले Mid लिया. tier 2 भी अभी ले लेंगे ये. No, when I joined the panel ना अभी मैं वापस आया तो उस टाइम पे टुंड्रा was looking very strong. जब से मैं आया हूँ मुझे टुंड्रा छोटी-छोटी गलतियाँ करी. अब जैसे 2 बार मैंने विसाज को पिक ऑफ होते हुए देख लिया. ये चीजें मेरे हिसाब से टुंड्रा को गेम के अंदर फॉल बैक करने पे हद से ज्यादा मजबूर करेंगी. Just completing Hurricane Pike, उसके बाद उन्होंने सटानिक क्यों किया है? Pick up from Arcodin. उन पे हेक्स था गुरु. अब लिया. Okay, Leshrac is dead now. Leshrac is dead. Oh. Leshrac is ज़्यादा dead. damage. Resolution बेचारे. Phantasm भी खोल दिया. Reality rate सब लगा दिया. और डिनाई भी कर दिया यहाँ पे डीडी रूल. It's okay. जैसे अभी मैंने बोला विसाज गलतियाँ करे तो रेजोल्यूशन कह रहे कि अकेले वो नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ थोड़े से लिटिल स्क्रू अप्स. काउंटर थ्रो. हाँ मतलब होना चाहिए 3-2-2 सोलो की आग में. वो पूरा विजन में खड़े हैं, he can die. जायक पूरा विजन में खड़े हैं. उनकी जो शेनानिगन थी वो इंस्टेंट पकड़ ली जाती है और आइस बॉल करते उससे पहले उनका आइस बॉल बना दिया जाता है. बट यू नो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे ही एक बार इस ब्लिसल बैक के पास एक आ जाएगा असॉल्ट आएगा और 2-3 आइटम और हैं जहाँ पर यू नो शिवाज वगैरह भी लगा लो. ये ब्लिसल बैक एक टाइम पे अनकिलेबल हो जाता है एंड ही इज जस्ट द मूविंग डेड नो डेड पूरा गैंग के बीच में पूरा परेशान करते हुए लोगों को. बिकॉज अगर किसी पे क्विल स्टैक ज़्यादा हो गया उसको चेस करना चालू कर दे, वॉर पैथ का डैमेज इतना ज़्यादा होता है, मूवमेंट स्पीड और अटैक आपका इतना बढ़ जाता है तो ब्रिसल बैक बहुत परेशानी होता है. बट अब वही देखना है कि क्या यहाँ पे कोई सिल्वर एज या कोई डिसेबल करने का काउंटर जुगाड़ है या नहीं है. Very long Roshan as well. Yeah, it's a good thing for Secret. And just a question for you, Vishal and Manu. Do you guys miss the old Morphling जिसकी अल्ट में सामने वाले का illusion निकाल सकते थे? I miss it a lot because then you can rat. नहीं मुझे सबसे बढ़िया मॉर्फ वाला याद है जिसके अंदर आप कुछ भी करो और ना एक लेन में छोड़ दो मॉर्फ को. हाँ. और आप इस लेन में पुश किया फट जाए वहां पे पहुंच गए, उतने देर में कूल डाउन हट गया. अरे एक बार वो मेरा बेस्ट मॉर्फ था क्योंकि उसके अंदर ना एंटी मजाली फील आ जाती थी. आप फार्म के अंदर बहुत आगे एडवांटेज ले सकते थे. ठीक है. और चेस करने में भी आसान होता था. जैसे कोई भाग रहा है उस पर रेप्लिका किया उड़ेगा उसके से पीछा. हाँ अभी कहाँ जा रहे हो. वेव फॉर्म मारा. अब वाला थोड़ा ना टेक्निकल कर दिया है, फास्ट हैंड्स वाला. जो जेनजीज हमारे जेनकिंस हैं ये लोग मतलब आपने जैसे अभी आज सुबह देखा था जब आपने बोला था कि एनिग्मा बना और मेलिफिस भी मार दिया, मिडनाइट पल्स भी मार दिया. विद इन सेकंड मुझे नोटिस भी ना आप देखा ना आपने. हाँ. ऐसे वाले प्लेयर्स को काफी एडवांटेज हुआ. और जैसे एसएफ वगैरह हो गए जिनके ज्यादा मल्टीपल स्किल्स है, अगर उनको आप रेप्लिका करते हो तो फायदा होगा. इट्स बग्ड. स्नेकिंग कह रहे हैं कि इनका कोरियर कांट गेट आइटम्स फ्रॉम कोरियर. ये डोटा में मेरे साथ आज तक तो नहीं हुआ. क्या आपके साथ हुआ है कभी कोरियर सामान नहीं दे पा रहा? अनलकी. मेरे साथ हुआ है. Unlucky. इंडीड. ये इंटरनेशनल ग्रैंड फाइनल्स की चैट है ये. जेंकिंस आप क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में प्लीज? ब्रैड आपके हिसाब से जेनजी का डेफिनेशन I would want to see कि जेनजी जो मतलब अपनी वेज में अपने आप को बिल्कुल करेक्ट मानते हैं. दे डोंट केयर अबाउट द अदर्स ओपिनियन. वो ऐसा होता है. मुझे ऐसा लगता है कि 2000 के पट्टे जो ऐसे होते हैं. क्यों है? हम 2000 के पट्टे थोड़ी हैं. माय बैड. नहीं आप हो. आप बहुत क्यूटी हो तभी आप ऐसे हो. नहीं. और निशा सामने वाले टीम की मदद करते हुए की आइटम लॉक होगी अनलॉक कर ले भाई. और कुरियर में स्मोक है. नहीं ये पॉपी के कुरियर में. इसके कुरियर में क्या है? चेक किया जा रहा है. जांच पड़ताल हो रही है. कुछ नहीं है. It's in stash. Buy a new one man. For a support, you know, wards are necessary. वहाँ पे 2 wards दिख रही हैं. Tundra again with the boss. Remake. No, क्या यहाँ पे इस टाइम पे कोई डेवलपर्स या कोडर्स होंगे जो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे इंस्टेड या लाइक दिल जस्ट वेट? नहीं. So in case of bug in game, the game continues. You like you hug with it, huh? Yeah. You have to live with it. You have to live with it. I am very used to of this phrase. Recently we went to swimming. You know, I was not wearing goggles. My eye was burning. I said fixes आंखें जल रही है क्लोरीन है पानी में. Can I deal with it? because सारा कैसा भाई है मेरा ये क्या करता है आपको मतलब क्या मतलब एक सॉफ्ट होना था. क्राट एक काम करो आप कुछ पहन लो. डील विद इट. आई एम गोइंग. मेरा लैप टाइम हो रहा है. ये मैं अपने आखिरी तक बताऊंगा. ये ऐसा इंसान है. But can try but might be still be bugged. Go. कुछ मत हिलिए. पहले ट्राई करने दीजिए. चला गया कुरियर उनका.
नहीं चला। Sneaking, dude, like just leave, man, please. क्यों चाहते हो आप? I want to नहीं see my चाहते gym puppy. जाना? I want to see my puppy win the second TI. यार 11 साल से बंदा रगड़ रहा है और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि और उससे पहले ऑब्वियसली 11 साल लगातार इंटरनेशनल, मतलब अब तो कुरो को भी 2 साल से हरा चुका है ये। ओके मिल गया शायद से, लगता है फाइनली द गॉड्स ऑफ डोटा हैपेंड एंड लाइक पीपल आर सो हैप्पी। ऑडियंस के अंदर एक चीयर सा चल रहा है कि ये भाई वी गॉट द स्मोक टू वॉच एंड यस स्नेकिंग मस्ट बी सो हैप्पी कि ये मेरे पैसे जो लगे थे, घर का किराया जो चल रहा था सही चल रहा है। बट यस नाउ गेम इज मोर इंटेंस, द स्कोर इज लेवल 17-17 एंड द नेटवर्क डिफरेंस इज 3K। रुशान के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी दिखा चुके हैं और हमारे जो क्लोन है वो टीपी करेंगे बॉटम की तरफ। सैटानिक सैटानिक तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज़ मैन फाइट अगर निशा को करनी है यहाँ पे, बट ही वेंट ऑल इन, ही डजंट हैव बाय बैक। अगर भगवान अगर लेफ्ट राइट हो गया, डी दबा रह गया, एजिलिटी पे रह गए, देन चीजें खराब हो जाएंगी। इट कैन कॉज लॉट ऑफ ट्रबल। 9 यहाँ पर स्मोक करके थोड़ा सा आगे अप्रोच करें हमें साथ, अगर ये फाइट हारे वो दे आर अंडर हालत खराब हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए स्नोबॉल के अंदर जिंदा रखा जरूर गया है, बीके भी प्रॉक कर दिया गया है। यहाँ पे ब्रिसल बैक चारों तरफ अपना खौफ जमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से साक्सा की जान ले रहे हैं, वो तो जिंदा ना बच पाए, बट वापस से यहाँ पे 9 को अभी नेक्स्ट अपना टारगेट बना रखा है। 9 का एक इल्यूजन जरूर उड़ा दिया है, बट यस टीम पेंड्रा दे विल हैव टू लुक टू जस्ट बैक ऑफ। अब चीजें काफी खतरनाक हो चुकी है। ये जो ब्रिसल बैक है काफी डेंजरस नजर आ रहे, इतने बड़े हो गए थे और चारों तरफ गू डाल रखा था, उसके साथ स्प्रे भी मारे जा रहे हैं, वॉरपैथ का डैमेज बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए अलग ही फिराक में 9 अब यहाँ पे सनरे डाल दिया गया है, डैमेज काफी ज्यादा दे रहे हैं, मेल्ट करने की पूरी कोशिश। यहाँ पे टच जा चुके और इज डेड और बायबैक तक नहीं है। जो क्रैट ने जिस चीज के अंदेशा किया था वही सच साबित होता हुआ। मिस्टर मन्नू की अरे ही वाज स्टन्ड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हेक्स की वजह से मॉर्फ कुछ कर नहीं सकते, एंड दैट 2.5 to 3 seconds गैप विंडो इज इनफ टू कट मॉर्फ इनटू 2 पार्ट्स। वही हुआ। आई थिंक इट वाज अननेसेसरी फ्रॉम टस्क, उसे अंदर नहीं लेके जाना चाहिए बिकॉज़ ऑलरेडी हाई ग्राउंड पे थे वो लोग। फोर्स आउट कर लेते हैं। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट की कर दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो रोश आएगा करते फ्री रोश, दिस इंक्लूड्स शार्ड, नो शार्ड तो हो गई, चीज होगा। ओ रिफ्रेशर एंड चीज। सो फिनिक्स की अल्टी ज्यादा 2 बार होगी, बट वो ही है कि इट शुड बी प्लेस्ड वेरी नाइसली, सर्वाइव कर पाए तो। हाँ मतलब बिकॉज फिनिक्स की अल्टी समथिंग जो चेंज कर सकती है यार। 2.5 सेकंड के लिए बर्न डैमेज एंड स्टन इज टू मच। रेजोल्यूशन इज डेड। और रेजोल्यूशन, प्यारे रेजोल्यूशन, यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया था कि टीआई जीतेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि अब गेम नंबर 3 दिस इज द सेकंड टाइम रेजोल्यूशन जो सेम लेन में। हां ये टॉप लेन की तरफ जस्ट तो फ्री रैक्स है, अब तो फ्री रैक्स है। अब तो दे डोंट इवन हैव फुल टीम, 2 बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे, कोर 1 एंड कोर 3। अब पीछे से सपोर्ट आया है यहाँ पर पीछे से, और देखिए सीधा डैमेज जा। क्रिस्टल्स को कितना ज्यादा डैमेज हो चुका है। अभी बीके भी ऑन करके यहाँ पे रोकने की कोशिश कर, बट अभी तक मिली बैरक गया नहीं है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू सी नो से सायोनारा टू द मिड बैरक। इसका मतलब टुंड्रा ने यहाँ पे सीक्रेट के जो आर्मर के अंदर एक थोड़ा सा चिंग तो क्रिएट कर दिया है। 2 लेन और बचे हैं, सीक्रेट बहुत ज्यादा प्रेशर में, दे आर मिसिंग देयर ऑफ प्लेन रेजोल्यूशन, और बिना रेजोल्यूशन के लिए दैट मैजिक डेफिशिएंसी, मैजिक डैमेज की डेफिशिएंसी अच्छे ज्यादा। अभी भी 30 सेकंड है, क्या डिफेंड कर पाएंगे, बट सी दैट डैमेज ऑन 9। अगर यहाँ पे 9 को पिक ऑफ करा फायदा हो सकता है, बट आधे गोइंग फॉर इट्स काफी कम एचपी के अंदर है। बट यहाँ पर एक एक करके सारे जो रेडिएंट के प्लेयर है काफी कम एचपी के अंदर, पीछे से स्टन का डैमेज एंड बबल ही बबल है, अटैक सारी वेट होते जा रहे हैं। यहाँ पर लशरैक ने अब बाय बैक किया जब सब कुछ लेट हो चुका है, क्रिस्टल्स मर चुके हैं। अगर एक एक करके गए और सारे मर गए, देन आई थिंक इट्स टाइम टू से 2-0 to the Tundra and they just need one more game। और एक और प्लेयर गेम से बाहर जाता हुआ, आई थिंक इट्स अ डाई बैक। यहाँ पे पपी भी गए और भी गए। ब्रिसल बैक को तो काफी ज्यादा समय हो चुका है। सीके को फोकस्ड ऑन मार्सी अ लॉट एंड वो मर भी नहीं पाई। सो अब तो ये टावर इससे पहले वाले गैंग में भी व्हेन दे वर फाइटिंग नियर द एंशिएंट्स, उन्होंने मार्सी को मारने के लिए सब कहते हैं वो हैपेजिट, पूरे चारों लोग आपस में एक दूसरे को गली मिलते हुए भाग रहे हैं। बट यहाँ पे फेमिलियर का डैमेज बहुत ज्यादा संभालने 3 साइड कुछ भी नहीं कर सकते, दे जस्ट होल्डिंग डाउन। दे विल बी वेटिंग फॉर 1 फाइट, उसके बाद शायद से एक मेगा पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। या अब यहाँ पर यही होगा कि अगर सीक्रेट को कुछ और प्लान्स होंगे, बिकॉज़ ब्रिसल बैक के बाद बायबैक नहीं है, and without bristle back they can't afford to fight. Maybe Nisha and everyone they will be trying to flank. क्या ही करेंगे, क्या ही फ्लैंक। रेजोल्यूशन देखिए अंदर चले गए थे बबल के, यहाँ पे कितना ज्यादा डैमेज आ रहा है सनरे से, और बट साइड से देखिए
निशा की सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था, बट यस डाइव इन किया डायरेक्टली, यहाँ पे पिक ऑफ किया साक्षरा को। उसके बाद यहाँ पे और कुछ फाइट्स निकालना चाहे, बट उससे पहले ही 3 प्लेयर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ब्रिसल बैक भी डेड, सब खत्म, खल्लास। और टीम टंड्रा 2-0 से आगे बढ़ती हुई 1 जीत दूर वो ऐतिहासिक एजिस उठाने के लिए, जिसको सबने उठा दिया है ऑडियंस में। और मिस्टर मनीष कार्की, क्या होगा आपका कहना? You know, I was thinking about the last time जब OG को क्वालिफाई होना था इंटरनेशनल के लिए, द इनफेमस OG जहाँ पे एना एक सब टॉपसन वगैरह सब खेलते थे, सुमेल तब उस टाइम पे एना की जगह खेल रहे थे, तो उस टाइम पे टुंड्रा को उन्होंने 3-2 हराया था फाइनल क्वालिफायर में, एंड टुंड्रा मिस द फर्स्ट इंटरनेशनल, एंड इट इज इंटरनेशनल के अंदर दे आर इन ग्रैंड फाइनल्स, दे ऑलरेडी लीडिंग द बेस्ट ऑफ 5 विद अ 2-0 मार्क। एंड वो आना के साथ नहीं था, वो सुमेल के साथ। मैंने वही तो बोला, क्या चल रहा है आपका। तो वही मैं सोच रहा था कि अब उस टाइम पे एक बेकार से क्वालिफायर ने इनका इंटरनेशनल खराब कर दिया, और आज ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, क्या ये एक और लिक्विड वाली जीत रिपीट करेंगे 3-0 वाली, या कुछ और होगा? मेरे को लग रहा है कि क्रिस्टालिस का जितना आउटपुट कुछ लग नहीं रहा है 2 मैचेस में। ही वाज जस्ट, मतलब पहले मैच में उन्होंने पच खेला, कुछ उनका इतना इम्पैक्ट नहीं था। दूसरे गेम में उन्होंने ब्रिसल बैक खेला, तभी भी मुझे उनका कुछ इम्पैक्ट लगा नहीं गेम पे। बट यहाँ पे हम एक ऐसे मोड पे जा रहे हैं जहाँ पे दूसरी बार होगा 3-0 की जीत ले सकती है टंड्रा। एंड आई थिंक कि अगर आप मोमेंटम की बात करें, आउट ऑफ दीज 2 गेम्स दैट हैज हैपेंड, उसमें फर्स्ट गेम सीक्रेट वाज नॉट दैट ग्रेट, एंड सेकंड गेम में उन्होंने दे शोड सम साइंस ऑफ कमिंग बैक एंड फाइटिंग फॉर इट। आई थिंक थर्ड गेम सीक्रेट शुड बी द वन विनिंग इट आउट, एंड इट शुड आइडली बी a 3-1। यही कोपीएम सबको चाहिए इस समय, बट उससे सबसे ज्यादा सीक्रेट को चाहिए। बट मनीष जी, आप हमें ये बताइए कि एक प्रोफेशनल एथलीट होके, when you have already went through a gruesome phase of a BO3, अब BO5 में जा रहे हो, ग्रैंड फाइनल्स में जा रहे हो, इतनी कुटाई हो रही है जिसके बारे में हम हाइलाइट्स के दौरान भी बात करेंगे। एज अ प्लेयर आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, स्पेशली व्हेन यू पॉपी, यू हैव बीन ग्राइंडिंग एंड फाइनली इतने करीब हो, और ऐसा लग रहा है कि फिर भी फासला ऐसे स्टार्टिंग कैसा हो चुका है। लास्ट टाइम पपी 2013 में फाइनल्स में आए थे, उसके बाद से बहुत दूर रह जाते थे, 4, 5, 6, 7, 8 ये 4 पोजीशन के अंदर इन्होंने पिछले 9-10 साल निपटाए हैं, एंड फाइनली ही मेड इट टू टॉप 2। सो बट वो ये 6 महीने पहले रोस्टर शफल, एंड आई डोंट थिंक कि 6 महीने पहले वाली टीम शुड डिजर्व टू विन द इंटरनेशनल। वो टीम होनी चाहिए जो रगड़े काफ़ी टाइम तक एंड एक साथ जीते। बट अगर प्लेयर की बात करें, एक बेस्ट ऑफ 5 के अंदर 2-0 डाउन होने के बाद रीसेट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक इग्नोरिंग द रॉन्ग फैक्ट कि हाँ यार अभी भी गेम बचा है, बट हमको पता है डीप डाउन कि वी आर वेरी पीछे हैं अब हम, और यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। आज तक कभी हुआ है कि कोई टीम 2-0 डाउन थी और सडनली 3-2 करके जीत गई? हुआ है। I don't know the 2018 event, but हुआ है ऐसा। बेस्ट ऑफ 5 में नहीं, ओजी ने मेजर जीता था मेरे साथ। कीव मेजर नहीं, इट वाज 2-all हुआ था, 5th गेम था। 5th गेम की बात नहीं है, इट्स लाइक 2-0 के बाद 3-2 करना, कुछ ऐसे स्विचन करना। रिवर्स स्वीप नहीं हुआ है, हुआ है इंटरनेशनल में पड़ेगा वो, थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक इंटरनेशनल में देखेंगे। We'll see. But more than that, यहाँ पे हमारे एनालिस्ट से पूछना पड़ेगा, नासिर, which was a pivotal game changing point इस गेम के दौरान आपको लगा? क्योंकि जैसे विशाल ने कहा था, they were showing signs of life, अर्ली गेम काफी अच्छा खेल रहे थे, बट कहाँ पे ऐसा लगा कि yes, now टुंड्रा is right back? टुंड्रा ने एक टॉप लेन पे एक वॉर्ड पिक डाला था हाई ग्राउंड के एकदम बाजू, सेकंड टावर के पास। वो वॉट पूरे ड्यूरेशन पे था, और टॉप लेन पे वहां पे उन्होंने 2 बार रेजोल्यूशन को पिक ऑफ किया था। सो वो जो वॉट का प्लेसमेंट था, और जो सीक्रेट ने वो वॉट तोड़ने में या वॉट को डिस्ट्रॉय करने में जो उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया, एंड टंड्रा का विजन गेम वाज A1। मुझे लग रहा था जब सीक्रेट अपना मोमेंटम बना रही थी, दे शुड हैव वेंट फॉर अ जेम, एंड वो अपना पूरा जंगल एक बार स्कैन करते, तो मेरे हिसाब से टंड्रा के पास जो विजन रहता, और जो विजन में वो लोग गैंग्स ले रहे थे, उससे बहुत फ़ायदा होता सीक्रेट को। डेफिनेटली। एंड मेरे लिए तो जो मिड फाइट थी, जिसमें ब्रिसल बैक ने अपना बीके भी बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जैसे वो अंदर गए एंड एवरीवन इग्नोर्ड हिम, एंड इवेंचुअली ऐसा हो गया कि
that BKB was wasted and a lot was wasted because that's the first item Bristleback went for. And आप ये नहीं चाहते कि एज अ ब्रिसलबैक में फर्स्ट आइटम पहली बात तो बीकेबी बनाओ और ऊपर से जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ मिले ना उसमें से. सो या आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि टुंड्रा इज नाउ बैक इनटू द गेम. एंड अगर यहाँ पे पूछा जाए हु इज द प्लेयर दैट मेड द प्लेस फ्रॉम टुंड्रा, who would you guys go up for? I would go with Phoenix because the amount of heal that guy had put into the team, it's enormous. कितने सारे units हैं उनको heal करना at the same time. It is unrecognizable, but it is very important as well because लोग heroes को मार रहे हैं from secret side and then at the same time वो लोग मर नहीं रहे because पीछे से heal आ रहा है and no one is focusing. Like I said, Killestack could have just gone on to the Phoenix, try to kill him off, but never happened. So. And for you, Nasir? मेरे हिसाब से 9 के जो क्लच प्लेस थे अपने बबल के, those were the important. जहाँ टॉप लेन में जब ये लोग गए थे सीके को मारने एंड एक बबल आया एंड सीके ने उसको टर्न करके वो पोजीशन को टर्न करके उन्होंने डबल किल लिया. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी. वहाँ पे सीके का फार्म लेवल, उनका फ्लैश फार्म बहुत बड़ा और जो ऑमलेट उन्होंने टॉगल किया था, तो आई गेस दैट वाज द for me that was the turning point for Omelette and the criticals. Yeah. And not just that, I think Manish ji आप तभी जुड़े थे हमारे साथ. शुरुआत पूरा अलग हुआ था, टीम सीक्रेट काफी अच्छा खेल रही थी, बट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं टंड्रा के प्लेयर स्टार्टिंग में कि क्रिस्टलिस को सांस लेने ना दे? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे भी पिछले गेम पे भी देखा था, इस गेम पे भी देखा था, उनकी जिंदगी हराम कर रखी थी, ब्रिसलबैक को फार्म नहीं कर रहे. सो हेडिंग इनटू गेम नंबर 3 अब क्रिस्टलिस को कैसे हीरोज पिक करना चाहिए और उनका अप्रोच कैसे रहेगा नाउ दैट ही नोज दैट ही इज बीइंग टारगेटेड सो अर्ली ऑन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला स्टार्टिंग फेज तो देखा नहीं था गेम सेकंड का, सो कांट से मच कि क्रिस्टल्स को कितनी सांस देनी थी नहीं लेनी थी. बट हाँ, अगर कोई मैं भी होता, अगर मैं बेस्ट ऑफ 5 में 2-0 डाउन हूँ और मुझे अब गेम खेलनी है, देन मैं एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं करूँगा. जैसे लेट्स सपोज मेरा टिंकर अच्छा तो मैं टिंकर ही खेलूंगा, अगर मुझे मेज पसंद है मेज ही खेलूंगा. जो मुझे लगता है कि अब सामने वाला लीजन लेकर बैठा है, एक्स लेकर बैठा है, देन आई वोंट टेक एंटी मेज. आई विल प्ले समथिंग जो उस टाइम पे मेरा बिल्कुल कंफर्ट जोन में होगा. बट चलिए यहाँ पे चलते हैं एक इंटरव्यू की तरफ, देखते हैं प्लेयर्स का क्या कहना है. 2-0 का स्कोर लाइन हो चुका है. लेट्स हेड इन. I think Tundra, in my words, would be controlled chaos. I think that's how we describe us. Wow. Very cool. Is it a close relationship between you guys? I think it's very important to be close to one another, to be able to function as a team. And I think right now, like, I really enjoy spending time with all of the guys. I think it's also partly the reason why we are playing well as a team, I think. It's your first TI skitter, first time you get to play in front of such a big crowd at a TI. Correct. Well, how does it feel? I mean, it feels great. It's all I ever dreamed it to be. And, I always wanted this to be a reality, so I'm just happy to live it. You've had your experience at TI, particularly that second place with DC. In that tournament, you came in as the underdog, right, into TI, or at least maybe not one of the favorites. Do you feel like that this tournament? I would say so. I feel like after the results in Saudi and the Arlington Major, we kind of had some pretty bad results, so people weren't looking at us as one of the contenders, which I think, in hindsight, it was a very good thing to us. Even after we lost, we kind of said, now it's good. Now we can go in as the underdogs, How do you guys feel about snaking as a captain? He's always trying his hardest, and I think he's been doing a really great job. He's always managed to stay positive, even through kind of our rough times. And I feel like he's done a great job. I feel like sometimes as a captain, people fall into these traps where they kind of they had maybe a bit too much in the ego and they believe in their ideas too much and they don't try to empower their teammates. But I feel like Sneh has done a good job of balancing this out, empowering the teammates' ideas and also believing in his and trying to make them work. So I feel like he's exceeded my expectations for sure. Yeah, I agree 100%. I think he's very great at enabling players and their ideas. We don't need a strong leader in terms of someone that makes all the decisions. I'm really happy that we kind of have a captain in him, but he still listens to everyone. We still make decisions together and everything. But you guys seem to all have your own ideas of Dota, and you get to put them in your gameplay, right? Yeah, everyone has especially when it comes to the different lanes. I'm happy that everyone gets to play the lane they want to, how they want to, I know that whatever I want to play on mid lane, Sneh is gonna support me. I'm curious about that. When you first described your idea of the mid lane to them, how was the conversation? I think it started with Winter Wyvern. Winter Wyvern? Ah! And I was just playing the hero in a pub, and
I got pushed into playing it in scrims, basically. It's not like I was saying from the beginning that, oh, I want to play this hero, it's so broken, but I started being more open to the idea of playing different heroes, and every time like I started winning with things, people saw it and supported me and pushed me as well. I think everyone is very open to trying new things in this team. How are the feelings towards finals? I try not to think too much about it because I think the more you think about it, the more you'll overthink things, and you should just treat it as another game you're playing. It's not a big deal. Obviously, there's going to be a big crowd. You just have to mentally prepare yourself for that in advance, so then you're not overwhelmed by it by the time that the crowd is there. I'm excited, honestly, which is a very good thing because I'm rarely excited. I was very much like emotionally neutral, so I just want to go in these games, like play my game and just have fun and like show some good Dota to the viewers. So. How does it feel to play in front of a big crowd at TI? Is it different than when you play like in the majors or anything like that? For now, it has been easier than all the other crowds I've played in front of. I really feel like all the things come together this TI. Like so many moments, so many losses in the past year that taught me specific things. I use them now to win. I'm just excited that I've been playing this game for like 15 years now, or Dota 1 and Dota 2 combined, and I finally get the opportunity to play on this arena and get the grand finals. It's been a dream of mine for many years, and I'm just happy and grateful that I was able to accomplish it. Like, yes, this is kind of going to be the biggest game of my life, but I think something we've been working about with our psychologists to kind of try and lower the stress is that all our hard work has already been done. Like now, all we have to do is just go and play. So what I would like to do is just try not to think about it too much, pretend this is just a regular game and just go and play. It was always my goal to come to TI and to win it. And since I've made it to the finals, I'm very happy for myself and for my teammates that I managed to do it. And now, you know, it's the final step. I'm ready to take it. It's been like very long and very stressful road even in some ways. And you even have this feeling of being burnt out a bit, but now it's finally here. I'm just super happy, and it's like the only thing left to do is just play. So there we have it. Tundra sitting down with Avo, and I just got to congratulate whoever the psychologist is. Either you've just worked magic and they're doing meditation, or you've got them all on meds, because they are the most chill team. That's a grand final, pre-grand final sit-down interview. They were so calm. They're here and they just want to take it. And they might 3-0. I feel like they could just win like 4 TIs in a row right now. Like, if they keep like, I mean, like right now, like if they play tomorrow another grand finals and then another one and another one, like the fact that they're all 5 just in the same mindset, answering in the same tone of voice, like they're just. Oh, a unit. That is scary. Like they are one. I did like the fact that they did ask everybody what's snaking like as a captain as he sat on the end of the table. How did he bribe them? Like he's just going, He's just sitting there and listening as they praise him for like 10 minutes. But they should. I mean, they made it to the grand finals, and you know he's very chill. And 15 years of Dota, from Dota 1 to Dota 2, and we can take a look here at some of the win rates versus Puppy, and there is snaking. He's positive. Exactly. This is the most important thing. So the other day I was looking at snaking win rate versus Puppy, and I saw Knoxville starting to tweet about it. So I went onto that Dota, looked a bit deeper, and yeah, it's basically there's only 4 players who've ever got a 50% win rate positive against Puppy. Only 4 players. Everyone else is sub 50%. So snaking today, with his victory, yesterday, bumped him up to over 50, drawing with RK. Now he's winning the 2 games currently. He's now 51.8. If he wins the next game in this grand finals, he'll then leapfrog Bulldog and be 2nd place. Again, it is insane. But with what number? With a 52.6% win rate. Oh, I love it when you talk numbers. There we go. Oh, you like that? But yeah, everyone, all the Tundra fans, they love snaking right now because he clearly is the secret source, maybe, for understanding that Puppy mentality. When's the last time you've been to NA? Tell the truth. Last time? Tell the truth. What's this NA copium over here? What? They're literally like insane. Like again, to be clear, secret, they have to do some mad work in this interim. They need to properly break down Tundra, understand everything that's happened in TI in a single like 15-minute break, because Tundra is looking flawless. I don't know how you're meant to do it in time. I actually genuinely, they've tried like 3-4 different strats and like this was meant to be their idea. We're bringing in the Chen. We need something to take objectives. We need towers. They took that Roche in 14 minutes. Like they were doing everything right, and they still crumbled. Their strats were just not like up to par with Tundra. And it's not just the heroes, right? Like if you look at the players, it's
in the first 2 games, they literally switched up the roles. Like, you had Crystallis playing a carry, then he was literally dual-flame Bristleback. It wasn't some Midas Aghanim's rushing Bristleback. No, that was Vanguard BKB. He's just going to stand in front. Nisha was the Leshrac, the mid laner, the classic playmaker. Then he was the Morphling, the ultimate win condition. They're switching everything up, and nothing seemingly works. If they have to focus on one particular thing to improve, you know, draft, map control, team fight, you know, in terms of draft or the team fight, because they can obviously team fight, but they just seem to be just outmastered a little bit. But what's the one thing that you would want Secret to kind of really have a conversation about in those 15 minutes between game 2 and where we're going in game 3? Would you like to take it? I think you just reset it, right? Oh, like, okay. But you've got to change something. You need a reset, but it's... I mean, maybe it is just draft. Like, I've seen a lot of success on the Rezo, Crystallis, Dawnbreaker. Like, that's not getting banned in first phase. Maybe that's something to explore as a strat. It's something that lets them fight globally and often, like, it covers a lot of your heroes. This heal might let them turn the fights around. I'd lean more on conviction. When you take an area of the map, they want to be able to play there. Don't allow Tundra to be able to sneak back out and then start skipping the waves that way. So if you have this early aggression, make sure you have extra catch to get there. Well, we'll see, because they're tying for Team Strat, talking over. Puppy with Team Secret will re-enter the arena. If they are to take this, it needs to be a reverse sweep. Sitting with a 2-0 lead, Tundra, calm, cool and collected. They are smart, but Snake King said in his interview, do not overthink it, don't try and get too smart, and that's exactly what they've done. They've just been able to play their game, and it's Team Secret that need to break it. This could be a 3-0. Tundra scary right now, and it's, even though it might not be, you know, if it was a 3-0, it's like, sure, as a fan for either of the teams, you want, you know, an absolute, you know, amazing game of Dota with all the back and forths, but really, if Tundra can take this 3-0, it's still so impressive. Now, let's be real. We want more games, right? We want more games than just the 3-0. But if you're Secret as well, you just need to focus on yourself. Like, you can't let Tundra get into your head like in the last best of 3. Focus on your drafts. Focus on what made you get this far. Because nothing works against Tundra if you're focusing on their heroes and banning them out. This is one of those grand finals where if Tundra win at 3-0, it's like the celebration, like the pro enthusiasts will be like, they just played such beautiful Dota. And this will now be like, how do we want to play Dota? The whole shift of DP season will be, we'll look at Tundra. How do they skip waves? How do they always have the same element in every draft, even though heroes are different? Is there something you'd ban out, Sheep? Like, is there a big element of Tundra that needs to go? I don't know. There's too many heroes to ban for them. When I looked at last game, I think the biggest crack that I saw in their gameplay was when they were repelled from Secret's base and they were suddenly on the back foot of we have to get out of here. And I think Secret took advantage of that really well for a short time. They were chasing them down lanes. They were getting pickoffs. They were forcing them to use their ults, and they kind of fell apart for a moment. Like, they didn't reset properly. Their resetting was usually really good, but when they kind of had to re-engage in the map, it felt like they were just kind of getting picked off, like on their Visage top. Stuff like that, if they can just apply more pressure from the side of Secret, like maybe Morphling is too slow of a hero, maybe they do need to just go all in on that hard tempo, all 5 heroes, go, go, go. Full divide Dota. Yeah, pretty much. That's how LGD started getting taken down at Arlington, for example. Now, how dangerous are Tundra going to be with a 2-0 up? Because already their drafts are hard to ban out, but now they have options. They've got games in the bag to kind of, I'm sure they don't want to throw one. You're shaking your finger at me, no, T-Gov. No. You watch that interview, they are one. You know, they say draft, there's no need to change. We are winning. We shall win. We shall pick the same heroes. We have exactly. We have the second lowest hero pool in all of TI. We just continue winning. Like, they don't need to change. Imagine Aoi, right, staring at you with an expressionless face. He shrugs his shoulder. Why change it? It works. When they can communicate, you know, telepathically, that's when it will get scary, but it almost seems like it at this point. But can Team Secret bring it back? That's what I want to know. I completely agree with what Sheepo said. Focus on their draft, not the enemy. Focus on their draft and their gameplay. If they could be a little bit more aggressive, if they could be a tiny little bit faster like they were once they defended their base, it looked like they had that game back in their control. But then a couple of mistakes here and there, they just need to be more focused. I know it sounds like such a generic thing to say, but the moment they got the game back, they fed a couple of kills, unnecessarily kills on the side lanes. Yeah, and on top of that, have something that can kill Wraith Pact. A hero that can just get in there and kill Wraith Pact, that's like one of the biggest problems. They're playing with so much damage reduction on the side of Tundra. If you're able to deal with that,
and their map control and like how they do it. Those are just the two biggest things, I think. So who are those heroes? We looking like a Snapfire or? Snapfire is a little difficult because she has to really like walk in there, but yeah. We'll see what they do. Well, we're ready here, and I hope you are at home because we're going to go into Game 3 of the Grand Finals of the International. Team Secret versus Tundra Esports. Grand Finals Game 3. Thank you very much, James. And yes, welcome back, ladies and gentlemen. We're just about ready to get this Game 3 underway. So far, Tundra leading the way 2-0 against Team Secret in this Grand Finals. Once again, Seb, Notel, and Fogt here with me for the draft. I mean, boys, 2 games now where Tundra, they've looked scary. We saw in the second game, Secret maybe trying to break successfully into sort of this sort of impenetrable force that Tundra hold the game hostage with, but it still wasn't enough. Can you see them taking it to the next level, or are you concerned for them now going into this Game 3? I don't know, there's very few names I could find, you know, around the world to pick, like to break Tundra, but Puppy would be one of them, right? I mean, Puppy, Heen, they have so much experience. Of course they can, of course they can. I want to believe they can, you know, I want more games, and yeah, of course they can. I want to believe too. The copium tank is pretty low right now. It's running very low. I think Orange player was feeling it last game. I really think for Secret they need to commit. They need to push it to the limit. You know, I think Nisha was having an incredible game. I don't think they missed a few moments last game that could have turned into. They could have made the game look a lot more doable for them, but you also see the power of Tundra. Like, they have some ideas. They seem to be on top of their heroes, like the combinations, the Arc Warden with the Visage too. We haven't seen this before. Yeah, and now we're at least seeing Secret get their Marcy hero, so I don't know. I mean, I'm starting to have a hard time believing that Tundra can be broken. I mean, there's one thing maybe we haven't seen as much in this Grand Finals from Secret is like full-on lane dominance. Yes. You know, Marcy could kind of draw the, like lead the direction, lead the back into, crushing 3 lanes, and maybe Tundra just doesn't come online. You know, we've seen Neta like 33 play Brood against Secret in the upper bracket finals, and that's probably one of the worst Brood start he ever had in the entire tournament, and that's what Secret did to him. And yeah, they can do that, so it could be one route. That was with Monkey though, and Monkey has been banned in every game. True. Yeah. They are setting up for it. This Bristleback also, I mean, I don't know, it's like Tundra knows their heroes so well, and I feel like they had counterpicked the lane in last game, and yet it didn't work. But you know, I feel like they banned the Monkey maybe to threaten the Brood, but Secret still let the Brood in, and they decided to ban the Tusk instead. So I think now it's like, Tundra, do you still dare to Brood? Like, you want to test our ability to counter Brood once again? And Tundra is like, no, let's keep it open, and let's decide a little bit later what 33 is going to be playing. Yeah, he has options, right? Yeah. Like, they're just going to save him for later on. He'll have a bunch of cool options. And you're going to be forced now, when you see this, they're going to have to ban the Naga Siren. They're still going to have to take the same initiative that did the last time. They're still going to stick with the Lesh. I mean, I don't think it's wrong for them to stick with the Lesh. I think Lesh had tons of openings in both games. Resolution was playing it really well, and it opened up this Morph pick, but they were second pick. I mean, I think this game's gonna be really hard also because it's drafting order. Like, it's extra tough for Secret to figure out what they want to do, because they can't keep it open till the end. They might go back for the Dawnbreaker. I mean, we haven't seen them. It's been ignored the whole series so far. But I also think rightfully so. But I don't know what Secret are going to do with first pick here, like for the next phase. And yeah, we have to really look at the bans, and they have to coerce them again into something that is going to lead into good things for them. Yeah. Meta is having a field day right now, you know? Like, the Brood is still in, Tide is getting banned. I think, Secret need to pull out some aces. Yeah, there's a lot of things to keep track of, but to be fair, probably their best bet is to build on what they want to do and only counter what's going to get in the way. So if they believe that this Naga is going to stop what they want to do, then sure, ban it, else you might as well play against it. Yeah. Obviously, it is scary to play against Tundra's best heroes, but at this point, it feels like all they have is best heroes. Yes. So you might as well. Yep. It's the Visage, always a Naga. substitute, right? Like, as we saw, we saw a lot of times a bunch of different heroes for 9, but then, I mean, we were all sitting there and we're like, wow, this magnetic field, this Arc Warden just buffing everyone up, making them like immune to damage. It's something you pulled out of left field. That was nasty. I mean, I wonder if the statistics, I mean, there are probably some stats for the damage reduction that teams have pulled off, like between Wraith Pact and Anchor Smash with the pipes. And the pipes and stuff. And I feel like they must now be up there, right? Especially with the Arc Shard.
add something new. Mage Slayer as well too, right? Like it seems like they always just have layers and layers and layers of it, which I mean you guys are very familiar with, of course. Yeah, I love myself some damage reduction Spectre. Nice. Yeah. Good times. Stampede. IO. I mean, we'll see. I think Secret is debating whether or not they want to target the Naga. They're probably, you know, because theoretically you could consider that, you know, you've got yourself a Leshrac against the Naga or Leshrac against the Slark, which are the very popular Skitty heroes. Yeah. Maybe Nakes should take higher priority, for instance, if you just look at matchup to matchup. Yeah. But it's, you know, you're one game down, like one game away from getting eliminated, as in like losing the grand finals, and you give them the hero they've been dominating with. It's a hard call. Oh my God, they banned a Brewmaster. Okay. Interesting. Interesting too. Yep. Yeah. I feel very scared of the Naga. That's me. Like I would not choose to play against it. But like Seb is saying, what are you gonna choose to play against? They beat the Visage before, and it honestly looked very doable last game too. Like they had moments in this game, even though they missed, I think, a few opportunities. It does seem like I don't really know. There's Broodmother too. Oh boy. It's just Now, so many options. So they banned the Conker out, and I think that they're really threatening, you know, the Brood second phase with the Conker ban as well. Yep. I would really want to see Secret address the Mirana, like address the Moonlight Shadow, because I think it's actually what makes these heroes really scary, because they really get to disengage. Like this Tiny is gonna throw his spells and not get punished for it. Same with the Naga in the other game and the 9 heroes. Like I would want this hero to kind of, if they get too close to the action, to die. You know. What about Zeus? Yeah, Zeus these kind of heroes like Zeus Lash might be a lot of the same thing, but I wonder, like you play against Mirana Naga. Yeah. I think like very reliable lockdown. I don't know if it's Disruptor Glimpse, if it's Zeus, you know, ulti. They need to find a way to stop Tundra from, you know, poking, kind of, you know, slowly, kind of, you know, beating them down, like kind of agony, the slow agony of in and out heroes that are using the Moonlight Shadow, like long range, disengage all the time. A lot of those heroes are left in the pool. The Life Stealer we've seen that's countered the Leshrac a couple times that we haven't seen Tundra go for too much, but it's been banned a lot of times. The Naga Siren's still in, so what's their option? I mean, they get their Pango instead. They go for the Pangolier. Leaving things open for their last 2 picks, right? Now they have 33 as the pick of the litter, 9 ours Skeeter does as well. Same drafting scenario as game 1 when they were second pick. You know, they picked the Saksa, the Snake King, and the 9 kind of trio, because these guys actually play as a trio. They play a lot in the Fog of War. As we said, you know, they feed on Skitters and 33's map pressure. So this is what they want to play with. You know, this is what they want to counter the Lesh early game tempo with, and now they're just going to decide how to set their silence up for success. And this next pick for Tundra is so scary. I mean, for Secret to pick, they maybe still want to address the Brood, right? Because, I mean, sure, Pangolier could be Neta hero, could be the 9 hero. Now, Crystallis actually has played a lot of Marcy position 1. I don't know if he's done it officially, but in pubs he's been playing it a lot. So I think that's also an option, and maybe that's a hero that he feels like will counter Neta's pull no matter what. But isn't it really hard now? Like, you're also afraid of the Visage, Brood. I'm just thinking Neta heroes, and now you pick the Silencer. Like, I feel like seen it if before. it's a +1 Marcy, I feel like it works. And to be honest, I like the global, like, I really like the Silencer dawn route against Thunder. Oh, here we go. Okay, take it away. Nice, nice. So now the Brew ban makes sense, right? Yeah. At least in a way. Makes a lot more sense. Yeah, Wow. yeah. Okay, they're taking it from Tundra. That is a... I think it's a good approach. Yeah. Don't you? Yeah. I think it's a very good approach. Also for the Mirana, we're talking about the Moonlight Shadow, we're talking about this long range. I think... I like the pick, but the only thing that scares me is you're now in the most important game, like the hardest game to play, and you're picking something you haven't touched yourself against a team that's probably the smartest at playing with it, so perhaps also playing against it. So, you know, it's like, you have to execute it. Theory-wise, I like it, but... But what they picked before didn't work, right? So isn't it in a way really good to switch it up? Yes, it is. It is. Even though, I mean, yeah, back against the wall, it won't get harder for Secret than this. 2-0 in TI finals? Surely, surely. Now I wonder, is this a Naga +1 or could it be flexible? That is what I don't know, because obviously we have not seen Secret use Naga as much. Does Sayak play +4 Naga? I haven't seen any of it. They haven't played it. They haven't played it at all. Yeah. So it's really hard to guess what they're going to do with it. This Marcy could be core or support, so that's the flex, basically. Okay. That's the 33 hero. It's a beast into Naga, which is interesting, but he does like the axe build a lot. Yeah. No, but I've seen it. It makes Naga suffer a lot on the lane. Like, you think it's illusions normally versus Beast, but hey, Beastmaster has skill points you can put in different things, and it turns out that you can actually get a really good lane versus illusions. Like 1 Avalanche plus the Beast, if you catch him summoning it, then you're left with, just a naked Naga who only has Riptide. Yeah. Everyone has massive wave clear. It's like the typical Tundra. Every single person can push from the fog, clear creep wave almost instantly as well too.
But Chrysalis has played this in the past. I've seen him play it in the past in pubs, and you know, I think it's a fantastic hero versus Tundra. I see it. I mean, Tundra for sure is gonna hate the lane pressure kind of against them. They really want to, and also they do have nice wave clear. I mean, Pengo's pretty nice. Beast is also decent, but maybe Naga still too much. Naga will overwhelm it eventually. Yes, At some point. At some point, this bottom and tiny, they can't push back against Naga. I want to ask, what's Tundra going to ban here? What are they banning for? Are they banning for a Nisha mid hero? Or are they banning for a resolution offlane hero? I mean, I'm assuming that they're assuming Naga's one. I think the offlane heroes are more problematic than the mid heroes. Because it could be Sayak hero coming up too, and Resolution playing the Marcy. The Marcy also. Or it could be a Naga 3 or 4, which is maybe a little bit more crazy. I wouldn't assume it, but of course. Could be. I mean, that's probably more likely. Now we see the troll ban too. We've seen Rezo play Marcy quite a lot in the qualifiers and stuff like that. He was playing it offlane a lot. Yeah, they've been owning with the offlane With Marcy. great success. I wonder what his stat is, but I think it's very positive. It's tricky. It's tricky. We'll see what Tundra is going to decide to respect, because they also have to be taking a guess here, and it's not an easy one. So whatever they're going to ban is going to obviously tell us where they're placing the Naga and where they're placing the Marcy, assumingly, or what they care the most about, if anything, because obviously they cannot know for sure what Secret is going to do. Lots of hmms going on, I think. There's a lot of pressure on these bans. There's a lot of pressure. Yeah. Okay, so... Shaman. Yeah. Interesting. All right, so they're looking at Marcy core for Secret. So then in that case, most likely a Marcy +3 But I also and a Naga think +1. I think it's a very interesting read on the game, right? Like, why do they ban Rasta here? What does Rasta make? I think it makes sense with the Naga, right? It's like it's a lot to do with the Naga and what you're saying about like this hard lockdown, not letting heroes like kite around you. Shackle can be an incredible tool. And right now they have very poor lockdown. Like it's only Lesh Stun and Marcy rebound, which is very unreliable. Yes. Right? This Hex could have helped a lot. Yeah, and it's also one of the Sayak classics. Okay, next ban. Yeah, I think they really want the Marcy to be core. Obviously, they could still flex it. I'm not sure what Resolution could be looking at. Other than that, Sayak has a bunch of heroes, right? Like Sayak has a bunch of heroes. He has the Earth Spirit, which is a good lockdown. He has the Tusk is out. They Shaker, Tusk is out. Shaker. They do ban the Clockwork. Looking, for some reason, I feel like we might be surprised by how Secret's gonna put the heroes, but maybe that's just they my could mind pick going Nisha's crazy. hero here, right? If Nisha, what could Nisha be picking? I mean, we never mentioned the Zeus. I don't know if it's that good here. I'm stuck on this Marcy +1. I can't get over it. Really? Yeah, I don't know why, but I mean, we'll see. This is exciting. 5 seconds remaining. They're out of time, right? Is that reserve time? They've got I a little assume bit. so. Okay, they've got a little bit more. 15 seconds to go. 15 seconds to decide. You know, probably your fate. A lot of pressure. Misclick. Ember Spirit. All right. I mean, it's good for some reasons, right? Yeah. I'm not the biggest fan if we're doing +1 Naga with the Ember. I think there's a little bit of de-synergy, but there's also some synergy. It's just not all the way. I mean, it's a very good Ember game. But it's good, Look at their really good heroes. versus what they're playing against. Yeah. Ember super good. versus bottom Tiny Pango, like, and even Roar. They're gonna have a really hard time catching this Ember. He has the backup of Global Silence. If he does end up catching a kind of a stun, he has the backup of Sleep. This Ember can be the king of the game. You know, Nisha can pop off on this. But do you still think that they're doing something weird with Marcy, or don't you just think it's gonna be? I would assume it's a Marcy Leshrac. You know, Zayak Marcy, Rezo Leshrac, Naga Silencer safe in an Ember mid. Yeah. Most likely. I would say so too. That's what it looks like. But so we've seen Nine. He likes to counterpick when he gets the chance to. I wonder if he's happy with this matchup, like the Pangolier. I mean, he has to be the Pango, right? It has to be Skitter hero. Never mind. Medusa. Right. We have not seen that hero. We haven't seen that hero, right? I think that's a first Usa. Wow. I mean, that's a Skitter hero. We've seen him play it a lot in the past. Yeah. Okay, Medusa. Stylus is on the Naga. Yeah. No funny business here. Do they have enough damage to take down a Medusa is what I'm thinking, you know? When Tundra starts grouping up and forcing... It's not easy for these heroes to take down Medusa, because, you know, Lesh and Ember... Lesh, yeah. They might lack damage. Yeah. Probably that's what, Tundra is trying to abuse here. And we saw one Naga earlier. I'm trying to remember who it was from RNG. He went for Diffusal on the Naga, and it could be interesting again this game. Yeah. I don't know. I mean, so Tundra's plan is to get this Dusa to a point where you eventually can go tier 2, Roche, tier 3, and the group up is going to be really strong with the Beast, and the sieging is going to start happening, and that's Secret like kind of demise if it does happen. Whereas if Secret, they manage to stall the game out and start splitting, and you know, Medusa is also very punished by a map that gets spread out really like quite a bit, and he doesn't like running around. So
It's funny, it feels like both teams have swapped roles in terms of how they want to play the game, right? Secret wants to be dodging, and Tundra is going to try to hit critical mass, group up around the Dusa, the Beast, and just try to, you know, end it. So we'll see how it works out. Very interesting to see how the best Naga team plays against Naga, you know? Doesn't get more interesting than that. You have any copium left for Secret? I do. You do? Of course I do. Okay. I want game 4. Me too. I really want game 4. Well, we'll see if we're going to be getting that here. I mean, overall as well, Fog, you know, just sort of seeing Skeeter on this sort of hero. It's been, what, 2 games so far with Tundra. Each time, whether it's been Skeeter or Nine, they've just had this core that Secret haven't really been able to touch. Do you feel that may be the case here again, or do you believe that Secret, they can make sure that neither of these 2 cores from Tundra get a free game? Tundra are magical the way they make space, especially for Skeeter, and I see 4 heroes that are pretty damn good at it. So let's see. I mean, they're the ones who know how to play versus the Nagasaren, so let's see if they can actually be put up to that test. I hope for a 5-game finals. I hope these players are in here and really enjoying the moment, you know? I hope we get some good Dota. Absolutely. Sort of final words, Seb, you know, coming into this for Secret. We saw them able to sort of keep the positivity high at the end of game 1. Do you think they're going to be able to do it again at the end of game 2 going into this game 3? There's a reason why Puppy was in the finals 10 years ago and why he's there again. Well, let's see what's going to happen here. We'll pass over to Slacks now. It's going to be with Bowie for some words before the game. I am here with Owie 2000. Hello, sir. Potentially one more, my friend. Potentially one more. Are you guys feeling it in the booth? Honestly, like we had a talk, our emotions are pretty level right now. We've worked a lot on not choking on land, so hopefully, you know, game 3 of TI finals. Definitely a good time not to choke. So you guys, I saw a lot of comfort picks coming out here, you know, the Snaking Morana, the Pangolier. So is that kind of the strategy to just get those feel-good heroes, or do you think they're especially good in this draft? I mean, we sort of early picked those heroes, so they're just sort of heroes that we think are strong and fit in versus their first couple of heroes. But we also picked Dusa because Skitter opened the Crimson Witness on stage. So I was like, it's time to pick the Dusa. So I think this might break it or make it for Dusa. She might get a nerf or a buff after this game. So which one are you hoping for? For Dusa? Yeah? I feel like the hero's unpicked, unplayed, no? Like, I don't know if I've seen a Dusa this tournament, but I hope it works. All right, well, we'll see if it works. Let's throw ahead and throw it to the casters for potentially the last game, game 3 of the Grand Finals. Thank you very much, Slacks. Yes, we'll see indeed. Are Tundra able to get the 3-0 sweep, or a Secret able to stop them in their tracks? First of all, though, before we get into the action, we've got some words behind the scenes from Puppy. देवियों सज्जनों, आप सबका फिर से स्वागत है। पोटेंशियली आखिरी बार ये आखिरी मैचअप हो सकता है हमारे ऐतिहासिक ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। TI11 BO5 सीरीज ऑलरेडी टुंड्रा ने 2-0 की बढ़त बना लिए, मात्र 1 जीत दूर। और यहाँ पे हम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स देखने को मिले हैं दोनों टीम्स के तरफ से। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे प्यारे मनीष जी और उनके साथ है क्यूटी नैक्सिर। मॉन्स्टर जी, हमें बताइए, ये दोनों ड्राफ्ट्स को आपने गौर से देखा, क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। मेरे हिसाब से पहले 10 मिनट के लिए गेम देखना चाहिए, एंड अगर मेड्यूसा को 10 मिनट में 1 से 2 बार पिक ऑफ नहीं करते हैं, देन स्किटर जैसा स्नोबॉल कर रहे हैं हर 2 गेम से, आई गेस वो ये गेम भी कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे वीडियोग्राफर और कास्टर मनीष जी के पास भी आएंगे। I was just checking out my cinematic mode, but yes, draft looks crazy. You know, after I'm very surprised. You know, I'm in very deep shock. कि how did you predict this Medusa pick? कि चाहे जितना भी आप मेरी निंदा करें, जो भी बोले, ठीक है, इवेंचुअली यही पे आता है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ, आप अपने सीने पे हाथ रखिए, बोले आपको लगता है कि मेरी निंदा के अंदर आपके लिए प्यार नहीं है। बहुत प्यार है, बट आप उस टाइम पे मेरे एक्सपीरियंस को क्वेश्चन कर रहा था। हाँ, क्वेश्चन करते हैं, वो आप करना बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता था ये मेड्यूसा आने वाला है। दिल से आवाज आ रही थी मेड्यूसा की, क्योंकि जस्ट लास्ट गेम एंड एक भड़ास उतारने का मौका मिलेगा। एंड प्रीटी मच आई थिंक इस पॉइंट पे मुझे लगता है कुछ तो बढ़िया करने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए अगर लेनिंग्स की बात करें तो क्रिस्टलिसिस ऑफ कोर्स उनको पप्पी थोड़ा सा हेल्प करने वाले हैं। डुअल लेन टॉप है यहाँ पे, और
साक्सा और हमारे प्यारे 33 अपने 20 मास्टर पे। सो हमने देखा है साक्सा, ही इज़ एन अमेजिंग टाइनी प्लेयर, हमने देखा है स्नेकिंग अमेजिंग मिराना प्लेयर, बट मॉन्स्टर जी हमें बताइए कि यहाँ पे अर्ली गेम में क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगी फॉर बोथ ऑफ द टीम स्टार्टिंग फ्रॉम टीम सीक्रेट? 33 और टाइनी साक्सा वो लेन डोमिनेट करना चाहेंगे बिकॉज दे विल बी द वन हु विल बी रनिंग द टेम्पो ऑफ दिस गेम। अगर उनका लेन अच्छा जाता है देन दे कैन ईजिली हेल्प आउट एवरीवन एल्स। एज बॉट लेन ज़रा बहुत हार्ड जाएगी बिकॉज आपको पता है लेशरैक एंड मार्सी लेन बहुत बुली करेंगे। सो अगर आपके टाइनी एंड बीस मास्टर की लेन अच्छी जाती है then they can definitely have some fast rotations and help them out. एंड अभी देखिए इनिशियली पप्पी काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हुए ऑलरेडी साक्सा को काफ़ी पीछे धकेल चुके हैं। बेचारे साक्सा जंगलों में जाके झाड़ियों के पीछे छिपना पसंद करेंगे इस समय, और क्रिस्टलिस अपना आराम से फार्म कर रहे हैं। अगर बात करें सीएसिंग की तो यहाँ पे खास तौर पर कोई परेशानी नहीं होती हुई हमारे प्यारे निशा को, जिनका एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट अभी तक गया है, बट उससे अच्छा टूर्नामेंट तो 9 का गया है अब तक का। और लेनिंग स्टेजेस में कहीं ना कहीं सीएसिंग के मामले में आगे हैं, बट लेन अगर हार भी जाते हैं कहीं ना कहीं उनके चंगुलों से जीत लेना आई थिंक टुंड्रा की खूबी है। और ये डबल एक्सेस हल्का सा मिस होता हुआ पपी के ऊपर, बट अभी भी देखिए डैमेज बरकरार। साक्सा काफ़ी गुस्से में, और काफ़ी लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यू नो पपी इतने साल से मेहनत करते आ रहे हैं, इतने टीआईस खेलते हुए आए हैं, और नोटेल भी बोला है नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर एनी जोक नहीं है, मतलब इतने साल आने का। और यहाँ पे आखिरी मैच इनका हो सकता है इस टीआई के अंदर। सभी ने बोल रखा है, काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस है। कोई बोल रहे हैं कि हाँ टीम सीक्रेट माइट जस्ट पुश इट टू गेम नंबर 4, कोई बोल रहे हैं कि येस मे बी दिस मेड्यूसा पिक they've got something up their sleeves, but Nisha काफ़ी डैमेज तो ले रहे हैं, but I'm pretty sure we'll have no trouble dealing with it. फ्लेम गार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। मनीष जी आप बताइए यहाँ पे सीक्रेट को जल्द क्या करना चाहिए अभी? I think after this international, Secret को पपी और मिरेकल के साथ दोस्ती करनी चाहिए, because even that team, Megma Galaxy is not doing that good. I wanna see पपी Secret, फिर हो सके कुछ पपी कुरोकी, cause एक टाइम था कुरोकी कैरी करते थे। कुरोकी ने पहली बार वो चालू किया था, बट नासिर में आप थोड़े से स्लो से लग रहे हो, लगता है कि आपके जो मेगाट्स की रैम है वो कम हो गई है। बट आई टोटली अंडरस्टैंड, ये माहौल ही ऐसा होता है जब आपकी जो फेवरेट टीम्स होती हैं आपके सामने आपका दिल तोड़ देती हैं। आई नो आपके दिल के अंदर ढेर सारा मोहब्बत है पपी के लिए, बट आज के लिए हमें यही मानना पड़ेगा कि इस वक्त टुंड्रा से कोई बेहतर टीम नहीं है। क्या कहते हैं मियाँ? हाँ, टुंड्रा इज़ प्लेइंग देयर A1 गेम, एंड आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा 33 ने बोला था कि हिम अलॉन्ग विथ हिज टीम वो सोच रहे हैं कि अभी वो लोग अपने टॉप फॉर्म में हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि मैं और मेरी टीम, हमें ऐसा लगता है कि हम टॉप फॉर्म में हैं, एंड हमें वही दिखने को मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यस इनसे बेहतर टीम ये टाइम पर और कोई नहीं है। पिछले साल टीम स्पिरिट आई थी, यू नो, एंड आए सबको यू नो हैरान कर दिया। इस बार टीम टंड्रा आई और कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट 3-0 का स्कोर लाइन अगर टीआई का ग्रैंड फाइनल्स है तो वो रास नहीं आती। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सपोर्ट आता हुआ पैंगो को पिक करने के प्रयास में स्नेकिंग भी आ चुके हैं। रोलिंग थंडर का इस्तेमाल, यहाँ पे आर्केन रून बॉटल जरूर करेंगे, शायद जायक यहाँ पे पिक हो सकते हैं। स्टारफॉल का इस्तेमाल, और देखिए यहाँ पे अरे स्नेकिंग को मिल गया फर्स्ट ब्लड। अगले शिकार जो है वो निशा हो सकते हैं। रेमनेंट आउट करने की कोशिश, और यहाँ पे उनको दे मारा है, उछाल दिया है, शायद एवलांच नहीं था। वेरी स्मार्टिंग, और यहाँ पे ट्रेड भी देखिए किस तरीके से निकला है। 9 ने थोड़ा ओवर कमिट किया और वरना 9 बच जाते वहाँ पे। वो उन्होंने सोचा कि स्टन हम एम्बर को भी पिक कर सकते हैं, बट निशा ने बहुत अच्छा गेम खेला। और फिक्सिस, आपने जो बात किया था टीम स्पिरिट का, बट ये जो करंट टंड्रा है मुझे TI9 की ओजी की याद दिलाती है। बिकॉज ये जो हमारी स्पिरिट थी वो लोअर ब्रैकेट से भागते आई थी, और ये जो टंड्रा है ये हाई ब्रैकेट पे 2-0 और आखिरी के अंदर 2019 की 3-1 से जीतती है, तो बात हो जाएगी। मतलब और इन्होंने ग्रुप स्टेज में भी सेम उसी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया था जैसा ओजी ने सबके अगेंस्ट डोमिनेट किया था। अब ये होता है फिक्सेस इन्फॉर्मेशन, दिस इज डेटा।
आप जो आप बोलते हो दिस इज अटर क्रैप। देखिए आई डोंट वांट टू बी आप दोनों में से किसी ने मेड्यूसा एंटिसिपेट नहीं किया था, तो आप तो दोनों आपने तो क्या मुंह बंद करिए। अरे तो मतलब ठीक है? अरे फिक्सेस जेंकिंस, just because you anticipated Medusa doesn't mean कि आपने डोटा पे महारत हासिल कर ली है। The facts, the data, the जो knowledge, draft आपने को मैं आपकी predict बात कर बता पाता देता है। हूँ, आपने बॉक्सी को जेरेक्स बोला है, आपने आरटीसी को इंटरनेशनल जिताया है, ठीक है, आपने लेट गेम को चाइनीज मेटा बताया था, आपने इम्पीटस को अल्टी से हटा के फर्स्ट किल वाला आपको वो नहीं पता था, आपने ड्रो का ऑरा का देखा था, आप इतने सारे ब्लंडर कर चुके हो और अगर उसके बाद भी आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि इन आप सब चीजों को अगर आप साइड में रखें और ये देखें अगर साइड में रखना है तो इवेंट को साइड में रख दो, गेम को साइड में रख दो। अगर ये सब चीजों को साइड में रख के जो अच्छी अच्छी चीजें मैंने बोल दी, जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया था टंड्रा ग्रैंड फाइनल आ रही, तब कहाँ थे आप? अरे ये जब हमने बोला 2-0 से ऊपर जा रहे, देखिए ये जो मटका गेम है ना, मटका गेम, ये जो पढ़ी लिखी बातें, ये तो कोई भी निकाल लेगा, आप इंटरनेट पे जाइए सर्च कर दीजिए वो मिल जाएगा, बट जो अंदर की बातें, जो गट फीलिंग की बातें, जो मन की बातें हैं, वो अगर निकाल पाए उसी के तो पैसे हैं क्रैट। मटका खेलने की आदत आपकी गई नहीं है और आपका इतना स्ट्रॉन्ग मटका है ना, मैं हैरान हूँ, मतलब आपका मटका गेम गलत है। तेरा देवर दीवाना, मतलब सीधी नहीं था यहाँ पर। he started with a normal physical attack, stun, avalanche and toss combo आया, swashbuckle and rolling thunder, shield crash, बहुत सारे spells लगे, but they got what they wanted, they got the Trio 1 tower, they are almost getting that tower, and उसके बाद अब सीक्रेट पे धीरे धीरे प्रेशर आ रहा है, टंद्रा नहीं छोड़ने वाली है, and it's now I'm having this broad picture कि maybe just because why I'm so reluctant to see Tundra to win this championship. Oh, nice turn. ये देखिए, ये दिया पटकी स्नेकिंग, धोबी पछाड़। He was expecting too much. उन्होंने I don't know why he was trying to teleport there, and he got earth split, then he got leashed down, disposed. It was very hard for it. But ये देखिए स्केटर को भी इन्होंने जो हालत यहाँ पर नागा की हो रही है वही हालत स्केटर की भी कर रही है। नागा अब देखो दोनों जंगल के अंदर है। अगर स्किल बिल्ड की बात करेंगे तो स्प्लिट शॉट स्केटर ने 2 लेवल की ले रखे हैं, माराशी 2 लेवल की है, 3 लेवल की है, और एक और नहीं, मिस्टिक स्नेक 3 लेवल का है, और जो मानाशीट है वो भी 2 लेवल की है, तो अल्टीमेट नहीं है अभी तक यहाँ पे स्टोन गेज। और ये पहला गेम है मनु क्राट, अगर आप देख सकते हैं कि पहली बार स्किटर 10 मिनट से पहले अपने लेन के बाहर हुए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिकॉज़ यूजुअली लेन ठीक ही चलती है इनकी, एंड हमेशा डोमिनेटिंग होती है सीके वगैरह से भी, बट यू नो मेड्यूसा इज फेमस फॉर दिस, नो, मेड्यूसा इज अ लेट गेम हीरो, मेड्यूसा इज अ लेट गेम एएफके हीरो, आप इसको बस फार्म करके छोड़ दो, बाकी का खुद हैंडल कर लेंगी। अब तो इनके शार्ट और सेप्टर भी है, फिक्सेस इनके शार्ट क्या करते हैं मेड्यूसा के, मैं याद सा नहीं आ रहा मुझे। देखिए इनके जो शार्ट है ना, उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। पहला चीज ये, क्योंकि जो एरोज होता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो मिस्टिक स्नेक जाता है, मतलब 5-6 तो ऐसे खींच लेता है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसका गैनम सेप्टर और अगर आप इसका शार्ट दोनों ले लेते हो, देन बीच में इसका मेटा भी आया था, आपको फेस बूट बनाने, ऑब ऑफ कोरोजन बनाना है, और सीधा मांटा और सेप्टर क्या करता था कि एवरी टाइम मेड्यूसा को अगर आपको अटैक करता है तो मेड्यूसा एक मिस्टिक स्नेक फेंकती थी, और सेप्टर क्या कहता है जितनों को मिस्टिक स्नेक लगेगा सब स्टोन बन जाएंगे। तो सोच के देखो, लेट्स सपोज आप स्वेन खेल रहे हो, आपने स्टन मारा स्टॉर्म हैमर, वो ठीक है स्टन होगी मेड्यूसा, बट एक स्नेक छोड़ देगी, स्नेक में क्या स्वेन के माम में सारे स्टोन, ऊपर से अपना एक और अगर वो सांप फेंकती है वो भी सबको स्टन कर देगा। इसका मतलब मेड्यूसा को अटैक करने के लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर कि आपको बीच बीच में डिसेबल भी होना पड़ेगा। बट रेजोल्यूशन जो यहाँ पर अभी तक खेल रहे थे, बट ये देखे ही इज स्टिल जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और ये आया टॉस कॉम्बो एंड 9 got the resolution and sleight of hand से डैमेज तो दिया है, बट क्या यहाँ पे 9 कुछ और कर पाएंगे, बट जैक का यहाँ पर जो अनलीश के साथ साइड किक के साथ जो कॉम्बो चल रहा है, सील क्रैश विल बी टैंकिंग लॉट ऑफ डैमेज, स्वॉशबकल विल बी गिविंग सम टाइम, बट दैट डैमेज, बट ही विल बी गोइंग डाउन, बट बिफोर गोइंग डाउन ही गॉट वन मोर प्लेयर विद हिम, बट वहीं पे साक्स आएंगे यहाँ पे, ही टॉस्ड निशा ऑन टू द पपी, बट पपी नहीं वेट कि ये जो किल है एक और कंफर्म हो जाएगी। पपी ने ऑल सीक्रेट टीम ने एक अच्छा ट्रेड बैक तो लिया, बट अभी भी नेटवर्थ का जो झोल है वो फेवर कर रहा है टंद्रा के फेवर में, एंड 12 मिनट गेम में ऑलरेडी हो चुके हैं। बीच मास्टर सरप्राइजिंगली एक हमें कोर 33 ने अभी तक लेन नहीं छोड़ी है, जब 33 लेन छोड़ेंगे ओ माय गॉड वो भी एक अलग ही इम्पैक्ट लाएंगे मैप के ऊपर। बट उस सब के बीचों बीच जैसे आपने कहा बीस्ट मास्टर को काफ़ी अच्छा फार्म फ्री मिल रहा है, और स्किटर पीछे जा चुके हैं।
एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक फीड नहीं हुए हैं ज़्यादा, ठीक है, इनफैक्ट मरे भी नहीं हैं। तो अगर ये जिंदा रह जाते हैं, हमको ही पता है कि लेट गेम में सोल्यूशन तो है, बट बात यही आ जाती है कि क्या टुंड्रा के प्लेयर्स यहाँ पे क्रिस्टलिसिस की आराम से वो जो फार्मिंग करने की पोटेंशियल रहती है वो खोने देंगे। और बात करते ही करते यहाँ पे स्कीटर के ऊपर चढ़ गए, बहुत ही अच्छा लीप का इस्तेमाल, और यहाँ पे स्कीटर को दे गिराया। ये एक भारी चोट पड़ सकता है टीम टुंड्रा को, थोड़ा सा देख संभल के यहाँ पे फार्म करना पड़ेगा। धोबी पछाड़ दिया। जी हाँ बिल्कुल, धोबी पछाड़ दिया। और अगर आप देखो यहाँ पे नागा को अभी सांस लेने का मौका मिल रहा है, फार्म कर रहे हैं चुपचाप से, और एक बार वो भी फार्म हो जाते हैं तो कितने अनोइंग हो जाते हैं डील करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी जितनी भी आपने बातें की उसके साथ मैं हाजिरी रहता हूँ उस चीज़ को, सहमति हाजिरी दोनों है हमारी आपकी बातों की तरफ। और अभी मिड का टियर 1 टावर में दिलचस्पी दिखाते हुए टीम सीक्रेट के प्लेयर लास्ट हिट मिली है यहाँ पे उनकी पोजीशन 4 जैक को, जो कि 6 महीने पहले टीम में एड अप हुए हैं एंड बहुत ट्राई हार्ड करते हैं ये पब्स के अंदर। एंड और इनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो रेजोल्यूशन है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वैल्व के इंटरव्यू से मिली है। बट स्केटर को अभी भी पनपना पड़ेगा, याशा कंप्लीट है, ही इज गोइंग फॉर द मांटा। बट मेड्यूसा के आइटम बिल्ड बहुत ज़्यादा ओकेजनल होते हैं, बहुत चेंज होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हर बार आप एक लिमिटेड आइटम्स पे नहीं जा सकते, बिकॉज ऐसे प्लेयर के लिए आइटम ना कम नहीं पड़ते, स्लॉट्स कम पड़ जाते हैं, आइटम खत्म ही नहीं होते। बटर भी चलता है, स्कार्डी भी चलता है, डेडलेस भी चलता है, एमके भी चलता है, ब्लिंकिन भी चलता है, बीकेबी भी चाहिए होता है, कभी कभी जूते सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। रेपियर तो आपके 60 मिनट का आइटम उससे पहले लेने हैं, मतलब बीच में रेपियर मेटा में आया था जब रेपियर ट्रू साइड हो गया था, ट्रू अटैक हो गया था बेसिकली आपके लिए। उस टाइम पे गायरोकॉप्टर वगैरह ले पाते थे, हल्का सा ड्यूल कैनल आपका रिसेप्टर। और ये देखिए रेजोल्यूशन पे यहाँ पे प्राइमल रोल आया, वाइल्ड एक्सेस, स्वॉशबकल, एंड जब तक उनको होश आता उनको सीधा पवेलियन पहुंचा दिया। 30 सेकंड अब वो टीम से जुदा रहेंगे। नेटवर्थ अभी भी फर्क में, रेजोल्यूशन है वहीं पे टिप करा है स्नेकिंग को, दे आर ट्राइंग टू, दे आर ऑन अ मूड, वो ओजी की तरह टिप और ये स्पैम कर लोगों को इरिटेट करना चाहते हैं। 2018 की टू साइड में देखा था कि चार्ल्स ने बोला था कि आई विल बी म्यूटिंग देम बिकॉज आई गेट वेरी इरिटेटेड। डू यू थिंक फिक्सेस ये काम करता होगा? ज़रूर करता है, ज़रूर बहुत ट्रिगर हो जाता है। ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, अब तो मारने जाऊंगा, और ऐसे करते 5-6 गलतियां और। आपको लगता है कि ये सारे कलिंगा इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए आपके कॉलेज से? बिल्कुल, आई मीन एल्यूमनाई हैं और महारत रखते भी हैं। और देखिए यहाँ पे 2 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं टीम सीक्रेट, 1 के बदले 2, बट 2 गए हैं सपोर्ट। बट बात घूम फिर के यही आती है, आपके मेन जो कैरीज हैं वो कितना फार्म कर रहे हैं। और मेड्यूसा के तो अभी हालात बहुत बुरे लग रहे हैं। एंड मेड्यूसा क्या बना रही है फिक्सेस? आई थिंक देखना पड़ेगा वापस। मेड्यूसा बना रही है ऑर्किड ऑफ मेलोवेलेंस, ऑर्किड को ब्लडथॉर्न में कन्वर्ट करके यू कैन डू इट। बट अगर फिक्सेस अपने जो नैन है, नैन बंद करके आप सोचो कि व्हाट इफ मेड्यूसा को एक इंस्नेयर पड़ता है और नागा की पूरी इल्यूजन उसकी माना स्ट्रिप ऑफ कर दे। आई थिंक देन दैट टाइम थोड़ा सा स्केटर को डर लगेगा। बट फिक्सेस सही बता रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गलती से सीक्रेट जीत गई आपकी निंदा बहुत होगी मार्केट में। नहीं, निंदा क्यों होगी? देखिए 3-1 तो सबको चाहिए, हम सभी चाहते हैं गेम आगे बढ़े। बट ये देखिए कितना ज्यादा डैमेज फिर से सीक्रेट को होता हुआ। 2 ऑलरेडी प्लेयर्स गवा चुके हैं, रेजोल्यूशन तीसरे हो सकते हैं, स्वॉशबकल का भी डैमेज पड़ चुका है, डिसआर्म हो गए थे। बट अभी भी निशा हाई ग्राउंड पे, कितना ज्यादा डैमेज आउटपुट, स्नेकिंग को जरूर डाउन किया जाएगा। और इसी के साथ और आगे बढ़ते हुए 9 अपना रोलिंग थंडर का इस्तेमाल करते हुए स्टन करने में सफल यहाँ पे निशा को। बट निशा भी यहाँ पे डिसआर्म है, यहाँ पे सांप जाता हुआ मिस्टिक स्नेक काफी लो एचपी पे, क्या इसके साथ इनका अंत हो जाएगा? जी हाँ, हो भी जाएगा। और 4 प्लेयर्स ध्वस्त हो चुके हैं टीम सीक्रेट के, बचे हैं तो बेचारे इकलौते नागा साइरन, जो उनकी आखिरी उम्मीद है, जो आखिरी साइरन बजा सकते हैं यहाँ पे टीम सीक्रेट। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि ये फाइट के अंदर अचानक से ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज देयर वर पॉइंट जब ये एडवांटेज में थे, सब कुछ उनके फेवर में चल रहा था, फिर उसके बाद देखिए एवरीथिंग नथिंग हैपेंड, एक स्टंट टॉस कॉम्बो आता है एंड सी दैट अमाउंट ऑफ डैमेज। पप्पी तो कुछ कर नहीं पाया, साइलेंसर जस्ट एएफके, साइलेंसर के कार दबाने की वैल्यू होती है। आपके दोनों पोजीशन 5 और 4 मर चुके हैं। उसके बाद दे वेंट अहेड एंड यस, बट मेरे जो फेवरेट प्लेयर है यहाँ पर पप्पी और प्रदीप है। प्रदीप जी जोर से बोलो प्रदीप जी, जोर से बोलो प्रदीप जी। प्रदीप जी, काश हमारा फीड हमारे सामने प्रकट हो जाए।
और यहाँ अब यहाँ पे थोड़ी बहुत गुस्ताखी के लिए माफ। मतलब ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, इस पे आप कंट्रोल नहीं पा सकते। हम तो नहीं चाहते कि भी आपको परेशानी दे, बिकॉज ये सारी मेरे ख्याल से किसकी दिक्कत है, लीग ऑप्स की। लीग ऑप्स से कौन है, नासिर, उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल, मतलब ये आईटी की दिक्कत है, छोड़ के आ जाते हैं। हमें तो ब्लेम करना है ना, टैलेंट्स का काम क्या होता है, ब्लेम करना, ब्लेम ये करना है। बट चलिए अब अगर इस गेम के बारे में और चर्चा करें तो नासिर जी हमें बताइए कि अब ये जो गेम जो जिस दिशा में जा रही है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा? डू यू थिंक कि ये मेडुसा फाइट से थोड़ा वंचित रहेंगे, लेट आएंगे फाइट्स के अंदर 30 मिनट के बाद, क्योंकि फार्मिंग तो इनकी काफ़ी पॉज हो रखी है अभी के लिए? अभी वो अच्छा फार्म कर रहे हैं। सीक्रेट को चाहिए कि 1-2 स्मोक गैंग्स करें, मेडुसा को ढूंढें और उन्हें पिक ऑफ करें। जब जैसा जैसा आपके पास ग्लोबल अवेलेबल होगा, आप जाएं और फाइट लें। अगर आप मेडुसा को एफ के फार्म करने दोगे, देन आई डोंट थिंक नागा साइरन उनको आउट फार्म कर सकती है। बात तो आपने पते की करी है, बट मनीष जी नागा के पास भी है फार्मिंग, मतलब नागा हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेडुसा इज मोर इफेक्टिव फार्मर। आप ट्रायंगल को आराम से अब्यूज कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो, और मतलब आपका मिस्टेक्स नहीं हो, स्प्लिट शॉट्स हो, बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पर होने वाला एक्शन, यहाँ पर ये मिलेंगे यहाँ पे किसी न किसी के साथ, और ये क्या डिस्पोज कभी भी आ सकता है। और प्राइमर रोल मार के बाद ग्लोबल साइलेंस they don't have, Radiance doesn't have any proper skill to give follow up। अभी भी गेम काफी ज्यादा परेशानी के बीच में दिख रहा है। टंद्रा के पास इस BO5 सीरीज के अंदर 2-0 की एडवांटेज है। अगर ऐसी गलतियां चलती रही तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो। बट नागा का गान आता है सीक्रेट के क्रिस्टालिस, एंड ही डॉज्ड दैट रोलिंग थंडर, बट स्वॉशबकल ने ढेर सारा माना बर्न करा और उनको डैमेज दिया। बट उन्होंने इंस्टेंटली सीधा मिरर इमेज यूज करा है और अपनी ढेर सारी इल्यूजन क्रिएट कर लिया। बट पीछे स्किटर आ रहे हैं, एक मिस्टिक स्नेक विल बी इनफ टू टेक डाउन ऑल द इल्यूजन। अब टुंद्रा जा रही है रोशान लेने, बट जैक एंड पपी दे आर ऑलरेडी देयर। उन्होंने यहाँ पे नजर लगा रखी, पपी इज डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स दैट रोशान पिट। इज इट अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एक्ट? आई डोंट थिंक सो, but it's bad, it's really bad। अभी अगर अल्ट की बात करें तो बीस्ट मास्टर पे उनका प्राइमल रोल नहीं है, तो उसके बगैर इनको फाइट लेना पड़ेगा। बट जैसे हमने एंटिसिपेट किया था कि ये जो मेडुसा है बहुत अर्ली ऑन फाइट के अंदर इंगेज इन होगी, और देखते देखते ढूंढ निकाला है बेचारे पपी को, गायब कर दिया इनको इस मैप से। और फिलहाल के लिए यहाँ पे रोश फाइट के प्रबल दावेदार हो चुके, बाय बैक करके आना पड़ रहा है। देखिए नागा को भी डैमेज देने का प्रयास था। लेशरैक अपने पल्स नोवा के साथ आगे जा रहे, बट 9 कहीं शायद अपनी गलियां भूल चुके। बट गलियां भूलते भूलते ये क्या कर रहे हैं बेचारे, जैक को तो चलने नहीं दिया गेम में, चलने भी नहीं दिया। बट फिलहाल अब तो आई थिंक टेक डाउन किए जाएंगे। बट देन अगेन फॉलो अप्स नहीं आती हुई टंड्रा को थोड़ा बैक ऑफ करना पड़ेगा। 33 पे प्राइमल रोर, अभी भी 50 सेकंड का कूलडाउन लग पड़ा है, और इसका फायदा निशा बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से उठाएंगे। और यहाँ पे स्किटर आ जरूर चुके हैं, बहुत ही अच्छा स्टोन गेज का इस्तेमाल, रेजोल्यूशन जा चुके हैं, अगले शिकार निशा हो सकते हैं। बट अभी के लिए देखिए उनकी मुठभेड़ होती हुई क्रिस्टलिस के साथ, निशा के पास बिल्कुल माना की कमी हो चुकी है। यहाँ पे जायक भी वापस फाइट के अंदर बन चुके हैं। स्किटर का एचपी देखिए कितना लो हो चुका है, बट यहाँ पे बस एक ही दिन के जिंदगी का मकसद है, किसी हाल पे उनको वहां पे डाउन करना था निशा को, और वो उन्होंने करने में कर सकते हैं, भी जा सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज इट। स्किटर मरने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट में यहाँ पर टॉस ने थोड़ा सा स्लो करा जैक को, एंड दे आर नाउ गोइंग बैक। द गुड न्यूज इज कि यहाँ पर दोनों टीम से कोर 1 नहीं मरे, दोनों के मिड यहाँ पे खो चुके हैं, 9 मर चुके हैं, एम्बर मर चुके हैं। एम्बर बहुत कम एचपी और माना में थे, ही हैड नो नथिंग, वो ना स्लाइड ऑफ फिस्ट भी तक नहीं मार सकते थे। बट अभी भी जो फर्क है ज्यादा नहीं है, बट जैसे जैसे हम लेट गेम के अंदर घुस रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर सीक्रेट। अगर सीक्रेट ये गेम हारती है, देन इंटरनेशनल 2022 के विजेता बन जाएगी टंद्रा ई-स्पोर्ट्स, एंड दे विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री अगेन, बिकॉज़ एक नई टीम स्टन कर दिया उन्होंने नागा। इतने इल्यूजन्स होने के बावजूद भी स्नेकिंग का एरो जाके उस नागा पे लग गया, और क्रिस्टलिस की एचपी माना कुछ भी नहीं था उस फाइट के अंदर। फाइट में हाँ,
एंड एम्बर के पास भी बहुत कम माना था। और ये तो देखिए जैक वाला तो चीज बहुत ज्यादा अनोइंग था। ही वाज लिटरली स्टन्ड थ्रू द होल ड्यूरेशन। और देखिए आखिरी में दैट शील्ड क्रैश डिड द जॉब। एंड बट इस सिचुएशन में जब यहाँ पे अर्थ स्प्लिट लगा था ना, वहां पर 9 का गेम पूरा खराब हो गया था, बिकॉज ही वाज डैमेज, ही वाज टेकिंग डैमेज फ्रॉम डायबोलिक एडिक्ट्स एंड द पल्स नोवा। और ये चीजें आसान नहीं होती अगर आपके साथ साथ रेजोल्यूशन जैसा प्लेयर और लेशरैक हो। नो डैमेज बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है गेम। बट आइटम प्रोग्रेशन देखिए, स्कार्डी आने वाला है। स्कार्डी के बाद इसका मतलब गैंग के अंदर जो मोबिलिटी है सीक्रेट के पास, उसमें काफी फर्क देखेगा। और दिस मेड्यूसा विल बी, आई वोंट से दैट दिस मेड्यूसा विल गिव लॉट ऑफ डैमेज, बट ये मेड्यूसा एनोइंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए ऑल ओवर द प्लेस। अब नासिर मियां हमें बताइए अब टीम सीक्रेट को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी सी कंट्रोल में वापस ये ये एक स्टोरी लाइन जो चल रहा है हमेशा चलते आ रहा है। टीम सीक्रेट अर्ली फेज में थोड़ा अच्छा खेलती है, फिर एक दो गलतियां कर जाते हैं और उसके बाद टर्नरा उनके ऊपर पूरा स्टीम रोल कर जाते हैं। तो अब टीम सीक्रेट को इस गेम में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? सीक्रेट को यही करना चाहिए कि अपना हाई ग्राउंड मेंटेन करें, अच्छे वार्डिंग करें, एंड जैसा स्मोक फाइट्स टंड्रा ले रही है, पांच बंदे स्टिक करके, मुझे लगता है सीक्रेट को भी वही करना चाहिए। एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द वे 33 इज प्लेइंग। उन्होंने अपनी लीड अब तक बना रखी है, मतलब वो फॉल ऑफ हो नहीं रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ऑफलेनर एक टाइम पे लीड बनाते हैं, देन वो फार्म करना छोड़ देते हैं, मतलब उनका लीड कम हो जाती है। रोशान अनकंटेस्टेड किसको? रेजोल्यूशन को दिया है एजिस। जी हाँ, आई थिंक एम्बर एक अच्छे पिक हो सकते थे, दावेदार हो सकते थे, बट आई थिंक रेजोल्यूशन को जिंदा रखना उनके एबिलिटीज का, खास तौर पर एम्बर शुड हैव बीन द पिक। या एम्बर शुड हैव बीन द नेचुरल पिक, बट क्या पता इस ये आखिरी गेम में कुछ दिमाग में पप्पी के चल रहा होगा कि नहीं लेशरैक को दीजिए, और एमएलएस का इस्तेमाल यहाँ पे टंड्रा ने कर दिया। उनको पता है ये एक ऐसी टीम है जो कभी भी फाइट लेने से कतराते नहीं है, एमएलएस करके घुस जाते हैं, जहाँ दिख गए कोई ऑफ पिक निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए पिक करने का पूरा प्रयास किया गया था, बट वापस से रीइनिशिएशन फाइट के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे 9 को मेल्ट डाउन किया गया है, सांस लेने तक का मौका नहीं मिला, और यहाँ पे बैक ऑफ करना पड़ेगा, और इनफैक्ट बायबैक किया गया है। और ये फाइट चलता हुआ जहाँ पे रेजोल्यूशन को स्टन जरूर पड़ा था, बट डैमेज आउटपुट देखिए स्प्लिटर आता हुआ साक्सा को भेज देंगे वापस अपने फाउंटेन के करीब। और यहाँ पे देखिए मेड्यूसा डैमेज डिश आउट करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट यहाँ पे क्रिस्टलिस ने अपना सॉन्ग ऑफ द सायरन चला दिया है। बायबैक करके आए हैं यहाँ पे 9। अब देखना पड़ेगा इस बायबैक का क्या फायदा उठा सकते हैं। स्टारफॉल यहाँ पे 3 प्लेयर्स के ऊपर पड़ता हुआ, बट यहाँ पे एट दिस पॉइंट दे वुड वांट टू बैक ऑफ। एक चीज अच्छा किया उन्होंने रेजोल्यूशन का। आई थिंक हम वापस आ गए हैं, पीछे आ गए हैं, बहुत पीछे आ गए दुनिया के। हाँ मैं वही सोच रहा था, क्योंकि रेजोल्यूशन के पास एजिस था। कुछ तो चल रहा है, देश बदल रहा है। लेट्स सी। जब हमने बहुत रुक के देखा था, अभी देखते हैं हुआ क्या है, कैसे हुआ है। तो यहाँ पे टंड्रा को रोशन पिट से बाहर भगाते हुए जैसा ही टंड्रा ने स्मोक किया और वो बॉटम लेन में गए। प्रदीप जी बताइए क्या?
bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Shadows take us. तो मैं मनीष जी रुक जाइए, क्या हम अपने प्रोड्यूसर का इंतजार कर सकते हैं? लाइव हो चुके हैं हम, बट ऑलराइटी, वी वोंट कॉपी, बट नमस्कार देवी सर, जो स्वागत है आपका फिर से एक और बार इंटरनेशनल 2022 के महासंग्राम ग्रैंड फाइनल बेस्ट ऑफ 5 का तीसरा गेम। 2 गेम ऑलरेडी टंद्रा ई स्पोर्ट्स ने अपने फेवर में ढाल दिया है। मेरे साथ इस स्पोर्ट के 2 बड़े दिग्गज, एक तरफ है उड़ीसा के राजा अमृत गौरव एके जेनकिंस ऑफ इंडिया, एंड दूसरी तरफ हैदराबाद के मियाँ भाई मरफा स्पेशलिस्ट नासिर उद्दीन अहमद। कैसे आप? बहुत नाराज लग रहे हैं नासिर जी। उनका अभी शाम के नाश्ते बेसिकली ही आल्सो हेड्स लीग ऑफ्स इन नॉडविन गेमिंग, सो 100 काम होते हैं, तो वो जो टेंशन है चेहरे की वो ये है कि ही विल बी लीडिंग लीग ऑफ्स इन ड्रीमहैक, एंड ड्रीमहैक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। आप देखिए यहाँ पे फिलहाल के लिए गेम के अंदर अगर ये टुंड्रा ले लेती है रॉश अनकंटेस्टेड,
कितना ज्यादा दिक्कत होगा। मेड्यूसा के ऊपर फार्म एक बार नजर डालिए, स्कार्डी वो सब कंप्लीट हो चुका है उनके ऊपर, और म्योल्निर भी हो गया था, हमने देखा थोड़ी देर पहले। पपी तो आते ही घर चले गए वापस, बेचारे ज़ाहक कूद के जा रहे हैं, बट नाइन क्या उनको वो मौका देंगे? श्वास बकल डाल दिया, आर्मर नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी खराब। और इसी के साथ जिंदगी खराब रेजोल्यूशन का भी। निशा बेचारे दुम दबा के भागने के पूरे फिराक में नजर आ रहे हैं, और फिर से टीम टंड्रा ने ले ली इस गेम में बहुत ही अच्छी लीड और रख ली है बहुत ही अच्छी पकड़। अब यहाँ से जो अपने आप को बचाने का जो आसार है, मिस्टर मॉन्स्टर प्लीज बताइए यहाँ पे अब टीम सीक्रेट क्या कर सकती है? पूरा पैसा क्या अब नागा पे लगाएं? हाँ, नागा को ऐसे ही लेन्स काट के अपने टीम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा रैट करते हुए। बट आई गेस एक पुश में ये लोग अपना एक दो साइड के रैक्स तो ले ही लेंगे एक ही पुश में टंड्रा। देखिए डैमेज आउटपुट भी अब धीरे धीरे मेडुसा का वो आने लग गया है, एंड उनका डैमेज 191 प्लस 51 है, उतना डैमेज नॉर्मल सबका होगा, बट इट डिपेंड्स वो स्प्लिट शॉट और जो आपके मिस्टिक स्टेज, बहुत सारी चीज़ें मॉडिफायर्स ऐड होते हैं। अब अभी वो ऑर्किड बनाएंगे, उसके बाद अलग फर्क पड़ने वाला है। बट यस, दे सीक्रेट लॉस द टॉप टियर 3 टावर एंड ग्लिफ ऑफ फोर्टिफिकेशन यूज कर दिया गया, जिससे कि वो कुछ समय और खरीद सके अपनी रिहाई के लिए। बट रेंज बैरक का यहाँ पर खत्म होना इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, एंड यस इट इज, दे लॉस द फर्स्ट रेंज बैरक। मीली बैरक्स इज अ रियल बैरक जिससे प्रॉब्लम होती है, बट साक्षा ने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है, ही इज जस्ट वेटिंग डाउन। अगर यहाँ पे साक्षा को नहीं पकड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये देखिए, ये ढूंढा और एरो से हुआ है स्वागत, बट oh my god, that swashbuckle was very close, but end of the day it was Zach who got denied, and global silence use करा, टीम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होगी। बट ये रोलिंग थंडर वाला जो 9 है, ये जो पैंगो है, इसको आप डैमेज नहीं दे सकते। उन्होंने इंस्नेयर मारकर उनको होल्ड बैक तो कर लिया है, बट रोलिंग थंडर खत्म ही नहीं हो रहा। ऊपर से उनको लोटस देके बहुत सारा डिसेबल, यार स्किटर बीच में खड़े हुए एंड ही इज बर्निंग लॉट ऑफ माना। बट यहाँ पर अगर कुछ और होगा तो फर्क हो सकता है, बट उतनी देर में बैक टू बैक रेमिनेंट यूज करके साक्सा अभी भी टिके हुए। पोजीशन 4 बीइंग सो अननोइंग, बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, बट टंद्रा को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ऑल्दो दे लूजिंग सम एचपी एंड माना, बट यहाँ पे मर कोई भी नहीं रहा है। बट ये देखिए रेजोल्यूशन ने यूज करा, बट है डबल 3 जो हमारे 20 मास्टर है, ही टेक्स डाउन वन मोर जैक एंड रेजोल्यूशन के नुकसान से। नाउ टंद्रा इज फॉलिंग बैक। दे कुड हैव स्ट्रेस्ड दिस फाइट लिटिल मोर, बट उनको पता था कि उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट करे हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी डेल्ट अ डेंट इनटू सीक्रेट कॉन्फिडेंस। सीक्रेट ऑलरेडी 2-0 डाउन है, एक गेम और उनका सफर, और ये पूरा सफर खत्म हो जाएगा, एंड हमारा एक चैंपियन इस साल का हमें मिल जाएगा। 3-0 का स्कोर लाइन रहेगा 2017 का इतिहास रचते हुए। ये भी रहेगा कि टंड्रा ने अपर ब्रैकेट में एक मैच आ रहा है सीक्रेट के अगेंस्ट, अपर ब्रैकेट फाइनल में। बस ओ यस। तो ओजी ने भी 2019 में कितने हारे थे? एक ही हारा था वो ग्रैंड फाइनल में, जब जिसके अंदर स्पेक्टर ने बायबैक नहीं किया था और नोटेल ने एना को बोला था बायबैक मत करना। दैट होता है, इट्स ओके। अल्केमिस्ट ने सिर्फ एक ही पुश पे खत्म कर दिया था। बट ये देखिए फिर से इट वाज नॉट अल्केमिस्ट, इट वाज नीपो एंड टेम्पल असैसिन। यू डोंट मेस विद मी मैन। देखिए उस गेम में अल्केमिस्ट था, बाद में बात कीजिएगा। अभी इट्स ओवर मैन, सीक्रेट इज ओवर, पपीज ड्रीम्स आर डेड, इट इज इन ग्रेव। जैक डाइड द सेकंड टाइम, एंड एम्बर भी यहां पे गेम से बाहर हो चुके हैं। एंड देखिए 38 मिनट्स ऑलरेडी गेम के अंदर लिंकन्स के लिए गए थे, they had to, because primal roar हो गया, ये चीजें कुछ है, ऑर्किड होगी, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डैमेज देती हैं, तो लिंकन तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मेरे हिसाब से भी रेजोल्यूशन भी मर जाएंगे, और आई डोंट थिंक अभी उनके पास बायबैक भी होगा। जी हाँ, बायबैक भी नहीं है, और रेजोल्यूशन के पीछे देखिए ऑलरेडी मूनलाइट शैडो कर दिया। He's getting chased down, he's getting chased down, he's just getting chased। डर का माहौल चारों तरफ कहाँ है? पल्स नोवा खोल के लेन क्लियर कर रहे हैं। स्नेकिंग को बस एक चीज करनी, उनको टीपी नहीं मारने देना। अगर स्नेकिंग को यहाँ पर उन्होंने पकड़ा, बट बीके भी टीपी किया है, एंड एवलांच, सेक्रेड एरो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कर पाए until unless। कितने ऑर्किड्स लिए हैं? प्राइमल रोर होता तो शायद फर्क पड़ता, बीकेबी के थ्रू वही जाता, बट बाकी कुछ ऐसा नहीं है उनके पास जो टीपी रोक पाते। बट दे लॉस्ट द टॉप बैरक। अब ये गेम हर एक सेकंड ना, मतलब सीक्रेट को चोक फील कराने वाला है। अब जो वो कहते हैं ना, इंसाफ की उंगली है, इंसाफ की घड़ी है, वो टिक टिक कर रही है, और पपी को देखना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर एडवांटेज कैसे क्रिएट करे। स्किटर की बात करें, स्किटर के पास कोई ऐसा माइंड बॉगलिंग का साम नहीं है, बट अभी भी दे मिसिंग द कोर आइटम। एक बटर, एक अगर ऐसा हो ना, फिर ये थोड़ा और होगा, बट उन्होंने बटर की जगह डेडलेस की तरफ नजर लगा रखी है,
और बकायदा नागा भी एक फैट एलिमेंट की तरह बाहर निकल रही है, बट नागा को यूज नहीं कर पा रहे हैं। मियां क्या कहते हो? हाँ, बेसिकली मेरे को वही पॉइंट अभी भी लग रहा है जो सीक्रेट का डाउनफॉल हुआ है। उनको एजिस एम्बर स्पिरिट को देना चाहिए था, एंड आई गेस दैट्स द पॉइंट वेयर दे लैक्ड इट। रेजोल्यूशन को देके बहुत बड़ी गलती हुई है सीक्रेट के साइड से। आज उनकी रातों की नींद जाने वाली है। पपी को एक और साल का इंतजार करना पड़ेगा ये सुनहरा एजिस उठाने के लिए। एंड ऑल्सो जो टॉप बैरक्स के टाइम पे आई डिडंट अंडरस्टैंड द फैक्ट, ये जो इन्होंने बीकेबी खोल के जो ब्लिंक इन किया था रेजोल्यूशन ने, दैट वाज आल्सो ए क्वेश्चनेबल डिसीजन, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ मैन डाउन एंड आपके ऑलरेडी रैक्स जा चुके हैं। एंड 33 जब टंड्रा रिट्रीट कर रही थी, आपने इनिशिएट करने को देखा 4v5। ओह, आई थिंक हल्का सा इन्फॉर्मेशन आ गया, पिंग्स लग गए थे कि कोई तो आसपास घूम रहा है हमारे। और इस समय देखिए पपी जितना लेन पुश करा सकते हैं वही करा रहे हैं, वापस बेस पे जा रहे हैं, बट इन्होंने डोट निकाला फिर से। बट इस बार एक बड़ी मछली के बन के निकल सकते हैं। निशा का अगर पिक यहाँ मिल जाता है तो क्रैट सब खत्म हो जाएगा और आराम से एक और रैक्स ले लेंगे। देखिए डेडलेस भी आ गया, तो इसी का शायद इंतजार कर रहे थे। अब हम लोग को नजर आएंगे एक और गैंक में शामिल होते हुए हमारे प्यारे स्किटर। फार्म काफी ज्यादा हो चुका है, राइट क्लिक डैमेज भी काफी ज्यादा हिट करने वाला है। और अब देखना यही रहेगा क्रैट कि इस मैच में बचा है तो क्या। इस मैच में कुछ शेष नहीं बचा है अब, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नेटवर्थ एक अलग कहानी बता रहा है, मैप की ऑब्जेक्टिव एडवांटेज एक अलग कहानी बता रहा है। एंड आई डोंट सी एनी वैलिड पॉइंट कि ऐसा क्या होगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। अनटिल बीस्ट मास्टर इज फैट, दिस 9 पैंगो इज फैट, स्किटर के पास फार्म है, एंड स्नेकिंग का यूटिलिटी ऑन गेम पॉइंट चल रहा है, गेम ऑन पॉइंट चल रहा है। ऊपर से सास्का को तो आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। अभी तक इज मेकिंग श्योर कि वो स्प्लिट पुश रोक सके, थोड़ा सा लेन काट सके, यही कुछ चीजें हैं, कुछ प्लान्स हैं। बट सबके पास अच्छे आइटम्स है, लोटस ऑफ, ब्लड थॉर्न, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो फर्क पिला रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से नागा बीच में फंसती है, उन पे ब्लड थॉर्न लगता है ही, नागा विल बी खत्म हो जाएगी, उनको बिल्कुल पिघला दिया जाएगा बिना किसी डैमेज के। और वहीं पे निशा की बात करें, निशा ने भी अभी तक कोई डैमेज आइटम बना नहीं है। द नेक्स्ट आइटम मैंने पे देखे थे सेप्टर, इट वाज सेप्टर, मेलस्टॉर्म एंड सांजन का आया। थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी स्टेटस असिस्टेंस मिलेगा, बट इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वहीं पे शार्ड ले लिया है स्किटर ने, इसका मतलब जितने भी पॉइंट टारगेट स्पेल्स होंगे, जैसे कि आपका एंस्नेयर हो गया, आपका लाइटिंग स्टॉर्म हो गया, डिस्पोज इज रैंडम, आपके आसपास वो अलाइव वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें पॉइंट टारगेट नहीं होता वहाँ पे। सो वो प्रेफर प्लेयर्स को करता है क्रीप से ज़्यादा, बट उस पर गलती भी हो सकती है, ऐसा होता है। और साइलेंसर की भी कोई, साइलेंसर का मे बी शायद साइलेंस थर्ड स्किल एक पॉइंट टारगेट हो सकता है। हाँ। और लिशरैक की थर्ड स्किल हो सकती है, ये कुछ चीज़ें। बट शायद एक ऐसा आइटम है जो 12 महीने बढ़िया चलता है, बिकॉज आपको लेना नहीं है, इट्स पैसिव एंड इट्स वेरी अनोइंग टू। और माना का सीन क्या है, अभी उनका जो स्नेक है ना वो फ्रीज नहीं करेगा, किसी को स्टन नहीं करेगा। बट अगर मेड्यूसा ने अपने टैलेंट ट्री के अंदर 30% मोर मिस्टिक माना ढा रखा है, इसका मतलब जितनी ज्यादा माना उतनी ज्यादा टैंक बन जाती है मेड्यूसा, और मेड्यूसा को मारना फिर एक सपना ही रह जाता है लोगों का। एंड यहाँ पे बीस्ट मास्टर पे भी उनका रिफ्रेशर हो चुका है, तो 2 प्राइमल रोज दिखेंगे। आई थिंक ये टीम सीक्रेट की आखिरी फाइट हो सकती है। जी नासिर, नागा का आप देखिए, फार्म भले ही उनका बहुत है बट एक्सपी में वो बहुत लैग कर रहे हैं। अभी उनका 20 लेवल भी नहीं हुआ है, एंड मेड्यूसा आपके 25 लेवल। देखिए किस तरीके से शुरुआत हुई है, बीस्ट मास्टर को किसी तरीके से जिंदा रहना पड़ेगा। स्किटर का डैमेज आउटपुट बहुत ही ज्यादा होता हुआ, अगर प्राइमल रोल वहां पे कर पाते माजरा कुछ अलग हो सकता था। 100 सेकंड के लिए इस गेम से गायब है, बट फिलहाल के लिए 9 यहाँ पे कोशिश प्रबल की किसी तरीके से पकड़ पाए रेजोल्यूशन को, कॉम्बिनेशन नहीं लगता हुआ, एंड टीम टंड्रा को थोड़ा बैक ऑफ करना पड़ेगा। दे नो दे नॉट एट द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, क्योंकि सिर्फ जाग गए हैं, बट नहीं, ये करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखिए किस तरीके से यहाँ पे निशा को मेल्ट डाउन कर दिया गया है, और रेजोल्यूशन का जो डैमेज हर एक राइट क्लिक के साथ इतना ज्यादा कहर बरसा रहा है। करे तो करे क्या यहाँ पे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स। देखिए ओ माय गुडनेस, पपी जी आए और गए, और यहाँ पे तालियां ऑडियंस के लिए ऑलरेडी बजाना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमें बहुत ही जल्द हमारे नए TI चैंपियंस सामने दिखने वाले हैं। I think it's over. हाँ, we're just waiting for that final call, GG, and it is very heartbreaking for me personally, because I was rooting Team Secret, but it was
टीम इट वाज फिक्सेस जिन्होंने हमारी आंखें खोली अपने सट्टा के गेम से कि टीम टुंड्रा जीतेगी। टुंड्रा वाज द बेस्ट टीम कमिंग इन हियर, जो तरीके से उन्होंने अपना ग्रुप स्टेज क्लियर किया, टॉप किया था उन्होंने अपना ग्रुप स्टेज, देन अपर ब्रैकेट में उन्होंने कंटिन्यूस सभी टीम्स को लोअर ब्रैकेट में भी जाते गए हैं, एंड अभी 3-0 में इस दूसरी बार हुआ है टीआई में जिन्होंने अपना एक गेम भी ड्रॉप नहीं किया है। ओ इट्स वेरी कमेंडेबल। ज़ायक अब तो आई थिंक इस आखिरी किल के साथ दे वुड वांट टू एंड दिस मिजरी। और देखिए जीजी का कॉल बहुत जल्दी आ जाने वाला है और बायबैक किया है नागा सायरन ने इस गेम के अंदर। क्या कर पाएंगे, 9 उनको आगे आने तक नहीं दे रहे। और इसी के साथ जीजी का कॉल आउट आने से पहले ही एंशिएंट तोड़ दिया जाएगा। खुशियों का माहौल। टीम टंड्रा दे आर द चैंपियंस ऑफ TI11। विश्वास तक नहीं कर पा रहे कि जी हाँ इन्होंने हासिल कर लिया वो मुकाम और फ्लॉलेसली किया है। मनीष जी, नासिर जी, खुशियों की लहर। This is not a celebration, man. I remember 2018, 2019. That was a celebration. अकेले ये चश्मे वाले भाई साहब थोड़े excited आज रात को होगा पार्टी। नहीं जो स्टेज पे इमोशंस होते हैं, because winning a TI is a dream and snaking the IGL. He literally went ahead and he wants somebody else to pick it up, or he is going to pick himself. Yes, he did, and here it is, the International 2022 champion. 2017 की हिस्ट्री रिपीट करते हुए 3-0। ये दूसरी टीम है लिक्विड के बाद दूसरी टीम जिन्होंने अपने अपोनेंट के साथ ऐसा हाल किया था। सीक्रेटली इतना आसान नहीं था, बिकॉज इससे पहले एक बेस्ट ऑफ 3 खेल कर आया। इट वाज चैलेंजिंग। उसके बाद फाइनल में टुंड्रा के अगेंस्ट खेलना, एंड एक सेकंड ये नहीं लगा कि टुंड्रा किसी टाइम पे वीक लगी है। गेम 1, गेम 2, गेम 3, एवरी टाइम एनी टाइम गेम पूरे टाइम इनके होल्ड में थी। और इन्होंने बस एक चीज करी है, वो है एक खूबसूरत डोटा खेलकर दिखाई है। एंड आई थिंक ये जो खुशियों की जो मतलब रिस्ट्रिक्शन लग रहा है कि इट वाज टू इजी फॉर देम। ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रुप स्टेज के मैचेस खेल रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं आया कि मतलब ग्रैंड फाइनल्स खेल रहे हैं। यहाँ पे आए, अपना नेचुरल गेम दिखाया और ये देखिए यहाँ पे खुशियों की लहर चारों तरफ। एंड आज तो पार्टी बनती है बॉस। टुंड्रा के सारे स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है और ये सेम लेडी जो ओजी के साथ थी। नो शी इज समवन एल्स। देखिए ये एजेस आ गया है, बरसों की मेहनत। टंड्रा ने अपना नाम इमॉर्टल कर लिया है। जी हाँ, मैं लाइक ओके देख ओह माय भारी है काफी ज्यादा। आई थिंक यही होगा कि अभी हम डेस्क पे ही भेज दें इंग्लिश। तो प्रदीप जी भेज दिए हमारे इंग्लिश पैनलिस्ट के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ओह माय गॉड। Hero. Any words for everyone out there? You've been waiting so long. It is all yours, buddy. I want to thank everyone for coming here and supporting us and watching this grand final. We wouldn't be here without you guys. Woo! Oh, thank you, sir. Thank you. And I want to give a special shout out to Pierre and all the people who have supported me along the way. Thank you, guys. Thank you so much. An incredible show. Well done. Well done. Oh. Ladies and gentlemen, Skeet God here, my friend. Good to see you. I'm sorry, I'm caught up in the moment. Now, you heard about Dota from TI2. You watched them on this stage. Well, now you've broken the records. Now you're on the stage. How does it feel, my friend? It's surreal. I don't know. I'm trying to still digest all the emotions. You know, it didn't really come to me yet, but it's fucking crazy. Absolutely. Ladies and gentlemen, give it up for Skeeter! Hello, my brother. Oh yeah, soak that in. This is your first TI. Any advice out there to anybody who wants to do what you just did? Because you just became the inspiration to an unknown amount of people that will always be looking at you, the man who made it happen. What do you have to say to the future of the Dota 2 fans? Get good. Get good! Okay. I need this, man, if you can. Thank you so much. Sashka, it has been 6 years. Yep. You came in second place last time. I know you've been dreaming of this moment. Tell me, how does it feel now that you have accomplished it? I mean, it doesn't feel like it's still real. Like, I'm still trying to understand what just happened. So it's like
I don't know. In my mind, it's like I can't even believe it still. Oh, okay. Audience, is this real? Thank you so much. Congratulations, my friend. Where's the last one? Brea made the 33. Where'd he go? Hey, you get over here, sir. You've earned it. Many consider the VIP of the tournament, the MVP of the tournament, if you will. 33. Ladies and gentlemen, give it up! You said many times before you were searching for the right team to make your Dota ideas be true. You were looking for the right squad to make it happen. It seems you found it, sir. Any words that you'd like to say to your teammates and everybody watching at home? Just so happy. Everyone did such an amazing job this tournament, and it's the best feeling. Fantastic. Ladies and gentlemen, give it up one more time for Tundra! Your winners of the International, baby! One of the best years of Dota that we have ever seen. The greatest lift of the ages. One more time. Give it to the fans. Incredible Dota. One more if you can. Here we go. And get together, lift it up. Tundra Esports! Congratulations, Tundra Esports. Head and shoulders above the rest. I do not believe I've seen such a dominating performance in all the TIs. Snaking, 33, Saxka, Skidder, and 9. And I love the fact, panel. Hello, panel. Hello. Hello, Team Graph. Hello, Sheep. Hello, Lizard. I love the fact that all the family there with the players came to support, lifting the Aegis. What a moment. It was just an incredible run from Tundra, right? The fact that they haven't lost a series at all for its entire TI. They basically dictated how people should be playing Dota. They were miles ahead. Everyone was trying to chase and catch up as each series progressed, but no one could get to their level, and yeah, a dominating 3-0. It's just a dream. It's just a dream of every single Dota player. Anyone that ever played this game remotely competitively, lifting up that Aegis, getting your name on the back, it's, yeah. 33, like a few years back, he's in my team flaming me for some stupid build. Here he is now, like, just carrying the Aegis around. I don't know. I'm speechless. I'm so happy for them. Honestly, genuinely, like listening to any of these players talk, they care so deeply for the game. Like these are the guys you should always be rooting for to win and achieve their dreams and go as far as they want. Like they deserve this from their mentality throughout the whole year, how much they cared, boot camping fully through the DPCs. Like they wanted this, and it actually finally paid off. It has, and they say, is it a dream? They're not sure. They know it's real. I'm sure it will have to sink in, but this is the thing with, you win a TI. Did you hear the crowd, James? I know. I think it's pretty real. It is real, but even at these moments, you can see. It's proof that hard work just pays off. Like, think about this team, the amount of work that they've put in, like Sheep mentioned, like Lizard mentioned, they've gone through so much, and they've been boot camping the entire time. They've gone through, from being favorites in majors to crumbling out. And then being able to self-identify those problems, work on them, and then get to this TI, get to this run. It's just, again, it's one of the most memorable runs in just dominance. Yeah, you know what's cool is that, like, back when this team was signed by Tundra, like, Skidder got on their YouTube channel, talked about it. He said, I want to leave a legacy. I want to be remembered as one of the best in my role. Like, that was what he wanted, and he has proven it so hard. This entire event, this series, every single game, this guy is just miles ahead, playing his heroes to perfection into 100 million counters. It doesn't matter. He pushes his heroes to the max, and I'm just blown away. I'm so impressed, and I'm so happy. And here they are, walking off the red carpet with the Aegis, their names soon to be added. And of course, make sure you stick around because we will be having the winners on the late game. If you're in the arena, you will be able to hear more from our champions. And well deserved. He's as tall as them. Look at him. He's a giant. So he's a lovely walking giant. Yeah, Pio and Flax will be hosting the late game, as mentioned. And I can't wait to hear them. I can't wait to hear from them. Once they kind of settle down,
we'll see, you know, what they're really going to have to say about that, you know, best of, well, it wasn't a best of, it was a best of 5, but winning it in 3 games. Welcome back to the panel. We're here. We're just flabbergasted, honestly. There's never, I haven't seen a run so strong like this. They lost, I think, 1 map total. In the playoffs, they lost 1 game to Secret, and then in the group stage, they had a couple draws, I think 4 draws, but just the confidence from this team, and like, Skidder just played Medusa, right? He got the Crimson, Ali mentioned, he gets the Crimson, he wants to play Medusa. He hadn't played Medusa for 5 months competitively. He comes into the Grand Finals, Game 3, looking to lift that Aegis. He gets a little bit of RNG on his side, and bam, look at him. I think it's James, our best analyst at the panel, that said it doesn't even matter anymore what carry they pick. At this point, they play as such a unit, like they are one. You said it as well, Tiga. They're just one. They just move across the map so well. Their team fights are immaculate. The 4 staffs, the playmaking, everything just works out for them. Yeah, I think like any criticism of by Wraith Pack Go is just such an oversimplification of the technical aspect of this team's play. Like on a micro and macro level, Tundra are just 300 steps above every other team at this event. Like their abuse of vision, positioning, and map control is just far beyond. Like the way they've used the Hawks in that game, for example, always being able to like start these fights so precisely with 9 on his Pango. And these players, they're just throwing one problem after another at you. Like you have 33, the micro god on the offlane. You have 9 playing, I don't even know, from Grimstroke, Kotal back in the day to now Tusk on the mid lane. You just can't control them. It's as if like they also have this like 6th sense where in the game, when there's an opportunity for the enemy to find a pickoff, they're already ready. It's like 33 in this game. Like he's Beastmaster farming the triangle, they jump him, Secret, it looks like a free pickoff, and then bam, they're already there. So the speed that Tundra play the map, they find the ways to push the lanes in, but also just know exactly where their opponent is. It is a product of pushing the lanes, gives the information. Like I always mention this so many times. So I'm looking forward to how teams, after they've listed this Aegis now, they're going to have to go into these replays, study, because as soon as the DPC starts again, a lot of teams... they're going back home to study right now? No, I mean, all the teams in the world right now are looking at Tundra going, how have they just basically changed the way that we play Dota? Not many teams play like this, but this is going to be the meta. Unless there's some major big patch, spoilers, there's going to be the Tundra style of Dota going into the next DPC. And I think like, kind of building off what you said, Lizard, they are free thinkers. It's like they describe themselves that way because they don't limit themselves by what's good in the meta. You talked about the heroes that 9 can play, but you also have Snaking bringing in this Mirana Pos 5 to this tournament, being the only guy doing it, making it work, making it his own. I mean, you have 33 on his offlane too. Like he was the guy playing Darkseer into Enchantresses because he was innovating with his own build with the Orchid. Like throughout the year, throughout their careers, these players do not limit themselves. They keep pushing, they keep building things, making stuff their own. This is something that you can't steal from them. You have to really just embody their spirit to make it work. Yeah. I believe that they reformed and they just fundamentally changed the game. 4 and a 5 after this tournament, it doesn't exist. I'm so happy to see also Snaking got to lift the Aegis there for his team. His team kind of soon was like, go for it. And he was the player that mentioned he's been playing Dota for 15 years. To lift the Aegis after 15 years, what a moment for Snaking. And totally deserved it. Like, you know, as you mentioned, everyone on their team was a threat. There wasn't, you can't name an MVP, I think, of Tundra. They have so many layers to their team. If you shut down one player, the next player is going to step up, right? Like you think about the heroes in that previous game, you've got Saxo on the Tiny with the tossbacks, you've got 9 always getting the rolling thunder off during these sleeps, so you can't just disengage from the fight, you can't just TP out. And then you have just Skidder, the confidence of Medusa, but again, not playing it for 5 months. Game 3, yeah, let me just play it, boys, I got a Crimson. So yeah, just confidence on layer on layer on layer. How real do you think that was? Let's be honest. Very real. Just believe it, James. It's TI, okay? Please, I actually do believe it. I believe that it was like, hey, Skidder can play whatever he wants. We'll make it work. They were that far ahead, in my opinion. Find out on the late game show with Piri and Flax. Look at that. This guy. There you go. Gotcha. Host. It was a good segment. Yeah. So we should check back into the arena. We want to see more with what's going on after this Tundra Esports win. So let's send it over to Slacks.